ಪೆಂಡಲ್ನ ವಿವೋ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. Aman continues. What a delivery with a pace. Oh, that's a chance of run out. And that is being given. At one point it looked like it could not disturb the Bills, but at the seconds before the batsman could reach the popping crease at the non-striker's end, the Bills just lit off, and that was a lucky. And the key man, that is Arif, he played very well. He is one of the key, because this is not a match of hitting big strokes. From yesterday we saw a target of 36 to 38 in allotted 6 overs, which was a very good one, a defendable one, and a lot of teams were very struggled much, and at the last moment going for the wickets, given a lot of wickets at the tail end of the matches. They know this very well, and in the condition looking at the early morning, it has been a little bit more worse for the batsman. Because lots of dew, when looking at the naked eye, every grass is shining like a pearl in the ground. No doubt very rare to see this type of grounds and this view, and lots of spectators will be just flowing in numbers, might be thousands, 2,000, it might reach to 10,000 also in the evening. Oh, what a stroke that is! What a stroke from Riaz! Big man, he looked at ball like a football and kicked away like a goal. The ball just raced away to the boundary in a fraction of seconds. I think the fielder just moved 2 to 3 yards from the 30 yards from the square leg region, and the ball just went away like a rocket. This man knows only one form of batting: hit. He is not bothered of anything. He is only a big man for punishing every ball. Once again moving to the next ball. Here is Aman round the wicket to right-handed batsman. Oh, that is a way down. Juicy runs. This time completely missing the rhythm in the bowling mark. This is one of the bad bowlings from Aman. When looking at yesterday, he was one of the economical bowler, getting lot of wickets in his over. And he bowled every match a score of 2 overs. But this time in the morning, every day will be not his day. That is what the good saying is coming. Oh, that has been an excellent one. Just missed. Oh, that is first time looking. Yes, that is good umpiring from the naked eye, from the commentator panel only. We already saw it, but it is the official's decision to conclude. But it was an excellent decision to conclude. One shot. The one shot will be, no doubt, looking at the huge man. He will be facing big trouble in running 2 runs. Okay. Aman, already 8 in the scoreboard. Oh, that is one of the ripper. A low full toss one. Not a good timing in the swing of the bat. The bat came very late, and the ball just approached the bails and even the stumps. We can say leg stump. So the big man, after scoring, I think he gave a good start, and the follow mates have to play very keenly, patiently, and respected cricket for challenge India team to get into the finals. Last 2 more to go. Yes, 2 more to go. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಒಂದು ಈಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಸೊ fifth time in the bowling mark. Aman to Imran. Oh, once again that is way down. That's a wide call by umpire. Yes, because the leg stump wide is very close to the leg stump, and yesterday's picture was changed, but the bowlers have to adjust. Lots of extras. I can say that's all juicy runs for the opponent team. Now Imran at the batting. Oh, what a cheeky play. Presence of mind. That is excellent running. The key point in this tournament
from yesterday we saw is the running between the wickets and the combination and the call from the both batsmen. Scoreboard moves to double figure 10. In the scoring panel, Mr. Experienced scorer, Mr. Iqbal Bantwala. In the scoring panel, he's been just scoring from yesterday from every matches and is supporting making a very good role in this tournament. So Aman tossing the ball in his fashion, once again returning round the wicket. Oh, that is once again disaster one. Disaster one. 11 on the board. Power play still not concluded. Lots have been happening. Target is very slow when keeping to the limit of overs. Okay. Oh, once again, excellent delivery. I think yes, that is just within the tag of the off-stump wide. So good commencing, very long over. I think this is one of the biggest over seen since yesterday and of this tournament. 11 deliveries he bowled, and in that a lot of extras been seen. I think more than 5 extras. I think. The scoreboard after completion of first power play is 11 on the board. Eleven on the board. अल्ताफ तैयार अपनी ओवर की दूसरी अपनी टीम की दूसरी ओवर लेकर तैयार। सुबह का ये एक खूबसूरत मौसम सजाया हुआ इस मैदान पर, हालांकि बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइकर एंड पर इमरान तैयार। हल्के से खेला हुआ है गेंद आउट आउट एज जिसे हम कहते हैं बाहरी किनारा बल्ले का लगते हुए। इसी बीच हल्की सी अपील थी रन आउट के, लेकिन अच्छी दौड़ विकेटों के बीच के साथ इस एक रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। बारह पर स्कोर नासिर। दाएं के बल्लेबाज सामना करेंगे बाएं के गेंदबाज जो कि अल्ताफ। लेग स्पिन के लिए माहिर गेंदबाज, हालांकि पहुंची नाम है लेग स्पिन के इस नाम पर। इस पे फिर एक बार खतरा 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 और ये एक सुसाइड रन आउट। गेंद लाइन पर थी मिडल और ऑफ। इसी बीच हल्के हाथ से खेलने की कोशिश, लेकिन दिशा से बढ़ के स्ट्रेट अवे फॉलो थ्रू पर गेंदबाज ने अपने हाथ से बॉल को उठाते हुए एक आसान सा रन आउट लेते हुए इसी बीच तीसरी विकेट का पताना, यानी कि आरिफ, रियाज और शाकिर 2-3 विकेटें जो कि खो चुके हैं चैलेंज अड्यार की टीम की तरफ से। उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज मुख्तार। लेफ्ट हैंडेड फील्डिंग में बदलाव लाते हुए, हालांकि पोलार्ड जो कि विनोद शॉर्ट कवर पर तैनात। इमरान तैयार सामना करने के लिए अल्ताफ की अगली गेंद को फिर एक बार स्टीयर करने की कोशिश, गेंद नीचे रही और इसी बीच कोई संपर्क नहीं बल्ले और गेंद का। ये डॉट गेंद है। अच्छी शुरुआत अल्ताफ द्वारा, थोड़ी सी तकलीफ में रन ऑफ पर अल्ताफ, लेकिन एक की बॉलर के रूप में माने जाते हैं अपने टीम के लिए, चक्रवर्ती करवेल टीम के लिए। उन्होंने अपने बॉलिंग शैली से बांध के रखा है वहां पर बल्लेबाज इमरान को। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। ये खराब गेंद थी, लेकिन स्टीयर किया और एक रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन अच्छी दौड़।
गलत एंड पर थ्रो कर बैठे वहां पर विनोद। अगर उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया होता तो निस्संशय एक विकेट आसान से चुरा सकते थे वहां पर, लेकिन थोड़ी सी हवा वन टिप्पा खाने के बाद विनोद के हाथ पर आए, उन्होंने स्ट्राइकर एंड कर थ्रो किया, लेकिन मुख्तार वहां पर पहले ही दौड़ पड़े थे। अच्छी रनिंग बिटवीन की विकेट की वजह से एक रन आसान सा चुराता हुआ। इस एक रन के साथ कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। मुख्तार दायत के बल्लेबाज सामना करेंगे अल्ताफ। इस बीच बढ़िया स्ट्रोक ऑन साइड पर, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी है। इसी बीच एक रन आसान सा चुराते हुए, इसी आसान रन के साथ अच्छी पार्टनरशिप, यही रणनीति होनी पड़ेगी। हर एक गेंद पर हर एक रन चुराने की कोशिश। इमरान इसमें बढ़िया स्ट्रोक हल्के हाथ से जस्ट स्टीयर करते हुए 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। हालांकि अल्ताफ ने अपनी ओवर पर जस्ट 4 रन को देते हुए अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा देते हुए, हालांकि अभी बचे हुए 18 गेंदों पर 14 रन की जरूरत। 18 बॉल्स 14 रन रिक्वायर्ड। ಹದಿನೆಂಟು ಎಸೆತ 14 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು इमीडिएटली। विनोद तैयार अपनी ओर की अगली पहली गेंद लेकर तीसरी ओवर की चालती पर एक आसान सा रन। अच्छी साझेदारी मुख्तार और इमरान के बीच, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। विनोद बायन के गेंदबाजी करेंगे, दायत के बल्लेबाज मुख्तार के लिए फिर एक बार स्वीप करने की कोशिश। अच्छी स्वीप, थोड़ी सी रफ्तार थी, लेकिन सही दिशा पर पैडल स्वीप करते हुए एक एक रन चुराने की जो रणनीति थी उसको बरकरार रखते हुए अच्छी साझेदारी, यही रणनीति होगी। अगर उन्होंने हर एक गेंद पर ऐसे ही एक एक रन चुराते गए तो आसान से एक जीत प्राप्त करेंगे इस सेमीफाइनल मैच पर। फिर एक बार इमरान और ये अपील और ये पुरस्कार। इमरान द्वारा उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश, गेंद बैट के संपर्क में नहीं आई, सीधे बैट पर टकराए जो कि प्लम इन फ्रंट ऑफ विकेट थी। इसी बीच संतोष द्वारा एक आसान सा निर्णय लेने की जो प्लम एलबीडब्ल्यू थे उन्होंने दिया, और इसी बीच जो साझेदारी जो अच्छी तरह से निभा रहे थे मुख्तार और इमरान, उसको तोड़ने में सफलता। इस बीच विनोद तौसीफ नए बल्लेबाज बायत के बल्लेबाज तौसीफ तैयार। त्रिमोर तौसीफ अच्छा बैटिंग का मुजाहरा कल भी दिया था, आज भी उन्होंने उसी शैली पर स्वीप करते हुए एक रन प्राप्त किया अपने खाते पर और टीम का खाता बढ़ता हुआ 17 पर। हालांकि क्वार्टर फाइनल मैच में भी उन्होंने एक बहुमूल्य साझेदारी दी। इसी बीच हर एक रन पर हर एक रन चुराने की जो रणनीति उन्होंने लगाई थी उसमें उन्होंने सफलता दी प्राप्त की, और सेमीफाइनल पर उनका टीम को जीत दिलाने, जो कि क्वार्टर फाइनल पर जीत दिलाने की कोशिश उन्होंने बड़ी सफलता दिलाई थी तौसीफ ने। इसी बीच आखिरी एक गेंद शेष विनोद के इस ओवर पर, जो कि तीसरी ओवर की चालपी पर मुख्तार और तौसीफ, क्या ये जोड़ी साझेदारी निभाते हुए अपनी टीम के लिए जीत दिला पाएंगे? यही एक प्रश्न रहेगा। लेकिन अगर साझेदारी तोड़ने में सफलता प्राप्त करेंगे गेंदबाज तो निसंशय या थोड़ी सी दबाव हुआ बैटिंग टीम पर आएगी।
तौसीफ, फिर एक बार वही शैली पर थोड़ी सी ऑन साइड पर ऑफ साइड पर आकर उन्होंने बैट को बल्ले को घुमाया, इसी बीच एक एक रन चुराने में कामयाब। 3 ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। बचे हुए 12 गेंदों पर अब 9 रन की जरूरत। 12 ಎಸೆತ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಲ್ಪ ವಿವೋ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ದಯದಿದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಪೃಥ್ವಿ ಓಕೆನಾ ಇಯರ್ನಾ So here is Altaf once again. Oh, that has been wide call by umpire. No doubt. What a presence of mind by Tausif. He wanted a cheeky single, but looking at the angle of the ball, that was drifting away from the out of the wide tag. So he allowed the ball to be gathered by the keeper to get that extra juicy run. Once again, what a single, risky one, but he has to take a risk because every ball, every single, if one dot ball is being produced, that will be a complete pressure on the batting side. So Altaf continues to Mukhtara. Once again going for the shoot. Oh, that might be an easy run out, but it has been waiting. Excellent running. Lots been happening from the leg by. Yes, there is a leg by from umpire. Getting on the pad, the shot. Third man fielder made a good backup, but a bad throw to the bad end. If it was towards the non-striker end, it was an easy run out because the non-striker batsman already, if he's a quick runner between the wickets, he already easily reached to the striker and popping crease. So scoreboard moves to now 23 on the board. Once again, cheeky singer. Oh, that has been missed this time. Risky one, I told in the previous ball. Once again coming to the middle of the pitch and wanted to steer towards the fine leg region, but this time no contact and a good bowling because it's been a leg spin. It has been a lot of deviations in this bowling by Altaf. He already bowled that very wide to that of the leg angle, but the ball deviated towards the leg stump wicket. That is what this bowler can do. He has a very big deviation in angle of his bowling. So scoreboard stuck at 23 on the board. 3 more to go in the over of Altaf. New man joining is Tansir for the side of challenge at their team. Here is Altaf to Tansir. Once again going for the sweep shot. This time awkward bouncing just in front of the bat. The batsman premeditatedly wanted the reverse sweep, but it was a good dot ball. Pressure straight away on the batsman. The new man, he has to set to according to this pitch. But that is a loose one. Humpty Dumpty once again alive. Just short to the flying fielder Vinod. He could have put a little bit of die to get that ball, but he made his mind to get the ball, and that was a single to the scoreboard. Now the scoreboard moves to once again a cheeky single leg by from Lampara. Scoreboard moves to now ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕರ್ವೇಲ್ ತಂಡದವರು 4 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡದವರು
5. ನಾಲ್ಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. If the match is tie according to the rules and regulations of this tournament. Okay, next match. Prithvi, toss small play. Okay, toss small play alpa. Least pakka korle. Fast. I call upon the captains of Sneha Malemar and DFC Derlagatte to immediately go to the Vivo Pendal for the toss. Immediately, please. Sneha Malemar and DFC Derlagatte for the next match of today's fixtures. Going for a big one. That is being missed. This is a pressure. Now 5 balls, 4 runs required. They have to get 4 runs because according to the organizers, if the match is tied, the victory will be decided on the loss of wickets. And the wickets are tied, then it will be on the toss. Already, just Chakravarti lost 4 wickets and Adyar lost 5 wickets. Now the pressure is been building. 5 balls, 4 runs. As I said in the morning, oh, what a delivery! And that has been bowled, yes! This is what a miracle in the leg spinner. Altaf all body, Mukhtar the man. Straight away pressure. I already said to my fellow mates and to the audience, a target of ball to ball. If it is a 5 overs match, a 30-32 is a defendable one. Why? Because I saw all the matches of yesterday's. Not a big target, not a 60, not 50. If it is a 6 over match, it will be 36-38, and that was defended neatly. So this is what pressure builds. Now it is 4 balls, 4 runs required. And the batsmen of Challenge India require 4 runs also to get the victory and enter into the finals. And the hardest thing is the bowler has to make a good ball. Malemar Tanda Nane Chumigan getkondiದೆ. Going for the big shot. That might be closing finish. And that is a miracle. No one expected. No one expected under this pressure. I thought 4 balls, 4 runs, it will be to the last ball. And the spectators even wanted to watch that last ball, 1 run. But this type of finish, no one expected. And hats off to the batsman under pressure with that leg spin, which was deviating very much with the angle. He took his time to the pace, to the stroke. He lofted towards the long on. What a way to enter into the finals of this tournament. And I once again appreciate to that batsman. Very rare scene. Yesterday in this tournament, in this ground, in 8 matches, we saw just 2 sixers in the bright sunshine. But in today's mist with the ball, wet ball under looking, the ball was not like a accurate ball. It was muddy, spongy, yes. And looking at that batsman, I think he saw like a football and just kicked like without goalkeeper and just to the goal. And that was excellent to once again explain. And once again, congratulations to Challenge India team for entering of this tournament, and bad luck for Chakravarti level, but they played very well in this tournament to enter into the semi-finals. Okay, and for today's match of today's fixtures, already 1 match completed. Second match, that is DFC Derlagatte and DFC Derlagatte and that is a challenge. Sorry, Sneha Malemar. Already Sneha Malemar won the toss. And today is no doubt most weighted as usual. 8 Mangalorean teams will fight for each other. It will be a big explosive matches.
And along with us, no doubt, two explosive commentators, well waited for Bantwal audiences. That is Mr. Satish Salyan in international language English and Mr. Gopi Mangalore in our national language Hindi. They will making the combination, a duo of these two will no doubt make entertainment of this tournament and to the spectators and make even every spectator to sit till the last ball of this tournament. I give a warm welcome from the side of JD Boys Bantwal team, Mr. Satish Shalyan and Mr. Gopi Mangalore. Thank you. Hello. Hello, mic testing. Hello, mic testing. 1, 2, 3. Hello, mic testing. Check. Check. Mic testing. Thank you. Hello. Hello. Mic testing. 1, 2, 3. Hello, mic testing. 1, 2, 3. Yes, thank you. So thank you very much, Prashant Bantwal, and thanks to Mr. Nagesh Bantwal, who really entertained for the semi-final of the Group A. And at last, what a great match. They finished with the style after hitting the boundary, after hitting a 6, in fact, by Nizam of Challenge Adyar, and they are entering into the finals of this most prestigious JD Boys Bantwal. So good morning, cricket lovers, and on behalf of organizer, I once again would like to welcome you, one of the most prestigious cricket tournament in the name of JD Boys Trophy 2021 in this most beautiful cricket ground. Meanwhile, man of the match of the previous match, semi-finals, I think it's not a difficult choice, because the man who really handled the pressure when it was 4 runs required from 4 balls, he just finished the match in his style, and it's none other than Nizam of Challenge Adyar. You are the man of the match, and you deserve that man of the match because of the way you finished the match for your team. I may request Mr. Nizam, come and collect your man of the match from our chief guest. So right now, what a fantastic cricket tournament. It was, I think, it was a total package. And by looking at the ground only, we can see that hard work of organizers. It's not an easy job to do. It's organizing cricket tournament for 2 days in 2 grounds. And it was a final day of cricket tournament. And everybody knows that it is one of the most excitement day of cricket as well. Because it is the tournament, the last day. And the ranking teams, high-ranking teams from South Kendra district clashing for the title of this most prestigious JD Boys 2021.
So after that successful day one, yesterday, the local teams clashed for the titles to coming into the finals, and at last it was the challenger Adyar, the managed to qualify for the finals of this most prestigious cricket tournament. And today it's going to be one more big day for cricket, and suddenly we are expecting some battle, the big battle for the title in the name of JD Boys Trophy 2021. Everything looks to be very fine here. And commentary box, as always, I would like to give many thanks to JD Boys Bantwal for inviting us for this most prestigious cricket tournament, and myself, Satish Salian Hanuman cricketers, and of course my friend and long-time partner in commentary box. I would like to invite him as well on behalf of cricket lovers, and myself, Mr. Gopi. Good morning to you as well. And of course, we are having Prashant Bantwal, one of the most fluent commentator in Hindi and English, and then Mr. Nagesh Bantwal, having him in commentary box in a state language, sweet language, Kannada. And straight away coming back to the commentary box, of course, in my right, the manual scorer, Mr. Iqbal Bantwal, done a fantastic job in the last yesterday as well. Today is also doing a fantastic job. It's one of the most difficult job to do as far as cricket is concerned. The scorer is going to be very key. And straight away coming to the umpiring panel, and today we are having three most popular umpire in South Kent district. Mr. leading from the front, most experienced Arish Padil, already signaled here, and along with him Mohan Iyadi, one more experienced umpire, and along with both one of the most talented umpire Shiniket will joining that umpiring panel. The first delivery of the day, number one, as the captain of the side, Jitesh, is bowled the first delivery down the leg stump, but after a little bit, the batsman not quite able to take advantage of the delivery, missed it completely, and there is no possibility of any run. Right arm over the wicket ball, Jitesh, batsman looking for the expansive drive, but not quite able to reach the pitch of the delivery. Little bit across the line, he wanted to swing that one, but ball is just passing the bat, and the wicketkeeper behind the stump, Pratap, fails to collect the ball, but at short third man, the fielder Ashpaka fields the ball, and there is no chance of any runs. Malamar, the one team which has got a prestigious, the big name as far as the decency is concerned, as far as the performance is concerned, they will always going to be in the top. As again, Jitesh bowls and batsman went for the reverse sweep, but not quite able to get the neat connection before the fielder from short cover to field the ball. The batsman got ample time to complete the single. So with that single, I think the DFC Derlakate, they started their journey as they lost the toss, asked by opposition to bat first. One without loss of any wicket. Across the line again, wanted to swing that one. Chance of run out there in the strikers end. Oh my goodness, can you believe this? It's an opportunity for Jitesh to hit the stump in the striker, non-strikers end. Very nearest for him to hit the stumps in the non-strikers end. But he was choosing strikers end. That will give the batsman to complete the single there. Sometime it was an absence of mind. Even though he's so experience, so much of experience what Jitesh has got. One of the fine all-rounder, I will tell you. And if you pick any all-rounder in the present cricket, Jitesh always finds in the top, and he was really fantastic all-rounder who represented Prince Bala, his home team, and still remember his innings, and again the dot ball. This innings where he's played for his team, that was a Friends Trophy organized by Janta Colony, Friends Janta Colony, the last 2 weeks back. Again down the leg stump, going to be a wide, and I think umpire taken his decision back because of the batsman looking for the reverse sweep. So whenever the batsman looking for the reverse sweep and the bowler has got a chance to bowl that one outside the leg stump, so that there is no wide at all. So Arish taken that decision back rightly. So first over completed, is quite over, bowled there by Jitesh. Just the 2 runs coming from that over, and they got a slow start. 2 on the board. The 7 overs match, please note the little bit changes in the format of the game. 7 overs match, there will be a 2 over of the power play.
And straight away coming back to this commentary box, I already talking about that manual score, Mr. Iqbal Bantwal, and we're having Bedra Media, and everybody knows that nowadays they're one of the popular media as far as covering the cricket is concerned. But one more good news is they're now started to covering even football as well. Last time I watched the Bedra Media covering the football as well. That means a good news here for cricket, not only for the cricket lovers, even for the lovers of football as well, to see some live telecast. And Bedra Media did a fantastic job. And at the same time, I want to announce some names actually. Of course, Irfan, he was the leader of Bedra Media, done a great job to start with, and now there becomes one of the popular the media who covering the live telecast of cricket matches. So coming back to Bedra Media afterwards, because the second over will going to start from the far end. I think Kiran will going to start proceedings from the far end. His first over, second over of the innings of DFC Delakate. Left arm, round the wicket, over the wicket he bowls, and that was a beautifully bowled. And left arm over the wicket in fact, and there will be no run at all for DFC Delakate. Kiran is one more experienced bowler for the side. Left arm over the wicket, balls across the line, swinging his bat, but fielder is there. Divin, I think so, is in the deep long on. Not Divin, I think it's Ranjit is there in the deep long on, takes the catch. The wicket number first of DFC Delakate is back into pavilion, and that was what we want to see in the morning session, just like what Prashant is mentioning about in his commentary. The dew factor always going to be very, very difficult for the batsman to get some big shots, because the ball is a little, after having a contact with the grasses of the ground. We can see that the greenery ground, one of the most beautiful cricket ground we can see in this Bantwala region, and that was a fantastic to see. It's a nice view of this ground, naturally covered. Of course, it was trees all around the ground, and almost we can see that greeneries, and that just looks like it was the international ground here in this Bantwala region. So good view of this cricket ground as well. So the first wicket is back into pavilion. Just coming back to this cricket tournament, that's the first time in the history of Bantwal they're operating in the both the side, the bowling, and that's going to be good to see that JD boys is trying a little bit changes and implement some innovative in this cricket ground as well. The two sides there will be a bowling operation, and that was the first time in the history of Bantwal that kind of particular in this ground they are implementing that innovation. As again batsman picked up a single by playing switch it, of course just helping the ball, helping that one to get the single down to backward point region. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board for the loss of 1 wicket. Sneha Malamar, they got some quality players in the side. DFC Delakate also, they got good players in the side, no doubt at all, because if they scored 35 to 40, it was a challenging total, just like Prashant and just like Nagesh is explaining. Just seeing the result of yesterday's match, 35 is a winning score in this cricket ground. 35 to 40, more than 35, always is going to be a bonus for depending team. And need to be very careful. They DFC Delakate need to sensibly, each and every ball they need to rotate the strike, and they will going to get that 35 plus runs on the board. But need to have some kind of hard work, because the Sneha Malamar, the kind of team which has got a very good unit of fielding, they got a very good unit of the bowling and as well as the batting. So Kiran again with a short run up, left arm over the wicket he bowls, try to play the reverse sweep. The Pratap, the wicket keeper behind this, doesn't know where the ball is. Even the batsman doesn't know where the ball is. He wanted to expect the single. The wicket keeper tried to searching for the ball, and batsman has got opportunity to come back. Otherwise, it's opportunity of 1 wicket as well. But no damage done. Score remains on 3 without loss, 3 for the loss of 1 wicket. Again Kiran with a short run up. Pass umpire Mohane Yadi bowls, and a little bit the movement of the feet. It's always going to be very difficult in underarm cricket, because you didn't got enough time to move your feet, because ball is coming all on the ground. So that even though that was a little bit outside the line of off-front, batsman trying for the off drive, missed the line completely and back to bowler. Kiran again with the short run up. Again he's trying for the reverse sweep. It's not a good cricket there from the batsman. Sambras, as playing dotted deliveries in limited overs. Each and every dot ball is going to be very, very expensive. As 2 overs completed, and DFC Delakate still they're searching for the right track and struggling in the middle as far as run rate is concerned. They have only 3 on the board, 1.5 runs per over in this power play, and power play which is dominated by Sneha Malamar. Coming back to
Bedra Media, we are talking about they were having Irfan leading from the front and our computerized scorer, very young, talented, the boy, 16 years boy, Mr. Irfan, doing a great job here in the computer as a computerized scorer. We have cameramans, Mr. Nihal, Mr. Ashan, Mr. Nishan, and of course in drone camera, very experienced, Sandeep from Asan. And the one who done a great job, of course, I watched him, he was having a drone camera, operating the drone camera in a UCG cricket ground. That was a 25th Silver Jubilee celebration from Reliance Cricketers. And that tournament has given a lot of potential for Bedra Media, popularity. 172,000 viewers watched that Reliance trophy. And thank you very much. Again, first delivery of the over number 3 as no change in bowling. Jitesh operated from the commentary box end and batsman straight away. The opening batsman Harris by playing the sweep shot picked up a single. Then scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket. Short backward point. There is short fine like there is a deep backward square like there is a short mid wicket. Deep long on deep mid wicket. Deep long off. Deep cover. Short mid off. Short cover. Again. Nicely played off the back foot. Batsman this time implementing a very good strategy there from Samraz. Just going back and seeing the turn of the delivery. It was a slight leg cutter and pushing the ball between short extra cover and the bowler picked up a single. Scoreboard moves on to 4. There's a back across the line swinging his bat but not a neat connection. Not coming that middle of the bat as he was playing a little bit across the line of the delivery. And that was what we're talking about. The condition of the ground is very little spongy. As the ball is after having a contact with the dews, which is the grass, we can see that greenery grass in the morning session. And after once it was a time progress, the 11 to 12, and when it was ground dried up, it's going to be not that much of difficult for the batsman to time the ball. Again, reverse sweeping and picked up a single. Both the batsmen implementing the right strategy, seeing the condition of the ball, seeing the condition of the pitch and ground. They knows that rotation of strike is more important than going for the big shots. Again. Is trying for the sweep shot and again after the ball having a contact with the body of the batsman as he was just survived from the run out. He's picked up a single. Then scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Jitesh was chosen as a man of the series and the Janta Colony Trophy 2021. And one more single is added. Total scoreboard moves on to 9 on the board. 9 after completion of over number 3. Now it's a run rate little bit increasing in this over and 3 runs per over run rate is progressing for the DFC Delakate. And 9 in the 3 overs. Of course, there are now 4 overs remaining. 24 possible deliveries remaining, excluding wides and no balls. Out of 24, if they are able to get another 25, it's always it's going to be a 30 plus runs on the board. 33, 34. But there's good scores to depend. But I don't think that much of good enough. To seeing the potential of batting potential of Sneha Malamar. They needed more than that, at least 40. The touching that 40 will going to be a good total to depend for DFC Delakate. And wait and see how the Delakate batsmen, of course the 2 batsmen are in the middle, Harris and Samraz, try to get some runs on the board. And after settle down in the middle, they can look for some improvisation of run rate. So far, I think Sneha Malar captain very, very pleased with the performance of the 3 bowlers. Jitesh leading from the front 2 overs, no maiden, and he conceded 4 runs. A little bit correction, he conceded 8 runs, and he didn't pick any wicket. Kiran is a successful bowler, he picked up 1 wicket, but now new bowler has been introduced. Ranjit is asked to bowl from the far, and one more very talented bowler, the young cricketer Ranjit. When he was started his career, I still remember in UCG cricket ground, and 2-3 years back, he's just learning the boy in Underarm cricket. Now I think he's a lot more mature. Whenever representing a big teams like Sneha Malamar, definitely we will going to learn more thing in bowling department. As Ranjit, right arm over the wicket bounce. This time a bad line to bowl, dripping down the leg stump. Batsman straight away lofted that one. But protection there in the deep in the mid wicket so that the batsman got ample time to complete a single then. With that single, scoreboard moves on to 10. 10 for the loss of 1 wicket. Partnership slowly building up here for DFC Delakate as again Ranjit from the right arm over the wicket. This time I think something is happening here. They're going for appealing for leg before wicket. Umpire says it's not out. But I think
Ball looks like ball hits the stumps and bails are not off. So that's something is a little bit lucky here for the batsman, as even though the pace bowler like Ranjit not able to remove the bails, and what about the slow bowlers like spinners? Can they display the bails there? And that was sometime is happening in underarm cricket, and luck is sometimes favoring the batsman, as Ranjit again bowling from the far end. Little bit disappointment, unlucky again across the line, dangerously played, misjudgment judgment by the fielder in the short mid wicket, so that batsman got ample time to complete that couple of runs. Maybe the ball is just changing the direction as the fielder Ashwath, I think so, as in the mid wicket region, not able to see the turn of deviation of that ball, and the batsman got a couple of runs here. DFC Delhi slowly they try to accelerate the run rate. The runs are coming very freely. Then scoreboard now moves on to 12 for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. Very good crowd out here in this most beautiful cricket ground. Yes, we is school ground here in Bantwal. The next match is going to be one more good match. The match of the day, I will tell you. Gori Young Boys takes on KFC Kodikal. And if I would like to announce the first call for Gori Young Boys and KFC Kodikal to come and sign the official chart as soon as possible. Ranjit bowls, and batsman quite nicely pushing that one right in the gap to pick the single then. And with that single, scoreboard moves on to 14 on the board. Harris and Samraz are the two batsmen, really consolidated very well after they took a little bit time to settle down. Once they settled down, then they started to get some runs for their team. The 4th over in progress, the 13 on the board as Ranjit again. Right arm over the wicket balls again. Batsman played that reverse sweep quite well to get the single then. With that single, scoreboard moves on to 14 on the board, and Samraz, his individual score now moves on to 5 after playing the 6 deliveries. I think Samraz is playing a right strategy along with Harris. Harris, one who batted very well, is batting on 7. Maybe it takes a little bit deliveries to settle down in the middle, but now he's rotating the strike very well. Ranjit so far not that much of effective as he bowls. This time went for the big shot, chance of cotton ball. What we are talking about, not effective. The last ball that in this over, he want to be a little bit effective by picking up a wickets here, as a wicket of Harris is now going to the pavilion, because Harris might be a little bit try to break the shackle, as they're not having that much of big strokes from his bat. Now he was just choosing the wrong delivery for that big shot. Pays the penalty for that. Across the line of the delivery, swinging his bat, and top edge is taken place, and easy catch there for Ranjit to finish it off. And wicket number 2 of DFC Delhi is back into pavilion at the score of 14. And the partnership is Compston and End. So 3 overs remaining. Is going to be very interesting 3 overs. How DFC Delhi will going to come out from the trouble, and wait and see what could be a strategy from the batsmen of DFC in the remaining 3 overs, 18 balls, and it's going to be very crucial for them. So before the next over will going to commence, it's time to ask Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. And welcome, Gopi, and good morning to you. And I think it's the second time in this season we are in Bantwal after their Sauharda Trophy, a wonderful cricket tournament played at Central Cricket Ground. Now it's the second time in this special ground. Last year we did that commentary, and this is a second opportunity for us. So welcome once again, Gopi, in our national language, Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो जो जैसा कि बिल्कुल सही तरीके से आपने फरमाया, दूसरी बार इस ऋतु में हम बंटवाल में यहाँ पर आंखों का हाल सुना रहे हैं। और इससे पहले चंद हफ्ते पहले सौहार्द ट्रॉफी जो कि सेंट्रल ग्राउंड बंटवाल में खेला गया था, वहाँ पर भी हमें आंखों का हाल सुनाने का मौका मिला था। और यहाँ पर ये श्रृंखला का दूसरा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ, और यहाँ पर गेंद को स्कूप किया था खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर। और हम शुक्रगुजार हैं कि जेडी बॉयज़ के संगठकों से कि उन्होंने हमें इस श्रृंखला का हिस्सा बनने का मौका यहाँ पर प्रदान किया। और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करती हुई, और मंगलूर के टॉप सीडेड टीमों का इस वक्त गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, और इस बीच अंपायर का इशारा 6 रनों का।
फुल टॉस गेंद और जो करना चाहिए था इस गेंद पर वो किया बल्लेबाज ने, और जितने रन मिलने चाहिए थे उतने रन मिले बल्लेबाज और टीम को, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 22 रनों पर। पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक डीएफसी देलकट्टे की पारी में लग चुका है। बेहतरीन गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को विकेट से हटते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट उछालना चाहा था, लेकिन न गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और निस्संदेह बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जेडी बॉयज जिन्होंने शानदार तरीके से यहाँ पर आयोजन किया है। बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर किया, स्टंप को कवर करते हुए गेंद को पॉइंट की दिशा में, और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था, रनों की रफ्तार को इस वक्त बढ़ाना होगा डीएफसी देलकट्टे के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें स्नेहा मल्लेमार के सामने एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो। और ये गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता दिविन द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। और निस्संदेह जैसा कि लाइव टेलीकास्ट लाइव कवरेज के बारे में अगर कहा जाए तो बेद्रा मीडिया श्रीमान इरफान जनाब इरफान इनके सारथ्य में इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट यहां पर करते हुए, और निस्संदेह ये श्रृंखला यहाँ पर एक बेहतरीन प्रगति करती हुई। सुबह का वक्त 10:15 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप का कहर इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ता नजर आता हुआ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी ऊंचा इस वक्त पिच के ऊपर ड्रोन कैमरा लहराता हुआ इस मैच का लाइव टेलीकास्ट जो शानदार तरीके से यहाँ पर जो कर रहे हैं बेद्रा मीडिया के सर्व सदस्य, और हम शुक्रगुजार हैं कि इतनी बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट वो यहाँ पर कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और छठे ओवर की पहले गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार चिप किया खूबसूरती के साथ स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और गेंद को इस वक्त लपक लिया गया है। बेहतरीन कैच है, वहां पर लॉन्ग ऑफ के फीडर लपकते हुए अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद पर अपनी नजरें उन्होंने गड़ाई रखी, और आखिरकार लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के दरमियान स्ट्रेट हिट एरिया पर इस कैच को उन्होंने लपका खूबसूरती के साथ, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है निजाम का। सीमा रेखा को क्लियर करना चाहते थे लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और हम देख रहे हैं कि मैदान पर ज्यादा रफ्तार के साथ हवा भी नहीं चल रही है, और इसकी बदौलत स्ट्रोक्स खुलकर बल्लेबाज नहीं खेल पा रहे हैं यहाँ पर। और जहाँ तक सवाल है पिच के बाहर जो 20 गज का दायरा है वहाँ पर जो घने घास है वहाँ पर कुछ हद तक नमी मौजूद है अभी भी, हालांकि धूप अपना कहर इस वक्त ढाता हुआ, लेकिन नमी जो मौजूद है वो उसकी वजह से गेंद इस वक्त तेज रफ्तार के साथ ट्रैवल यहां पर नहीं कर रही है, और बल्लेबाज को स्ट्रोक्स खेल तो जरूर है लेकिन ज्यादा रन उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त निकाल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, गेंद निकलती हुई 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और इससे पहले कि डीप बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। रंजीत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी, थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा चूंकि, और शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। डीएफसी देलकट्टे के बल्लेबाज इस वक्त करारे स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश करते हुए, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा स्नेहा मल्लेमार के गेंदबाज एक सतर्क लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार कुछ हद तक गेंद को स्टीयर करना चाहा था, और बल्लेबाज ने आखिरी मौके पर सोचा कि गेंद उनके बल्ले पर लग चुकी है, रन के लिए एक कदम आगे जरूर बढ़ा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंच रही है, गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं, अपने ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित एक बार फिर से उछाला लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर काफी पीछे, इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, बल्ले के बीचों बीच गेंद को ठीक तरह से लेने में असफल, लेकिन गेंद टिप्पा खाती हुई लॉन्ग ऑफ फील्डर के आगे, और इस बीच बल्लेबाज को जीवदान और 1 रन यहां पर प्राप्त होता हुआ, और गेंदबाज रंजीत एक बार फिर से तैयार।
धीमी गेंद परिवर्तन के तौर पर निकाला इस वक्त इनटू द गैप, एक्स्ट्रा कवर पर दूसरा रन लेना चाहते हैं, थोड़ी सी हिचकिचाहट, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित, बिल्कुल सही निर्णय अंतिम क्षण में दोनों बल्लेबाजों ने लिया। और इस बीच एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके। 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 6 ओवर्स कंप्लीटेड, 26 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और जहां तक सवाल है अगले मैच का, तो जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था, मैच ऑफ द डे गोरी यंग बॉयज और केएफसी कोडिकल का मुकाबला अगले मैच में होगा। और निस्संदेह मंगलोर की 2 टॉप सीडेड टीमें यहां पर भिड़ेंगे अगले मैच में। 27 रन 27 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स एंड नाउ जस्ट लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो बेहतरीन अंपायरिंग का पैनल यहां पर चुना गया है इस श्रृंखला के लिए। श्रीमान हरीश पडील, श्रीमान मोहन ययाड़ी और श्रीमान श्रीनिकेत, 3 बेहतरीन टॉप अंपायर्स इस श्रृंखला के लिए अपना कार्यभार यहां पर बाखूबी अदा करते हुए। किरण, इससे पहले उन्होंने हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी की थी। अब कमेंटेटर बॉक्स के एंड की ओर से गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद, ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस, गेंद को खेलना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंची मिड ऑन क्षेत्र पर और बल्ले के लीडिंग एज जिसे कहते हैं टॉप एज पर टकराने के बाद, और इससे पहले कि मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, जस्ट 5 बॉल्स नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। किरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद कही जाएगी, गेंद को ड्राइव करना चाहा था चूंकि एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और इससे पहले की गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 7 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस। और किरण एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी पिछले गेंद के मुकाबले, और गेंद को इस वक्त उछालना चाहा था क्योंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए किरण ने एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेला लेकिन बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा। कवर पॉइंट पर गेंद को फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा, और इससे पहले कि वो गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। बंटवाल के इतिहास में इस मैदान पर पहली बार दोनों छोर से गेंदबाजी की जा रही है इस श्रृंखला में, और निस्संदेह ये श्रृंखला यहां पर एक शानदार प्रगति करते हुए, ये गेंद उछाला स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, लॉग ऑफ पर, लेकिन वहां पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। तो बेहतरीन फील्डिंग वहां पर फील्डर, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर। अंतिम गेंद उनकी पारी का इस वक्त तैयार, किरण लेकर। द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। किरण ने इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, यह गेंद ड्राइव करना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। गेंद लगभग शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर आकर घास पर वहीं पर रुक गई, और इस बीच 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुका। इस 1 रन के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर डीएफसी देरलाकट्टे। दे फिनिश्ड विद 32 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द स्टिपुलेटेड 7 ओवर्स एंड नाउ दे सेट अ विक्ट्री टारगेट ऑफ 33 फॉर स्नेहा मालेमार। और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, ऐसा कहना पड़ेगा 4.5 रन से भी कुछ ऊपर गेंद रन उन्हें बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट just over 4.5 runs per over. They have to score for victory in the stipulated 7 overs. 33 the target in 7 overs for Sneha Malabar set by DFC Delicate. Meantime, I request the next match, all the players of next match, Gori Young Boys and KFC Kodikal will takes over in the next encounter, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. अगले मैच के लिए गोरी यंग बॉयज और केएफसी कोडिकल के सर्व सदस्यों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि कृपया संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर, ऑफिशियल पन्ने पर अपना हस्ताक्षर साइन यहां पर दर्ज करें। और जहां तक का सवाल है इस मैच का, तो 33 रनों का लक्ष्य स्नेहा मालेमार के सामने इस वक्त रखा है डीएफसी देरलाकट्टे में,
डीएफसी देलकट्टे ने और 33 रन उन्हें बनाने हैं निर्धारित 7 ओवर में। उनकी पारी चंद लम्हों बाद इस मैदान पर शुरू होगी और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब स्नेहा मलेमार की पारी यहाँ पर शुरू होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So I request once again two teams, captain, please send your players for this sign in your official chart. Adimeshwar, young Gori Young Boys as well as KFC Kodikal. Two teams players, please sign the official chart as soon as possible. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ಲೀಸ್. So thank you very much. As the target is definitely going to be very interesting, as a 33 at last, DFC Delakata the managed to get in that stipulated 5 overs, and it's definitely going to be a very good total to depend if they bowls well and fields well. They can give some kind of restriction for the batsmen of Sneha Malamar. Wait and see how Sneha Malamar will going to get that 33 runs in the stipulated 7 overs and 42 balls and 33 runs. It looks to be that was a 4.5, just over 4.5 runs per over is the required run rate. And sometimes the condition of the pitch, condition of the ball is definitely going to be a big total in 7 overs. Wait and see, as the two opening batsmen are already made their way to the middle of the pitch, as Jitesh and Yatin, two very talented cricketers for the side of Sneha Malamar. Of course, Jitesh, one who takes his team into the victory when he was representing his home team, Friends Bala. We are talking about that Friends Colony Trophy 2021, and he was judged as a man of the series for his wonderful all-round performance throughout the tournament, consistent performance, one of his features of his success in this last 2 years, and he has become one of the most popular cricketer and the most complete cricketer as far as our all-rounder is concerned. So wait and see how Jitesh will going to continue his form, his best form in this season for his team along with Yatin. So from the far end, it's going to be Ashik is one who going to start the proceedings for DFC Delakate. For the DFC Delakate, I think is Sambraz, who's got 19 valuable runs out of 17 balls, and because of his good innings, DFC Delakate now they can feel that if they bowl well, field well, they can give some kind of restriction for Sneha Malamar. As the first ball, Ashik. Right, about the wicket bowls Jitesh. Jitesh this time trying for the reverse hip, just and getting away from the strokes by seeing the line of the ball, misjudging that might be a wide ball, but it's well within the reach of the batsman. So very good delivery to start with Ashik, the dotted delivery. Ashik again with the short run off, bowling from the far end. Alright, over the wicket bounce. Jitesh again misjudging the ball. Beautifully bowled there by Ashik. And again Jitesh a little bit not able to move his feet, and it might be has got 2 minds whether go for the off drive or not. Again it was a misjudgment and 2 dotted deliveries. Ashik again. Alright, over the wicket bounce. This time definitely it's going to be a wide. And this is one department where the FC Delicate have to work hard, because you're not depending a big total, you're depending only 33. And if anyone depending 33, you need to restrict that extra runs. Wides and no balls always going to be a one, which is the team will going to suffer if you concede lot of extras. Again, Ashik bowls and Jitesh is looking for the single opportunity of run out. Ashik trying his level best to make that run out, as it's not an easy job to do any bowler on his follow to pick the ball in his wrong hand. You will need to throw the ball in a difficult direction for the bowlers to hit the stumps in non-striker's hand, but he's trying his level best athletic work, but not quite enough to make the result for the in the favor of fielding team. Ball misses the stumps. Jitesh survived from the run out. He got his first runs, and Sneha Malamar got their second run. 2 without loss of any wicket. Ashik, so far so good.
All right, above the wicket bounce to Yatin. Yatin this time tried to play the sweep shot, almost dragging the ball by closing the face of the bat, bending his front foot towards the line of the delivery. But I already mentioned this is not a good, easy pitch to bat on. That the condition of the ball is certainly is going to be difficult for any batsman, stroke-making batsman, finding little bit difficult to getting timing behind the strokes. And this time Yatin so nice behind the line of the ball and with the full face of the bat off the back foot, he gets that single towards the deep extra cover region. He's off the mark with the single, and total score moves up to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. 33 is the total score to chase down 34 as Ashik again with the run up, right arm over the wicket bounce. This time again missed timing the ball, opportunity of run out. Oh my goodness, once again the opportunity here missed out by Ashik, but what a great work, I will tell you. This man, I am really impressed with his fielding. Of course the ball is misses a stump, but the way he throws the ball, the back and throw, of course after he lost his balance, he was almost fell into the ground, but he's able to release the ball from his hands, but ball just missing the stump, and 4 runs coming from that first over. And after completion of first over, that's just I wanted to look at that replay here. Look at that one. Batsman trying for the off drive, mistiming it, and look at Ashik there. Collects the ball and releasing the ball, just like what we're watching in the international cricket. Just that kind of commitment from the bowlers to get the result. That will definitely go into lift the spirit of the players, the fielders as well. And thank you very much, Bedra Media, for that. Was fantastic replay. So meanwhile, I once again request Gori Young Boys as well as KFC Kodikal. Your some players are not signed yet. So I request Gori Young Boys and KFC Kodikal, before finishing of this match, before the finish of this match, you should complete your formalities of signature. At the same time, you should complete this tossing ceremony as well. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ KFC Kodikal ತಂಡದ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಸಹಿ ಹಾಗೂ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. The first over, it was a hard fought 4 runs for Sneha Malamar, and they have to get another 30 runs to win this match and make 36 deliveries. Full toss delivery again. Jitesh today looks like he's a little bit confusion as he was choosing the ball for the strokes. He is once again misjudging, saying the ball is of the full toss outside the line of off stump. He thought it might be a wide, but it was the fair delivery, well within the reach of the batsman. And again bowler Nizam bowls a big wide. That was what I already mentioned. This is the one which is a gifted runs, which is going to release the pressure from the batsman. Whenever the batsman is under pressure, when you bowl the wide deliveries, and that will give some kind of confidence back in favor of batsman. That's what the Nizam has to control, that wide deliveries. One more single. Score is 5 on the board. This time bowler's back drive, opportunity of caught and ball, opportunity of run out as well. This time they got a result. This is what you see about the commitment from the bowler. Of course, it's a hard chance for the bowler to take the cotton ball because powerfully driven there by Jitesh. At the same time, after the off top by the bowler, Yatin thought it might be a chance of single run. Jitesh thought it might be a single run. Yatin knows that it's going to be a suicider, but he has to respond for his partner's call. But it was too late for him to complete the single because the bowler Nizam did a fantastic job on his follow through, fields the ball, collects the ball. Of course, he dropped the catch, but he's recovered very quickly from that, and then he completes that run out, and they got a result here. That was what the DFC Calcutta need to implement, the kind of bowling and kind of fielding if they wanted to win the match against the big team like the Sneha Malamar. The new batsman just came into the middle here is one more master class, is a little master of Sneha Malamar, Pratap. He's in non-striker's end. The condition is not that much of good for the batsman, any batsmen. That's why the DFC Calcutta need to capitalize that condition of that pitch and the ball. Need to have some kind of closing fielder who will implement 100% in the fielding so that they can stop the singles. Once you stop the singles, then all in sudden the batsman started to feel the pressure. Nizam with a short run up, right arm around the wicket to Pratap. Pratap pushing the ball just in front of mid-off fielder and picked up a single then. Sensible batting there from Pratap. Soft end comes into play. If any youngsters watching this cricket there from Pratap, look at that, how he played that one. Just allow the ball coming into his bat and not hitting it hard. Just soft end comes into play. So can realize that ball is never going to very quickly to that mid-off fielder, a short cover point fielder. And they got opportunity to pick the single. Scoreboard moves on to 6
for the loss of 1 wicket. Here is the next one. He says, oh, again, look at that one. Absolutely fantastic, I will tell you. The good running between the wicket, but at the same time, I really loves that Nizam's reaction. He knows that he couldn't able to catch the ball and he can stop the ball. So he's just putting his right leg into the line and stopping the speed of the, look at that one. Absolutely terrific. An opportunity run out is created after that good effort from the bowler on his follow through. And the batsman very quick between the wicket. That's why they got a single here. Nizam again. Round the wicket he bowls. Misjudgment there from Pratap. Good line to ball. When you are operating from the round the wicket, always the batsman a little bit facing difficulty when you bowl that line outside the line of off time. Batsman might be thinking about that might be a wide, but it is a well within the reach of the batsman. Good strategy from Nizam in this over. And the score remains on 7 on the board for the loss of 2 wicket. Oh, looking for the reverse ape. I will tell you it was dangerous. It'll be a chance of run out there. If it is a direct hit, I think it's all over for the batsman. Again, it's opportunity of run out. I think in the 2 overs, 2 to 3 opportunities of run out is missed out by the Delagate for hitting the wicket directly. And after completion of over number 2, then chasing 33 to 34 to win this match. And Sneha Malamar are 8 on the board for the loss of 1 wicket. Run rate required is 4.5 runs per over, just above 4.5 runs per over. Now it's 8 runs. If you deduct 8 from 34, it's 26 runs required. 33 target lead precaution. Lead precaution 33 is the target. That means they have to get another 25 runs in remaining 30 balls. So match is evenly poised. It's going to be anybody's game. But having 9 wickets in hand, Sneha Malamar, they got formidable batting department. And with that batting department, it looks like not that much of tough. But they need to create that toughness by the bowling and fielding. Of course, the fielding is really good in last 2 overs. Especially the 2 opening bowlers did a great job as Ashik and Nizam. And that's why the captain wanted to continue with these 2 opening bowlers, as Ashik continuing from the far end. It's so good in his first over. Just 3 runs conceded in his first over, 4 runs. And wait and see how he is going to manage to restrict in his second and last over of his quota. Just coming back to the field, there was a wicketkeeper standing up to the short fine leg, square leg, short mid wicket. There is a fieldsman that deep long on, that deep backward square leg, little bit squarer, almost in the middle of mid wicket and deep backward square leg. One at short gully, one at short cover point, almost very close to the batsman to stop the single. One at deep wideish long off. Here is Ashik, right above the wicket bounce. That's improvising, but couldn't manage to get past that infield as Pratap picked up a single. Then one of his favorite shot to playing that reverse sweep, and he picked up a single. His individual scoreboard moves on to 3. Then a total score of Sneha Malamar moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. Slowly the spectators started to gather here in this most beautiful cricket ground. Right of our commentary box, some spectators enjoying this game of cricket here. Again, Jitesh is a play that one right in the gap. He wanted a double there, and oh, that was a mix-up opportunity of run out and missed out there. A couple of runs, little hesitation for the second, and once Jitesh is looking for the second, then Pratap is not interested. When Pratap is interested, Jitesh is not interested. But luckily that throw is not coming to the hands of wicketkeeper. The wide throw got opportunity for batsman to come back for the second. So with that couple of runs, scoreboard moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket as Ashik again from the far end. Right above the wicket bounce, Jitesh drives that again, mistiming the ball, not quite intended. As I've already mentioned, ball is not really coming to the bat. Jitesh trying for his favorite extra cover drive, but as his ball is not coming to the bat, mistimes it, but he picked up a single anyhow, down to deep long on, and scoreboard moves on to 12 on the board. 12 for the loss of 1 wicket. Again, that was a delicate and sensible batting there from Pratap. He's so good in it. One can say that he was a master of rotating the strike as he is allowing the ball to coming into his bat. So cool and calm customer, pushing the ball right in the gap and picking up the single. Then scoreboard was on to 13. Both the batsmen knows that no need to panic at all. Just rotation of strike is quite enough for them to chase that total of 33 to win the match. Again, straight to the hands of short mid on. Again, Jitesh a little bit struggling. I already mentioned the stroke making the batsman not much easy in the morning session when the ball is a little bit wet after having a contact with the grass, it was the dew of the grass, and the ball looks to be a little bit spongy.
Again, looks like the bowler Ashik is lost his rhythm as he was going back to his bowling mark, and score 13 on the board for the loss of Again, wide call by umpire. One more extra scoreboard moves on to 14 now with the help of one extra. Ashik bowling from the far end. Right arm over the wicket, bowled to Jitesh. Jitesh, there is a huge gap, I will tell you. But beautifully played there by Jitesh. He knows that there is a huge gap. There is a fielder there in the cover point. There is no fielder in the mid-off. So whenever the ball pitching outside the line of off-stump, it's so much of time for the batsman to go back and push the ball right in the gap to pick the single. Then one more addition to total scoreboard moves on to 15 on the board for the loss of 1 wicket. Now 4 overs remaining, Gopi. 24 deliveries remaining, and out of 24, they have to get another 18 runs to win this match. And looks like its game is almost controlled by Sneha Malamar because they got 9 wickets. And what do you think, if it is any chance for DFC Delakate to bounce back, what kind of strategy to be implemented? Do you think that the 1 wicket of these 2 batsmen quickly required here for Delakate to bounce back here? डेफिनेटली सतीश, दे गॉट अ चांस टू बाउंस बैक। देरला कट्टे, अगर जहाँ तक सवाल है, इससे साझेदारी को जितने जल्द वो तोड़ेंगे उतना वो इस मैच में वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये साझेदारी धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रताप और गीतेश के बीच में, और निस्संदेह ये साझेदारी देरला कट्टे के लिए खतरा यहाँ पर पैदा कर रही है। 18 रन बनाने हैं बचे हुए 24 गेंदों पर। ठीक है, 4.50 रन प्रति ओवर के औसत से रन से रिकॉर्ड रन रेट कुछ ज़्यादा कठिन नहीं, लेकिन मैं कहूँगा मौका ज़रूर है डीएफसी के गेंदबाजों को इस वक्त बाउंस बैक करने का। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद ओवर पिच गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ खेला था कवर पॉइंट पर, शॉर्ट कवर पर कहना पड़ेगा, और वहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। डॉट गेंदों की सख्त ज़रूरत इस वक्त डीएफसी देरला कट्टे को इस मैच में वापस आने के लिए, और गेंदबाज निज़ाम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज गीतेश के लिए ड्राइव किया इस वक्त स्लिम डाउन पर मिसफील्ड, और इस बीच इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने 1 रन प्राप्त कर लिए। इस वक्त काफ़ी सतर्क फील्डिंग की ज़रूरत है, और जितने ज़्यादा डॉट गेंदें फेंकेंगे डीएफसी देरला कट्टे के गेंदबाज, उतना ज़्यादा दबाव प्रेशर बढ़ेगा इसने मार के बल्लेबाजों के ऊपर। तो इस वक्त डॉट गेंदों की सख्त तलाश में डीएफसी देरला कट्टे गेंदबाज है, और ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई शॉट फाइन लेग पर निशाना लग चुका है, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास, भुगतान इस वक्त करना पड़ा। नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज गीतेश जब तक स्ट्राइक रेट पर पहुंचे, शॉट थर्ड मैन फील्डर का फेंका गया हुआ सीधा थ्रो मिडिल स्टंप को बिखेर कर ले जाता हुआ, और गीतेश यहां पर आउट होकर पेविलियन वापिस, और ये विकेट बेशकीमती विकेट कहना पड़ेगा गीतेश का यहाँ पर गिर चुका है। कुल मिलाकर गीतेश ने बनाए 7 रन। हालांकि पारी की शुरुआत से वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, गेंद को ठीक तरह से स्ट्रोक्स को खेलने में काफ़ी हद तक दिक्कतों का सामना वो कर रहे थे, और आखिरकार यहाँ पर उनका विकेट गिरा दुर्भाग्यवशात रनआउट के रूप में। और कुल मिलाकर जहाँ तक उनके रनों का सवाल है तो 7 रन उन्होंने बनाए और 11 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और आखिरकार रनआउट के रूप में पेविलियन वापस लौट चुके हैं। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 16 रनों पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, और यहाँ पर विकेट गिर चुका है गीतेश का। और मैं समझता हूँ यही एक सही मौका है इस वक्त डीएफसी गेंदबाजों को यहाँ पर शिकंजा कसने का। इस मौके पर वो चंद और डॉट गेंदें फेंकते, चंद और विकेट कम अंतराल में उखाड़ते तो निस्संदेह मैच पे वापस आ सकते हैं। लेग स्टंप बाहर, स्टंप्स को कवर करके ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, थोड़ी सी सफल होते हुए अशफक नए बल्लेबाज के रूप में, एक और अनुभवी बल्लेबाज स्नेहा मालेमार की ओर से, और इस बीच 1 रन दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ चुराते हुए बाई के रूप में। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर निस्संदेह एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया के जरिए श्रीमान इरफान इनके सारथ्य में यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट की जा रही है, और बेहतरीन टेक्निकल सिस्टम और निस्संदेह एक सुंदर सा नज़ारा इस मैदान का हमें यहाँ पर इस कमेंटेटर बॉक्स से दिखाई देता हुआ। और इस बीच पहले टिप्पे के बाद गेंद को इस वक्त फील्ड किया था, ओवर थ्रो, कोई बैकअप नहीं, और दूसरा रन बल्लेबाज इस बीच पूर्ण कर चुके हैं। पहले टिप्पे के बाद गेंद को कलेक्ट किया, और विकेटों पर निशाना धागा था नॉन स्ट्राइक रेट पर, लेकिन उनका निशाना चुका, कोई बैकअप नहीं, और इस बीच इस ओवर थ्रो का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहाँ पर
चुरा लिए और स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगला मैच एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं, हाई वोल्टेज मैच गोरी यंग बॉयज और केएफसी कोडिकल के बीच में खेला जाएगा। मंगलोर की दो नामी टीमें यहाँ पर भिड़ेंगी अगले मैच में और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि दर्शकों की संख्या में भी काफ़ी हद तक बढ़ोतरी वृद्धि होगी जब अगला मैच यहाँ पर शुरू होगा। और इस वक्त समय के साथ साथ दर्शकों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई। हल्के से स्ट्रोक को चेक कर लिया था, गेंद हवा में और जैसा ही प्रताप ने स्टंप्स को थोड़े से उन्होंने कवर किया था, गेंद को खेलना चाहा था और जैसा ही उन्होंने देखा कि गेंद बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ उनके बल्ले पर आ रही है, अपने स्ट्रोक्स को रोक लिया, हल्के से गेंद को चिप कर दिया हवे में गेंदबाज की बाईं ओर से मिड ऑफ पर और एक रन आखिरकार पूर्ण कर चुके हैं। 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। और लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 13 रन और चाहिए बचे हुए 3 ओवर में। 13 रिक्वायर्ड इन रिमाइनिंग 3 overs with average of exactly 4.33 runs per over. Still they got 8 wickets kept intact, 8 wickets they got in their hand. और इस अभी भी लक्ष्य आसान स्नेहा मालेमार के लिए, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, डीएफसी देलकट्टे के लिए बाउंस बैक करने का मौका जरूर है और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है मेरे ख्याल से दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सुबह का वक्त 10:40 यहाँ पर बच चुके हैं और इस बढ़ते हुए धूप के कहर के साथ समय भी यहाँ पर बढ़ता हुआ और निस्संदेह इस बढ़ते हुए धूप की तीव्रता के साथ संघर्ष की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में। बी पूल का पहला मैच मंगलूर और आसपास के 8 टॉप सीडेड टीमें यहाँ पर भिड़ रही हैं इस पूल बी में और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है जेडी बॉयज बंटवाल ने। 20 प्रतिष्ठित टीमें इस श्रृंखला में हिस्सा ले रही हैं और यहाँ पर मुकाबला जारी है स्नेहा मालेमार और डीएफसी देलकट्टे के बीच में। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर पीछे मौजूद, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि शॉर्ट स्क्वायर लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। प्रताप और अशफक क्रीज पर अपने कदमों को जमाने की कोशिश यहां पर करते हुए वो जानते हैं कोई जल्दबाजी की यहां पर जरूरत नहीं है, अगर हर गेंद पर कम से कम सिंगल्स भी बटोरते हैं तो निस्संदेह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और यहां पर गेंदबाज तैयार था, तो ओवर द विकेट अलॉन्ग द कार्पेट, जमीन के सहारे गेंद को स्टीयर करना चाहा, अपील जरूर, लेकिन द बॉल इज सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड। सही निर्णय अंपायर द्वारा और 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में और लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर। प्रदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, प्रताप स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े, अपील नकार दी अंपायर ने सही तरीके से। एक बार फिर से लेग बाय रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। रन इस वक्त हर गेंद पर बनते हुए और स्नेहा मालेमार को इस वक्त रन से चाहिए, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज रन्स जोड़ने का हर तरीके का प्रयास, हर तरीके की कोशिश यहां पर करते हुए। अशफक इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। प्रदीप हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अशफक इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप करना चाहा, बेहतर गेंद थी, आखिरी मौके पर थोड़े से सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर खेलना मोड़ना चाहता, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर थोड़ी सी उछाल लेती हुई आखिरी मौके पर और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और इसी तरीके की चंद और डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त डीएफसी देलकट्टे के गेंदबाजों को इस मैच में वापस आने के लिए। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। हमसे दूर वाले छोर पर 3 रंग के झंडे इस वक्त गाड़े गए हैं और निस्संदेह ये झंडे इस मैदान की शोभा को और यहां पर बढ़ाते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ना चाहा, इस बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है। अशफक गेंद को मोड़ना चाहते थे, ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए और गेंद को बिना देखे उन्होंने रन चुराने की हड़बड़ाहट दिखाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज द्वारा और आखिरकार यह अशफक का विकेट यहां पर गिर चुका है। तो यह विकेट यहां पर गिर चुका है अशफक का और डीजे की मधुर धुन
हमारे कानों को इस वक्त ठंडक यहाँ पर पहुँचाते हुए, और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जिसका शानदार तरीके से आयोजन कर चुके हैं जेडी बॉयज बंटवाल और दक्षिण कन्नड़ा के 20 प्रतिष्ठित टीमों के बीच का मुकाबला यहाँ पर जारी है, और निस्संदेह ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। तो गेंदबाज इस वक्त तैयार, प्रदीप गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट, टॉप एज, मौका, और इसी के साथ एक और विकेट। रिवर्स शॉट किया था, खेला था, और खाली क्षेत्र ढूंढने में असफल, गेंद को जमीन पर रखने में भी असफल, और दिविन जो कि प्रमुख बल्लेबाज जाने जाते हैं, गोल्डन टक के रूप में पहली गेंद पर उनका विकेट यहां पर गिर चुका है, और निस्संदेह यहां पर यह विकेट काफी महंगा स्नेह मालेमार को साबित हो सकता है। तो मेरी दरख्वास्त है अगले टीम के बचे हुए सदस्यों से, गोरी यंग बॉयज और केएफसी कोडिकल के सदस्यों से, कि आखिर 5 मिनट का वक्त उन्हें दिया जाता है, और इन 5 मिनटों में बचे हुए खिलाड़ियों का हस्ताक्षर करना यहाँ पर दोनों टीमों के लिए जरूरी है। द लास्ट 5 मिनट्स गिवन टू द रिमेनिंग प्लेयर्स of Gori Young Boys and KFC Kodikal to please report to the stage and make a sign in the official chart. तो यहाँ पर आइए सतीश, आपको बुलाते हैं। तो 2 विकेट गिरे आखिर के 2 गेंदों पर, और खासकर मैं समझता हूँ दिविन का विकेट पहली गेंद पर गिरा, और निस्संदेह ये स्नेहा मलेमार के लिए एक ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो सकता है। Exactly, Gopi. The cricket is all about that was a funny game, isn't it? Sometime little bit negligence of chasing the total is definitely they have to pay the penalty for that. And the Divin's wicket is definitely going to be a big blow for Sneha Malemar, because this is the right time for DFC Delakate to tighten up the screws. Once the new batsman coming to the middle, this is not an easy pitch to bat on, Gopi. And once the bowler bowls a good line and length, and all the opportunity for the DFC Delakate to bounce back to this match. And wait and see how well DFC Delakate will go into bounce back, and wait and see how well this young, of course, Pratap and then Ranjit, the 2 batsmen are in the middle, how well they manage to handle the pressure. बिल्कुल, हालांकि दिविन का विकेट इस वक्त गिर चुका है, और जैसा कि बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, गेंद आज सुबह से हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज काफ़ी हद तक दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, गेंद उनके बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ पर गेंदबाज कुछ हद तक अपना प्राबल्य स्थापित कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बेहतरीन साझेदारी की इस वक्त ज़रूरत है स्नेहा मलेमार को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। जहाँ तक DFC देरलाकट्टे का सवाल है, इस वक्त पिछले ओवर में 2 विकेटें गिर चुके हैं, और इसी सफलता के सिलसिले को इस ओवर में भी एक कसी गेंदबाजी के जरिए बरकरार रखना है DFC देरलाकट्टे के गेंदबाजों को, अगर उन्हें इस मैच में अपना शिकंजा कसना है। तो दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज की ओर की अगली गेंद प्रताप के लिए, लेग स्टंप से बाहर, गेंद को हल्के से स्टीयर कर दिया, खूबसूरती के साथ ग्लांस कर दिया कहना पड़ेगा, खूबसूरती के साथ शॉर्ट लेग पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 25 रन बन चुके हैं, और कुल मिलाकर गेंदें बाकी हैं अब 10 रन बनाने हैं, 8 runs to score in remaining 10 balls। धीरे धीरे DFC देरलाकट्टे इस मैच में वापस आता हुआ, और निस्संदेह का साझेदारी की इस वक्त सख्त जरूरत स्नेहा मलेमार को अपने मंजिल की ओर अग्रसर होने के लिए। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला, इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिलेगा। प्रताप दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ गेंद को फील्ड करने के बाद लॉन्ग ऑफ फील्डर ने गेंद को थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में, ये देखते हुए कि प्रताप दूसरे रन के लिए कोशिश कर रहे हैं, और एन मौके पर प्रताप अपने कदमों को क्रीज पर खींचने में सफल, और गेंदबाज नौशाद एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। 7 रन चाहिए 9 गेंदों पर, 7 to get from 9 balls, और नौशाद दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद रंजीत के लिए, गेंदबाज को विचलित करने का प्रयास पहले कुछ हद तक सफल हो चुके थे, लेकिन आखिरी मौके पर देखा कि ऑफ स्टंप से कुछ हद तक बाहर की ओर गेंद आ रही है, हल्के से गेंद को पुश कर दिया, और सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए 1 रन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज चुरा चुके हैं, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर। 6 रन चाहिए 8 गेंदों पर। मैच में कशिश अभी भी बरकरार, और निस्संदेह एक कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। इस बढ़ते हुए समय के साथ साथ दर्शकों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई, और ये बात ये दर्शाता है कि मंगलोर और आसपास के इलाके में अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता यहाँ पर रखता है। ये गेंद अच्छी गेंद, आखिरी मौके पर ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, और मैं समझता हूँ मौका जरूर था स्टंपिंग का, लेकिन आखिरी मौके पर इस मौके को विकेट कीपर गंवा चुके हैं। लगभग अगर वो गेंद को कलेक्ट भी कर लेते तो बिजली की रफ्तार में उन्हें विकेट उड़ाने होते हैं, लेकिन आखिरकार गेंद को कलेक्ट करने के
हड़बड़ाहट में गेंद उनके हाथों से छिटकी और बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस लौट चुके हैं। स्कोर रुक चुका है 27 रनों पर। 4 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं और 7 गेंदें बाकी है और रन चाहिए 6। और नौशद एक बार फिर से तैयार, एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए दाहिना राउंड द विकेट। ये गेंद इलेक्शन पर आते हुए गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहा, शॉट फाइनल फील्डर चूक चुके हैं। दूसरा रन मिल सकता है और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और ये सिर्फ हम यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। लेग बाई का इशारा अंपायर का और निस्संदेह ऐसे रन आखिरकार डीएफसी देरलाकट्टे को इस मैच के अंतिम क्षणों में काफी महंगे पड़ सकते हैं। तो 2 रन यहाँ पर मिले और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 6 ओवर्स हैड बीन बॉल्ड। तो अंतिम ओवर बाकी, 4 रन चाहिए विजय के लिए और तख्ता जरूर भारी लग रहा है इसने हमारे मार का, लेकिन इस वक्त बाउंस बैक करने का मौका जरूर है डीएफसी देरलाकट्टे के गेंदबाज के लिए। मैच निर्धारित ओवर इस वक्त लेकर तैयार हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी संभालते हुए और फील्डर धीरे धीरे मैदान पर इस वक्त छाते हुए। इस मैदान के इतिहास में पहली बार दोनों छोर से गेंदबाजी की जा रही है इस श्रृंखला में। निस्संदेह जैसा कि हम पहले भी फरमा चुके, एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है जेडी बॉयज बंटवाल ने और निस्संदेह बेहतरीन लाइव कवरेज बेद्रा मीडिया द्वारा श्रीमान इरफान इनके सारथी में न सिर्फ क्रिकेट का लाइव कवरेज बल्कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने बताया कि वो फुटबॉल का भी लाइव कवरेज दे चुके हैं। तो निस्संदेह हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि इस पथ पर भविष्य में उनका भविष्य यहाँ पर उज्जवल हो। इस पथ पर बेद्रा मीडिया और सर्व सदस्यों को हम यहाँ पर अभिवादन करते हैं। तो जहाँ तक सवाल है अंतिम ओवर का खेल का, और अंतिम ओवर में बनाने रन 4 टू गेट फ्रॉम 6 बॉल्स। और प्रताप पहली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, बेहतरीन कलेक्शन और बेहतरीन अटेम्प्ट इस वक्त थ्रो को रिसीव करने का, गेंद को रोकने में सफल, कोई ओवर थ्रो नहीं। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 3 टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स। डॉट बॉल्स बैडली रिक्वायर्ड फॉर डीएफसी देरलाकट्टे टू गेट बैक इनटू दिस मैच। और इस वक्त स्ट्राइक रंजीत के पास 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाज प्रदीप अपना दूसरा ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। लगभग 6 फील्डर बीसीएस के दायरे के अंदर तैनात सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हल्के से गेंद पर अपना बल्ला उड़ाया, सफल हो चुके थे। देखा कि आखिरी मौके पर गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है। वो तुरंत जान गए कि गेंद पर सिर्फ बल्ला अड़ाया तो काफी होगा उनके लिए और बल्ला उड़ाते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು request the captains of Gori Young Boys and KFC Kodigal to please report to the stage immediately for toss in front of the stage। और जहाँ तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, तो 4 गेंदें बाकी, 2 रन चाहिए। डॉट गेंदों की सख्त दरकार डीएफसी देरलाकट्टे को इस मैच में वापस आने के लिए। दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त खूबसूरती के साथ निकाला है थर्ड मैन पर रिवर्स शॉट के जरिए और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और ये स्ट्रोक जो लगा प्रताप के बल्ले से और इस स्ट्रोक के साथ प्रताप अपना काम अपनी टीम के लिए तमाम कर चुके हैं इस मैच में। 6 wickets, comprehensive victory for Sneha Malemar with just 3 balls to spare in their innings against DFC Derlagatte, and with that victory they are qualified for the next round of this competition. Agla match, high voltage match, one more good match is now coming up. Gori Young Boys will takes over KFC Kodigal और वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद तो इस मैच में केएफसी कोडिकल ने टॉस जीता है और देखना यह है कि वो क्या निर्धार यहां पर लेते हैं और वो मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब आज के दूसरे मैच की शुरुआत होगी यहां पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।
So now time for announce the man of the match of the previous match. DFC Delegate versus Sneha Malamar. The man who takes his team towards a victory becomes unbeaten. And that is none other than Pratap of Sneha Malamar, who judged as a man of the match for his excellent 15 runs in just 13 balls. May I request Mr. Pratap of Sneha Malamar to come and collect your man of the match from our chief guest, from our main stage. ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಪ್ರತಾಪ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಜಯದ ಗುರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಾಪ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Thank you, Gopi. Welcome back to the high voltage match of the day, final day of this wonderful cricket tournament, JD Boys Trophy 2021. All set now for the big match. After winning the toss, the captain of KFC Kodikal, they elected to field first. And now it's going to be a wonderful view of this beautiful cricket ground. We can see that now Mr. Sandeep Asan operating the drone camera, and that we're going to see those who are watching a live telecast through YouTube, Bedra Media having a live telecast, and we are having a fantastic view of this cricket ground. That was absolutely naturally the greenery, most beautiful cricket ground here in Bantwal. As a signal coming from umpire Shriniket as joining Harish Padil is at square leg umpire, and now it was all set now for the big match. And the KFC Kodikal, after winning the toss, very good toss to win, and no hesitation at all. They're winning the toss. After winning the toss, they're elected to field first. Just coming back to these two teams, of course, Gori Young Boys didn't got that much of good start in the season 2021. They have to enter into the finals of the prestigious tournament. But KFC Kodikal, they're breaking that loss in the last 2-3 tournaments played in earlier in the season 2021. And at last they managed to win the big title, which is Janata Colony Friends Trophy 2021. And they become the champion, and they are one of the confident team. The first ball, as Santosh plays it straight to the hands of a short mid-on. There is no possibility of any run. The two opening batsmen, left and right combination. Sandeep and Jitesh are the two batsmen, as Shakir bowls. A beautifully driven, lovely shot down to deep cover. The fielder chasing the ball. Will it go into cut it off? Yes, it is. And batsman got ample time to complete that couple of runs. That was an imperious and glorious extra cover right there from Santosh there. With his offered,
In the off volley, a batsman quickly opportunity to deliver that one between cover and extra cover. And because that outfield is not quick, because of some still dew factor comes into play, that's why that ball didn't travel very quickly to reach the boundary line. And batsman got a time to complete that couple of runs. Again, right arm over the wicket bounce. Batsman drives it on back of place. And now a bad piece of fielding there by Tazuddin. That's where the batsman got opportunity to complete the single. Then scoreboard moves on to 3. So Gori Young Boys and KFC Cortical, one of the most high-ranking team in the South Kenda district, and the Bedra Media having a fantastic live telecast of this wonderful cricket tournament in the name of JD Boys Trophy 2021. And we will look at that drone camera. I think they're covering here in our commentary box as well. Thanks a lot, Mr. Sandeep from Asan, for your great job. What a shot! That will go into travel down to deep backward square leg boundary for 4 runs. First boundary of the innings of Gori Young Boys coming from the bat of Deepak. What a great shot that will go into be. That was a fantastic and enterprising cricketing stroke there from Deepak. Nothing wrong with the line of the delivery. If you look at that in replay, he was almost ball is in the midland off stump. And Deepak is such a wonderful striker of the ball as far as hitting the ball down to onside region is concerned. He is master of delivering the short strokes. Good comeback there from Shakir, quickly realizing that if any ball in the midland leg stump, the batsman definitely will go in to hammer it. And he's bowling a little bit outside the line of off stump. Again, Deepak, what a shot, that one. Glorious, imperious and magnificent. That was a really good stroke, I want to say. Whenever the left-hand batsman playing such kind of cricketing stroke, that was extra cover drive. The flow went extra cover drive, just coming into the line of the delivery. Everything is perfect in that stroke to get the single down to deep extra cover. First over completed. It was a really good over here for Gori Young Boys to start with, as they got 8 runs in the first over of Shakir. 8 without loss of any wicket. That kind of start what Gori Young Boys wanted here against KFC Cortical. KFC Cortical, of course, they came into the winning run after they missed the track in a 3-4 match tournaments. All in sudden, the KFC Cortical, they're back into this season 2021. The winning track, what you're talking about. What a great performance there from KFC Cortical, the tournament which is played at Suratkal. The Friends Colony Trophy 2021. That was a wonderful cricket tournament, I will tell you. One of the most prestigious tournament as well. 80,000 cash prize which is won by KFC Cortical. The Friends Ball are the one team which came into the finals as well. And after that win, I think it was a different body language from KFC Cortical. All we can see that they're very confident. But Gori Young Boys, they knows that one of their favorite ground, the Bantwal, certainly the Gori Young Boys has got a lot of fans behind their team, and that's why they wanted to perform very well here in this Bantwala cricket ground. And especially for Santosh, which is his home ground. So a lot of expectation from the spectators and his followers. So Santosh can deliver on good innings for Gori Young Boys. Wait and see. From the far end, Chetan brought into attack. Balls. And very good delivery to start with, as a Chetan seeing that Deepak a little bit moving towards the onside. Maybe he was looking for play some inside out cricketing strokes. So clever piece of bowling there by Chetan, so that batsman couldn't manage to reach that delivery. And a good collection behind the stump by Akim. Chetan, right arm over the wicket balls. Again, almost identical mirror display of previous delivery. The similar delivery, Xerox copy of previous delivery. And the batsman couldn't manage to move his feet as the boy is just watching the ball goes into the hands of wicketkeeper behind the stump, and there is no possibility of runs. Quickly, his partner Santosh just coming to the middle and giving some tips to his partner Deepak, saying that the bowler trying to beat him outside the line of off, maybe was asking batsman to a little bit cover the stump and coming to the line of the delivery as Chetan bows. This time went for the reverse sweep. Once again, consecutive 3 dotted deliveries. All in sudden batsmen started to feel the pressure. That's all happening in cricket sometimes. It's not so easy. Even the batsman who is very confident after getting the boundary in the previous over, but sometimes the bowler is too clever to beat the batsman, seeing the potential of the batsman, is bowling that line. That was sensible batting from Deepak. That's what you need to do. Whenever the 1 ball, 2 ball, of course, excuse. And consecutive 3 ball, there is no excuse at all. You need to correct your mistakes, and that's what Deepak is correcting his mistakes after 3 dot ball, quickly realizing it's better to give the single, take the single and give the strike to Santosh. And with that single, scoreboard moves on to 9 on the board.
without loss of any wicket. Shot, third man shot, gully. There was a fielder at backward point. There is a fielder, no fielder in the cover and extra cover. Of course, cover now coming in. Tazuddin coming in the cover region. Shot mid off. There was a deep extra cover. Deep mid wicket. Deep short fine again. Short square leg. Oh, Santosh looking for some experiment as far as playing the reverse stroke is concerned. Reverse sweep is concerned. Might be the batsman trying for that. But the line is too far away from the batsman's bat, so that that ball is not having any contact with the bat, and back to bowler. 4 dotted deliveries already in this over. This time Santosh reaching for the delivery. Of course, didn't caught that much of timing behind the stroke, but he able to get the single. So what a great over there from Chetan. Very good over in that kind of over KFC Critical required. After that first over is a little bit costly. The second over, it's just 2 runs coming from that over, and 10 runs in 2 overs after completion of 2 overs. Gori young boys. And Gopi is coming back to this over. I think Chetan did a good job. Even it's not an easy job. We're seeing that Deepak in the first over he looks a little bit aggressive after hitting that cross-batted stroke against the bowling of Shakir. Looks like the second over is going to be a little bit expensive, but Chetan, the experience always counted in the games like under pressure game like this. एग्जैक्टली सतीश, एक्सपीरियंस काउंट होता है. जहाँ पर सवाल है चेतन का, तो पहले ओवर में 8 रन प्रदान करने के बाद जब वो गेंदबाजी पर पहली बार उतरे तब उनके ऊपर दबाव था, क्योंकि इससे पहले 8 रन पिछले ओवर में शाकिर प्रदान कर चुके थे और दीपक अच्छे लय में थे. और इस ओवर में उन्होंने दीपक और संतोष को बांध कर रखने में 100% सफलता प्राप्त की है. खासकर दीपक जो कि काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे थे पहले ओवर में चौका झड़ने के बाद, और दूसरे ओवर में बिल्कुल सतर्क लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करने के बाद सिर्फ 2 रन प्रदान करते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी यहाँ पर निभाई है. और 2 ओवर के बाद 10 रन बन चुके. तो मैं समझता हूँ पहले 2 पावर प्ले ओवर में बराबर का टक्कर हमें यहाँ पर दोनों टीमों के बीच देखने को मिला है सतीश. Exactly, Gopi. The equal battle is on between these two big teams in the South Canara district, and third over will going to start from the commentary box. And Tazuddin, one more fantastic all-rounder for the side of KFC Kodigal, starts this over. Right arm over the wicket, away from us to Santosh. Bowls, and batsman tapping the ball just in front of midfielder. Chance for run out there. If it is a direct, I think definitely the opportunity to make the run out. I think the backward point, it's Manohar, one more local boy in the team of KFC Kodigal. So that was 2 players, the home ground, one for Manohar and one for Santosh, but playing against each other. That's very interesting, and to see the 2 local players who will going to win this match. And definitely the both players has got their fans behind them, and that's why it's going to be a little bit entertainment here for the spectators. So look at the crowd slowly started to gather in this most beautiful cricket ground. Crowds really covering here. Festival atmosphere. We can see some band sounds as well for each and every boundaries, as again Tazuddin changing his angle, bowling now right arm around the wicket to Deepak. Deepak shuffling across the line of the delivery, almost reaching for the wide outside line. Off some chance of run out there. Ball, I think, is a bowler missed the ball completely. And otherwise, opportunity of run out. I think Naushad there in that short extra coverage, trying for the run out. If it is a direct hit, I think is all over. Even Tazuddin, if able to collect the ball, might be it was a close call for umpire Shiniketa. And of course the ball missed the stumps, bails are off, but not from the ball, in the hands of Tazuddin. The batsman survives. The single is taken, quick single, risky single, and scoreboard now 11 on the board for the loss of without loss of any wicket. Gori young boys, they got a very good start, steady start. Here is Tazuddin, right 12 on the board, correction. Oh, slower one, change of pace, appeal for stump out. Hakim almost he was a very clever wicket keeper behind the stump, seeing that can Santosh will lift this back leg, but Santosh is too clever. He knows that the wicketkeeper is waiting for making the stump out, but he was still there in the middle. That was good to see, and that was a very good change of pace, isn't it? Tazuddin is a very clever bowler, I will tell you. He's a master of mixing up the delivery. He compared the last 2 deliveries, it is much slower than that 2 previous deliveries, and that's why the batsman completely missed out that delivery. Good piece of bowling there from Tazuddin.
And again, away from us, he's bowling right arm over the wicket to Santosh. Santosh, sensible batting, absolutely sensible, almost slow delivery. This time batsman negotiated very well, seeing the slowness of the ball. He knows that the line is almost midland off stump, very difficult to play across. So just pushing the ball down at the cover point region to pick the single, then scoreboard moves on to 13 for the without loss of any wicket. That brings Deepak into strike now. After hitting the boundary, it looks a little bit quiet because the bowlers of KFC Kodikal almost tiding him with some fantastic line and length. Again, shuffling across the line of the delivery, try to reach the delivery, but it's a wide outside the line of off stump. So wide call by umpire. That was a really bonus run here for Gori Young Boys. 2 wides, 2 extras, and with that extra scoreboard moves on to the 15 on the board without loss of any wicket. That was a really not good thing for KFC Kodikal. Whenever the batsman little bit under pressure, when you are conceding the wide deliveries, wide balls, then it is going to be a very difficult for KFC Kodikal to maintain that pressure. So a little bit argument is going on here with the umpire by Shakir and players. Maybe about that wide delivery, but suddenly it is a wide delivery because batsman shuffling across the line of the delivery and Tazuddin tried to beat him so that he bowled far outside the line of off stump. No contact with the bat, and suddenly it's going to be a wide. Srinidhi is a very young, talented umpire. He's not only officiating in underarm cricket, but even he is officiating for overarm cricket as well. So he was upcoming talent umpire for underarm cricket as well. So he's growing his confidence each and every tournament after getting some experience from the umpires like Arish Padil and then Mohan Iyadi. I think it's good to see the youngsters coming to that panels of umpiring. And it was good for underarm cricket as well. Tazuddin again away from us. Right arm over the wicket bounce. That's one a good delivery. Equal well played the batsman. All on the stroke. They went for the single, then completed very quickly. That was a good strategy implemented by Santosh. He knows that that ball went straight away into the hands of Naushad. All on the strokes, when you run quickly, then all inside the fielder started to feel the pressure that he need to collect that one cleanly. And I think Naushad couldn't manage to collect that one neatly. The batsman got opportunity to complete the single, then scoreboard moves on to 16 on the board without loss of any wicket. Tazuddin again back to his bowling mark with after having 2 jerks before delivering the ball. This time I went for the reverse sweep. Ball is in the air, but I don't think any contact with the bat. Certainly that ball hitting his legs, and there is no appeal coming from wicketkeeper. Rightly so. That was a dotted delivery. So end of 4, number 3. Then searching for the right track. Gori Young Boys are managed to score 16 without loss of any wicket. 16 Gopi in 3 overs. I think the run rate is not that much of poor. ಹಲೋ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಎಂಫ್ರೈ ಪೂರ್ವ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವೋ ಪೆಂಡಲ್ನಂತೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಎಂಫ್ರೈಸ್ ಪೂರ್ವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. Thank you very much. So 5.33 runs per over, Gopi. Not too bad. Having 10 wickets in hand, they can accelerate the run rate in the remaining 4 overs. So what do you think about that strategy? Having 10 wickets in, and what kind of total is going to be good enough for Gori Young Boys to depend? बिल्कुल पहले 3 ओवर में 16 रन एक बेहतर शुरुआत कही जाएगी अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, और ये दोनों बल्लेबाज जो कि एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर डालने की कोशिश में गोरी यंग बॉयज़ के लिए, और लगभग वो एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर दे चुके हैं संतोष और दीपक। जहाँ तक सवाल है बचे हुए 4 ओवर का, तो मैं समझता हूँ इन बचे हुए 4 ओवर में सतीश कम से कम 35 से 40 रन अगर उनके बल्लेबाज बटोरते हैं तो निस्संदेह KFC कोडिकल के बल्लेबाजों पर दबाव आ सकता है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। लेकिन न KFC कोडिकल के पास जैसे गोरी यंग बॉयज़ के पास जो बल्लेबाजी में गहराई है, उसी तरीके की डेप्थनेस गहराई KFC कोडिकल की बल्लेबाजी में भी है, तो उन पर दबाव डालना है तो गोरी यंग बॉयज़ को एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना होगा. Exactly, Gopi. As Hakimi has been introduced from the far end, the first delivery delicately played there by Santosh Jai, opening the face of the bat quite deliberately edging it down to short third man region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 17. So coming back last 3 overs, Gopi, they got 8 runs in the first over, and then 2 overs they only considered 8 runs. That means 4 runs per over. That means KFC Kodikal they able to little bit
tighten the screws in the last 2 overs and they managed to bowl some economical overs. So wait and see how long they will going to able to contain these two batsmen not to get any big strokes, and that's what was very important in limited over match. And as far as the boundaries and sixes are concerned, it is not that much of easy for any batsman, especially in the morning session, in this most beautiful weekend, to break the shackle. This time again, Deepak went for the big shot, not quite able to time that one properly. That already I mentioned that it's not an easy pitch to bat on. This is not an easy situation for the batsman to get some big shots because the nature of the ball, of course, they used in this tournament to the Wilson dotted number balls, which is not that much of a pretty hard. Ball is not really coming to the bat. So the timing and little bit of what you call is hard work required for the batsman if they wanted to clear the boundaries. Hakim again, right arm over the wicket. This time Santosh fails to make a contact with the bat as he was try to open the face of the bat, try to guide that one into third man region. Missed the ball completely, and there is no possibility of any run. So far, Hakim is so good in this over as he managed to contain the batsman. Hakim right up over the wicket, bounce this time, lofted over. Will it go into carry to the field? And it doesn't. The Usher, the fieldsman there in the deep extra cover, tried to stop the couple of runs, but they doesn't. Good running between the wickets. Santosh knows exactly after playing that shot. He knows that there will be a couple of runs. Looks like it is quite deliberately lofted, that one. He knows that the fielder are in the deep. If he play that lofted strokes, there's a little bit time for the fielder in the extra cover to cut it off. So they got an opportunity to come back for the second. That was intelligent cricket there from Santosh. He knows that he played a previous delivery as a dotted one. So he need to convert that next delivery as a scoring one. And that was a sensible batting there from Santosh. His home ground, you know exactly each and every aspect of this cricket ground. And he's just implementing that experience in this performance, as again scoreboard is leading, showing is 20 without loss of any wicket. Hakim again, right arm over the wicket balls. Santosh again. No, that was a helicopter shot. Almost looks like it is a wrist work comes into play. Almost ball is targeting midland next stamp, and quickly Santosh, one of the fine striker of the ball as far as in front of the wicket is concerned, is a mighty striker of the ball. So one more addition, 21 on the board without loss of any wicket. Goriang boy searching for the right track, and they're going in the right track as well as Hakim searching for some wicket here. Searching for the wicket, what I told, and he got what a result here. This time Deepak, they wanted to hit some big shot. He knows that not enough deliveries remaining. He already settled down. They wanted to get some big shot, but so far away he was shuffling across the line of the delivery. And Hakim got a big wicket here. At Goriang boys lost their first wicket at the score of 21, and Deepak's innings comes to an end. So 4 overs completed, 21 on the board, and Gopi almost looks like after Deepak has got the boundary in the first over, and then I think he's almost struggling. And we can see that he got 8 runs. Out of the 8, he got 1 boundary. That means the remaining deliveries, he couldn't manage to perform as far as his potential is concerned. Maybe the reason that KFC Kodigal, they bowled a very good line and length. बिल्कुल सतीश, पहले ओवर में चौका झड़ने के बाद दीपक का जो पहले ओवर में लय प्राप्त कर चुके थे, आने वाले ओवर्स में उस लय को वो धीरे धीरे खोते हुए आए, और इसका यह कारण है जैसा कि आपने बताया, केएफसी कोडिकल के गेंदबाजों ने दूसरे ओवर के बाद एक अच्छा बाउंस बैक उन्होंने किया और बल्लेबाजों के ऊपर प्राबल्य स्थापित करते हुए गए, और फलस्वरूप दीपक यहाँ पर रन बटोरने के लिए कड़ा संघर्ष वो करते हुए गए, और आखिरकार उनके हताश मनोभावना पिछले गेंद पर दिखाई दी जब वो पूरा जो दबाव उनके ऊपर बना हुआ था उस दबाव को उन्होंने हटाने का प्रयास किया। एक लंबे स्ट्रोक्स के जरिए पूरी तरह सफल हुए, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर नहीं आए। गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराए मिडल ऑफ स्टंप पर, और दीपक की पारी पर यहाँ पर पर्दा पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर गिर चुका। तो बेहतरीन गेंदबाजी अंतिम 3 ओवर में, पहले ओवर में 8 रन प्रदान करने के बाद के 3 ओवर में केएफसी कोडिकल के गेंदबाजों ने एक बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर की है, और कुछ हद तक दबाव वो डालने में सफल रहे गोरियांग बॉयज के बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन मौका अभी भी है, 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, और देखना है कि इन बचे हुए 3 ओवर में गोरियांग बॉयज के बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। 5वें ओवर की पहली गेंद को ढकेला था संतोष ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन पूरा करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 22 रनों पर। अश्विन
नए में बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद, लेकिन चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। शाकिर कुछ हद तक अपने पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी इस वक्त करते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद को बल्ले तक आने दिया और गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और करारे स्ट्रोक्स की कोशिश जरूर कर रहे बल्लेबाज, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दिस वन, यस इट डज, दिस टाइम ही प्लेड दैट वन विद अ ट्विस्टेड बैट। गेंद को स्कूप करना चाहते थे रिवर्स शॉट के जरिए डीप बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन मैं समझता हूं गेंद उनके बल्ले के निचले कोने पर टकराई, बॉटम ऑफ द बैट जिसे कहते हैं। और जैसे ही संतोष ने रिवर्स शॉट खेलने के लिए पोजीशन ली, कवर पॉइंट के फील्डर ने दौड़ना शुरू किया था बैकवर्ड पॉइंट पर, लेकिन गेंद इस वक्त गई डीप एक्स्ट्रा कवर पर, उनके बल्ले के निचले बॉटम एज पर टकराने के बाद। और इस बार गेंद को इस वक्त खेल दिया, संतोष के लिए खतरा, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास, गेंद सीधे पहुंची थी शॉर्ट मिड विकेट फील्डर के हाथों में और बल्लेबाजों ने रन से चुराने का प्रयास किया और यहां पर यह विकेट गिर चुका है रन आउट के रूप में। संतोष की पारी समाप्त, एक अच्छी पारी खेलने के बाद 2 पवेलियन यहां पर वापस लौट चुके। कुल मिलाकर संतोष ने बनाए कितने रन बनाए? 16 रन संतोष ने बनाए, 16 रन स्कोर्ड बाय संतोष इंक्लूडिंग 1 बाउंड्री और एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद 2 पवेलियन में यहां पर वापस लौट चुके। कुल मिलाकर स्कोर है इस वक्त 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर। नए बल्लेबाज जिनका आगमन यहां पर हो चुका है, सोहेल उर्फ बिली, और एक प्रमुख बल्लेबाज के रूप में वो इस वक्त जाने जाते हैं। एक और प्रमुख बल्लेबाज के रूप में गोरी यंग बॉयज के लिए यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता, थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर श्रीनी के द्वारा 1 रन जुड़ चुका है। ट्रिप के रूप में यह गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, और इसी के साथ ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स। बैकफुट पर फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को इस वक्त कट करना चाहते थे, कुछ हद तक कहना पड़ेगा, लेकिन उनका जैसे ही बैकफुट लिफ्ट हुआ क्रीज से, गेंद सीधे पहुंची थी विकेट कीपर हकीम के हाथों में और विकेट कीपर हकीम ने गेंद को कलेक्ट करने के बाद बिजली की रफ्तार में विकेटें उड़ा दी और निस्संदेह तो हकीम विकेट कीपर और निस्संदेह जहां तक सवाल है मैं कहूंगा सतीश, हकीम जिन्होंने जिस तरीके की विकेट कीपिंग इस गेंद पर की है वो उनके सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपिंग के प्रदर्शन को यहां पर दिखाता है। और हकीम जो कि अंडरआर्म क्रिकेट के आज के दौर के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपरों में से एक जाने जाते हैं। क्यों सतीश? Exactly, Gopi. No doubt at all. Even I watched him in that that Janta Colony Trophy as well. He's fantastic behind the wicket. He was being very example of how quick is need to be the wicketkeeper behind the stump. This is all about the presence of mind, isn't it? Wicketkeeper has to be presence of mind because he's seeing that Ashwin when he's going for the cut shot, he's just lifting his back leg. And as a present rules and regulation is concerned, if the batsman's foot is on the line, is also out. That's why sometimes batsmen are a little bit confusion. Why I am out? Because he doesn't know that the present rules says that if it was on the line, it's going to be out. And that's why Hakim is so good in it. He knows that after making the stump, he knows that the batsman definitely going to be out. That was a fantastic job. बिल्कुल, आज के क्रिकेट के नियमानुसार अगर उनका फुट क्रीज के ऊपर भी होता है तो आउट कहलाता है। अगर विकेट कीपर विकेट उखाड़ते समय, विकेट चटकाते समय अगर बल्लेबाज का फुट क्रीज के ऊपर भी अगर होता है तो आउट कहलाता है। क्रिकेट के नियम आज के दौर में कुछ हद तक बदल दिया गया है और यहाँ पर ऐसा ही हुआ था पिछली गेंद पर। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला विद अ ट्विस्टेड बैट शॉर्ट थर्ड मैन पर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। कुल मिलाकर 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का 6वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर। करना काफ़ी अनुभवी बल्लेबाज, काफ़ी प्रतिभाशाली और एक लंबे अरसे से वो गोरी यंग बॉयज का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर उनकी बेहतर बल्लेबाजी की जरूरत है गोरी यंग बॉयज को इन बचे हुए गेंदों में। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा और चूंकि परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी हकीम की और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। हकीम एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए
अगली गेंद लेकर तैयार, परिवर्तन के तौर पर लेग स्पिन गेंद, और गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूंकि और गेंद सीधे वहीं पर गिर गई उनके पैरों पर टकराने के बाद। 2 लगातार डॉट गेंदें और कुछ हद तक दबाव बल्लेबाज के ऊपर इस वक्त। स्कोर बोर्ड यहां पर रुक चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज सोहेल ने कुछ कहा करना की ओर आते हुए और वापस अपने स्वस्थान पर लौट चुके हैं। और हकीम एक बार फिर से तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए 4 फील्डर 20 के दायरे के अंदर तैनात। मिड ऑफ कवर पॉइंट शॉट, थर्ड मैन और शॉट में विकेट। ये गेंद इस बार विकेट से हटते हुए गेंद को उछालना चाहता है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और इसी के साथ सोहेल की पारी समाप्त। निशाना दागा था शॉट थर्ड मैन के फील्डर ने, और आखिरी मौके पर ऐसा लगा कि सोहेल पहुंच ही गए हैं क्रीज पर, लेकिन उनका बल्ला जो कि हवा में था, जब गेंद सीधे समसों पर जा टकराई, बेल्स ऑफ हुए, तब सोहेल का बल्ला हवा पर था, तो इस वजह से वो आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं इस बेहतरीन फील्डिंग के जरिए। और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, प्रमुख विकेट सोहेल के रूप में। अब निस्संदेह कुछ हद तक मुश्किलें पैदा हो चुकी है गोरी यंग बॉयज के लिए। 30 रनों पर 4 विकेटों का पतन हो चुका है, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज हकीम, नए बल्लेबाज ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ಕಾಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. धन्यवाद। और श्रीशांत नए बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और हकीम इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज श्रीशांत के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्पिन गेंद थी, लेग कटर गेंद थी, गेंद को इस वक्त खेलना चाहा, जगह नहीं बना पाए, बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को खेला और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है हकीम का, जिसमें बल्लेबाज को काफी हद तक बांध कर रखने में वो सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को खेलना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, शॉट फाइनल की दिशा में, शाकिर के हाथों में गेंद थ्रो पहुंचा और इस बार निशाना लग चुका है। क्रॉस एंगल से फेंका गया हुआ थ्रो, फुल टॉस थ्रो, सीधे स्टंप्सों पर जा टकराया, और दूसरा रनआउट इस ओवर में शाकिर करते हुए, और यहां पर यह विकेट श्रीशांत का गिर चुका है। तो ओवर मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 31, 5 विकेट के नुकसान पर। और अब अंतिम ओवर बाकी, जो जैसा कि पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन हमने लगाया था सतीश, कम से कम 45 के आंकड़े को पार करना होगा गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों को, और 6 ओवर में केवल मात्र 31 रन बना पाया। अगले ओवर में मैं समझता हूं कम से कम 15 या उससे ज्यादा रन बटोरने होंगे अगर उन्हें KFC कोडिकल के सामने एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो। Exactly, Gopi. It was needed, much required. That 10 to 12 runs badly required. But one thing here noticed in Gori Young Boys, they are really feeling that the absence of Naufal, one of the great all-rounders of Gori Young Boys, that's why they're a little bit struggling with the batting performance as well. Because he's the one who can handle the pressure. Being the captain of the side, he can bowl 2 good overs and he can bat as well. That was a little bit Gori Young Boys lacking here. But still having Karna in the middle, one was knowing for finishing the match. Of course, he can clear the ground if he able to hit the big shots, and wait to see how Karna will go to handle the pressure to get some runs in the last over. And Chetan, one who bowled a magnificent over, and he was bowling his last over. बिल्कुल सतीश, चेतन अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हैं। पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की थी, जैसा कि आपने बताया, पहली गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया, लेकिन हेवी ग्रास आउटफील्ड के कारण यहां पर सिर्फ 1 रन मिलेगा। गेंद अपने रफ्तार को खोकर जब तक 20 गज के दायरे के कुछ बाहर फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर। कुल मिलाकर विकेट गिर चुके हैं 5, और अब नए बल्लेबाज जो धनराज इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। चेतन की गेंदों का 5 गेंदें बाकी उनकी पारी में, दाहिना ओवर द विकेट। ये गेंद एक्स्ट्रा विकेट, दिस इज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट वन। ऐसा कहना पड़ेगा, बल्लेबाज को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला इस गेंद पर, और गेंद एक्स्ट्रा क्विकर, एक्स्ट्रा रफ्तार के साथ सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज को वंचित करने के बाद मेरे ख्याल से कम 90 से 100 किलोमीटर प्रति आवर
की रफ्तार से इस गेंद को फेंका था और गेंद पर स्ट्रोक्स नहीं खेल पाए बल्लेबाज और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है जेडी बॉयज बंटवाल ने, और यहाँ पर इस श्रृंखला के दूसरे दिन का तीसरा मैच, कुल मिलाकर बी पूल का दूसरा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ। दर्शकों की संख्या अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। मैदान के चारों ओर मैदान के इर्द गिर्द दर्शक इस वक्त नजर आते हुए, कुछ सीमा रेखा पर बैठे हुए, कुछ सीमा रेखा के पार रास्ते पर खड़े हुए गेंद को इस वक्त खेल का मुआयना करते हुए। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद और हकीम के हाथों में गेंद अगर पहुंचती है तो उसके बाद कुछ कहने की बात ही नहीं है, वो अपना काम तमाम कर देता है। और यहाँ पर जितनी तेज रफ्तार के साथ गेंद उनके हाथों में पहुंची, उतनी तेज रफ्तार के साथ उन्होंने गेंद को कलेक्ट करते हुए विकेट बिल्स चटका दिए और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। धनराज की पारी समाप्त 0 पर और कुल मिलाकर विकेट गिर चुके हैं इस वक्त 6, जबकि स्कोर है 32 रनों पर। 3 गेंदें अब बाकी और 3 गेंदों का सामना करने के लिए इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए बल्लेबाज संतोष नंबर 2 गोरियंग बॉयज के लिए इस वक्त क्रीज पर मौजूद। 3 गेंदें इस वक्त बाकी और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज चेतन सिर्फ 1 रन अब तक वो प्रदान कर चुके अपने ओवर के पहले 3 गेंदों पर और एक विकेट प्राप्त करने में भी सफल। संतोष इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और चेतन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट। ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, सर्टेनली गोइंग डाउन द लेग साइड। अपील सिर्फ गेंदबाज ने की थी और यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता है पगबाधा यानी लेग बिफोर का। ये गेंद 1 रन का इजाफा, लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। धूप की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई सुबह के 11:30 यहाँ पर बज चुके हैं। सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता और यहाँ पर बढ़ रही है। ये गेंद पैरों पर टकराए, अपील को नकार दिया, कुछ हद तक लक्ष्य बाहर की ओर जाती हुई और दूसरे रन न लेने के प्रयास में ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो जहां तक सवाल है, अपील की थी, नकार दी थी अंपायर ने, लेकिन 1 रन पूर्ण करने के बाद दूसरे रन लेते समय वो नहीं बच पाए और 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर। 7 विकेटें गिर चुके हैं और यहाँ पर संतोष की पारी समाप्त। ऐसा कहना पड़ेगा, करना स्ट्राइक का खुद अपने पास रखना चाहते थे इस बचे हुए अंतिम गेंद पर, तो इस वजह से उन्होंने स्ट्राइकर एंड की ओर दौड़ लगाए और आखिरकार संतोष को अपना विकेट खोलना पड़ा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। 1 गेंद बाकी, अंतिम गेंद करना इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए। चेतन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज का आगमन जरूर हो चुका है लेकिन उन्हें ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त होना पड़ेगा। नंबर 44 के जर्सी पहने हुए बल्लेबाज रशीद जो कि नॉन स्ट्राइकर पर इस वक्त मौजूद और पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार करना। चेतन फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद पारी की अंतिम गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज करना के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद जाती है थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर गोरियंग बॉयज एंड दे फिनिश्ड विद 35 for the loss of 7 wickets in the stipulated 7 overs and now the target for KFC Kodikal is 36, just over 5 runs per over they have to score and let's see can they reach the target or not. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪುಗಂಡದಾಟಗಾರರು ಜಪ್ಪುಗಂಡದಾಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪುಗಂಡದಾಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪುಗಂಡದಾಟಗಾರರು ವಿವೋ ತಂಡದತ್ತ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಕರೆತಮಗೆ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. धन्यवाद
36 रनों का लक्ष्य, 36 टारगेट। और सतीश आइए, इस वक्त इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। दोनों टीमों में शक्तिशाली बैटिंग लाइनअप है, दोनों टीमों में शक्तिशाली गेंदबाजी का लाइनअप है। और यहाँ पर मैं समझता हूँ पहले 7 ओवर में 35 रन उनके निर्धारित 7 ओवर में 35 रन प्रदान करते हुए केएफसी कोडिकल के गेंदबाजों ने अपना किरदार बाखूबी यहां पर अदा किया, क्योंकि पहले ओवर में 8 रन बढ़ जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाज केएफसी कोडिकल के गेंदबाजों पर हावी हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे केएफसी कोडिकल के गेंदबाज परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लेते हुए आए और आखिरकार उन्होंने 35 रनों के अंदर गोरी यंग बॉयज को 35 रनों पर गोरी यंग बॉयज के बल्लेबाजों को रोक कर रखा। अब 36 रनों का लक्ष्य। और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, मैं समझता हूं कुल मिलाकर 5 से कुछ ज्यादा रन्स उन्हें बनाने हैं। 5.14 रन, 5.5 की औसत से इस वक्त रन्स बनाने हैं 36 है निर्धारित 7 ओवर में। और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है तो केएफसी कोडिकल के पास जो सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है, उस लाइनअप को अगर तुलना करके देखी जाए तो लक्ष्य कुछ ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन गोरी यंग बॉयज के पास भी ऐसा गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है जो एक बार बल्लेबाजों पर अगर हावी हो जाए तो निस्संदेह उनके बल्लेबाजी के चित्रे उड़ाकर रखने की क्षमता उनके गेंदबाज रखते हैं। तो यहां पर मैं समझता हूं 36 रनों का लक्ष्य जरूर है केएफसी कोडिकल के सामने, लेकिन ये लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केएफसी कोडिकल को उनके बल्लेबाजों को एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन देना होगा अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन ऑफ गोरी यंग बॉयज। Exactly, Gopi. It's a little bit disappointment after seeing the total score of Gory Young Boys, because they got 8 runs in the first over after getting the good start, and that was a little bit sensible batting required afterwards. After getting 8, then each and every ball they able to rotate the strike. Almost they were going to get 40 plus runs on the board. But what happened here is that the Gory Young Boys batsmen tried to post the ball, because they're watching this cricket last day as well. Today morning we watched 2 matches as well. Very difficult to get the big shots in the box. So the sensible batting always required. You need to bat as per the condition of the pitch, as per the condition of the ball, and as per the bowling department of the against team as well. So that was always going to be very key when you are batting first. You need to see that what kind of target is going to be quite enough for the teams like KFC Kodigul. They got a good batting department, because KFC Kodigul, if you see the KFC Kodigul batting department, Gopi, all that we can say, all the professionalists, they knows how the kind of cricket to play. When it was 35 in the board, what kind of strategy to be implemented. So I think it's so hard work required for Gory Young Boys if they wanted to win the match, if they wanted to play against the KFC, because they are in the winning run. They are in the winning run. They won the prestigious cricket tournament, Janata Trophy, Colin Trophy 2021. And that's why it's going to be a challenging time here for Gory Young Boys. बिल्कुल सतीश, जहां तक सवाल है केएफसी कोडिगल के बल्लेबाज परिस्थिति के अनुसार खेल दिखाने में काफ़ी माहिर है। जैसा कि आपने फरमाया, हालांकि लक्ष्य 36 का हो या 50 का हो या फिर 20 का हो, परिस्थिति के अनुसार वो बल्लेबाजी करने में माहिर है। उनके पास कुछ ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं, शाकिर, हकीम और 2-3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो एक बार क्रीज को आक्रमित कर ले तो निस्संदेह गेंदबाजों पर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं। और इन पर अगर काबू पाना है, इन पर नियंत्रण पाना है, तो मैं कहूँगा एक बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त करनी होगी गोरी यंग बॉयज़ के गेंदबाजों को। और मैं समझता हूँ गोरी यंग बॉयज़ के गेंदबाजों में वो क्षमता, एबिलिटी है कि वो एक बार अपना लय प्राप्त कर ले तो बल्लेबाजों पर भारी पड़ सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। 36 रनों का लक्ष्य, और जहाँ तक विजय की संभावनीयता का सवाल है, मैं कहूँगा सतीश, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। Exactly, Gopi. Whenever the match starts, it's always going to be a 50-50. But after that time progresses, then we can calculate which percent is going to be high for any team. As the first ball, as Rashid right arm over the wicket, bounce as Tajuddin pushing the ball, try to get the single there, but it is always going to be asking for trouble, because bowler Rashid on its follow through fields the ball. There is no possibility of any run. One more thing here is, Gopi, that Gory Young Boys missing the service of Naufal, because these 2 overs are definitely going to be very crucial, and that's why sometime it was a presence of the good players you're never going to calculate, but once is absent, definitely make a big
impact on the performance of any big teams. So they didn't need to cover that place of Naufal. That's why they got Rashid, is a new face in the Gori Young Boys bowling department. Right off from the wicket, he bowls at this time. I feel for leg before wicket, because the fact that ball pitching outside the line of the leg stump, there is no question of leg before wicket. Whenever the bowler is operating around the wicket and bowling along the carpet, and straight away there is no doubt at all that pitch ball is definitely going to pitch outside the line of leg stump. So good bowling there from Rashid, as they keep the pressure on the batsman by bowling two dotted deliveries to Tajuddin. Rashid, right arm over the wicket. Tajuddin tried to post the one. That chance of run out there. It'll go into, oh my goodness, it's going to be the quickness in that short fine leg fielder. As Shuel tried to pick the ball and returns that one into the wicket keeper, but ball just missing the hands of Suhail, and Shakir completes the single. Shakir, very intelligent cricketer as far as present cricket is concerned, just like Jitesh of NM Cricketers Mangalore. He's also, Shakir is considered as one of the top all-rounder in the present cricket. These two, the players, Jitesh and then Shakir, one of the finest all-rounder for the in South Kent district in present cricket is concerned. So he is now back to strike now. Shakir is bowling right arm, is batting against the bowling of Rashid, is operating from the far end. Round the wicket. Bowls. Shakir looking for the big shot on the offside region. Of course, if we heard some sound, but not from the bat, I think is Shakir hitting the ground hard, hitting the bat hard into the ground. So that was the sound we heard, and that's where there is no excitement coming from wicketkeeper behind the stump. And that was a great piece of bowling there from Rashid. That was a start Gori Young Boys required when he was defending the small total like a 36 to win the match for the 36 to win the match for KFC Kodikal. They went for the reverse sweep as Karna a little bit misjudging, saying that Shakir going for the reverse sweep. He is just moving towards his left, but ball is moving towards his right, so that Shakir has got opportunity to pick the single. He is off the mark with the single, and KFC Kodikal total score moves on to 2 on the board without loss of any wicket. Mid-on, short mid-wicket square leg, short fine leg. That was onside, one as a deep mid-wicket. That onside field as Rashid continuing. Right arm over the wicket. Bowls as Tajuddin again looking for the big shot. Again mistiming it, and wide throw coming from that fielder Sharat Santosh there. Otherwise there will be an opportunity of run out. But anyhow, it's a good over there from Rashid. I think it's a good bowling. Gopi Rashid is a new face in Gori Young Boys playing 11, and might be was just covering the place of Naufal. Naufal usually is open the bowling for Gori Young Boys. 3 runs in first over without losing any wicket. I think might be the KFC Kodikal the strategy that they have to get some steady start without losing any wicket. But 32 to get from remaining 36 deliveries. Still, I think Gori Young Boys have got opportunity to bounce back if they bowl another 6 overs, just like what Rashid did. एग्जैक्टली सतीश, रशीद जो कि काफ़ी अनुभवी गेंदबाज है, नए गेंदबाज है गोरी यंग बॉयज़ के लिए, लेकिन अनुभव कुछ हद तक ज़रूर है उनके पास, और ख़ासकर उन्होंने पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर की है, और शाकिर और ताजुद्दीन को उन्होंने पहले पावर प्ले ओवर में रोक रखा, सिर्फ 3 रन प्रदान किए। खासकर ताजुद्दीन जो कि पावर प्ले का फ़ायदा उठाने में काफ़ी माहिर जाने जाते हैं, और उनको भी बांध कर रखने में वो सफल रहे। तो इस सफलता के सिलसिले को जो रशीद ने यहाँ पर शुरू की है, इस गेंदबाजी के सफलता के सिलसिले को आने वाले ओवर्स में बाकी के गेंदबाजों को बढ़ाना है। अगर वो इस सफलता के सिलसिले को आने वाले ओवर्स में बरकरार रख पाते हैं तो निस्संदेह दबाव KFC कोडिकल के बल्लेबाजों के ऊपर और बढ़ सकता है। तो पहले ओवर में 3 रन, और मैं कहूँगा एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में दिया है रशीद ने। क्यों सतीश? Exactly, Gopi, and certainly in this cricket ground, which is looks to be something different cricket ground, isn't it? Just like we are having a Sahyadri cricket ground in Mangalore, that was a greeneries, outfield definitely going to be greeneries, and it was a really good to see that the ground here in Bantwala region having such a good ground, fantastic ground. And coming back to this pitch and ball, I think still the opportunity there for Gori Young Boys to restrict KFC Kodikal not to get that figure of 36 to win this match. So just in number 99, right arm over the wicket, balls to Tajuddin once again tried to post that one, again not caught that much of timing, mistiming the ball. Little struggling Tajuddin, but a good thing to see this every time he's going for the big shot, he will get single for that. That was a good to see him. He did not played a dotted delivery. He picked up a single. So one more addition, scoreboard moves on to 4 on the board without loss of any wicket. It just looks like the trophy is arriving to the ground. One of the most prestigious trophy, JD Boys
Jody Boys Trophy 2021 will go into arrive here in most beautiful cricket ground. As again Shakir picking up the singles. That's what I mentioned. They're all the professionalists. They know exactly what to do in the situation like this. Both the batsmen are so good in running between the wicket. This match will going to continue because of course after this match might be that trophy will going to enter the ground, and so that umpire will going to continue this match as Sharat bowling away from us, right arm over the wicket to Tazuddin again, that ball going further away outside the line of off stump. But as I'm seeing that the batsman making a little bit room to play the shot, that a clever piece of bowling there by the bowler Sharat there. Seeing that batsman Tazuddin moving towards the onside to disturb the concentration of the bowlers, but bowler is too clever in that occasion, bowling away from Tazuddin's bat and bowls a fair delivery again. That was a better delivery, better line. Tazuddin misjudging the line. Tazuddin is one of the best player as far as backward stroke is concerned. That's why Tazuddin wanted to see the ball is whether it was well within the reach of him. Again the misjudgment there from the batsman, and Sharat bowled there consecutive 2 dotted deliveries. Little bit pressure now for the batsman. Again Sharat. Right, over the wicket ball, slashing that one beautifully down to deep extra cover boundary. What a stop there from the fielder. Excellent stop from the fielder, just in number 33, stopping certain boundary. Altogether we can see that the good cricket in the middle. The glorious extra cover drive. And more than glorious extra cover, there was an absolutely magnificent piece of fielding there by the extra cover. The commitment, there's no time at all for the fielder to react that one. The Izaz, the fieldsman there in the deep extra cover, quickly moving towards his left and putting his left hand to the direction of the ball, stopping certain boundary. The good cricket altogether. 7 on the board again. Tazuddin growing his confidence after that lovely looking extra cover drive. One more good extra cover drive comes into the picture, and he picked up a single. Then 2 overs completed, chasing 36 to win this match, and Gabe Sikodical are 8 on the board without loss of any wicket, 4 runs per hour. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021. ಬಹಳ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30. might be it was a result will going to be the champion of this JD Boys Trophy 2021. One of the most prestigious and wonderful cricket tournament, and more than anything else, the wonderful cricket trophy out just in front of our commentary box, the huge trophy, and certainly each and every team wants to touch that trophy, and will it going to be definitely it going to be a dream for each and every team with having a contest with this tournament to get that prestigious trophy. JD Boys Trophy 2021 already arrived here in this cricket ground, and now it's a battle is on for the title of JD Boys Trophy 2021. So 2 overs completed, it's 8 without loss of any wicket. 36 is the target. That means another 28 runs required for the victory in remaining 30 balls. Match is evenly poised. No change in bowling. Rashid to continue because he bowled very well in the first over. 3 runs in his first over, and certainly he wanted to restrict in his second and last over of his quota. Right arm from the wicket to Tazuddin. Tazuddin's too clever in the negation. He just swept that one quite nicely. Almost the line is outside the line of off stump little bit, but Tazuddin already premeditated sweep shot implemented to get the single down to fine leg. One more addition to total scoreboard was on to 9 without loss of any wicket. So far it was a steady start from this opening batsman, and they have tried to catch the run rate required, just like my friend Gopi is mentioning about just about the 5 runs per over is the required, and 14.5 runs per over is the required run rate, and maybe they're a little bit lesser than the required run rate, but they got all the wickets in hand.
Single-handed stroke, but not quite able to beat the short third man fielder. Takes a catch. This is going to be a big wicket here for Gori Young Boys. Certainly it's going to be a big breakthrough here for Gori Young Boys. The wicket of Shakir, always it was counted. Straight away, Gopi, the wicket of Shakir, what Gori Young Boys required, isn't it? And you should appreciate the effort of this young, talented bowler. The new face, Rashid, came to the playing 11. It's not an easy job when you are having the tournament, high voltage tournament like JD Boys Trophy 21 straight away. Whenever it's a first match, I think he's so impressive in his bowling. 3 runs in first over. Now he picked up a very, very valuable wicket of Shakir. It's definitely going to little bit turns the match around towards the Gori Young Boys. बिल्कुल एक बेहतरीन शुरुआत इस प्रतिष्ठित श्रृंखला में कर चुके हैं गेंदबाज रशीद। पहले ओवर में न सिर्फ उन्होंने 3 रन प्रदान किया बल्कि दूसरे ओवर में उन्होंने शाकिर का बेशकीमती विकेट प्राप्त किया। और जहां तक शाकिर का सवाल है, उन्होंने तिरछे बल्ले के सारे स्ट्रोक तो जरूर खेला था। आखिरी मौके पर एक हाथ के जरिए उन्होंने अपने स्ट्रोक को खेला था। स्ट्रोक में रफ्तार था लेकिन प्लेसमेंट थी बिल्कुल गलत और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट टर्म पर। अगर गेंद थोड़ा सा फाइन निकलती, फील्डर के बाईं से निकलती तो निश्चित रूप से चौका उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन प्लेसमेंट गलत था। स्ट्रोक्स में रफ्तार था, प्लेसमेंट सही नहीं और इस वजह से उनको अपना विकेट खोना पड़ा। और निस्संदेह ये विकेट बहुत ही बड़ी सफलता गोरी यंग बॉयज के लिए साबित हो चुकी है यहाँ पर। Exactly, Gopi. It's the right time for Gori Young Boys to bounce back because they got a big wicket of Shakir. The new batsman Chetan is came into middle. One more fantastic performer from the bat and ball line straight away is there's off run out there. Directly 10 is gone. Can you believe this? Karna enjoying and celebrating his own way by lifting his finger that he got the big wicket of Tazuddin. Little because Chetan is back into pavilion and what a great piece of fielding there by the Karna there. Not only picked the ball but he quickly releasing the from his hand and fraction of second everything is over as Chetan finding himself short of his crease. The second wicket of Cape Sikorical are back into pavilion. Now all in sudden we can see then the scoreboard. It's only 9 on the board, but they lost 2 valuable wickets back into pavilion. Now it's a local boy just walking towards the middle. The Manohar, the straight away we can see that the crowds really cheering for their favorite player. Of course, Manohar, who represent one of the most prestigious team in South Kendra district, Young Friends Urua, and but today he was representing KFC Kodikal, and suddenly it's going to a little bit. The boost, it will going to strengthen the batting department of KFC Kodikal because he is home ground and he's got a lot of experience playing in these situations. Again from the far end, Rashid so far very impressive. Oh, look at that execution, beautifully played down to deep third man region. Protection there in the deep, so that batsman have to settle for the single. This is a really presence of mind there, but captain of Gori Young Boys. I really loved it because after seeing that Tazuddin is a very good player of playing the reverse sweep, just is sending that short third man fielder into deep third man because previous dismissal of Shakir, the same fielder inside the ring, they got a catch here. So that was a good thinking because the 2 different kind of batsman attitude and they get the 2 different fielding set for the batsman. That's what's what required. The captaincy is all about thinking and giving their 100% to win the game. Rashid again from the far end, right arm round the wicket. Fouls to Manohar. Manohar swept that one very nicely down to a fine leg region, but protection there in the deep. Square leg fielder had to move a little bit quickly towards his right. The batsman has got plenty of time to complete the single. Then scoreboard moves on to 11 on the board for the loss of 2 valuable wickets. Shakir is also his home ground for Shakir, but he couldn't manage to perform from the bat quite unfortunately when he was playing for reverse sweep. Couldn't manage to keep it down straight to the hands of short third man. And now it's Manohar and Tazuddin batting in the middle, right above the wicket. That will going to be that was definitely going to be a big mistakes. It was really big mistake, I will tell you, by the Rashid. Not only that it's a wide, but wide +1 when the pressure is mounting up in the batsman's mind. When you're bowling that wide deliveries, extra runs, and suddenly it's not a good going here for Gori Young Boys. 2 extra runs and scoreboard moves on to 13. Again, swap that one very fine. Ball running down to deep fine leg region. Outfield is not quick and Manohar coming back for the second for the throw, and they completed quite easily in the end. So we can see that we get a little bit cheering here for Manohar for the sweeping the ball down to fine leg region. Couple of runs here for Gori Young Boys, and after completion of over number 3, then chasing
36 to win this match. KFC Kodigal searching for the right track. They are 15 for the loss of 2 wickets. 15 Gopi as far as the required run rate is concerned. They're going just exactly the 5 runs per over. The required run little bit above then. No problem whatsoever as the required run is concerned. But they lost 2 wickets. But seeing this to batsman Tazuddin and Manohar, the very experienced campaign in the middle, I think we are expecting some great battle, equal battle between these two teams. But I think Goryang boys, if they wanted to win this match, they need to bowl remaining 5 overs, just like what the 2 bowlers did in the 3 overs. They considered 5. That such kind of bowling is required in the remaining 5 overs if they wanted to win the match. And picking up the wicket in frequent intervals is very important as well. बिल्कुल पहले 3 ओवर में 2 विकेटें खोने के बावजूद KFC कोडिगल के बल्लेबाज अपने रिक्वायर्ड अपने रन रेट को बरकरार रखने में सफल रहे। ठीक 5 रन प्रति ओवर के औसत से वो रन्स बना चुके हैं। हालांकि जब उन्होंने पारी की शुरुआत की थी तब उन्हें रन्स बनाने थे 5.14.5 रिक्वायर्ड रन रेट उनके सामने था और उसी रन रेट को मेंटेन रखते हुए इस वक्त पहले 3 ओवर में ठीक 5 रन प्रति ओवर के औसत से 15 रन वो जोड़ चुके हैं। तो अब इक्वेशन 5.25 रन प्रति ओवर के औसत से उन्हें रन्स बनाने हैं, 21 रन बनाने हैं बचे हुए 4 ओवर में। 21 टू गेट फ्रॉम 24 बॉल्स, दैट मींस इन 4 ओवर्स। और निस्संदेह ताजुद्दीन और मनोहर जो क्रीज पर मौजूद, ये दोनों बल्लेबाज अपने जिम्मेदारियों को बाखूबी समझते हुए क्रीज पर जमने की कोशिश करते हुए एक सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए, कोई जल्दबाजी की इस वक्त ज़रूरत नहीं है उनके बल्लेबाजों को। अगर हर गेंद पर कम से कम 1 रन भी बटोरते हैं तो निस्संदेह अपने मंजिल तक वो पहुंच सकते हैं। और जहां तक गोरियंग बॉयज़ का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक ऐसी गेंदबाजी जो मैच को उनकी ओर पलट कर रख दे। और उस घातक गेंदबाजी की तलाश में गेंदबाज सुशांत इस वक्त नया ओवर लेकर तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर दाहिने हाथ के बल्लेबाज ताजुद्दीन के लिए गेंदबाज को विचलित करने का प्रयास पूरी तरह सफल हो चुके थे। और आखिरी मौके पर जैसे ही गेंद मिडल ऑफ स्टंप पर आई, गेंद को हल्के से ऑन साइड पर मोड़ दिया और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी। और जहाँ तक सवाल है इस मैच के विजय का, तो अभी भी मैं कहूँगा मैच बराबरी पर रुक चुका है। गेंदबाज इस वक्त तैयार, सुशांत दाहिने तो ऊपर द विकेट क्रीज के कोने से गेंद, ओह दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटी, दिस इज एन परफेक्ट ऑफ कटर। लाइन पर गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाई थी और आखिरी मौके पर निप बैक शार्प a lot than the batsman expected, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। बल्लेबाज ने इतना पूर्वानुमान लगाया था, उससे गेंद कुछ ज्यादा अंदर की ओर काफी तेज रफ्तार के साथ घुमाव टर्न लेते हुए आए और मनोहर गेंद को ऑफ साइड पर ड्राइव करना चाहते थे। फ्रंट फुट पर जाने के बाद बल्ले और पैर के बीच में अंतर छोड़ बैठे थे और उस अंतर को चीरते हुए गेंद शार्प होकर निकली सीधे ऑफ स्टंप पर और एक बेहतरीन ऑफ कटर गेंद के जरिए ये मनोहर का विकेट प्राप्त कर चुके हैं सुशांत। तो निस्संदेह बेहतरीन गेंद थी सुशांत की, क्यों सतीश? Exactly, Gopal. Absolutely, Jafar. That ball is nipped back into the batsman after pitching in the line outside the line of off time. Batsman thought that it was a slight off cutter. That's why nothing wrong with the Manohar's drive, because the width is offered, and every batsman, when he's seeing that ball is outside the line of off time, he suddenly wanted to drive the ball towards the offside region. Because of that extra turn, the extra ball is a little bit deviating after pitching in the middle and little bit outside line of off time, and that ball turns. That's why there was a little bit gap between bat and pad of Manohar, and ball just passing that gap and hitting the off time. Beautiful delivery, Gopi. Absolutely, Jafar. बिल्कुल सतीश। और विकेट पिछले गेंद पर सुशांत प्राप्त कर चुके हैं, अपने आत्मविश्वास को कुछ हद तक बढ़ा चुके हैं उस गेंद के बाद जो परफेक्ट ऑफ कटर उन्होंने फेंकी थी पिछली गेंद पर और मनोहर का विकेट उन्होंने प्राप्त किया था। नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद इकबाल, हालांकि छोटे कद के खिलाड़ी जरूर लेकिन काफी प्रतिभान्वित खिलाड़ी, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। क्रीज के कोने से ये गेंद थी, इस वक्त गेंद को रिवर्स शॉट के जरिए खूबसूरती के साथ खेल दिया इस वक्त इकबाल ने बैकवर्ड पॉइंट पर और 1 रन दौड़कर बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 18 और रन विजय के लिए चाहिए, 19 रन और चाहिए विजय के लिए, जबकि 21 गेंदें और बाकी उनकी पारी में
19 रन टू स्कोर इन रिमेनिंग 21 बॉल्स। और ताजुद्दीन इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ताजुद्दीन जान चुके हैं कि उनकी उपस्थिति इस वक्त बेहद ज़रूरी है उनके टीम के लिए। ये गेंद इस वक्त गेंद को खेला लेकिन ठीक तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। शॉर्ट कवर पर करना के हाथों में जब तक गेंद फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 पर रन्स बनाने और 18 और गेंदें बाकी है अब 20 और बराबर का संघर्ष यहां पर जारी है। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर को थोड़ा सा सीधा इस वक्त तैनात किया गया है। लॉन्ग ऑन मौजूद, मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर पॉइंट, थोड़ा सा स्क्वायर मौजूद इस वक्त ठीक सीमा रेखा के पास। और गेंदबाज सुशांत अपने अगली गेंद लेकर तैयार। क्रीज के कोने से गेंद रक्षात्मक तरीके के एब्सोल्युटली सेंसिबल। गेंद को हल्के से बल्ले पर आने दिया और लगभग वहीं पर गेंद को पुश कर दिया काफी धीमी गति से। ये देखते हुए कि करना जो शॉर्ट कवर पर फील्डर मौजूद है थोड़ी से पीछे तैनात और तेजी के साथ 1 रन दोनों बल्लेबाज चुरा चुके हैं। सेंसिबल क्रिकेट, एब्सोल्युटली सेंसिबल क्रिकेट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। दर्शक काफी मात्रा में इस मैदान के इर्द गिर्द इस वक्त भर चुके हैं, खामोशी के साथ मैच का आनंद लेते हुए। पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं मैदान पर इस वक्त छा चुका है और सन्नाटे भरा माहौल मैदान पर छा चुका है। और इस बार खूबसूरत, एब्सोल्युटली परफेक्ट इनटू द गैप एंड गेट्स इन अ बाउंड्री। ऐसा कहना पड़ेगा, just rocked on the back foot and played that one squarely into the fence at extra cover for a boundary. That is a magnificent stroke. और इस स्ट्रोक को देखा जाए सतीश तो निस्संदेह कंप्लीट बॉडी जो गेंद के पीछे था, स्ट्रोक के पीछे था और आखिरी मौके पर गेंद जैसे ही ऑफ कटर गेंद उनकी ओर आई, शरीर को पूरी तरह गेंद के पीछे लाते हुए, बल्ले को गेंद के पीछे हटाते हुए खूबसूरती के साथ कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को इस वक्त खेल दिया एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। निस्संदेह बेहतरीन स्ट्रोक। Absolutely, Gopi. That was a transferring the weight onto the back foot, isn't it? Whenever you're playing the back foot, it is so important for the batsman. Transferring all weight into the back foot, then you will get the timing behind the stroke. That was absolutely magnificent and imperious extra cover drive. And no one can play better back foot extra cover drive than the Tajuddin in the present cricket, Gopi. It's so beautiful to watch when you're playing that one. But one thing I want to mention here is that, Gopi, in underarm cricket it's not an easy to play the back foot stroke because ball is almost coming along the ground. The batsman has got enough time to go to the back foot, but he's very quickly taking his position, isn't it? Good judger of the line and length, quickly realizing the line and length, judging the line and length, and beautiful extra cover drive. ಹಲೋ ಸರ್, ಜೇಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟರ್ ವ್ಯಾಶ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ನಾವೀಗ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ವಚನನಾಥ ಕನ್ನಡಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ವಚನನಾಥ ಕನ್ನಡಕ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ತಾವು ವೇದಿಕೆಗಾಗಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಚನನಾಥ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವೇರಿಸುವ ಆತ್ಮೀಯರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಆ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ವಚನನಾಥ ಕಲ್ಲಡ್ಕ. पहले गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट पर और इससे पहले की गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 24 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। और अश्विन गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। रन्स चाहिए 12, गेंदें बाकी हैं 17 और ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ ताजुद्दीन ने गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को खेल दिया आखिरी मौके पर बल्ले के मुंह को खोलते हुए शॉर्ट थर्ड पैन पर और 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुका। और पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो चौका ताजुद्दीन ने लगाया था वो चौका KFC कोडिकल के ऊपर से दबाव को काफ़ी हद तक कम कर चुका है। अब ये दोनों बल्लेबाज जान चुके हैं कि सेंसिबल क्रिकेट अगर अपनाते हैं इस मोड पर तो निस्संदेह अपने टीम को सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर। 25 for the loss of 3 wicket. 11 runs to score from 16 balls. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाज
गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इकबाल इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई बेहतर गेंद थी। डॉट गेंदों की सख्त दरकार इस वक्त गोरी यंग बॉयज को इस मैच में वापस आने के लिए, और यहाँ पर डॉट गेंदबाज ने फेंकी। 11 रन और चाहिए 15 गेंदों पर। इमरान बल्लेबाज स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त यह गेंद इस बार स्कूप किया है कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और ये छक्का जो इमरान के बल्ले से लग चुका है, ये छक्का केएफसी कोडिकल को अपने मंजिल के अति निकट पहुंचा चुका है। इमरान और दूसरे छोर के बल्लेबाज ताजुद्दीन जो मूडबिद्रे से हैं, यहां पर अपना हुनर इस मैच में दिखाते हुए छक्का, और सिर्फ अब चाहिए 5 रन विजय के लिए। ये गेंद इमरान, और इस बार गेंद को स्कूप किया इनफील्ड क्लियर करते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा की ओर काफी लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर, और जब तक वो लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे, गेंद को ढकेले, हालांकि खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए लेकिन गेंद को वो सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल अपने हाथ के जरिए। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का हाथ से। 33 for the loss of 3 wickets. Just 3 more to get for KFC Kodigall for victory. Again, top edge, and this time he finished that one in a style. 6 number 2 for Imran, and a comprehensive victory for KFC Kodigall by 7 wickets, defeating Gori Young Boys, and with that victory they are qualified for the next round of this competition. Next match, one more good match is now coming up. Young Friends Urva will take over Adi Maheshwari, and that match starts within a short while. So news is here from the center that the skipper of Young Friends Urva won the toss, and what the decision he will take. Just we have to wait and see. And next match starts within just short while. Till then we are taking a short break and we'll be back right after this short break. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब मैच नंबर 3 की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो थैंक यू Ben, थैंक यू, yes, थैंक यू सर। ಹಲೋ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ವಚನನಾಥ ಕನ್ನಡಕ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಜ್ಜಿಬೆಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ವಚನನಾಥ್ ಕನ್ನಡಕ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. Portuguese man. Portuguese. Pandu. Yes sir, ora panna. Karan. ಬೈಜಿ ಮಾ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗಣೇಶ್ ಗಾಣದ ಪರ್ಪು ಇವರು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಣೇಶ್ ಗಾಣದ ಪರ್ಪು ಇವರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So now it's a match between Young Friends Surua versus Adi Maheshwari cricketers. But before that match, I think here is Young Friends having one new face. New face in the sense, of course, very experienced player. Bashit now will going to join Young Friends Surua, and that's why the captain is giving T-shirts of Young Friends Surua to Mr. Bashit for the season 21. And better luck, Bashit, for your journey, new journey in Young Friends Surua. Of course, Bashit, we watched him playing for NM Cricketers Mangalore, but now he is representing Young Friends Surua and captain of Young Friends Surua. Welcoming Bashit for Young Friends Surua for the season. So that's it. So man of the match for the previous match. It's a man who's really changed the complexion of the match, because one stage it looks like Gori Young Boys will going to definitely fight with that 35 runs, but just man is just came in and he just conquered the heart of cricket lovers. Is none other than Imran of Mudabidre is
played an explosive knock of 17 runs of just 7 balls, hitting 2 sixes. He was judged as the man of the match. May I request Mr. Imran to come and collect your man of the match from our chief guest. ವಚನರಥ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹಾಗೂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಮ್ರಾನ್. So congratulations Imran for your wonderful knock. And Shiva Prasad Vajranath Kalladka handing that the man of the match award to Mr. Imran for his wonderful explosive knock of 17 runs in just 7 balls, changing the complexion of the match in 1 hour. And of course, Tazuddin has also played very well. Remains unbeaten, 15 runs in 15 balls. But Imran, it just changed the complexion of the match. So congratulations. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. So one more big match. Adimeshwari Cricketers takes on Young Friends Urva, one of the big contender of this tournament. Young Friends Urva, of course, the last 2 weeks back they won the prestigious Sauharda Trophy, which is played in Central Ground. And they also started their winning runs, Young Friends Urva, and certainly they're one of the favorites of winning this tournament as well. But Adimeshwari Cricketers, I think one more reputed team. Of course, they started their journey by winning Sai Trophy, which is played at UCG Cricket Ground. And Adimeshwari Cricketers as now also they are in the top as far as the seeding is concerned. They are improving their performance each and every tournaments, and certainly they are going to be the one of the big contender of this tournament as well. So Adimeshwari Cricketers, one more the special thing here for Adimeshwari Cricketers, they are celebrating their golden jubilee. They are passing the 50 years. One of the oldest team at present in South Kent district is none other than Adimeshwari Cricketers. Congratulations Adimeshwari Cricketers for completing the successful journey of 50 years, and they are just celebrating their golden jubilee. And this is one of the happiest time, the time for the celebration for Adimeshwari Cricketers. Of course, they're definitely going to organize the cricket tournament and their home cricket ground, Mahakalipatpur Cricket Ground, Jaipur, for the celebration of their 50th year, golden year. Might be it was taken place in the March or April. And once again, we wish Adimeshwari Cricketers on behalf of cricket lovers for your successful journey, and we are hoping for some continuation of journey as well. So everything set now for the match, as after winning the toss selected to ball past Young Friends Urva, starts with the Atif, and batsman will go into strike is Anwar. The ball was back drive, opportunity of catch, second attempt is taken. Oh my goodness, it was unbelievable catch, I will tell you. Now I think it's a right time for the cameramans of Bedra Media to see how the catch has been taken, because the batsman Anwar drives that one powerfully back to bowler, and bowler has got a fingertips. Look at that one. Then short mid fielder trying for the catch, Zubair. Second attempt he takes the catch. Altogether there is a 3 attempt for 1 catch, and at last it's managed to complete that catch, and a little bit disappointment dismissal here for Anwar as the first wicket of Adimeshwari Cricketers back into pavilion. That's what Anwar doesn't want to see, because nothing wrong with the strokes, because if Atif doesn't have any fingertips onto the ball, that ball definitely will go to travel towards a deep long off boundary for 4 runs, because that ball just traveling in middle of bowler and the mid off fielder. And as the fact that Atif is trying, that was very important, but the reaction of the bowler is so important when you wanted to take the cotton ball, and because of his quick reaction, he's got a little bit hand onto that, spreading his hand, and then he got a fingertips. And the first wicket is back onto pavilion. Is Atif right arm over the wicket to the new batsman Saura all in, and suddenly picked up a single chance of run out direct. If it's directed to the Bashit, and what a tournament for him to welcome to Young Friends Urva straight in action in the second ball of the match, as second ball of the match. He's in a short mid wicket division trying for the run out, but ball misses the stump, and Saurav completes his first run, and scoreboard now
The first run comes up here for Adi Maheshwari cricketers. One for the loss of 1 wicket. Atif again with the short run of course, only 3 to 5 steps away from umpire Mohan Ayadi. Mohan Ayadi, the wearing the mask, of course, still we have to bear with the COVID-19. That's a pandemic, almost stopping the activities, the cricket activities as well. There's some lovely shot, beautifully played that one, but not quite able to get past that infielder. So batsman got a single here. And Azaz, the fieldsman there in the short mid-off region, fields the ball and batsman got enough time to complete the single. So Nikhil is off the mark, one more stylish and talented young cricketer for the side of Adi Maheshwari cricketers. And of course, the great future these two batsmen has got, left and right hand batsman. Saura once again almost deliberately edging it down, saying that of course the Saura once they wanted to play the extra cover drive, quickly realizing that was a sharp incoming delivery, just checking the stroke in the last moment and quite deliberately edging it down to short backward point region for a single. Sensible batting from Saura to pick the single. Then one of the most talented, technically very sound players, Saura. Again down the leg stump and batsman swinging his bat and ball is going a little bit further away and wait for the umpire signal. It's a by call by umpire and wicketkeeper behind the stump just missed the ball completely. One more addition, that was, look at that, if those are watching this live telecast from Bedra Media YouTube channel, and look at the drone camera, how well they managed to cover that. That was really a fantastic view of cricket ground. That ball, the drone camera is flying high in the sky, and just like in international cricket, one more single is taken in the middle. Look at that one, absolutely terrific to watch. This is one of the most beautiful view of cricket ground. The dimension of his cricket ground is concerned, it was in the egg shape. We can see that. And what a great coverage here from Bedra Media. Especially I would like to give the thanks to Mr. Sandeep from Asan, who is really covering this beautiful view of the cricket ground, the very greenery cricket ground. And this is why the underarm cricket is so popular. And when you are having the media like Bedra, the covering just that kind of quality coverages, certainly this underarm cricket definitely will go into catch. That will go into catch the cricket lovers more and more in international level as well, because this live telecast not only in India but outside the India as well. There's so many followers watching this cricket. Especially we are having so many the followers in Gulf countries, and that's why the underarm cricket, one of the most prestigious for the cricket followers of coastal Karnataka. And especially we need to spread that one. Of course, we are having a little bit boundary still Kerala, still Kasaragod from here till to Mulki, but we need to spread that one still to the state, and definitely we got an opportunity to spread that one in the national level as well. Again, almost ball is nipped back into the batsman, but ball missing the leg stump. Appeal for the run out, but umpire says it was a not out. Leg by call by umpire Shriniket, and one more addition to total scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket. The wicket of Anwar is back into pole in the first delivery of the innings. And afterwards, this is the left and right combination, Nikhil and Saurav. And try to build a partnership, which is very important for Adi Maheshwari cricketers. So, again, from the commentary box, and it's Sharan, the bowler, bowling right arm around the wicket. To Nikhil this time lofting that one, will it go and clear the fence? Yes, it does us. Even though that stroke is played against the direction of the wind, but the man, the Deepak, has got a lot of power behind every stroke he's implementing, and because of that power, that ball travels. Even it looks like that ball will not be able to clear the fence, but because of the power and the timing from that stroke from Nikhil, that ball went towards the Deepak, backward square leg boundary for a huge 6. So with that 6 score jumped into 11 on the board for the loss of 1 wicket. Sharan right arm over the wicket. Nikhil, all of this went for the single, chance of run out there. The captain trying for the shy at the stumps. One of the best pair of hands, safest pair of the hands at short mid off, trying for the run out. If it is a direct, it's going to be a work here for umpire Shriniket. Ball missed the stumps. And batsman survived from the run out. And Nikhil is just growing his confidence. And tried and started to open up as a Sharan again.
Away from us, right arm over the wicket. One more good delivery in there. One more opportunity of run out. One more throw of his matches missing the stumps. Leg by call by umpire. One more addition to total. All that we can see, the battle is on. Adimeshwar cricketers knows that they're playing against one of the top performer of the South Kenya district against young friends. They need to put some good score, and both the batsmen implementing the right strategy, putting some pressure onto the bowlers. This time again, mistiming the ball, Nikhil, but he picked up a single. That's very important. Rotation of strike, so important in limited over matches. One more addition to total scoreboard moves on to 15 on the board. 15 for the loss of one wicket. The partnership is slowly building up. Exactly 15 runs. Partnership because they lost the first wicket for a 0. The 15 runs on the board. That means for the second wicket, it's a 15 runs came from these two batsmen. Again, delicately played, but straight to the hands of fielder. Chance of run out there. But Shaura quickly going back before the throw coming from that gully region. That was good call from Nikhil, I will tell you. Quickly sending his partner back, otherwise definitely going to be that is suicider. So 2 overs completed, and then Adimeshwar cricketers looking pretty good, even though they lost the first wicket for the first delivery. But these two batsmen are really handling the pressure very well, and they got 15 runs at the rate of exactly 7.5 runs per over. And 15 means it was one of the best stat ever. Even though they lost 1 wicket in the first ball, I think it was one of the best run rate in the power play in all matches we watched today. That's indicating, Gopi, that now I think is everything is dried up. Even grass are dried up. We are not seeing any dews in the grass. Once it is no dew in the grass, and then ball is definitely going to be a little bit harder because there is no contact with the dews. So not that much of wetness in the pitch as well. So ball is now started to come very nicely to the bat. But more than anything else, the reaction of the batsman, of course, the batsman like Nikhil, very explosive. And because of that 6, I think they got that 15 runs. And the first time you're watching that power play dominated by the batting side, they got 15 runs in 2 overs. That means Adimeshwar they got a flying start. From the far end, it's going to be a Mangalore Express. Zubair brought into attack, bowling right arm. From the wicket he bowls, tried to hit that one down to square leg region. I don't think Nikhil is not happy with that stroke because the line is outside the line of leg stump. Because as the dimension of this cricket ground is concerned, I think it's so easy to hit the big 6. The batsman like Nikhil, the left-hand batsman, all beneficiary, the left-hand batsman, because of that dimension of this cricket. Oh, what a delivery. Beautifully bowled. And as a fact that umpire saying that you are coming right in front of me. You can see that umpire, Gopi, the Zubair, after his appealing, is absolutely right in front of umpire Mohan Ayadi. So very difficult for the umpire to judge whether it was a leg before wicket or not. बिल्कुल सतीश, और जैसा ही अपील मांगा गया, मोहन अंपायर ने कहा कि भैया आप अगर मेरे सामने आ जाते हैं तो मुझे क्या दिखाई देगा यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसे ही हुआ। और निस्संदेह इस पिछले गेंद पर कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है जुबैर ज़्यादातर गेंदबाजी करने के बाद वो अंपायर के सामने आ जाते हैं, इस वजह से अंपायर को कुछ साइट नहीं होता। हालांकि उनकी गेंदबाजी की शैली ऐसी ही है कि गेंदबाजी वो डिलीवर करने के बाद उनको अंपायर के सामने ज़्यादातर आना पड़ता है, और पिछले गेंद पर हमने देखा ऐसे हुआ। अंपायर को कुछ नहीं दिखा, कोई क्षति नहीं हुई, और अभी भी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। Exactly, Zubair is firing from the far end, right arm over the wicket, balls, and this time is a wide out. And off from the chance of runner there, Saurav making a mistake here without seeing the Nikhil's reaction. He's wanted a single wide call by, but might be the Saurav thought that they want to take an extra run for the wide, but Nikhil is thought that we've already got one extra run. Why should take any risk here, because we've got a good runs on the board. And but Saurav is a little bit disappointment for him that he's back into pavilion. Anyhow, single is added to total 18 on the board for the loss of 2 wickets. ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬಂದರ್ 11 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈ ಕೂಡಲೇ ವಿವೋ ಪೆಂಡಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ
ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬಂದರ್ 11 ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿವೋ ಪೆಂಡಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much, Prashant, and thank you very much for the players, band players, traditional band players of here in this Bantwal cricket ground, SVS cricket ground. As a first ball, next ball, oh, that was a beautiful delivery, and it's gone. It's gone, and Nikhil is playing across the line of the delivery. But this time, I think as an umpire having no hesitation at all in the mind, because Zubair is not in front of umpires. The umpire has got a good view of the ball. Ball is nipped back into the batsman Nikhil and finding himself right in front of wicket. And Zubair strikes here for young friends. Adi Maheshwari cricket has lost 2 big wickets back into pavilion. Very melodious traditional bands and saxophone. We would like to give thanks to that all the players, saxophone players and band beaters, on behalf of organizers and on behalf of spectators. But what happening here for Adi Maheshwari cricket? Lost 2 wickets in 2 deliveries. One is run out, quite unfortunately, and second one is the ball is nipped back into the batsman, and Zubair got a big wicket off Nikhil. Now it's the right time for young Prince Rua to tighten up the screws, but I think it's the right time for these 2 batsmen to handle the pressure for Adi Maheshwari cricketers. So 2 new batsmen are in the middle. Right above the wicket, beautifully ball, nipped back a lot in the occasion by Zubair. He's such a dangerous batsman when he was in a dangerous bowler when he's in a rhythm, and very difficult to stop him, and he's firing in from the far end, and he's picked up a wicket as well. So far Zubair is so good for young Prince Rua. Right above the wicket, bowls, and batsman Rizwan tried to pick the single by pushing the ball down to short cover. Ashwin, the fieldsman there in the short cover, quickly moving to the direction of the ball, and what a great over there from Zubair. Tidy over, wicket taking over as well. 3 overs completed, and Adi Maheshwari cricketers little bit into the back foot in this over. Once they looks in the front foot, 15 runs in 2 overs, Gopi, and 2 overs after 2 overs 15, Gopi. Now it's 17, means 2 runs and 2 wickets in that over. It is outstanding bowling performance from Zubair. बिल्कुल, जुबैर जब कभी भी गेंदबाजी पर उतरते हैं सतीश, तो अपने क्षमता के अनुसार गेंदबाजी करते हैं. ऐसे कम उदाहरण देखे गए हैं जिसमें जुबैर को पिटना पड़ा है, और यहाँ पर अपने एबिलिटी के क्षमता के अनुसार उन्होंने गेंदबाजी की, और विकेट भी उन्होंने प्राप्त की. विकेट भी उन्होंने इस ओवर में प्राप्त किया, लेग बिफोर विकेट के रूप में. सिर्फ 2 रन प्रदान 3 रन उन्होंने इस ओवर में प्रदान किए, और काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी उन्होंने की. एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया, और निस्संदेह एक बेहतर शुरुआत वो गेंदबाजी के जरिए अपने टीम को यहाँ पर दे चुके हैं. 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है सतीश, और 3 विकेटें, हालांकि 3 विकेटें ज़रूर गिरे आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स के, लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी उन्हें मौका है इस मैच में वापस आने के. एक बेहतर साझेदारी, पार्टनरशिप जो उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर कर सके, बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर कर सकता है. और जहाँ तक सवाल है, उस बेहतर साझेदारी की तलाश में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अत्यंत अनुभवी खिलाड़ी आदि महेश्वरी के कमल इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए. ये गेंद अंदर की ओर आती हुई अश्विन की गेंद थी, और गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा और ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और फॉलो थ्रू में अश्विन ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अश्विन एक बार फिर से तैयार कमल के लिए. गेंद को इस बार फिर से खेलना चाहा, कनेक्ट नहीं कर पाए. बैक टू द बॉलर की दिशा में अश्विन बेहतर लेंथ लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे कि वो खुलकर स्ट्रोक से यहाँ पर खेल सके. तो इस वक्त कमल एक बार फिर से नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज रिजवान के साथ कुछ बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौट चुके हैं. एक बार फिर से कमल की गेंद गेंद सीधे टकरा चुकी है लेग स्टंप पर, और यही तो खासियत है अश्विन की. पिछले 2 गेंदों के मुकाबले ये गेंद बिल्कुल हटकर थी. ये गेंद थी बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ अंदर की ओर आई, और कमल इससे पहले की गेंद को खेले, गेंद मैं समझता हूं उनके बल्ले के इसको इनसाइड निक ऑन दैट, बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद सीधे जा टकराई लेग स्टंप पर. गिल्ली बिल ऑफ बेल्स ऑफ होता हुआ, और एक बेहतरीन गेंद की बदौलत ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं. तो सतीश
15 रन थे 2 ओवर के बाद, चौथा ओवर जारी है, सिर्फ 18 रन है, 4 विकेटें गिर चुके हैं और अंतिम 2 ओवर में मैं कहता हूँ अंतिम 8 या 9 गेंदों में एक बेहतर कमबैक यहाँ पर यंग फ्रेंड्स उरुआ के गेंदबाज कर चुके हैं। अब आगमन हो चुका है किशन, एक और अनुभवी बल्लेबाज आदि महेश्वर की ओर से, और वो इस वक्त साथ निभाएंगे रिजवान का, जो एक और बेहतर बल्लेबाज आदि महेश्वर की ओर से, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद। अश्विन की गेंद इस बार किशन के लिए लेग स्टंप पर आती है, स्टंप्स को कवर किया, गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहा, मोड़ नहीं पाए और आखिरकार रन बल्लेबाज को नहीं मिला। डॉट गेंदों पर डॉट गेंदे इस वक्त फेंकते हुए गेंदबाज यंग फ्रेंड्स रुआ के, और दबाव हर गेंद पर, हर डॉट गेंद के बाद बढ़ता हुआ इस वक्त आदि महेश्वरी के बल्लेबाजों के ऊपर। यह गेंद इस बार गेंद को खेल दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, और गेंद एक रन बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं। थोड़ी सी उछाल लेते हुए लेग कटर गेंद बाहर की ओर निकल रही थी, आखिरी मौके पर फ्रंट फुट पर गई गेंद, हालांकि बल्ले के टॉप एज पर जरूर टकराई, लेकिन खाली क्षेत्र पर टिप्पा खाते हुए और गैप पर गेंद गई थी, तो इस वजह से एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट कराते हुए गेंदबाज अश्विन, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के फील्डर को डीप एक्स्ट्रा कवर पर थोड़ा सा स्क्वायर तैनात किया गया। ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए रिजवान के लिए तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, और आखिरकार निशाना नहीं टकराया, और इस बीच बाई का इशारा, और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। तो कुल मिलाकर सिर्फ 2 रन इस ओवर में बने, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। तो अंतिम 2 ओवर में जुबैर और अश्विन एक बेहतर ऑफ 4 विकेट इन दी ओवर नंबर, लेग बाय का इशारा, और गेंदबाज जुबैर तैयार, दाइनात ओवर द विकेट। यह गेंद इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी ऑफ कटर गेंद, और बल्ला पहले हटा गए, गेंद बाद में आए, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन टू अर्ली एंड द बॉल केम क्वाइट लेटली, एंड बिकॉज ऑफ दैट नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैट एंड बॉल। और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट स्कोर्ड बाय आदि महेश्वर क्रिकेटर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स विद एवरेज ऑफ एग्जैक्टली 4.80 रन पर ओवर। नेक्स्ट मैच बंदर 11 विल टेक्स ओवर टीम एलिगेंट, and one more good match is coming up right after this match, and because of that I request to the both teams players to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. तो पहले ओवर में 5 रन बने, दूसरे ओवर में 10 रन बने, जो बेहतर रहा आदि महेश्वरी के लिए। उसके बाद तीसरे ओवर में 3 रन बने, चौथे ओवर हुआ जिसमें 4 रन बने। तो अगर दूसरे ओवर को निकाल कर देखा जाए तो 4 ओवर में यंग फ्रेंड्स रुआ के गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की है, और दूसरे ओवर में जब 10 रन बने थे तब ऐसा लग रहा था आदि महेश्वर क्रिकेटर्स के बल्लेबाज अपना लय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूं सतीश अंतिम 3 ओवर में बेहतरीन कमबैक यंग फ्रेंड्स रुआ के गेंदबाजों ने किया है। Yes, Gopi, that's only because of the wicket of Nikhil. I think make a lot of changes in this game, because Nikhil is a kind of batsman who can dominate the bowler, any kind of bowler. After getting the 6, losing him in that situation, I think a big blow for Adi Mahesh cricket. That's why they not only lost the wicket, but even the run rate is not that much of good enough. But the quality bowlers, isn't it, Gopi? They got Zubair, they got Ashwin, and they got Sharan, they got Atif, all that professionalist. And one more good record here to see that Ashwin's actually he was the master of bowling in cutter and out cutter, and the previous 3-4 days back, I think in UCG cricket ground, he shows his potential in batting as well. He's got a 52 runs under his name, and it's the longest format of the match is concerned. He's the master of playing the 52 runs and 5 wickets also in that match for Ashwin. So he's the one who got 62 runs as well in this UCG cricket ground. That means his potential he's got playing the longest format of a game is concerned, and such a gift to have young friends, the player like Ashwin. बिल्कुल, अश्विन एक परिपूर्ण ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, ना सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी वो अपने हुनर दिखाने में माहिर है। जैसा कि आपने फरमाया 3-4 दिन पहले उन्होंने 52 रन बनाए थे और 5 विकेट लिए थे। उससे पहले 1 या 2 साल पहले 50 ओवर के फॉर्मेट पे उन्होंने 160 रन बनाए थे, और इसके जरिए वो साबित कर चुके हैं कि बल्लेबाजी में भी वो कितने सक्षम हैं। और यहाँ पर 6ठे ओवर की पहली गेंद थी, ऑफ स्टंप पर आतिफ की गेंद थी, और गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड बैन पर। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है।
जोखिम भरा रन, लेकिन यशस्वीतम दोनों बल्लेबाज यहां पर पूर्ण करते हुए। दोपहर के 12:35 यहां पर बच चुके हैं। सूरज आसमान की बुलंदियों को यहां पर छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और जैसा जैसा वक्त गुजरता जा रहा है धूप की तीव्रता भी इस मैदान पर बढ़ती नजर आती हुई। मैदान की दाईं ओर 2-3 घने वृक्ष अपने परछाइयों को फैलाए हुए सीमा रेखा के पास, और उस परछाइयों के तले कई प्रेक्षक इस वक्त बैठे हुए, कुछ बैठे कुछ खड़े हुए इस मैच का आनंद लेते हुए। और मैदान की बाईं ओर 2 या 3 वृक्ष और अपने परछाइयों को डाल के परछाइयों को पहना चुके हैं, और इस बार गेंद को ड्राइव किया, लेकिन नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज पर गेंद टकराई थी, और इस बीच जब तक आतिफ गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो मैदान की बाईं ओर भी 2-3 घने वृक्ष जो कि अपने डालों को फैला चुके हैं मैदान पर, और उस घने वृक्ष के परछाइयों तले कई प्रेक्षक इस वक्त बैठे हुए इस मैच का आनंद लेते हुए। कुल मिलाकर एक सुंदर सा नज़ारा हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। एसवीएस हाई स्कूल बंटवाल का सुंदर सा क्रिकेट मैदान जो कई मशहूर श्रृंखलाओं के लिए गवाह है, और यहाँ पर एक और मशहूर श्रृंखला, एक बेहतरीन श्रृंखला, एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती भी लेग बाई के अपील को नकार दिया था इस वक्त, और इस बीच 1 रन का इजाफा 27 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए। आतिफ तैयार ताइनात ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, गेंद गली फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है, ऐसा कहना पड़ेगा। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद पर पहुंचना चाहा, गेंद पर बल्ला अड़ाया, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में, और गेंद बल्ले के टॉपेज पर टकराने के बाद आसानी के साथ लपक ली गई पॉइंट फील्डर द्वारा। एक और विकेट गिर चुका है, विकेट नंबर 5। 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। Really the testing time continuing here for the batsmen of आदि महेश्वरी। निस्संदेह परीक्षार्थ समय इस वक्त गुजरता हुआ आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों के ऊपर, और यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाज अपने क्षमता एबिलिटी के अनुसार इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। नए बल्लेबाज The number 7 batsman is now coming out to the middle wearing number 77 jersey, इम्तियाज, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। और आतिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ, और आतिफ तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर। यह गेंद इस बार इम्तियाज के लिए गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, और इससे पहले कि रियाज गेंद को फील्ड करे, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 28 6 ओवर की समाप्ति, 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल बाकी। निस्संदेह इस वक्त आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स के बल्लेबाज रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए। जेडी बॉयज ट्रॉफी 2021, जेडी बॉयज ट्रॉफी 2021, और इस श्रृंखला का दूसरे दिन का चौथा मैच, कुल मिलाकर बी पूल का तीसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स और यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच में। और इस श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया जेडी बॉयज बंटवाल ने। निस्संदेह ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति करती हुई। लाइव कवरेज कोई कहने की जरूरत नहीं है। बेद्रा मीडिया श्रीमान जनाब इरफान इनके सारथ्य में बेद्रा मीडिया के जरिए यूट्यूब पर लाइव कवरेज इस वक्त दिखाया जा रहा है, और निस्संदेह हाई व्यू हमने कुछ देर पहले देखा, जो कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने बयान किया था, जब हाई व्यू मॉनिटर पर दिखाया जा रहा था। निस्संदेह मानो ऐसा लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर चल रही हो। इतनी बेहतर लाइव कवरेज इस वक्त देते हुए बेद्रा मीडिया के सर्व सदस्य श्रीमान जनाब इरफान इनके सारथ्य में, निस्संदेह हम उनका अभिवादन इस बेहतरीन लाइव कवरेज के लिए यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर 7वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ। गेंदबाज अश्विन अपना दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए, और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार इम्तियाज। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ऑन साइड पर मौजूद 4 फील्डर मौजूद। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान एक फील्डर मौजूद है। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ पर कोई इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर मौजूद। लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ पर फील्डर इस वक्त मौजूद 20 गज के दायरे के अंदर। शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन और
गली और पॉइंट के दरमियान एक फील्डर मौजूद है। गेंद इस बार चिप किया खूबसूरती के साथ, गेंद लॉन्ग ऑन पर बढ़ते हुए और इस बार 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा। और जो कि आउटफील्ड पर घने घास, ग्रास जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जो घने घास है उसकी वजह से गेंद अपने रफ्तार को खो दी थी आखिरी मौके पर, और जब तक गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद फील्ड और लॉन्ग ऑन पर फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। यह गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा विद ट्विस्टेड बैट, चूंकि इस वक्त निशाना दागा था इम्तियाज ने, और निशाना दागने के बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया हताश मनोभावना के साथ कि निशाना चूक चुका है। और इस बीच 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूरा कर चुके हैं और अश्विन एक बार फिर से तैयार। यह गेंद दिस इज एन अगेन इट्स अ बिग, किशन के बल्ले से यह छक्का जड़ चुका है। इस बार उन्होंने ठान ली थी कि इस गेंद पर उन्हें कुछ करना है, और गेंद की गति को भापते हुए, गेंद की टर्न को पहचानते हुए, गेंद को मिडल ऑफ द बैट कलेक्ट करते हुए डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर डिस्पैच करने में सफल 6 रनों के लिए। इस बार गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर किशन ने, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर 38 रनों पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 10 रन अब तक इस ओवर में बन चुके हैं। एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। अश्विन तैयार, दाईं हाथ ओवर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए इम्तियाज के लिए धीमी लेकटर गेंद, इम्तियाज रन लेना चाहते थे और इस बीच उनका विकेट यहां पर गिर चुका है। अंतिम गेंद अब्बा की, छठा विकेट गिर चुका है। 38 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एंड द लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। नंबर 8 बल्लेबाज का अब इंतजार है, और नंबर 8 बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान पर उतरते हुए लंबे खत के खिलाड़ी, और काफी तेज हवा इस वक्त मैदान से दाएं से बाईं ओर गुजर रही है। जिस तरह से हमसे दूर वाले छोर पर सीमा रेखा पर गाड़े गए 3 रंगों के झंडे इस वक्त लहरा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख इस वक्त काफी तेज है। मैदान की दाईं से बाईं ओर 3 झंडे इस वक्त गाड़े गए, लाल, सफेद और हरे रंग के, इस मैदान की शोभा को और बढ़ाते हुए। और इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, बोल्ड आउट के रूप में विकेट गिर चुका है। एक और विकेट अश्विन के खाते में। तो इस तरह से द इनिंग्स इज अप फॉर आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स एंड दे फिनिश्ड विद 38 for the loss of 7 wickets in their stipulated 7 overs, and now the target for young friends Urva is 39, and as far as the required run rate is concerned, just over 5.5 runs per over they have to score for victory. और मैं समझता आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स को निस्संदेह उनके गेंदबाजों को जीतोड़ मेहनत मुशक्कत करनी होगी अगर उन्हें यंग फ्रेंड्स उर्वा के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप को 38 रनों के अंदर रोक कर रखना है। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन देयर इनिंग्स। और उनकी पारी चंद लम्हों बाद इस मैदान पर शुरू होगी। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यंग फ्रेंड्स उर्वा की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। ಹಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಪೆಂಡಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದರ್ 11 ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಂದರ್ 11 ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಗೆ ಕೂತು ಆದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿದಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾರನ್ನು ನಿಂತು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೆಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ.
ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರವೇ ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಮ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಬಂದರ್ 11 ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಡೋರ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಆಟಗಾರರು ಈ ಕೂಡಲೇ ತಂಡದ ಧಾವಿಸಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಸಹಕರಿಸಿ. for sports. Olympic sports. Thank you very much, Prashant and Gopi. So at last, because of 1-6 came from the bat of Kishan in the over number last, and Adimahesh cricketers, they got run what they wanted at last. Of course, not a big total to chase down, but something which is looks like once it was under 30 runs, they will go into restrict. But because of the 6 came from the bat of Kishan, it looks like the match is widely open for both the teams. As Adimahesh cricket a little bit got opportunity to bounce back when if they bowls well, fields well. And it's definitely going to be a good game in front of huge spectators out here in this most beautiful SVS cricket ground here in Bantwal. So signal straight away came from umpire Shiniket at square like umpire Mohan Iyadi. 38 runs to win this match and 39 to win this match. In fact, as a required run rate is concerned, and exactly it's just over 5.5 runs per over, the required run rate for young friend Surwa to win this match. Of course, it looks to be a little bit easy, but sometimes if the wickets falls in the beginning and 2-3 good overs, economical overs, straight away pressure to the chasing teams, especially in this cricket ground. And wait and see how well Adimahesh cricketers will go into defend this 39. Of course, they are celebrating their 50th year Golden Jubilee celebration, one of the most oldest team in Underarm cricket history. Adimahesh cricketers, they definitely wanted to celebrate with the victory, and wait and see as Imtiaz starts the delivery. Right arm over the wicket, bowls, and looks like the little bit what you call that batsman trying for the big shot on the offside region, but after one bounce ball is went to the hands of a wicket keeper, and there's no possibility of any run. Imtiaz, the very good economical bowler for the side of Adimahesh cricket. Not an easy job to do when you are operating in the power play overs, when you need to keep only 2 fielders outside the circle. The accuracy of line and length is so important for opening bowlers. Imtiaz, right arm over the wicket to Basit. Basit drives that on right. Little looks like it was Ajay there in the short mid wicket, but out of the reach of him, just passing left of him. So batsman picked up a single there. One more ready person comes up here for young friends who started their journey, and Mansoor is a batsman will going to take the strike. Of course, Mansoor missed the tournament which is played at Katipalla, that Friends Colony Trophy 2021, but young friends was pays the penalty for that because they missed the service of Mansoor behind the wicket. What a delivery there from Imtiaz. Absolutely terrific piece of bowling there from Imtiaz, seeing the potential of the batsman, as Mansoor very strong of his legs, is a very strong hitter of the ball in the onside region. He's just targeting the line which is a little bit outside the line of off stump, and there is no possibility of any run. Imtiaz again away from us, right above the wicket, tip that one. Look at that helicopter shot. I already mentioned that he's a very strong player of his legs, and immediately that ball on the middle stump, but such a wonderful cricketer, striker of the ball, as Mansoor played that helicopter shot quite nicely down to mid wicket region for a single. He's off the mark, and both the batsmen is off the mark, 2 without loss of any wicket. Imtiaz wide of the crease, balls beautifully bowled there from Imtiaz. Batsman so lucky in the occasion because just inches that ball missed the off stump of Bashit. Bashit little struggling, little bit shaky start from him as he played 2 dotted deliveries already in this over as Imtiaz. Right arm over the wicket, bows, shuffling across the line of the delivery and plays it quite nicely down to deep wideish long off region for a walkable single. With that single, young friend Surwa got 3 runs after completion of first over, and it was a good start given by Imtiaz. That's what start Adimahesh cricketers required when you are depending the 38 runs. And that was a good start given there by Imtiaz. But it was a slow start, but steady start from young friend Surwa. They knows that they're not chasing a big total, but sometime in this cricket ground, in this condition, the 38 is definitely going to be a not that much of easy target to chase down. So discussion is going on here between captain and even the discussion with the
drone camera as well, joining that discussion by coming very close to the fielders of Adimash cricketers, what they're really discussing, the game plan. But unfortunately, captain of Young Friends will not be going to hear that one. What could be the strategy to be implemented? That's all about the Bedra Media, isn't it? Because nowadays young Underarm cricketers become so popular because of the media's getting some live telecast, and that was we would like to give the organizers a special thanks because they are putting that effort to give some kind of entertainment for the spectators. Those are failed to come here in the ground, they can watch the matches quite relaxedly by sitting at home, and while you are walking, just putting your mobile phone in front of you and enjoying the game of cricket. Once again, thanks to the organizer, JD Boys, because giving such an opportunity for the cricket lovers to watch, because we have got a lot of spectators abroad for Underarm cricket as well. So coming back to the second over, from the far end, it's Rizwan is a bowler introduced by the captain of Adimeshwari. He's bowling to Bashit right above the wicket. Misjudgment straight away there from Bashit. A little bit struggling Bashit as he thought that it might be a wide, but I think it's almost 2-3 inches inside the line of that wide. So no question about wide ball. Already it was a 25k viewers watching this live telecast of this most beautiful and wonderful cricket tournament, JD Boys Trophy 2021. Oh, the bad line down the leg stump, and Bashit swinging his bat. Quite unfortunately, he's missed the ball completely. The Bashit little bit under pressure now. Already 3 more dotted balls in the previous over. Now already 2 dotted balls to start with. That means the Mansoor straight away coming to the middle, giving some tips. He's an experienced campaigner. It's not an easy job to do, isn't it, Gopi? Whenever you are coming to the new teams, a little bit under pressure situation. This is all about the mind game. Cricket all about handling the pressure is so important as well as, again, Rizwan. Right arm over the wicket to Bashit. Bashit drives it and tried to break the shackle, but couldn't manage to break the infield as ball went straight to the hands of short mid wicket. Now pressure is on. That was a good thing there by Adimash cricketers. That straight away they're putting some pressure into the batsman Bashit there after playing the 3 dot balls. Wait and see what he will going to do for the next delivery. As the Rizwan so clever in this over so far. 3 dotted deliveries. Right, I'm a wicket balls. This time chip that one set to the hands of fielder. Again the dot delivery. 4 dotted deliveries. Now what we can see here is that young friend Surwa little bit started to feel the pressure. 3-4 without loss of any wicket. The second over in progress. Adimeshwar cricketers looks like they're all putting their 100% in this bowling department, especially the Rizwan in this over. 5th time in this over. Right arm over the wicket. Balls again. Looks like going to be a chance of run out, but the bowler missed the opportunity. It's definitely going to be a suicider. The last thing doesn't want to do here is the Adimeshwar cricketers to missing the opportunity, golden opportunity to make the run out. But our band beater thought that they got a wicket here, but there's no wicket, but a single. Altogether, I want to say that because of that band, because of that musical, this atmosphere becomes a festival atmosphere in this SVS cricket ground. Thanks a lot for organizers once again putting that all effort, bringing everything which is possible to entertain the crowds and cricket lovers to watch this most prestigious cricket tournament. But Bashit at last managed to get the single in the 5th delivery of this over. And Mansoor is back into pavilion. And this is very interesting to see, Gopi, what Mansoor will going to do here, because they got only 4 runs in the last 11 deliveries. And this is the last delivery of the over number 2, and at the same time the last delivery of the power play as well. So Mansoor suddenly he wanted to break the shackle. So important for the bowler to keep cool and bowl a good line to this danger man. Mansoor is now get ready to face the next delivery of Rizwan. Right arm over the wicket, he bowls. This time Mansoor, chance of run out there. Again they missed out. Altogether what we can say, the Adimeshwar cricketers, this is the only single runs coming from that over of Rizwan. That is a fantastic start here for Adimeshwar cricketers. Young friends who were opening batsmen struggling, especially the Bashit struggling against the bowling. Just 4 runs on the board, Gopi.
2 overs passed. And what do you think about this batting display from this opening batsman? Especially the Bashit might be feeling under pressure because not an easy straight away coming to the big teams like Young Friends. And I think the captain making a little mistake looks like that because sending straight away Bashit to open the innings. And he's just feeling the pressure. But no doubt that he's a very quality batsman. बिल्कुल बासित जो कि रेगुलर ओपनर नहीं है यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए, हालांकि आमतौर पर अरशद आया करते हैं, आज शायद अरशद नहीं खेल रहे हैं मेरे ख्याल से, तो इस वजह से बासित जो कि पहली बार यंग फ्रेंड्स उर्वा का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, उन्हें एज ए ओपनर प्रमोट किया गया है, लेकिन वो अपने क्षमता के अनुसार पहले 2 ओवर में बल्लेबाजी नहीं कर पाए। हालांकि गेंद को ठीक तरह से साइड करने में या फिर खेलने में वो काफ़ी हद तक दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। और जहाँ तक पहले दो पावर प्ले ओवर्स का सवाल है, सतीश मैं कहूँगा निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन आदि महेश्वरी के दोनों आरंभिक गेंदबाजों ने दिया। सिर्फ 4 रन 2 पावर प्ले ओवर में, वो भी जब मंसूर जैसे घटानुघटी पावर प्ले स्पेशलिस्ट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हो, तब आप उनके खिलाफ और बासित के खिलाफ अगर पहले 2 पावर प्ले ओवर में सिर्फ 4 रन प्रदान करते हैं तो निस्संदेह ये क्रिकेट के किसी भी दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेहतरीन गेंदबाजी ये कहलाती है। तो लेट्स स्ट्रेट अवे कमिंग बैक टू द इक्वेशन, 34 टू गेट इन रिमाइनिंग 30 deliveries, and now the asking run rate first time gone over to 6 runs per over, 6.80 runs per over। और निस्संदेह मैं कहूँगा सतीश, अगर यही गेंदबाजी के लायक हो वो आने वाले ओवर्स में भी बचे हुए गेंदबाज आदि महेश्वरी के बरकरार रखते हैं तो निस्संदेह यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों की समस्याएं और बढ़ सकती है। Exactly, Gopi. It was a good point because 2 overs, I think, not quite enough for Adi Maheshwari cricketers because they need to continue that start which is given by the opening bowlers, the remaining bowlers, because Young Prince Urva, they knowing for bouncing back at any time. As this the kind of mistakes really not required for Adi Maheshwari cricketers as Ajay bowls down the leg stump. It's going to be a wide. One more addition to total scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket. Beautifully bowled there by Ajay. One of his weapon and is gone. Appeal for leg before wicket, but certainly ball is hitting outside the line of off stump of the batsman. But that was a struggled innings is comes in end of Bashit and frustration. And because of that frustration, pressure and disappointment, everything we can see in the face of Bashit, and the result in the end is just almost suicidal. I think he knows that was no chance at all for the run, but he runs because he wants to sacrifice his wicket because everything is going against him. And first wicket of Young Friends who are back into pavilion at the score of 5. 5 for the loss of 1 wicket. Thank you very much for melodious music, and we're definitely going to entertain the crowds in this most beautiful cricket ground. And Adi Maheshwari cricket at last managed to pick the wicket. The Bashit is frustrated and pressure is comes in and as back into pavilion. And the new batsman just came into middle is Imtiaz. Imtiaz is a former captain of Young Friends who leads this team very successfully in the last 2 years. And what we're talking about, the beautifully played there by Imtiaz down to fine leg region. They're coming back for the second. Not a good piece of fielding there from Kishan. Little bit fumble from him. And that's where the batsman got opportunity to get a couple of runs here. And that was Imtiaz's special, as he was very good in sweeping the ball. He's a clever cricketer, the cool customer. I know exactly they didn't got enough runs on the board. And straight away knows that the asking run rate is going over 6 runs per over as well. So important for Young Friends to rotate the strike in each and every ball. As Ajay searching for some dotted delivery. So far he's bowled 3 balls. 1 is a wide, 1 is a couple of runs and 1 wicket. Of course it was in the form of run out. Ajay again with a short run up. Right arm over the wicket. Bowls Imtiaz, beautifully bowled there by Ajay. That was a good piece of bowling. Good thinking there from Ajay. Seeing that the batsman going for the sweep shot, then he was just a little bit changing the direction of the delivery. Little bit outside the line of off stump and batsman completely beaten. Here is Ajay again, right arm. Oh, what a delivery! That was a pitch of the delivery. This is an outstanding incoming delivery and the fastest delivery. No chance at all for the batsman to react. This is one of his weapon, Gopi. Ajay is a member of Hanuman Cricketers. Who represented Hanuman cricketers for 30 overs format of the games. I know him very well. One of his weapon, if he bowls that tough ball,
in the middle and leg stump, and no chance for the batsman to react because ball has got that much of speed. You can see the face in that ball. Because of the face, Imtiaz has got bowled out. बिल्कुल ये प्रमुख अस्त्र है अजय की गेंदबाजी का। और जहां तक सवाल है, अजय आमतौर पर धीमी गति की गेंदबाजी किया करते हैं और बीच में कुछ ऐसे गेंद फेंकते हैं जो एक्स्ट्रा क्विकर, जो पिछले गेंद पर हमने देखा था। और इस गेंद पर बल्लेबाज इम्तियाज, जो एक बेहतर फुटवर्क के बल्लेबाज जाने जाते हैं, वो भी इस गेंद पर कुछ नहीं कर पाए और गेंद जितनी तेजी के साथ अंदर की ओर आई कि इम्तियाज को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये एक प्रमुख अस्त्र है और खास तौर पर सतीश, बिल्कुल सही बात आपने कहा, वो हनुमान क्रिकेटर्स का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं कि किस तरीके से वो अपना गेंदबाजी या बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हैं और यहाँ पर निस्संदेह बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है। Absolutely. Oh, this is not a good line, but chance of catch there. Oh my goodness, it's going to be a prize wicket. Can you believe there's a bad delivery? Sometime it was a part of cricket. Sometimes a good ball never going to give the wicket, but sometimes it's a bad ball, but a good day for you. Even the bad ball will going to give the wicket for you, and that was a perfect example for that. The bad line down the leg stump, batsman instead of hitting the ball, just flicking the ball off the toes, not able to keep it down, and deep backward square leg fielder takes a catch, and young Prince Surwan deep in trouble. What a great performance continues here for Madhi Maheshwar cricketers. What we are talking about, Gopi, one of the weapon, sometime, what is not the weapon, it was one of the missile from Ajay to pick the wicket of Imtiaz. But second wicket is, I think it's going to be a prize wicket. Not that much of good delivery. If you explain that delivery, ball is down the leg stump, a hittable delivery. But a batsman is just flicking the ball, pays the penalty ball. And now Ajay has got opportunity to get the hat-trick here. Will it going to get a hat-trick here? But Atif is one more good performer of the performer from the bat. Is one more good delivery indeed. That was again targeting in the middle end of stump. Quicker one there from Ajay, but not quite able to beat the bat of Atif. He picked up a single. One more good over is completed. Wicket taking over there from Ajay. 2 wickets in this over as well for Adi Maheshwar cricketers. Completion of over number 3. Chasing 39 to win this match. The battle is on. Equal battle is on. But the Adi Maheshwar cricketers looks like they're in upper hand. And the scoreboard is just 8 runs on the board. Now just coming back to the equation, Gopi. If you deduct 8 from 39 and 31 runs required from 24 deliveries. At one stage, 39 required from 42 deliveries. Now it's all in sudden because of 3 good overs. All in sudden we can see that 24 balls remaining and 31 runs required. And ball, of course, run is winning a race against the ball. And now difference is going almost 7 runs difference between run and ball. And that 7 definitely going to be a big difference, especially in this cricket ground, if you bowl well the remaining 4 overs. So wait and see how well young Prince Surwan managed to bounce back in our remaining 4 overs. And wait and see how Adi Maheshwar cricketers will going to continue that pressure to the batsmen of young Prince Surwan. That's why they doesn't want to change the bowling. They wanted to continue with the very experienced campaigner of the side, Mr. Rizwan, who bowled very well the previous over. So that was, I think, a good strategy. They doesn't want to bring any new bowler in this situation. They want to keep the pressure goes on and give some strike for young Prince Surwan. As again, Atif and Mansoor, the 2 batsmen are in the middle. They got ability of changing the complexion of the match. They got the potential of hitting some big shots as well. But here is a sensible batting required here for young Prince Surwan if they wanted to win this match. What a great game is going on here. Rizwan bowls. Atif beautifully played that one. Delicately played that one down to deep fine like boundary for 4 runs. Now straight away the pressure is off from young Prince Surwan. Just like I mentioned before the commencement of this over, the kind of batsmen are in the middle. Those are very good in the pressure situation. And that was just like I'm always talking about some players, though, loves to play under pressure. And these 2 batsmen, I think they loves to handle the pressure. Look at that one. That was nothing much effort from the bat. Just using the face of the bowler and just closing the face of the bat. And he knows that fine leg inside the ring, deep backward square leg is too far. Once he beat the infield, definitely going to be a boundary. Delicately played there by Atif to get the boundary. Then scoreboard moves on to 12 on the board.
the first time we are seeing that confident strokes coming from the bat of the batsmen of young friends Surwa. So Rizwan little bit under pressure as the first ball delivery is delivered boundary by the batsman. Again, beautifully bowled, equally well played by Atif. That was sensible cricket, absolutely sensible cricket after getting that boundary. It never looks like he's going to go hit one more big shot. He knows that he got what he wanted in this over already in the first delivery. So his job is to rotate the strike and just tapping the ball in front of that point region and picked up a single then. And scoreboard was on the 13 on the board. For the next match, one more good match is coming up. Bandar 11 takes on Team Elegant, and a new series, captain of Bandar 11 after winning the toss, they elected to, looks like they elected to field first. And again, from the far end, Rizwan. Right, over the wicket to Mansoor. Mansoor trying for the helicopter shot, but didn't got elevation what he was looking for. But he gets a single. That's very important in cricket, limited matches, rotation of strikes. Now 3 balls, already 6 runs came for young friend Surwa. Little bit that pressure is off in this over for young friend Surwa, but job is not yet over. Rizwan bowling from the far end, right arm over the wicket to Atif. Atif looking for the big shot. Chance of run out there in the non-strikers end. Ajay is the man in the picture, but I think it's the batsman very quick than the fielder and the bowler, and the batsman just survived from that run out. Really, it looks like it's all that the fans of the followers of young friends, they got a heart in their mouth when the bails are off, wickets are fell in that non-strikers end, but the batsmen are survived in that occasion, just reaching his home in a time, and that was a quick and risky single taken by the batsman. One more addition to total scoreboard moves on to 15 on the board. 15, this is over number 4 in progress. Out of that deliveries, I think Mansoor has got a less strikes, just a 4 deliveries faced, and now he's back into strike now. Rizwan, right over the wicket balls. Again trying for the helicopter shot. This time the line is pretty good in the occasion. Ball is not, of course, a little bit reducing the face in the occasion as the Rizwan bowled a slow over one. But Mansoor couldn't manage to flick that one off his legs. But straight away Atif is just coming to the middle. Maybe Atif knows that don't lose your patience. Patience is key to everything. One can't see the face in the boiling water rather than the warm water. That's what Atif is just talking about his partner. Don't lose your patience. One partnership is much required for young friends. But Adi Maheshwari cricketers, they need to pick the wickets in the regular intervals. Right above the wicket bounce. Oh, beautifully bowled. Absolutely fantastic delivery. To finish the over number 4. Pressure is on. Even the boundary came in the first delivery of this over. But a good bounce back there by Rizwan in this over. Altogether 7 runs came from that over. 4 overs completed, chasing 39 to win this match. Young friends was still searching for the right track, struggling in the middle. They are 15 on the board for the loss of 3 wickets. And Gopi, all in sudden that once it looks like when Rizwan is considered bound in the first over, looks like young friends will going to dominate afterwards. But it was a good comeback by the Rizwan. But still, I think Adi Maheshwari cricketers, they got a full control over this match. What do you think about this? बिल्कुल सतीश, आदि महेश्वरी के गेंदबाज जो कि यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों के ऊपर अब तक प्राबल्य स्थापित कर चुके हैं, लेकिन यंग फ्रेंड्स उर्वा के क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज ये मंसूर और आतिफ एक ऐसे बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं जो कि मैच के किसी भी मोड़ पर तख्ता पलट कर रखने में माहिर हैं। और यहाँ पर 24 रन चाहिए 18 गेंदों पर, 24 टू गेट फ्रॉम 18 बॉल्स। और इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा को चाहिए एक साझेदारी जिसकी तलाश में है इस वक्त मंसूर और आतिफ। और जहाँ तक सवाल है आदि महेश्वरी के गेंदबाजों का, पहले 4 ओवर में जो बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला उन्होंने रखा है, उस सफलता के सिलसिले को बचे हुए अगले 3 ओवर में भी उन्हें बरकरार रखना है अगर उन्हें यंग फ्रेंड्स उर्वा के बल्लेबाजों पर अंकुश पाना है तो जहां तक सवाल है नियंत्रण पाना है तो, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त
इम्तियाज के हाथों में और इम्तियाज नया ओवर आरंभ करते हुए 24 रन चाहिए 18 गेंदों पर। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए क्रीज के कोने से गेंद, अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी, सही गेंद थी और आखिरकार आतिफ ने इसे लगभग हाफ माइंडेडली छोड़ दिया था कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन सही गेंद, सही निर्णय अंपायर का और डॉट गेंद। 24 रन चाहिए 17 गेंदों पर और गेंदबाज इम्तियाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उछाला आतिफ ने, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर थोड़े से आगे मौजूद और एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जब तक फील्ड और बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 23 रन और चाहिए, 16 गेंदें बाकी, 16 balls to go, 23 runs more now they have to score for victory। आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स के गेंदबाज अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को इस वक्त देते हुए यंग फ्रेंड्स उरुआ के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखते हुए और मंसूर इस वक्त उस दबाव को हटाने की पूरी कोशिश में। दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाज इम्तियाज क्रीज के कोने से गेंद इस बार मंसूर ने उछाला है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद थे लेकिन मंसूर उनकी दाईं ओर से गेंद को निकालने में सफल। वाइडिस लॉन्ग और सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ यंग फ्रेंड्स उरुआ के ऊपर जो दबाव बना हुआ था वो दबाव कुछ हद तक, कुछ नहीं काफी हद तक कम हो चुका है और स्कोर इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 19 रन चाहिए विजय के लिए जबकि गेंदें बाकी हैं 15। 19 runs to score from 15 balls और इम्तियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए this could be a clear defense, yes it does, it's a biggie and now with this stroke young friends Urua are now strongly back in the game and now equation seems to be much easier, 13 to get now from 14 balls with that 6, a boundary and 6 और ये दोनों स्ट्रोक्स यंग फ्रेंड्स उरुआ को पूरी तरह इस मैच में वापस ला चुके हैं। ये गेंद मंसूर and again this one maximum once again 4, 6 and a 6 and young friends Urua are now looking right on top now, 7 runs to score from 13 deliveries और मंसूर के ये 3 स्ट्रोक यंग फ्रेंड्स उरुआ को पूरी तरह अपने मंजिल की ओर अग्रसर कर चुके हैं। ये गेंद इस बार उछाला है लेकिन इस बार गेंद को लपक लिया गया, लेकिन मंसूर अपना किरदार बाखूबी अदा करने के बाद अपने टीम को विजय के अति निकट पहुंचाने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए और निस्संदेह सतीश अंतिम 4 गेंदों में 3 गेंदों पर जो स्ट्रोक्स गिरे वो 3 स्ट्रोक्स आदि महेश्वरी को इस मैच में पूरी तरह इस मैच के विजय से काफी दूर ले जा चुके हैं। Absolutely, Gopi. What an batting display! What an batting display there from Mansoor. Outstanding, isn't it? It was really astonishing batting display. Just like that was a audacious innings coming from this man Mansoor. What a great innings under pressure, because he knows that we need to target one bowler if they wanted to come back to this match, because the Imtiaz, of course, just watch Imtiaz, the kind of over he's bowled in the previous over, very quiet over, the over of 3 runs. Can you believe this? He's targeting that the same over to get back to this game, and what an astonishing batting display there from Mansoor. Absolutely entertaining the crowds out here in this most beautiful cricket ground. This has been outstanding cricket, Gopi. That was an outstanding and fantastic batting display there from Mansoor. निस्संदेह मंसूर पेविलियन वापस जा चुके हैं, लेकिन जितना डैमेज करना चाहिए था वो कर चुके हैं गेंदबाज को, और जहां तक सवाल है अपने टीम को एक सुस्थिति पर पहुंचाने के बाद वो पेविलियन वापस लौट चुके हैं। अब उनके सामने बाकी के बचे हुए बल्लेबाजों को अपना काम यहां पर तमाम करना है। सिर्फ चाहिए विजय के लिए 7 रन चाहिए 12 गेंदों पर, और अब ऐसा कहना पड़ेगा आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है। 1600 व्यूवर्स वॉच कर रहे हैं इस मैच को, जो कि इस बार and that 6 brings the equality
Scores are leveled, and now it looks like just formalities remaining in this match. श्रृंखला बेहतरीन लाइव कवरेज बेद्रा मीडिया द्वारा श्रीमान इरफान इनके सारथ्य में और 1700 व्यूवर्स इस मैच को इस वक्त व्यू करते थे. That's it. I think it's a right delivery. It's a right delivery. They have to wait for one more ball. तो एक रन सिर्फ चाहिए और गेंदबाज की ये गेंद चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में. 9 गेंदे बाकी, सिर्फ एक रन चाहिए और निस्संदेह यंग फ्रेंड्स उरुवा अपने विजय के द्वार पर इस वक्त खड़ा हुआ. उछालना चाहा शॉट थर्ड मैन पर, थ्रो, और इसी के साथ यंग फ्रेंड्स उरुवा रजिस्टर्ड a comprehensive victory by 6 wickets against Adi Maheshwari Cricketers, and with that victory they are qualified for the next round of this competition. So the next match, the last match of the first round, Team Elegant will face Bandar 11 in the next match, and that match is now coming up live and exclusively just within just short while. And till then we are taking a short break, and right after the short break, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ अंग्रेजी में, जब मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. तो हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ. धन्यवाद. थैंक यू. ಹಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೆರಗನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಎಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಗ್ಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೌಂಡರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆತೀಫ್. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆತೀಫ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜೇಶ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಟಿವಿಎಸ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಆತೀಫ್ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷನಾಗಿ. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. Certainly to deserve this man of the match because his all-round performance, 2 overs and no matter 9 runs and 2 wickets. Economy is 4.5, is always key in individual matches, and at the same time he becomes unbeaten and scoring a valuable 15 runs in just 9 balls. Even though of course Mansoor got some explosive innings, but the fact that the Atif handling the pressure because of one boundary which is released the pressure in the middle, and then he takes his team into the victory mark and remains unbeaten, and that's why he deserves this man of the match. Sports is not just about playing a game or competing. Of course, losing and winning is about doing it right. cricket, Equipment, but after jerseys losing, and they have to trophies. discuss Play and where celebrate the sports things like a went star. wrong. Olympic Maybe that sports, bowling get your change game on. after, Name Ajay's sports bowled and pretty we good help over you the playing previous the over, best. then asking Cricket, him to football, keep, athletics, for the hockey, for the volleyball, slog basketball, overs, throw but ball, India's swimming, been a little gym, bit punished by karate, Mansoor. track pant, That is a part of jersey cricket. shorts, Anyhow, indoor items, and congratulations etc. to young friends Wholesale who and are retail, better delivery for within short incoming period on orders. quick orders. ಈಗಾಗಲೇ Let's get ಅಲ್ಲಿ geared up for ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು sports. ವಿನಂತಿ, Olympic sports. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಆಗಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಖೇನ
ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೂಡ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆ ಇದ್ದರೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪದ ನೀಡದೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಹೊರಗೆ ಸರಿದು ಆದಷ್ಟು ದೂರವೇರಿ 1 ಫೀಟ್ ದೂರ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನೀವು ಆಸ್ಪದ ನೀಡಬೇಡಿ. ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೆದ್ರ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನ ನಿಮ್ಮ ಕೂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖೇನ ನೋಡಬಹುದು. ಬಹಳ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಈ ಒಂದು SVS ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಹಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಕರೆ, ಈ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತಾ ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಪ್ಯಾನಲ್. Thank you, Prashant. And once again, request young friends Urva and Sneha Malamar, please sign the official chart immediately to get ready for the next match. So signal coming from umpire Mohan Ayadi, the match between Bandar 11 versus Team Elegant. And Bandar 11, of course, seems to be a new name in this world of Underarm cricket. But Bandar 11, of course, we still remember their very attractive jersey launching ceremony held in the last month. They are invited us, our commentators, Mr. Gopi, Mr. Abdul Samad and Nawaz, Star Nawaz and myself witnessing that jersey launching ceremony, and they are felicitated us. Thanks a lot Bandar 11 for this honor during your jersey launching ceremony. They are playing their first match here. This time beautifully played right in the gap, down to deep mid wicket. Will it go to cut it off? Good effort from the fielder, just stopping that boundary. That was a great effort from the fielder at deep mid wicket. That was a young-blooded, talented cricketer of Bandar 11 putting 100% in the game in the field, and that was a good stop by the fielder in the deep, stopping that certain boundary. And Team Elegant straight away, the intention is very clear from the opening batsman. They need to exploit the fielding condition of the power play, and Ashraf is a very dangerous batsman. And it's a beautifully played right in the gap, ball running out to deep long off region, and because a chance of run out there in the non-strikers end. Because of that slowness in the outfield, I will tell you, already mentioned the grass in the ground, and because of that grass in the outfield, and outfield is not that much of quick, especially when you are batting in the end in the commentary box and striking the ball towards a straight region. Very difficult to get the boundaries because we are going to see that a lot of grass is there. Down the ground, very difficult to get the boundary. The Ashraf got a start here, flying start, 4 runs already in 2 deliveries. Offering balls down the leg stump, pressure and frustration straight away to the bowler as a batsman is in a positive frame of mind. He's trying to beat the batsman's bat, but ball is down the leg stump. Wide signal by umpire, 1 more addition to total in the form of extra. Scoreboard moves on to 5 on the board. And I think the Bandar 11 first time introducing in this most prestigious cricket tournament, especially in Bantwal SVS school cricket ground. One of the most beautiful, just like Prashant is mentioning about, it's a Eden Garden. No doubt at all, it was a Eden Garden for underarm cricket. This time lofted over beautifully. Will it go into a boundary? Wait and see. No, it doesn't. Just like I mentioned, outfield is not quick enough. Little bit frustration for the batsman, even though he's clearing the infield, but not quite able to get the boundary. Then couple of friends tries in this over. The batsman able to clear the infield, but failed to get the boundary. Then 2 more to Ashraf. Then scoreboard moves on to 7 on the board. I may request the volunteers of JD boys, please spread out in this
boundary line. And that's main umpires, field umpires want it. There is no any doubt in the minds of the batsman. Again, reverse sweeping that one. Ashraf picked up a single then. Ashraf is so very impressive in a Team Elegant playing 11. He's been emerging player for Team Elegant in the last 2-3 tournaments. One of the most destructive batsmen. He's been introduced by Team Elegant for Underarm cricket as next one. Right arm over the wicket. This time what we are talking about, the explosive. Here he go. Time for his partner Sadiq to join the party here as he picked the line and length very quickly and lofting that one quite handsomely, hoisting it over into the deep mid wicket boundary for a maximum. Anda Sadiqa Anda now Sajid that picking that line and length very quickly, and I'm just hearing in the information that he is a player of JD Boys. He's been picked by Team Elegant, and that was a really the proud moment for JD Boys that their player playing for big teams like Team Elegant. Again looking for the reverse sweep, Sajid, but missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump completes the job. Expensive over there from the bowler, opening bowler of Bandar 11. Sajida. Ande. Bolo. The Sajid is the player has been selected as a man of the series. Man of the series. Selected for the man of the series and at the tournament which is played at Kuppepadau, that is Sauharda Trophy. And last week it was held at Kuppepadau. And this man, Sajid, has got altogether 142 runs from the bat throughout the tournament. And he got a 32 inches television for his performance. That's very nice to see that that the players been awarded with the big prize monies and some, of course, the television means it's a good for encouraging for the players like Sajid. And he's got a fastest 50 in his name as well in this tournament. He's got 50 runs out of 12 balls. Oh my goodness, that is definitely going to be entertainment innings from Sajid in that Sauharda Trophy. And Team Elegant, definitely it's going to be a good year to start the season 2021. And they got some good players in their side. So Bandar 11 have to restrict in the second over of the power play after that expensive over bowled by the bowler Afrin. Now it's going to be a Naima. What a delivery there from Nadim. Starts with the delivery which is really completes the bat of Ashraf. And that's what we're talking about, the needed kind of bowling performance from the opening bowler Nadim. Away from us, right arm over the wicket, balls beautifully bowled, absolutely perfect delivery, appeal for caught behind, and umpire says not out. That's so experienced. Harish Padil, he knows that that ball is after hitting the ground, then was catch has been taken in the behind the wicket, the first bounce. But all that we can see that Nadim putting some pressure into the batsman straight away with this good line and length. That's what really required for Bandar 11 in this match against Team Elegant. Away from us, right arm over the wicket, bowls. This time breaking the shackle. Here we go. The huge six coming up here from the huge man. Ashraf got a big six here. All in sudden we can see that the bowler started to put the pressure. The batsman straight away raising the pressure by hitting the big six down to Whitish long on. The huge six that was coming from the bat of Ashraf. Again looking for one more big shot here. Chance of run out there. Direct hit required. Ball misses the stumps. Everything is going in favor of Team Elegant. That was a two good deliveries from Nadim. One big shot coming from the bat of Ashraf. All the efforts are gone in vain of bowler. And scoreboard is ticking over, just like a fast flowing waters of the rivers here in this SPS cricket ground. Scoreboard is 21 on the board. Slower one and negotiated very well there by
Nazim. Sajid, correction. That's why he's been such a dangerous batsman. Picking up the line and then picking up that slow delivery very well. Drives that one down to deep backward square leg boundary for 4 runs and score jumped into 25. Straight away 25 runs coming up here for Team Elegant. They got a flying start from two explosive batsmen are in the middle. Sajid and then Ashraf, and Nadim has been punished. He's bowling last time in this over. Right above the wicket, beautifully bowled. Sajid wants a single. Ashraf is not interested, rightly so, no chance at all. And expensive one more over is completed. Completion of over number 2 then. And the Team Elegant, they are looking very, very comfortable in the middle. They got 25 runs in 2 overs at the rate of exactly 2.5 runs per over. And Bandar 11 have to work hard here onwards in remaining 6 overs if they wanted to restrict Team Elegant. And Team Elegant looking to some highest total score in this tournament. I don't think it's a huge scoring tournament so far. Last 2 days we are watching all that small target is being put by the batting first team. But Team Elegant definitely wanted to break the record. And just coming back to the Sajid's innings, which is played at Sauharda Trophy in semi-final. He scored 24 runs in 24 balls. Sajid, when it was a 24 runs required from 24 balls, then Sajid came in and just finished the ball in just 5 balls. I think 24 runs in 5 balls, and with the help of 3, 6 and a boundary. And all over for the opposition, because only 5 balls he taken to finish the match. And Sajid has been, really looks to be, we will going to be the one more dominated player for Underarm cricket, which is introduced by Team Elegant. Only the 39 runs is the highest total score of the teams in this tournament. And if we see that 25 runs in 2 overs, then it's all the chances here for Team Elegant to get some big total against Bandar 11. Bandar 11 have to bowl very well. And if any score around 55 plus runs, it's definitely very difficult for Bandar 11 to chase down. From the far end, the left arm ball is introduced, bowls around the wicket, and straight away Ashraf picked up a single. And did a good job, is Ashraf, seeing that Sajid is hitting the ball very well. So that he wanted to give strike as much as possible to Sajid. Afrid J. One more young talented bowler for the side of Bandar 11. Beautifully bowled, absolutely perfect delivery to ball to the batsman like Sajid. Of course, Bandar 11 is a new team. They're not an easy straight away for any new teams to come and play against the top teams. Baby steps, of course, in the world of Underarm cricket. Take a little bit time to settle down. This what a rocketing towards the fence. Ball went like a tracer bullet. The moment that ball left the bat of Sajid, that ball went like a tracer bullet. Never you're going to bowl that line to batsman like Sajid. Whenever explaining the potential of this batsman, and after hearing my commentary, if you're bowling that line, I think is no excuse at all. What a great shot that was coming from the bat of Sajid. Left arm from the wicket balls. Chip that one. This time opportunity of catch there. Oh my goodness, he couldn't manage to reach that catch. Trying his level best to take the catch. And Sajid wanted third here, but no chance at all for that third. One more instance of explosive batting here from Sajid. He will definitely going to entertain the crowd. If Team Elegant going on bat till the end, this man will definitely going to go on more fastest 50 in this ground. Scoreboard is really flourishing. 34 on the board. This is only third over in progress.
The bowler straight away under pressure now. Afrid. Left arm around the wicket. To Sajid. Bad line. Single-handed stroke. But fortunately for the bowler, as a Sajid didn't got enough bat onto that. Reaching for the delivery. But didn't got that much of enough bat onto that. But picked up a single. That's very important. And scoreboard moves on to 35. Third over in progress. Afraid again with the short run up. Get ready bowling to Ashraf. Trying for some experiment cricketing strokes. Tried to play the reverse sweep. Didn't got bat onto that. Wait for the umpire signal. Of course, he got a little bit inside edge of the bat. One more single is added. Total. Scoreboard moves on to 36 now. Huge total on the board. Still after this 4 more overs to go. And Team Elegant over completed as for our scorer. So over completed. Thank you very much. So Afrid's finished his over. 3 overs completed. Completion of over number 3. It's a 36 on the board. 36 without loss of any wicket. 12 runs per over. And I think it's the right time to call Mr. Prashant for the further explanation of the match in remaining 4 overs. Thank you very much. So thank you, Mr. Satish. So scoreboard is no doubt a huge one when batting first. Team Elegant team was been won by Banda 11 and they elected to field first. But this partnership, no doubt, both the batsmen, not individual contribution, both the batsmen, Ashraf and Sajid, with a couple of sixes in the account of Sajid and 1 6 in the account of Ashraf. Scoreboard moves to now 36 on the board. Shahrukh in the bowling marker. Oh, that's been a loose delivery. Could have been punished. To the wicket level, just could tap the ball towards the third man region. Could get a couple of easy runs, but confused with the line of the ball, and the batsman just allowing the ball to be gathered by the... Oh, that's been lofted this time, waiting for square leg region umpire, but it is and alive. Lots been going on. Loose delivery, batsman wanted to flick towards the onside, but not a proper connection. Ball ballooned in the air, just away from that of the 30-yard circle. Fielder and it was in a safe position to receive the catch, but dropped. This is a life for the batsman. Pressure for the bowler. Once again, that is a clean piece of batting. Looking at the direction of the ball, the bowler just bowling the ball towards the off-time line, and the Sajid, the man, just opened the face of the bat and just steer towards the off-stump. So with that single, just rotating the strike. Scoreboard moves to now 38 on the board. Shahrukh, brilliant delivery, just kissing the ground. A little bit quicker pace this time. Once again, Ashraf wanted to heave the ball towards the long on, but no contact, and that was a blinder coming from the batsman. At last, a dot ball for Shahrukh. 4th over in progress. Look at the score, just been commenced by these two batsmen without giving any wickets. Good understanding between the running between the wickets. Looking at the loose deliveries, punishing at every loose deliveries, and just placing defensive strokes for a good one. And once again, Shahrukh has to finish very neatly, because none other than Shahrukh, till now, all the bowlers were very, very expensive from the bat of that is Sajid and Ashraf. So 4 balls completed, 2 on the board. It's the last match of the first round match for today's fixtures between Banda 11 and Team Elegant. Oh, this time, brilliant delivery, keeping the ball somewhat wideish of the off. Once again, confused the batsman. Looking at it, could be a wide, but
at the right moment, light bit off cutter, deviating inside, and that resulted in the form of a dot ball. Good over commencing from Shahrukh. This time toss off. Brilliant comeback. This is the over for Bandar 11. No doubt, after 3 overs being punished badly by these two batsmen, a respectful over commenced by Shahrukh. He managed to tie the batsmen for not going boundaries, but even getting some dot balls. In this over, 4 dot balls and 2 just singles being gifted. We can say one in the form of an easy catch. Could have been a wicket in the account of Shahrukh, but drop catches being produced from the fielders of Bandar 11. 4 overs completed. Scoreboard is 38. Already 24 deliveries faced. Look at the run rate. The run rate is 38 on the board. After completion of 4 overs. Exactly 9.5 runs per each over scored. Look at the run rate scoring. Sajid and Ashraf. One after other, both the batsmen are punishing every loose balls, not a boundaries, straight away sixers, and that is what this partnership is renowned. And keeping the bowling line, except Shahrukh, other bowlers made a bad implement in this ground. They are first time introduced their team in this SVS ground, which is one of the Eden Gardens of Dakshin Kannada district, renowned. Lots of peculiar tournaments been conducted. Along with this, one more name added, that is a JD Boys tournament, excellently commenced. Already bright sunshine in the middle of the pitch. New man joining in the bowling mark is Safwan. Safwan to Sajid. Oh, that's a bad start. Straight away, no doubt. Big wide. Completely not getting the rhythm in the bowling. A disaster because it was way down. That was the off stump. And the very decision for the batsman for not getting any contact with the bat and just allowing to the ball to be gathered. Even it was away from the reach of the keeper. This time a firmly struck. What a classical drive at covers region. We can say that is a deep covers region, but fielder is there. Before the fielder could field and return the throw, ample time. We can say the walkable distance, a run been got for Sajid and Ashraf. The keeping keen and calm, still more destructive batsmen yet to come for Team Elegant. But this is 2 new faces for Team Elegant. And once again lofted, fielder is there, but quick return from the deep, left-handed, somewhat wideish throw, but a good backup. So these batsmen are chipping away very neatly, comfortably for every single runs. Now the scoreboard moves to 41 on the board. 5th over in progress. Safwan taking the guard from the road end, right arm round the wicket. Oh, that's been a water stroke. That is 100 bullet. This is a brilliant stroke from Sajid. Angling towards the leg stump. It was a premeditated. He came towards the off stump. Just one-handed swing. Rushed the pace of the ball and from the bat. Just within a fraction of seconds, the ball was raised away for boundary. So boundaries being added for Sajid. 2 boundaries and 2 sixers. No doubt on a remarkable mode. He has some having good records in his batting, but this time he has not made a good attempt in the previous delivery. Wanted to reverse sweep. Looking at the backward point was somewhat wideish. He could gather a couple of runs, but it was a dot ball. Somewhat impact, I think the ball when swinged reversely, but getting the outside edge to the pad of the keeper. It was a firm stroke, so the bat swing will be quick, and the keeper doesn't have any time to recover from that hurt. But it is okay now. Though he's limping, the keeper is controlling his pain. But this is cricket. Sportsman spirit will always be introduced every point of the match. Here is once again Safwan to Sajid. Can he finish with a flurry? Wait and watch. Oh, brilliant delivery. Excellent delivery this time. This is one of the finest delivery can see from the side of Bandar 11. Very rare because a lot of deliveries been
punished by the batsman, but this time it was way off the wide, and that was a big deviation. It in cut of one, the right moment. Sajid wanted to slog sweep it, but no contact with the bat. So crucial dot balls, except on boundary in that angle of the ball, which was a bad angle, we can say, because when looking at the batting of Sajid, he is very, very powerful to his own side. So one remaining in the over of that is Safwan. Once again, from the stroke, what a cover drive, but fielder is there, exactly pointed for the stroke. Good finish for the over, except that boundary because of the bad line of the bowler. 5 overs come in, so the scoreboard is 46 on the board. Look at the run rate without giving any wicket. And look at not a bad strokes also. Just one stroke that ballooned at short cover region. That was dropped. After that, Sajid got a boundary. So this is what a good understanding. Completely pressure being released for the other batsmen. If any batsman, if comes also, he has no pressure because he can straight away go for big runs because they have a finest run rate. 46 on the board, 30 deliveries faced, 3 sixes and couple of boundaries. So no doubt Sajid with 2 sixes and 2 boundaries, and Ashraf a good partnership along with him. He also made a good strike rate with 1 big 6. He started very well. Then follow mate had the proceedings with the boundaries and sixes. Shahrukh will bowl the second of his quota and the last. What a stroke! That is unlucky. That is unlucky. Sajid after the stroke just waited. 47. Waited. He's been thought that the ball just might sail over the boundary, but obstruction of the tree, we can say the branch of the tree, reduced just for a single run. This tree is saving 5 runs for the team of that is Team Elegant. Once again from Mr. Go from Balla. Pressure on the fielding. Lots been seen from the side of Bandar 11 team. Dropping catches, fumbles been given, easy singles been left out, and not direct hits been produced by the fielders of Bandar 11. But Sajid, can he make another big hit of the previous one? Wait and watch. Shahrukh. Oh, that is a fine stroke. That is a miracle one. He looked this time towards his offside, reverse pedaling it. He knew that the straight stroke will prevent his strokes by the trees. But this time, no obstruction. The ball, like a bullet, went towards the offside. And what a partnership. This is over 54, the partnership. First ever partnership coming, opening partnership of this tournament by these two men, Sajid and Ashraf. See, look at that. Look at that batting display. After hitting a 6, he's just placed that a very defensive stroke. Looking at the angle, it was somewhat wideish of the off. Just open the face of the bat and steered towards a point region. And given the strike to Ashraf. Shahrukh continues. Once again to Ashraf. Once again going for a big hit. This time inside it can be run out. Once again life given for Sajid. As I said, lots of directed spin not produced by the fielders of Bandar 11. Catch drops been found. Fumbles been seen in the fielding. This all from the pressure of the batsmen. Even the batsmen are playing like a keen, pressureless, effortless strokes been seen from the side of these two batsmen. Scoreboard moves to now. Once again going for the reverse heave, but not connecting properly. Once again from the leg by. From the pad, that's a single to the scoreboard. 6 overs concluded. Scoreboard is 57 on the board. Look at the run rate. They are aggressive from the run rate. Every time from the over, they are raising that run rate. So 6 overs completed. Scoreboard is 56.
nearly 9.8 runs per each over they scored. Except Shahrukh in the 4th over, he has given just 2 runs. But in the 6th over, he has also been very, very expensive with that mighty 6. And that 5 runs been saved by the branch of the tree could have been added. Then they could cross above 60 for a run rate of 10. But somewhat luck favors the batsman. But this time luck was for the side of a fielding team. So every time somewhat miracles will be happening. Safwan in the bowling marker. Nadim in the bowling marker. So Nadim in the bowling marker to bowl to Sajid. Still not able to break the partnership or to get a single wicket. They are trying their best even to get a single, but no possibility is being given from the side of batting. The Sajid and Ashraf look very, very easy in the batting. Once again, slog sweep. Look at the power stroke. Though he lost the control of the bat, the ball just sailed over. Look at the stroke. This man is just very, very eager to make his score. Very, very eager. 40 on the board according to the scoring statistics. I think if 2 balls he could produce 1 boundary and 6, this man will be the only man to hit a 50 of his individual in this tournament, in this Swiss ground. Lots of records are there in the previous tournaments in these grounds, but left out 8. This new man, the new face. Oh, that is commentators' curse. The commentators' curse being acted now. But Sajid, what a well played. He will deserve a big applause. Big applause. New face, first time introduced in this Swiss ground, made a remarkable comeback. So 40 on the board in this individual account, 57 in the total scoreboard. At last, Bandar 11 just break the shackle in the 7th over. So looking at the scoring statistics, the individual account of Sajid, that is 19 balls he faced, 40 on this individual account, and with the 3 sixes and 2 boundaries, he made that 40 with just facing 19 deliveries. Now the key man, one of the renowned, that is Riaz from Team Elegant. Once again going for the slog sweep. Once again this is a trademark shot for Riaz. Straight away wanted to produce his trademark stroke, but missed by a way long. No contact with the bat of the ball. Good delivery. Nadim this time. Brilliant one. Once again couldn't connect any bat to the pitch of the ball. Last one to go. Nadim, good one, except that a 6. But Sajid, no doubt, the man on picture. The highlights of this match. Once again, brilliant delivery, but way away. Big wide, 1+1. So strike means rotated. Now the scoreboard moves to 65 on the board. Ever thought this much target will be kept in this tournament, because yesterday's maximum target was just 40 to 45, but now they have broken the shackles. Team Elegant, and look at the run up. Excellent one. 2 more to the scoreboard to end the innings of Team Elegant. After completion of the innings of 7 overs of Team Elegant, the scoreboard is 67-68 required in 7 overs for Bandar 11. Huge start, but anything can happen till the last ball of the match, because this is cricket. I request the players of Sneha Malemar and Young Friends Urva team to immediately report at the viewer commentator panel for signing ceremony. ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಮಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಲ್ ಪಂಡಲ ತರಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. And for the innings, the second innings will be
from the voice of none other than Gopi Mangalore. Thank you. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 6 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಪ್ತಾನರು ಗಮನಿಸಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು 6 ಓವರಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯವಿದ್ದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓವರಿಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ನಾವು 6 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ. धन्यवाद श्रीमान प्रशांत. और जहां तक सवाल है इस वक्त, so stupendous task in front of Bandar 11. 68 they have to score for victory with a average of just under 10 runs per over in the stipulated 7 overs with the help of 10 wickets set by Team Elegant. The present equation shows for them and let's see can they read the target or not. 68 the target for them in 7 overs and their openers are the crease. दोनों आरंभिक बल्लेबाज बंदर 11 की ओर से इस वक्त क्रीज पर मौजूद. शाहरुख इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जबकि स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज इस वक्त मौजूद. 2 ओवर का पावर प्ले और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई. दोपहर का वक्त और सूरज अपना कहर यहां पर ढा चुका है. धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहां पर बढ़ता नजर आता हुआ और लगभग दोपहर के 2 बजते हुए और यहां पर संघर्ष जारी है इस श्रृंखला के मैच नंबर, आज के इस मैच नंबर 5 के द्वितीयार्ध में टीम एलिगेंट और बंदर 11 के बीच में. और जहां तक सवाल है, आफरीद इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, जबकि स्ट्राइकर शाहरुख इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. जाबीर गेंदबाजी शुरू करते हुए. तो अंपायर ने इशारा किया कि मैच की शुरुआत हो, पारी की शुरुआत हो, और बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहरुख के इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. जाबीर कुल मिलाकर 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर. शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, कवर पॉइंट और पॉइंट इस वक्त मौजूद. गली से थोड़ा सा स्क्वायर और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज जाबिर तैयार. 68 द टारगेट इन 7 ओवर्स एंड देयर इनिंग्स नाउ गोइंग टू स्टार्ट. पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव करना चाहा, चूंकि गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड कर लिया गया और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 0 पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है. बिल्कुल सुदृढ़, मजबूत, ठोस शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत बंदर 11 को, अगर उन्हें 68 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो एक बार फिर से गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव किया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में. एक बार फिर से रन्स नहीं मिलेंगे, जगह नहीं बना पाए इस गेंद पर शाहरुख. और एक बार फिर से
गेंदबाज जाबिर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, लॉन्ग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को उछालना चाहा था, क्योंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। और एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई बेहतर गेंद, 4 लगातार डॉट गेंदे, 4 डॉट बॉल्स इन ए रो, और निस्संदेह दबाव इस वक्त बल्लेबाज के ऊपर बढ़ता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए गेंदबाज जाबिर अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। शाहरुख इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए जाबिर की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार, दिस इज एन क्लीन हिट, आई थिंक इट्स गॉन ऑल द वे, जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल, इट्स अ बिग वन। मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन, और 4 गेंदों पर जो दबाव बना हुआ था बल्लेबाज के ऊपर 5वें गेंद में, उस दबाव को लगभग वो कम कर चुके हैं इस छक्के के जरिए, और इस छक्के के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है बंदर 11 के लिए। 6 रन बिना किसी नुकसान के, बेहतरीन स्ट्रोक शाहरुख के बल्ले से, और जाबिर इस ओवर में अंतिम बार शाहरुख के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, चूंकि गेंद सीधे बैक टू द बॉलर की दिशा में, 6 रन बने पहले ओवर में, और पहले ओवर के बाद बंदर 11 एक छक्के की वजह से 6 रन जोड़ चुका। 6 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर। बंदर 11 एक मंगलोर की एक प्रतिष्ठित टीम, और चंद दिनों पहले उन्होंने अपना जर्सी का अनावरण किया था और शानदार समारोह उन्होंने आयोजन किया था, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हमें भी उन्होंने इस शानदार समारोह का हिस्सा बनने का मौका हमें प्रदान किया। खासकर मैं और मेरा काबिल दोस्त साथी सतीश, खासकर जनाब अब्दुल समद और जनाब स्टार नवाज, इन सब की ओर से बंदर 11 इनका हृदयपूर्वक अभिवादन करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर द ऑल द मेंबर्स एंड प्लेयर्स ऑफ बंदर 11। तो जहां तक सवाल है इस मैच में, तो 62 रन अब बनाने हैं, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और एक बार फिर से गेंदबाज रियाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, आफरीद अपना खाता पिछले ओवर में खोल चुके हैं, और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए शाहरुख दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहरुख के लिए ये गेंद इस बार शाहरुख ने गेंद को ड्राइव करना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन इस बीच जरूर मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। और स्ट्राइक इस वक्त आफरीद के हाथों में। निस्संदेह एक धुआंधार बल्लेबाजी की सख्त जरूरत बंदर 11 को, अगर उन्हें इस 68 रनों के लंबे से लक्ष्य तक पहुंचना है, तो खासकर चौके और छक्कों की उन्हें सख्त जरूरत। ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाते हुए, और इससे पहले कि थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। आउटफील्ड पर घने घास जो कि मौजूद है, तो इसकी वजह से गेंद अपने रफ्तार को खो देती है अगर जमीन के सहारे अगर आप स्ट्रोक्स को खेलते हैं, और यहां पर ऐसा ही हुआ, गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का 6 रनों के लिए। इस बार अफरीद की पारी, और गेंद को इस वक्त थोड़ा सा स्टंप्स को कवर करते हुए ऑन साइड पर डिस्पैच कर दिया, बैकवर्ड स्क्वायर एक सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, बंदर 11 को चाहिए ऐसी घातक बल्लेबाजी जो उन्हें अपने मंजिल की ओर अग्रसर कर सके। और तो यहां पर अफरीद अब अपने बाजुओं को खोलते हुए, निस्संदेह चंद और करारे स्ट्रोक्स की उन्हें सख्त जरूरत इस मैच में वापस आने के लिए। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, सही गेंद घोषित, कुछ ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और रन्स इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। रियाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, अफरीद इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस गेंद को ड्राइव किया, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, थोड़ी सी मिसफील्ड, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रन बिना किसी नुकसान के, और 2 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। 2 overs completed, it's 17 without loss for Bandar 11 chasing the victory target of
huge target in fact of 68 in 7 overs. और जहां तक अगले मैच का सवाल है, स्नेहा मालेमार और यंग फ्रेंड्स उर्वा के कप्तान और सदस्यों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि कृपया ऑफिशियल चार्ट पर ऑफिशियल पन्ने पर साइन हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए कृपया स्टेज पर तुरंत संपर्क करें. I request all the players of Sneha Malamar and young friends Urva to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और let's straight away coming back to the equation. 68 minus 17, that means 51 more hours now they have to score for victory in remaining 5 overs with the average of exactly 10.20 runs per over, the required run rate for them at this situation. और गेंदबाज प्रणीत गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए 30 गेंदें बाकी, 51 रन चाहिए विजय के लिए. और प्रणीत ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. आफरीद इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए मौजूद. यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में. रन से नहीं मिलेगा. हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता नजर आता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर. निस्संदेह चंद करारे स्ट्रोक्स की उन्हें सख्त जरूरत इस मैच में वापस आने के लिए. प्रणीत रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड बैन पर. 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 18 विदाउट लॉस. बंदर 11 निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा. स्टिल द बैट्समैन ऑफ बंदर 11 सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, अपनी सही राह को अभी भी तराशते हुए. और प्रणीत इस वक्त तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहरुख इस वक्त सामना करते हुए. इस बार दिस इज अ मैग्निफिसेंट, ही जस्ट टुक द कैच विद वन हैंड. रियाज एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर थे और जैसे कि उनके ऊपर से गुजर रहे थे उन्होंने ऊपर की ओर छलांग लगाई. उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मौका देख लिया जाए. ऊपर की ओर छलांग लगाए, गेंद पर अपने हाथ अड़ाए और गेंद ऐसा कहना पड़ेगा उनके हाथों में ठीक तरह से बैठ गई. और इस तरह से इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है. शाहरुख की पारी समाप्त. 7 रन उन्होंने बनाए एक छक्के की मदद से. और बंदर 11 18 रनों के ऊपर अपना पहला विकेट खो चुका है. इट्स 18 for 1. ಅಡ್ಡೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅದೇ 1 ಡೌನ್ अड्डे स्कोर. तो नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और प्रणीत इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार दिस इज अ क्लीन हिट. इट्स कैन बी गॉल ऑन द इन फैक्ट इट टेकन. आई थिंक ही प्लेड दैट वन अगेंस्ट द विंड एंड ही पेड द पेनल्टी. हवा के रुख के खिलाफ स्ट्रोक को खेला था और गेंद अपने रफ्तार को खोते हुए सीधे पहुंची डीप बैक स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में. एक वक्त ऐसा लगा बल्लेबाज के स्ट्रोक्स खेलते ही ऐसा लगा था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर जाएगी, लेकिन हवा के रुख के खिलाफ अगेंस्ट द विंड इस स्ट्रोक को खेला था. फलस्वरूप गेंद अपने रफ्तार को खोते हुए सीधे डीप बैक स्क्वायर लेग फील्डर द्वारा लपक ली गई सीमा रेखा के अंदर. 18 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है. 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जेडी ट्रॉफी 2021 एक शानदार प्रगति यहां पर करते हुए और इस श्रृंखला के दूसरे दिन का पहला मैच 5वां मैच और बी पूल का चौथा मैच यहां पर खेला जाता हुआ. ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आते हुए वाइड का इशारा. और इस श्रृंखला का लाइव टेलीकास्ट बेहतरीन तरीके से इस वक्त करते हुए बेद्रा मीडिया यूट्यूब के जरिए श्रीमान इरफान इनके सारथ्य में. और कुल मिलाकर एक बेहतरीन वातावरण इस मैदान पर छा चुका है. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया, नॉट क्वाइट मिडल गेट. गेंदबाज के हाथों में गेंद, फॉलो थ्रू में गेंद को गेंदबाज ने फील्ड कर लिया और इस बीच रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला. और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार चिप किया विद अ ट्विस्टेड बैट और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया है लॉन्ग ऑफ पर. रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा था, काफी स्क्वायर, लेकिन गेंद गई काफी सीधे और इससे पहले कि गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स.
Still, the batsmen are searching for the right track for Bandar 11. 48 more runs now they have to score for victory in remaining 4 overs. And now the asking run rate is now gone up to exactly 12 runs per over. और जहां तक का सवाल है इस ओवर का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नई ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। इस बार खूबसूरती के साथ निकाला है मिड विकेट पर और गेंद को इस वक्त फील्ड कर लिया गया डीप मिड विकेट पर। 2 रन बल्लेबाज को हासिल होगा इस वक्त। गेंद को इनटू द गैप इस वक्त निकाला था खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर बल्लेबाज ने, और 2 रन अपनी टीम के लिए बटोरते हुए अफरीद। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रन, तो 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद दिस इज टेकन जस्ट इनसाइड डिफेंस। स्ट्रोक्स में कुछ गलत नहीं था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल गलत था, और गेंद सीधे पहुंची फ्लैट वर्जन पर डीप मिड विकेट फील्डर के हाथ में। अगर थोड़ा सा स्क्वायर गेंद को उछालते तो निस्संदेह छक्का उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन गेंद को उछाला सीधे फील्डर के हाथों में डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर अफरीद का गिर चुका है। कुल मिलाकर अफरीद ने 13 रन बनाए और आखिरकार वो आउट होने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए 14 रन बनाए, माफ कीजिए, अफरीद ने एक छक्के की मदद से और आउट होकर पेविलियन वापस। कुल मिलाकर 22 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है। बंदर 11 कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ अशफक इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। बंदर 11 के बल्लेबाज और दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया अशफक ने वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर 1 रन का इजाफा। और जहां तक अशफक का सवाल है, एक जमाने में वो एनएम क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व किया करते थे, प्रमुख बल्लेबाज के रूप में जाने जाते थे, और खासकर आज के दिनों में बंदर 11 के आर्किटेक्ट वो बन चुके हैं और यहां पर ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं पहली गेंद पर 1 रन प्राप्त करने के बाद। बंदर 11 को संपूर्ण सहकार इन दिनों में वो देते हुए और बंदर 11 को एक बेहतर टीम बनाने की पूरी कोशिश में वो इस वक्त अपना संपूर्ण प्रयत्न करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, लेग बाय का इशारा। 24 for 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और गेंदबाज की गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कलेक्शन नहीं, इस वक्त के लिए खतरा पैदा हो सकता था। इस बीच रमीज के लिए कहना पड़ेगा, लेकिन आखिरकार सब कुछ सुरक्षित दोनों बल्लेबाजों के लिए। और ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 25 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 overs, and now in overall calculation it's going to be 3 overs remaining in their innings, and 43 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in 3 overs, and now the asking run rate is now gone up to 14.33 runs per over. 43 to get in remaining 18 balls. That means in 3 overs. और देखते हैं क्या होता है उनकी पारी में। और इससे पहले कि अगला ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे एक और काबिल दोस्त, अजीज दोस्त प्रशांत बंटवाल को। आइए प्रशांत, धन्यवाद, थैंक यू। Hall. Once again, that's been slipped away from the bat of the batsman, but no contact with the blade of the ball. That's been a dot ball. Once again, angling towards that reverse stroke because the flow of the wind will be useful for the ball, but unfortunately no contact. So dot ball, pressure straight away because the run rate is creeping up. So that has been the pressure for the batsmen to go for the big strokes. Once again, fine stroke this time. What a stroke from the batsman.
Surely it is a bad line, but batsman adjusted to play towards the wideish fine leg region, and the ball raced away like a rocket. Before the fielder could reach the ball easily crossing away for a boundary. With that boundary, scoreboard moves to now 29 on the board. Once again, going for a reverse sweep, a big appeal, but it is no doubt the ball angling away from that of the leg stump. Easy decision for umpire to give us a leg by. So lots been happening in between, though the Banda 11 players started very well for us, Afridi especially with the 6, but then other than him, no big contribution from other batsmen. ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಹಿಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಓಕೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಚ್, scoreboard is 30 on the board. Riyaz system once again drifted in his angle. That is a bad line of bowling. Even he knows it. Big wide. So 1+1. Good running between the wickets. As soon as the keeper makes to reach to the ball, but it was very far from the reach of his hand. And that is a couple of extras to the scoreboard. Once again, same replicate of that of the previous delivery. Wide plus wide, but just a single to the scoreboard. 33 on the board. Not finding the rhythm. Riyaz is one of the finest bowlers for Team Elegant, but not finding the rhythm. Reverse swept. This time premeditated stroke from the middle of the bat. Raised away to the boundary. Somewhat releasing the pressure and the run rate. The batsmen of Banda 11 has to make a good contribution to get that big score kept by Team Elegant. 68 the target. Now they are in the proceedings of 37. Once again, yes and no, but good one in the date. Though the keeper made a fumble, but a short fine leg fielder making a good recovery. Riyaz somewhat expensive with his wides and a boundary, but still the pressure of run rate will be in the minds of Banda 11 team. Down the track, going for a big one. That is an easy one for the stumping. Quick collection behind the stumps. Down the track, the batsman wanted to chip the ball towards long on or long off as the stroke was being premeditated. But no contact with the blade of the bat of the batsman. The ball beaten, everything, and rest being done by the keeper behind the stumps, making a good collection and easily uprooting the bails from the stumps. So wicket been lost in quick intervals. Scoreboard is stuck at 37 on the board. No doubt the batsman straight away has to make a good contribution if they want a victory against the Team Elegant. So according to the scoring statistics, 12 deliveries remaining and 31 required. Exactly 15.5 runs per each over. Nothing will be impossible, but it is a tough target. We have to wait till the last ball of this match because this is cricket. Lots of examples been seen in throughout Dakshin Kannada district in this Underarm format that everything can be happened. Even a big target can be chased easily till the last ball of this innings. Once again, slog swept. Once again, fielder is chasing the ball. One completed fumble. Lots been seen from the side, even from the side of Team Elegant. Once again, 3 straight away. 3 runs coming straight away. So 15 number batsman Afridi. So Afridi Junior straight away making a good run in between the wickets and getting 3 runs. Now the scoreboard moves to 40 on the board. Once again straight away chipped, but fielder bowler is there. That is yes and no, big misunderstanding. Though the batsmen of Banda 11 got some quick runs, but misunderstanding resulted in the form of run-outs. So wickets are tumbling at quick intervals.
So Afridi the man back to the pavilion in the form of run out. So pressures. I think the players of Young Friends team is been signing at the signing sheet for the next match. And the next match will be of 6 overs. 07 Afridi the man, new man joining. Yes, no doubt that. So that is 07, that is Ajay the man. In place of that is Afridi. Straight away he has to make some good contributions. In the bowling mark, no doubt Riaz. Once again going for a big slog sweep. The nearest point to get a big one, but no contact with the, but once again easy gather behind the stumps. Pressure, every dot ball will increase the run rate to be chased for the batting side. Some couple of boundaries and sixers will surely release and reduce the target and the run rate to be chased. But in a mode, the batsmen have to connect very well because good bowling lineup from the side of Riaz. Riaz once again going for the reverse pedal, once again good fielding, but if it was a direct hit, a leg by signal from umpire, somewhat trouble should have been, but it was a bad throw towards the striker and that easily made a single in the form of leg by. 41 on the board. Once again going for the slog sweep. Even every batsman approaching for the same type of strokes, looking towards the deep mid wicket, but not connecting the bat, and the wicket's been tumbling. Now the wicket gone in the name of Ramiz. Now the energy levels are being somewhat reduced in the viewers because some strokes been not seen. Manit. '24 number jersey man, the new man introduced for the Bandar 11 team in the name of Afrina. Straight away, big responsibility on the shoulders of this right-handed batsman. Riaz in the bowling mark. Fine stroke, finding the fielder Imtiaz, no chance of any run. Once again a dot ball. That's the conclusion of over number 6. So after completion of over number 6, the scoreboard is 41 on the board. That means exactly 27 runs required in remaining 6 deliveries. Some 5 sixes required or a 4-6 and a boundary. But the batsmen have to play very well. Not a big pressure because they are in the tail end of this match, but some good strokes will produce and make some choice to the spectators watching. The number of spectators might be less now because it is a noon session. The meals will be the meantime, it will be a meal time, so some spectators will be having their lunch, but the number of spectators will raise like a thermometer in a mercury in a thermometer. So no doubt when coming to the tail end of this tournament, as the game progresses, some do and die matches will be produced in this tournament. So 27 required in remaining 6 deliveries. No fall. So now ball first time from the school end. Once again, that's a brilliant attempt by Harris. Nearly saving a couple of runs.
The ball, after getting the inside edge of the bat, just flown like a rocket towards the short fine leg region. But the fielder who was appointed there at the short third man region ran like a rocket and just grabbing a full land dive and grabbing the ball, releasing neatly, restricting the batsman just for a single run. Now Ajay that is Afrin at the striker's end. Lot of fielding settings been done, changes been done. Big wide. Oh, that is a fumble. This time the Haris making a fumble. Though he saved a couple of runs, but this time he made a mistake. That is 1 + 3, 2 runs to the scoreboard. Overall 3 in the extra category. Scoreboard moves to now 46 on the board. The target is getting somewhat nearer, but still pressure. Going for a big hit, that is Imtiaz Aman, easy run out, a direct hit. So Ajay the man, not just Ajay, that is Afrin the man back to the pavilion. Not each other, net. ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಅವರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So here comes once again a slow pitch delivery. This time once again a slight bit from Bala by Riaz. One completed, going for second. That is another wicket. Ajay the man sacrificing for himself. No doubt another wicket gone. So with that now the run rate is highly creeped. So no doubt now it is a big task. 3 balls, 22 runs required. Lofted one, just a single will be satisfied. And the full view of this tournament and of the ground is being captured by drone along with the viewers. Once again, brilliant delivery, just getting the outside edge of the bat just for a single. So scoreboard moves to now 48. Can they make that disciplined marking of 50? Because 68 is the target, but if they cross even 50, there will be some more satisfaction for the batsmen of Bandha 11, Safan. Once again, just is one completed, going for second, that is just restricted in the form of flag by 49 on the board. That concludes the innings for the team Bandha 11, and Team Elegant just neatly, slightly, without any effort, approaches towards the next round. So next, another high voltage match between the two Mangalorean teams, Sneha Malemar and Young Friends Urva, and the visitors and the cricket lovers who just approached to this ground. For their information, one of the biggest matches of this tournament yet to commence between Sneha Malemar and Young Friends Urva team. As I said, the numbers of spectators is less, but as the game progresses, there will be countless of spectators just entering to this ground to watch this match.
ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂದ್ಯದ ನಡೆದಂಥ ಬಂದರ್ 11 ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆನ್ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷನಾಗಿ ಸಾಜೀದ್ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಜೀದ್ ಅವರ ಉತ್ತಮ 19 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 40 ಅಂಕದ ಧಾರಣೆ ಈ ಸಾಜೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ತಾಫ್ ಮುಲ್ಲರಪಟ್ನ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ತಾಫ್ ಮುಲ್ಲರಪಟ್ನ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷದ ಫಲಕವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಜೀದ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡಿಗ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್ ಅವರಿಗೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬರಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು. So thank you very much, Prashant, and welcome back. Good afternoon, cricket lovers, and all set now for the big stage of this match, as quarter final of this most prestigious JD Boys Trophy 2021, and the Sneha Malamar takes on Young Friends Urva, and definitely we're expecting some the very good battle, the nail batting finish match. We are expecting not only but all the spectators out here in this most beautiful cricket ground want to see some good battle, healthy battle between bat and ball, and between these most prestigious teams in the South Kent district, Young Friends Urva versus Sneha Malamar. One of the favorite ground for Sneha Malamar. Still, I remember the last year they won one prestigious tournament, especially in this cricket ground, Sneha Malamar. One of the hunting ground for Sneha Malamar. So one of the favorite ground for Sneha Malamar. So that means we are expecting some a very good match between these two teams. Young Friends Urva, the one stage they never looks like they will going to be in the next round when they are struggling against Adimaheshwari Jeppu. But one man who changed the complexion of the match just came in. Of course, came as opening batsman for the side. And then when time is required, some explosive batting, then Mansoor takes the match away from Sneha Malamar. Just in a 1 over, as Young Friends make to the second round. And the Atif is a man hold on performance in that match, and they qualify for the next round. Coming back to the Sneha Malamar, they are played their opening matches against DFC Derlakatte. And at last it was a comprehensive victory for Sneha Malamar against DFC Derlakatte. Some fine performance from Sneha Malamar to qualify for the quarter final of this cricket tournament. Altogether, everything is set now for the big match. After winning the toss, captain of Young Friends has got no hesitation in their mind that they will go into field first, and that's why the opening batsmen are in the middle. Everything is perfect, bright sunshine, very decent colorful clouds out here in this most beautiful cricket ground, and very clean blue skies with the bright sunshine, and between that, in the middle of the ground, the drone camera of Bedra Media is really flying and catching the lovely moments of this cricket tournament. And just like it's one extra player in the ground for Young Friends Urva, as covering that as from the bowling end, they're covering from drone camera as Atif starts the proceedings from the commentary box. And right arm over the wicket to Jitesh, and Jitesh looking for his
favorite extra cover drive, but not quite able to beat the infield as the captain of young friends Ajmal stops the ball and there is no possibility of any run. Atif again, right arm over the wicket balls. Jitesh drives that one, drive to beat the infield, just off stop by the fielder, and good effort from Santosh there in the mid-off as he was trying his level best to stop that one. As just like what we are mentioning earlier, the outfield is not that much of quick enough to get past the infield, and batsman picked up a single. Sneha Malamar off the mark, one without a loss of any wicket, and Jitesh opened the account. Yatin to face next delivery. And again, nice looking off try there from Yatin. One more technically very sound player as Yatin, seeing the line of the ball very carefully, seeing the huge gap between bowler. There is no mid-off, there is no extra cover, so batsman quite easily picked up a single, then two without loss of any wicket. Atif again. Right arm over the wicket, bowls to Jitesh. Jitesh again finding that gap. It's very easy for the batsman whenever the ball is coming in the line, outside the line of off stump. Both the batsman is very happy to pick the single in that gap. Very interesting field set as far young friends Surwa is concerned. They are not trying to stop the singles in that region. Instead, they looks like they wanted to stop some big shots. Atif bowls improvising that one. Good stuff there from really Riaz, I think so, one of the most experienced campaigner in the side of young friends. Is a perfect example of effort there. But here is some extra run is coming up, and very good presence of mind from these two batsmen as they're going for the extra run as well. The Riaz diving to his left, but all the effort has gone in vain because already the batsman picked up a couple of runs for that. With that couple of runs, scoreboard moves on to 4-5 on the board, without loss of any wicket. Atif, right arm over the wicket balls down the leg stump, try to work set on the onside region, well within the reach of the batsman. A dotted delivery to end the over number 1 of Sneha Malamar. Atif completes this first over, and Sneha Malamar able to score 5 without loss of any wicket. A very steady start from Sneha Malamar. Coming to the cricket lovers, of course, Urva Cricket Ground, there was a prestigious RRP Memorial Trophies going on. 30 overs matches, but yesterday and today there will be a match for the Masters above 40, and it was good news for me because my team Hanuman Cricketers playing against young friends Surwa semi-final is going on, and Hanuman Cricketers have scored 75 runs and they set a target of 76 to win the match for young friends Surwa. That was a Masters trophy which is going on at UCG Cricket Ground, but still it was a 28 needed from 12 balls for young friends Surwa to win the match. So that was news from UCG, the Masters Trophy 2021 RRP Memorial Trophy, one of the most prestigious cricket tournament in South Kendra district. Here is a battle is on for the second guess it is the quarter-final, the third quarter-final of this cricket tournament. Sneha Malamar versus young friends Surwa. Sharan to operating here from the commentary box and bowling away from us. Right arm over the wicket to Jitesh. Jitesh, oh, that was outside edge of the bat, but out of the reach of Mansoor, because almost Mansoor looks like he was almost sitting behind the stumps. Very difficult for him to quickly get up and take the catch. Just going over the head of that wicket keeper, and batsman completed a single. Yatin. Scoreboard moves on to 5 on the board, without loss of any wicket. Very steady start, good start there from Sneha Malamar. They know exactly the kind of strategy to be implemented. The game plan always going to be a key here. Whenever you're playing against the teams like young friends Surwa, you should have some kind of game plan. After of course, you have lost the toss and got opportunity to bat first, then you should know that the kind of target to be given to the teams like young friends Surwa. Seeing that their previous match they're struggling to get the 39 runs, one stage they're struggling, and of course Sneha are looking to get some 45 to 50 runs in stipulated 6 overs. Outside the line of off stump, again batsman tried to cut that one, but bits completely beaten in the relegation. Just coming back to the format of the game, little bit changed here. The quarter final, this 6 overs format of the games, 1 hour has been reduced for this time factor. And that's why it's so important for Sneha Malamar to rotate the strike. This time, lovely shot, beautifully driven down to deep long off, but protection there in the deep long off. Very good stuff there by the fielder. And Ajmal is the captain of the side, one of the best fielder, very good fielder in the side, stopping such a certain boundary there.
and the batsman got ample time to complete that couple of runs. Almost he is standing in the wide of long off region, and ball is went in the straighter version, and the good stop by the Ajmal in the deep, and couple of runs here for Jitesh, and scoreboard moves on to 7. Now I think his pitch looks to be pretty good here for the batsman. Ball is very nicely coming to the bat. Sharan against the operating right arm over the wicket, beautifully bowled. Appeal for stump out. The Mansur is so confident in that occasion, but umpire is not quite enough that will give the result in favour of wicket-keeper. But certainly the back leg of Jitesh is safe, I think, inside that line, so that no question of stump out. But it's a good bowling there from Sharan. Almost that ball is nipped back, jagging back into the batsman with a great deal of face, and batsman completely beaten in that occasion. Maybe the intention of Jitesh to play that one little bit down to extra cover region, and that's why little bit making a room to play the shot. But Sharan's too clever in that occasion, bowling that line to Jitesh. Score remains on 7 on the board so far. Sharan is so good in this over. Umpire Arish Padil and Mr. Shriniket doing the job in the middle, but a big job here from drone camera is covering here. Now lovely shot, just getting over the infield, ball running down to deep cover boundary for 4 runs. Lovely shot there from Jitesh. Nothing wrong with the line of the delivery. That was a glorious cover right there from Jitesh. Fantastic cricketing stroke. Just using that delivery outside the line of off time to go over the infield. The passing between cover and extra cover. Down to deep cover boundary for 4 runs. Welcome boundary here for Sneha Malamar and for Jitesh, and score jumped into 11 on the board. The much required boundary here for Sneha Malamar. Sharan not having any protection in the deep. Look at the 3 fielders standing together. What a delivery that one. What a comeback there from Sharan. Look at the celebration for him. That's what the reaction required from the bowler. Any time when batsmen are punished, he not ability of bouncing back. This is a fantastic delivery, but Jitesh wrong shot selection. Try to play across the line towards the deep backward square leg, and because of Sharan, he's got a lot of face in his bowling. Beaten by the face, that ball hits off stamp. The wicket number 1 of Sneha Malamar is back into pavilion. So new batsman walking towards the middle here. The Pratap, famously known as Patu, his nickname. And wait and see how Pratap and then Yatin will going to anchor the innings. Very important for these 2 batsmen to carry on the business. 2 overs, not a bad run here. 11, just 5.5 runs per hour run rate. Now Zubair is brought into attack. In the previous match, is so impressive in his bowling. He was almost enjoying his bowling performance, and he picked up some wickets for young Prince Surwa. Wait and see in this match how he will going to perform. Short mid-off, short cover. There is a deep extra cover, short fine leg. One at deep backward square leg, between deep backward square leg, mid-wicket, mid-on. And mid-wicket flicks that one off his legs down to deep fine leg region by 18 to pick the single. Then scoreboard moves on to 12 on the board. 12 for the loss of 1 wicket. Very slow cricket is going on here. Of course, the one boundary that is came from the bat of Jitesh, but that batsman is back into pavilion. Pratap is facing his first delivery. This time quite beautifully played that one down to deep extra cover region. Santosh, the fieldsman there in the deep extra cover, fields the ball. One more addition to the 2 quality batsmen are in the middle for Sneha Malamar. Very good rotator of the strikes, both the batsmen. Yatin went for the expansive drive.
but looks like the Mansoor has missed the opportunity here. We really heard the sound of bat having a contact outside edge of the bat. Mansoor rare miss behind the stumps. Is always one of the safest pair of the hands, just like my friend is mentioning about Gopi. In the present cricket, Akim, the wicket keeper of KFC Kodikal, and then Mansoor of Young Friends Urva, one of the fine wicket keeper batsmen in the present cricket. Lovely shot, beautifully played there by Nathan. But this time a little fumble from the fielder. They're going for the second, but Bashir, the fieldsman, there in the mid-off. Little bit searching for the ball, then the batsman wanted a second. The Pratap knows that it was a danger if they go for the second, so he's just pushing back his partner to go back, and they settle for the single. This time with his offered bad shot, loose shot play there by Pratap. Might be he was a little bit excited by watching the ball. It was outside the run of off and very short indeed. And then he was just tapping the ball instead of hitting the ball. Pays the penalty for that, and the Sneha Malamar lost their second wicket. Zubair, successful bowler. Oh, again, the batsman has got a little bit of misunderstanding. As a new batsman, Ranjit, he wants a single, but Yatin knows that it's very dangerous. Already they lost 2 wickets. A good over there from Zubair. Fantastic overs. 3 overs completed, and then searching for the right track. Sneha Malamar able to score only 14 runs on the board for the loss of 2 wickets. And Gopi, just slow start in fact, isn't it? 14 in 3 overs, and they lost 2 wickets as well, Sneha Malamar. And against Young Friends, Sneha Malamar has to see that they have to get at least 40 plus runs on the board, and otherwise it's very difficult for them to restrict Young Friends to chasing that total. बिल्कुल सतीश, पहले 3 ओवर में सिर्फ 14 रन जोड़ चुका है स्नेहा मालेमार। और यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ अगर आप खेलते हैं तो कम से कम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो कम से कम आपको 40 का आंकड़ा पार करना होगा 6 ओवर के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ओवर में 14 रन जोड़ पाया है और 3 ओवर का खेल बाकी है और 40 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अभी भी 26 रनों की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं अंतिम 3 ओवर में कुछ विस्फोटक बल्लेबाजी अगर स्नेहा मालेमार के बल्लेबाज दिखाते हैं तो उनकी पारी का स्कोर 40 तक पहुंच सकता है या फिर 40 से ऊपर भी जा सकता है। फिलहाल इस वक्त उन्हें ज़रूरत है एक कुछ ऐसे धुआंधार बल्लेबाजी की जो उनके रन रेट को एक्सेलरेट कर सके। और ओवर की पहली गेंद लेकर शरण ने इस वक्त तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं है और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है ऑफ द बैट और स्कोर बोर्ड बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा के फलस्वरूप रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए स्नेहा मालेमार के बल्लेबाज। और इस वक्त शरण गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और स्ट्राइकर एंड पर रंजीत इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए। ये गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा था लेकिन सिरे मिड ऑन पर गेंद को खेल दिया और इसे बिना देखे नॉन स्ट्राइक रन के बल्लेबाज ने दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फनी। तो मंसूर ने सोचा कि नॉन स्ट्राइक रन पर रनआउट नहीं हुआ है, शायद बल्लेबाज का हाथ या पैर लगकर बेल सौंपे हुए हैं, तो इस वजह से उन्होंने गेंद की मांग की स्ट्राइकर एंड पर थ्रो को रिसीव करते हुए विकेट चटका दिया। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंद को विकेट पर लगा चुके थे, बिल छुड़ा चुके थे गेंदबाज, तो इस वजह से नॉन स्ट्राइकर एंड पर यह रनआउट होता हुआ। चौथा विकेट गिर चुका है। शोचनीय स्थिति इस वक्त स्नेहा मालेमार की और दिविन प्रमुख बल्लेबाज स्नेहा मालेमार की ओर से इस संदिग्ध मोड़ पर काफी जिम्मेदारियों के साथ अपना कदम यहां पर बढ़ाते हुए निस्संदेह एक धुआंधार साझेदारी की इस वक्त सख्त जरूरत है स्नेहा मालेमार को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो यंग फ्रेंड्स उर्वा के खिलाफ।
दोपहर के 2:45 यहाँ पर बज चुके हैं। धूप का कहर अभी भी कायम मैदान पर। दर्शकों की तादाद काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जेडी बॉयज ट्रॉफी 2021-2021 इस श्रृंखला का दूसरे दिन का छठा मैच यहाँ पर प्रगति पर। यह गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पीस बिहाइंड द स्टंप्स मेड बाय विकेट कीपर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पीस ऑफ विकेट कीपिंग। लेकिन बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। स्कोर रुक चुका है 15 रनों पर और शरण ने एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए हवे का रुख मैदान के दाईं से बाईं और जिस तरह से हवे दूर वाले छोर पर सीमा रेखा से बाहर गाड़े हुए झंडे जिस तरह से लहरा रहे हैं उस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैदान पर हवा दाईं से बाईं ओर गुजर रही है। 3 रंगों के झंडे, लाल, सफेद और हरा, और इस मैदान की शोभा को ये लहराते हुए झंडे और बढ़ाते हुए। और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो इस वक्त परीक्षार्थ समय बल्लेबाजों के लिए स्नेह माले मार के ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 15 रनों पर और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए शरण 19 ओवर में सिर्फ 1 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें तो ऊपर द विकेट ये गेंद को खेलना चाहा ऑन साइड पर, लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची डीप स्क्वायर लेग पर, जहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। तो जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शरण आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अटेम्प्ट और इस बार रन आउट चूक चुका है। अश्विन ने जीतोड़ कोशिश जरूर की थी इस गेंद को लपकने के लिए, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए एक हाथ से इस कैच को लपकना चाहा, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई, लेकिन एक बेहतरीन प्रयत्न इस गेंद पर अश्विन ने किया और तुरंत अपने आप को संभालते हुए एक टिप के बाद उस गेंद को कलेक्ट करते हुए निशाना दागा था नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ और दोनों संदर्भों में इस वक्त बल्लेबाज इस गेंद पर बचते हुए 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। और जहां तक का सवाल है 5वें ओवर का, तो 5वां ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज आतिफ गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दिविन इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए और दिवी के लिए इस वक्त लॉन्ग ऑन मौजूद, डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग ऑन साइड पर फील्डिंग का नजरिया ठीक सीमा रेखा के पास, ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ नहीं मिड ऑफ पर फील्डर तैनात, एक्स्ट्रा कवर मौजूद, थोड़ा सा सीधा दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर की पहली गेंद आतिफ के दिविन के लिए उछाला इनटू द गैप, लेकिन वहां पर फील्डर थोड़ा सा स्क्वायर मौजूद और स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। रन्स सिंगल्स के रूप में यहाँ पर बनते हुए। और जहाँ तक चौके और छक्कों का सवाल है, कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं बल्लेबाज ने हमारे मार के चौके और छक्के लगाने के, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज यतिन जो कि आरंभकार की हैसियत से मैदान पर उतरे थे, अभी तक का क्रीज पर डटे हुए और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। आतिफ दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद जमीन के सहारे लेग स्टंप पर आते भी शॉर्ट फाइनल की दिशा में और बल्लेबाज को रन यहां पर नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर। आरंभिक आघातों से संभलने की पूरी कोशिश यहां पर करता हुआ स्नेहा मल्ले मार रहा। कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 10 गेंदें और फेंके जाने बाकी। आतिफ फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज यतिन के लिए अगली गेंद लेकर। इस बार फाइन, दिस इज गॉन फाइन, आई थिंक प्रोटेक्शन आउट देयर, इनफैक्ट द बॉल स्ट्रेट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर। रियाज इस वक्त फील्डर थे डीप थर्ड मैन पर, थोड़ा सा स्क्वायर जरूर मौजूद, लेकिन गेंद तक पहुंचने में सफल डीप थर्ड मैन पर सीमा रेखा के अंदर। और इस बीच
1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से आतिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, एक बार फिर से ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स बाय विकेट कीपर मंसूर, लेकिन एक बार फिर से बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। स्कोर रुक चुका है 19 रनों पर और अंपायर इस वक्त विकेटों को सही करते हुए, बिल्कुल साफ शुभ्र नीला आकाश, बादलों का नामो निशान नहीं, सूरज नीला आकाश तले इस वक्त प्रज्वलित होता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैला चुका है और इस भीषण गर्मी तले एक कड़ा मुकाबला यहां पर जारी है स्नेहा मलहमार और यंग फ्रेंड्स के बीच में, मैंगलोर की 2 टॉप सीडेड टीमों के बीच में विजय के लिए। और जहां तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए आतिफ, दाहिने हाथ के बल्लेबाज दिविन इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, अजमल ने पहले जैसा ही बल्लेबाज ने रिवर्स शॉट खेलने के लिए बल्ला घुमाया था, अजमल जो कि कुछ हद तक पीछे दौड़ने की तैयारी में थे, लेकिन गेंद बल्लेबाज के बल्ले पर ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हुई और इसे देखते हुए गेंद हवा में उछली है। अजमल ने अपने आप को संभालते हुए अपने दौड़ को रोकते हुए आगे की ओर आकर गेंद पर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके आगे टिप्पा खाती हुई और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। और एक बार फिर से यह गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंदबाज के सिर के ऊपर से तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 21-21 for the loss of 3 wicket and over number 5 has been came to an end. 5 overs gone, it's 21-3. Still Sneha Malamar searching for the right track. Just a last over to go in their innings and let's see how many runs they are making in this remaining last over with the help of 7 wickets. अगला मैच खेला जाएगा टीम एलिगेंट और KFC कोडिकल के बीच में और मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए। The next match will be played between KFC Kodigal and Team Elegant, and because of that I request to the both teams players to please report to the stage immediately, make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು. गेंदबाजी अश्विन इस वक्त तैयार, इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और अश्विन इस वक्त स्नेहा मालेबार की पारी का अंतिम ओवर लेकर तैयार। स्ट्राइक लेते हुए यतिन जो कि 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई और स्नेहा मालेबार को इस अंतिम ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की सख्त ज़रूरत, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो ओवर की पहली गेंद लेकर अश्विन तैयार था। तो ओवर द विकेट ड्राइव किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, अपने पैरों के जरिए 20 गज के दायरे के अंदर गेंद को जुबैर ने रोका, लेकिन 1 रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक पाए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। क्वाइट क्रिकेट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, खामोश क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब तक स्नेहा मालेबार की पारी में अश्विन तैयार, दिविन के लिए गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, थोड़ी सी हिचकिचाहट और इस बार निशाना लग चुका है और ये 3 की पारी समाप्त हो चुकी है। हाँ ना और इस बीच इस हिचकिचाहट में इस हड़बड़ाहट में ये विकेट यहां पर गिर चुका है। ये 3 का चौथा विकेट गिर चुका है 22 रनों के योग पर। इट्स 22 for 4। म्यूजिकल बैंड की मधुर धुन यहाँ पर बजती हुई अपने हमारे कानों को ठंडक इस वक्त पहुँचाते हुए एक बार फिर से उस म्यूजिकल ट्रूप को अभिवादन करते हुए हम मैच की अगली गेंद की ओर बढ़ते हैं और इस वक्त हर्षित स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अश्विन फील्डिंग में सजावट इस वक्त करते हुए, स्कोर रुक चुका है 22 रनों पर। इट्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट और कुल मिलाकर 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और
अश्विन इस बार फिर से तैयार, दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार चिप किया है एक्स्ट्रा कवर पर और बेहतरीन कैच। आतिफ फील्डर थे, आगे की ओर दौड़ कर आए, गेंद पर अपनी नजरें गड़ाई रखी और बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपकने में सफल। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है पहली गेंद पर। ये अर्षित था। ये पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है और इसी के साथ 22 रनों पर पांचवां विकेट गिर चुका है। अर्षित आउट फॉर डक, गोल्डन डक, एंड now fifth wicket loss for Sneha Malamar, 22 for 5 now, and just now 3 balls remaining in the innings, 3 balls remaining in the innings. और अश्विन एक बार फिर से तैयार, इस बार दिविन के लिए ये गेंद, इस बार दिविन के लिए ऑन साइड पर उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं। 23 now for the loss of 5 wickets। और अश्विन राकेश नए बल्लेबाज, 2 गेंदें बाकी, 2 balls left in their innings। और ये गेंद इस बार उछालना चाहा और इस बीच अपील परिवर्तन के तौर पर धीमी लग कटर गेंद थी, लॉन्ग द कार्पेट जमीन के सहारे आए, स्ट्रोक्स खेलने में चूके लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा टकराया था और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 24 now and the last ball of their innings is now coming up। अंतिम गेंद लेकर अश्विन इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज दिविन स्ट्राइक लेते हुए। अश्विन दिविन के लिए अंतिम गेंद, ये गेंद लेग स्टंप पर विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने विकेट चटकाए लेकिन बल्लेबाज इस बीच क्रीज पर मौजूद और नॉन स्ट्राइकर एंड पर मेरे ख्याल से सही गेंद घोषित है और इसी के साथ ये पारी समाप्त हो चुकी है उनकी पारी में। ये पारी उनकी समाप्त हो चुकी है और निर्धारित 6 ओवर समाप्त होने के बाद 24 रन बनाए स्नेहा मलेमार ने। अब 25 रनों का लक्ष्य निर्धारित 6 ओवर में उन्होंने रखा है यंग फ्रेंड्स उर्वा के सामने। 25 द टारगेट सेट बाय स्नेहा मलेमार फॉर यंग फ्रेंड्स उर्वा for victory in 6 stipulated overs with the help of 10 wickets, and let's see can they reach the target or not. So 25 the target and their innings now going to start, and let's see can they reach the target or not. Meantime their innings starts with a short while. Till then we are taking a short break and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the innings of young friends Urwa will going to commence. Thank you. Dhanyavad. So thank you very much, Gopi. So welcome back again for this quarter final. And Sneha Malamar, a little bit disappointed to seeing the target which they're going to set for young friends was just a 25. And 25 target for young friends to qualify for the semi-finals. For the next match, KFC Kodikal and Team Elegant clashing for the title. Of course, a little bit correction, clashing to get the place in the semi-final. There's another quarter-final, second quarter-final of the Group B. So I request KFC Kodikal and Team Elegant, all the players, sign the official chart as soon as possible. ದಯಮಾಡಿ KFC Kodikal ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್ ಆಸ್ ಅ 25 is going to be a target for young friends Urva to qualify for the semi-final. Just like I think the bowlers did a job here for young friends Urva, now all up to the batsmen of young friends Urva to play responsibly to win the match. But Sneha Malamar
Not that much of good contribution from the batsmen of Sneha Malamar, but I think a little bit pressure now for the bowlers have to do some hard work if they wanted to win this match. Everything is set now for the chasing 25 is the target. Jitesh starts the proceedings from the commentary box and right arm over the wicket bowls and starts with the wide delivery as Bashir tried to reach that delivery outside the line of off temper. And first run comes up here for young friend Surwa, one without loss of any wicket. Here is the next one, beautifully driven but not quite able to get the timing behind the shot, didn't got that much of placement as well, so that ball went straight to the hands of short bit off. There is no possibility of any run. Jitesh bowls this time up and over, just over the infield. Looks like ball is definitely going to be carried to the fielder. Of course, running back, taking catch, always going to be one of the difficult chance for any fielder, and just going away from that fielder. Tried his level best to reach that one, but not quite able to do that, so the batsman got ample time to complete the single. Two without loss of any wicket. Mansoor, the man who changed the complexion of the match in the previous match against Adi Maheshwari cricketers. This time, you're going up and over again, not quite able to time that one properly, and you have to settle for the single for that. So Mansoor is quite such a dangerous batsman in the present cricket. He never looks the kind of bowler he is facing, never looks the kind of field placement, but he only knows hitting to the line of the delivery, and he is enjoying his great hitting stroke. Unorthodox kind of cricketing stroke, I will tell you, because batsman Bashir went for the premeditated switch it, and Jitesh, clever piece of bowling, changing his line, but Bashir, just like a left-hand batsman, playing that strokes, just like he is just opening the face of the bat, picked up a single outside the line of off stump, and the batsman a little bit misjudged that one. That was a good piece of bowling there from Jitesh. Slower one, change of face, and deviating and going away from Mansoor's bat, and there is no possibility of any run. Jitesh again, right arm over the wicket, bowls this time, went for the big shot, not quite able to time that one properly. Jitesh, once it looks like it was going to be a cotton ball chance, but it is far from the bowlers, so that the first over completed. Jitesh bowled well, and chasing 25 to win this match, and young friends are 4 on the board without loss of any wicket. 21 required in remaining 5 overs. That means 30 balls and 21 runs required for the victory for young friends Urva. In Urva cricket ground, UCG cricket ground, and the Masters Trophy is going on. Above 40 Hanuman cricketers managed to entering into the finals, defeating young friends Surwa Masters, setting a total score of 76 to win the match. Young friends Surwa short of 12 runs. And another semi-final, Mazda Kannur takes on Ocean Pandit House. The winner of that match will go into clash for the title of a very prestigious RR Pai Memorial Repercussion UFC Trophy, 27th. So here is Kiran brought into attack from the commentary box, from the far end, little bit correction. The Kiran has got a potential of picking up the wickets, one of the most economical bowler for the side of Sneha Malamar. Have to dump something special if Sneha Malamar want to win this match from the bowling. Left arm over the wicket bowls, and batsman straight away strapped at one. Bashit looks like is a different mindset today is implemented, little bit correction, in this match is implemented compared to the previous innings which is played. Looked a lot of pressure in his mind. But after that, looks like now he's chasing not a big total. So he's got a little bit positive frame of mind. We can see that in his batting. And Bashir picked up a single. Scoreboard moves on to 5 on the board. 20 required. And Yatin from the extra cover calling Kiran to give some kind of tips to ball, how to bowl to Mansoor. Because breakthrough is very important for Sneha Malamar if they want to win this match. Kiran bowls, and that was a good bowling there from Kiran. Again, Mansoor. Not only the Mansoor, there's so many batsmen I watched in this pitch. They're misjudging whenever the ball is outside and now off time. They left the ball, and only their miscalculation that going to be a wide, but it's well within the reach of the batsman. Again, across the line, half stop by the fielder Ashwath, and almost he was a happy man to see the smiling face for him. He knows that he stopped 1 run for his team. And the score remains on 5 on the board without loss of any wicket. Kiran again, so far is very good. Again, going to be one more dotted delivery. That's what needed Sneha Malamar. If they're not able to pick the wickets, at least they need to manage both some dotted deliveries to put some pressure onto the young friend Surwa.
But Mansoor is not really bothered about the dot balls. He is only bothered about clearing the field. And his next one. Again, beautifully bowled there by Kiran. And the batsman went for the quick single in that occasion. Excellent bowling performance there from Kiran. The 6 on the board and 19 more runs required for the victory. The pin drop silent here in this most beautiful cricket ground. That shows that the spectators, very decent, colourful spectators, enjoying the game of cricket here, of this most prestigious. Oh, ball him, cleaned him up. The Kiran has got at last got a breakthrough. The Bashits, the frustration is continuous here in this match as well, as he was trying for the reverse sweep against the face of Kiran, always asking for the trouble. Once you miss the ball, ball hits the stamps. The first wicket of young friends who are back into pavilion. 6 for the loss of 1 wicket after completion of over number. 1 ball remaining. Over completed, 2 overs completed, 6 on the board. So 2 overs completed, the equal battle now. We can see that the Sneha Malamar looks like never going to give up this match, never going to give up this match. The 2 overs going in favor of Sneha Malamar. Still 19 to get from 24 deliveries. Going to be anybody's game if 1 over of this, which is Kiran, will go into starts from the commentary box, and Kiran Jr. got the ability of bowling both in and outgoing delivery. Such a fantastic bowler. If he bowls with the rhythm, then he is such a dangerous batsman for dangerous bowler for any kind of batsman as Kiran. Just checking the direction of the wind. So important for the bowlers to need to see the direction of the wind. Because as for the direction of the wind, you need to bowl the line and you need to set the field and you need to bowl as for the field set. That's so important. That was one of the features of successful bowling. And Kiran is the one who got a lot of experience behind him. We'll wait and see what he will going to do here. And experience here on the Mansoor, as he was lofted that one quite handsomely down to deep long off, but not quite able to beat the field. The fielder there in the deep long on, quickly moving towards the direction of that the ball. The batsman had to settle for the single 7 for the loss of 1 wicket. That brings Imtiaz into strike now. Kiran, right arm over the wicket bounce. Looks like ball is just going over the head of the wicketkeeper Pratap. Might be the ball is down the leg seam, but premeditated switch it what Imtiaz. That's why he couldn't manage to play that one properly. Got an inner face of the bat, went towards a short fine leg. This time Imtiaz picked up a single. Then just so good in this situation where it was just a rotation of strike required. The Imtiaz is master of that as the rotation of strike is concerned. So 1 more addition. Scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Kiran searching for some wicket here. Again, Mansoor is a man in form, continuing his form in this match as well, connecting the ball very well. Neatly driven down to deep backward square leg region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 9 on the board without loss of little correction for the loss of Bashit's wicket. Kiran bowls beautifully bowled, perfect leg cutter in the negation. The batsman stretching his front foot to play the sweep shot, but Kiran is so clever in the negation, pitching in a good length spot, moving away from him, and good collection behind the stump. Bowled him, cleaned him up. That's what Sneha Malamar wanted here. The Imtiaz once again is really not learning from the mistakes, but Kiran just seeing that opportunity of bringing the ball between the bat and pads, around the legs in fact, going for the sweep shot, but that was a flighted delivery, a little bit turn as well, beaten by the flight and the turn, and the wicket of Imtiaz are back into pavilion, and the gate is little bit open here for Sneha Malamar after this wicket. ಹಾಲು ಅಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಹಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಮುಖೇನ ವಿವೋ ಪೆಂಡಲ್ ಹೋಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. So thank you very much. And Gopi, it's a match. It looks to be only poised now. Interesting. Once it looks like 25 is the target, Young Friends are definitely going to win the match quite easily. But 3 overs, 9 runs and 3 wickets. That means that the equal battle is on between Young Friends versus Sneha Malamanda. Wicket of Imtiaz, the last delivery of the over number 3, picked by Kiran. I think a little bit hope of winning this match is open here for Sneha Malamar, isn't it? एब्सोल्युटली सतीश, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. जहां तक सवाल है, पहले 3 ओवर में सिर्फ 9 रन प्रदान कर चुके हैं स्नेहा मालेमार के गेंदबाज. और जैसा कि आपने फरमाया, इम्तियाज का विकेट निस्संदेह स्नेहा मालेमार के लिए विजय के द्वार को यहां पर खोल चुका है. और 16 रन चाहिए अब विजय के लिए, बचे हुए 18 गेंदों पर. यह गेंद मंसूर टॉप एज जो फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इस बार मंसूर का विकेट गिर चुका है. So the pressure is now straight away building up on the batsmen of Young Friends Urua. इस बार मंसूर सफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहते थे. एक्स्ट्रा बाउंस आखिरी मौके पर गेंदबाज के लिए, और गेंद टॉप एज पर टकराई, हवे में उछली, डीप मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया. और हताश मनोभावना के साथ मंसूर पेविलियन वापस लौटते हुए 8 रन 4 विकेट. और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा, एट दिस सिचुएशन द बॉलर्स ऑफ स्नेहा मालेमार आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप. 9 for the loss of 4 wicket. So frustrations continuing here for the batsmen of Young Friends Urua. और 25 रनों का लक्ष्य स्नेहा मालेमार जब उन्होंने रखा था, तब ऐसा लग रहा था यंग फ्रेंड्स उरुआ के बल्लेबाज इस लक्ष्य को पार कर जाएंगे. लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से स्नेहा मालेमार के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, अब ऐसा लग रहा है स्नेहा मालेमार को भी इस मैच में मौका है. और आतिफ इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद शॉर्ट मिड विकेट फील्डर की बाईं ओर से इस वक्त निकल चुकी है. मुश्किल सा मौका, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है. 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए. और कुल मिलाकर अब रन से चाहिए 15, जबकि गेंदें बाकी है 16. ये गेंद इस बार अश्विन के लिए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, और एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा. और सरप्राइजिंगली अश्विन को इस वक्त प्रमोट किया गया है 3 विकेटें गिरने के बाद. इसमें इस विषय के पीछे कुछ हद तक रणनीति जरूर होगी यंग फ्रेंड्स उरुआ के कप्तान की. यह गेंद उछाल कर खेला था, क्योंकि मैं समझता हूँ यंग फ्रेंड्स उरुआ के कप्तान उनके प्रमुख 2 बल्लेबाज हैं, अजमल और अजहर, को वो अंतिम ओवर्स में प्रयोग करना चाहते हैं. इस वजह से इस अश्विन को प्रमोट किया गया. ये गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा चूंकि, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में. और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, और स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 13 रन और चाहिए, और गेंदें बाकी है 13. 13 टू गेट फ्रॉम 13 बॉल्स. द बैटल इज स्टिल ऑन. ये गेंद इस बार सफल होते हुए ऑन साइड पर उछालना चाहा अश्विन ने. मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, डीप पर स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. इस बीच 1 रन का इजाफा, और एक और बेहतर ओवर स्नेहा मालेमार के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से समाप्त हो चुका है, जिसमें रन्स बने 4. और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर. तो 12 गेंदे 12 रन. और सतीश, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? Outstanding comeback, and it was a great effort from Sneha Malamar. And sometimes it's happening, Gopi. For some teams, some grounds are favorites, and I think for Sneha Malamar, this is a hunting ground for Sneha Malamar. They got some luck in their favor as well by looking at the history of this cricket ground, and that means the Sneha Malamar, the young friends will need to be a little bit careful, because they know that if they underestimate that they're going to chase a small total. Now it's very important that each and every ball required some runs, and each and every dot ball, then it's going to be a problem for young friends Surwa. And I think Sneha Malamar, I think they have to ball really well. That 2 overs definitely going to be crucial for both the teams. Exactly, सतीश. और जैसा कि आपने फरमाया, यहाँ पर 2 ओवर दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, गेंद जाती हुई 1 रन मात्र मिलेगा बल्लेबाज अश्विन को, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर. 11 गेंदें बाकी.
11 रन चाहिए. 11 to get from 11 balls. What a match is now going on here. और गेंदबाज किरण जूनियर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. आतिफ इस वक्त एक बार फिर से अंपायर से गार्ड लेते हुए हमसे दूर वाले छोर से और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. किरण जूनियर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए आतिफ के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाह. डॉट गेंद. अब 10 गेंदे 11 रन चाहिए. और जहां तक सवाल है, दबाव अब सीधे यंग फ्रेंड्स उरुवा के बल्लेबाजों के ऊपर. और बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए किरण जूनियर. तो 10 गेंदे बाकी है, 11 रन चाहिए. और पहली बार कुछ हद तक स्नेहा मालेमार का तख्ता इस वक्त भारी लगता हुआ. लेकिन जब तक ना आखिरी गेंद इस मैच में फेंकी जाती है, यह कहना मुश्किल है कि इस मैच का विजेता कौन होगा, स्नेहा मालेमार या फिर यंग फ्रेंड्स उरुवा. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. गेंदबाजी करते हुए किरण जूनियर. दाहिने हाथ के बल्लेबाज आतिफ के लिए फुल टॉस. दिस taken inside defense. So this is wicket number 4 and that is absolutely turning point of the match. What do you think, Satish? Absolutely, Gopi. That was a juicy full toss, isn't it? And premeditated switch it attempted by Atif. Once it looks when ball is left the bat of Atif, it will go into clear the fence. But ball is went straight to the hands of a deep backward point region, and that was a really good going here for Sneha Malab. They got a settled batsman back into pavilion, and it's the right time whenever the new batsman coming into the middle, and the right time for the fielding team to bowl some another 2 or 3 dot ball and then put some pressure. And that is outstanding comeback, Gopi. And no one can realize that the Sneha Malab will go into bounce back this match when they are defending at 25. But it was a great saying in cricket is sometimes we feel that all the winning doors are closed, but all the doors may not be locked, but they are just looking for knocking the doors, and they are definitely knocking the doors by picking up the wickets. Now they have to bowl another 10 good deliveries remaining. बिल्कुल सतीश, दरवाजे अगर सभी बंद हो तो आपको नॉक करना जरूरी है. शायद कोई दरवाजा वहां पर खुल जाए और यहां पर नॉक कर रहे हैं स्नेहा मालेमार. और देखना यह है कि विजय का कौन सा दरवाजा उनके लिए यहां पर खुलता है. 9 गेंदे बाकी, 11 रन चाहिए. और इस बीच रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट असर, इस बार असर. और इसी के साथ यंग फ्रेंड्स उरुवा एंड नाउ दे आर स्ट्रांगली बैक इन द गेम विद दैट 6. रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं अजहर, और अपने इस नाम को 100% वो कार्यगत करते हुए यहां पर मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्शन किया. और कवर पॉइंट पर फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए. अब 5 रन और चाहिए 8 गेंदों पर. 5 to get from 8 balls. निस्संदेह ये छक्का यंग फ्रेंड्स उरुवा को पूरी तरह इस मैच में वापस ला चुका है. अब डॉट गेंदों की सख्त दरकार स्नेहा मालेमार को इस मैच में वापस आने के लिए. और इस बीच किरण जूनियर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजहर स्ट्राइक लेते हुए एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहा पीलर. इस बीच रनआउट का मौका, डाइविंग एफर्ट जरूर है, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद को विकेटों पर लगा नहीं सके. और इस बीच 1 रन बल्लेबाज को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर. सिर्फ 4 रन चाहिए, 7 गेंदे बाकी, 7 balls to go and just 4 runs they have to score for victory to qualify for the semi-final of this competition. और किरण अंतिम गेंद बाकी उनके ओवर की, और वो अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार. अश्विन, किरण तैयार. ये गेंद इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉल की दिशा में. अवसर, हालांकि एन मौके पर मैं समझता हूं क्रीज पर अपने बल्ले को रख चुके हैं और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित. अब 6 गेंदे बाकी और रन्स चाहिए 4. तो ये ओवर सतीश यंग फ्रेंड्स उरुवा को मैच में वापस लाने के लिए काफी सहकारी रहा है. खासकर वो छक्का जो अजहर ने लगाया था उसकी बदौलत यंग फ्रेंड्स उरुवा इस मैच में वापस आ चुका है. That's why Gopi's young friends is always going to be very dangerous. They any time, any situation, they got a player who can bounce back. And look at Azhar, just came into the middle when this settled batsman Atif is back into paint by playing the reverse sweep, but he played a same shot reverse sweep. He knows that one player is back into paint playing that reverse sweep. That was unbelievable, audacious, and because of that brave
the selection of the short selection there from Azhar, they back into this game. They hit the 6, they back into this game, but match is not yet ours. They have to get another 4 runs. Still, Sneha Malamar has got opportunity to win this match if they bowl well. I will tell you, the cricket is game of glorious uncertainty. Everybody knows that, and Sneha Malamar have to need to put some 100% effort. Then who knows, there will be opportunity for Sneha Malamar to bounce back. बिल्कुल सतीश, अंतिम ओवर शुरू होता हुआ ये गेंद, पहली गेंद सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, 3 रन चाहिए 5 गेंदों पर। और सही बात आपने फरमाया सतीश, रिवर्स शॉट पर जब विकेट गिरा हो तो अगले ही शॉट पर आप रिवर्स शॉट सिलेक्शन लेंगे तो आप में जिगर होना जरूरी है। और अजहर जो कि रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने ये रिस्क लिया और उस रिस्क की बदौलत यंग फ्रेंड्स उर्वा इस मैच में पूरी तरह वापस आ चुका है। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 2 गेंदें 2 रन, 4 गेंदें बाकी, 2 रन और चाहिए विजय के लिए। और यहां पर स्नेहा मालेमार को चाहिए डॉट गेंदें या फिर विकेटें इस मैच में वापस आने के लिए। फिलहाल 2 रन सिर्फ चाहिए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद अजहर के लिए ऑफ द टॉस, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ और 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ा। और इसी के साथ यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड 6 विकेट्स विक्ट्री अगेंस्ट स्नेहा मालेमार विद जस्ट 3 balls to go in their innings, and with that victory they are qualified for the semi-final of this competition. लेकिन बेहतरीन फाइट बैक इस मैच में स्नेहा मालेमार ने दिया। क्यों सतीश? Absolutely, ORP. That was the beauty of cricket, especially you're playing as limited over matches. That one shot can change the complexion of the match. I think it was a really bad thing to see, isn't it? All the efforts has gone in vain because of 1-6. Can you believe this? And even in the previous match also, when Young Friends were struggling in the middle, 1 over really changed the complexion of the match. And now that match is Mansoor changed the complexion. Here is Azhar is just came in, just like we are thinking about that Sneha Malamar will going to give a great fight for Young Friends Urva. Because of 1-6, all the effort has gone in vain. एग्जैक्टली सतीश, तो मैच समाप्त हो चुका है। पहली तीसरी सेमीफाइनलिस्ट के रूप में इस श्रृंखला के तीसरे सेमीफाइनलिस्ट के रूप में और बी ग्रुप के पहले सेमीफाइनलिस्ट के रूप में यंग फ्रेंड्स उर्वा इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है। अब अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच इस श्रृंखला का खेला जाएगा केएफसी कोडिकल और टीम एलिगेंट के बीच में। और इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में यंग फ्रेंड्स उर्वा का मुकाबला करेगी और ये मैच शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಕೂತಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕೂತ ಇತರ ಆಟಗಾರರು, ಇನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಂಥ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷನಾಗಿ ಅಜರ್, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಅಜರ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯೋಗೀಶ್ ಬಂಟು ಜಿಡಿ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಅಜರ್ ಮೆಮೊಂಟೋವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು 6 ಮುಖೇನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬರ್ತೀರಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಲ. ಜೇಡಿದ ಮೇನ್ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿನಂತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಡೆಯುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕುಲ್ಲು ಚುರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕುಲ್ಲು ಅಣ್ಣ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಲಣ್ಣ. ಓಕೆ,
ಹಾಲ್. ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳ ಈ ಒಂದು 2 ದಿವಸಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಲಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬಂಟ್ವಾಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಲಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಟಿಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು 12th ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್ ಅವರಿಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕೊಂಚ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್ ತಂಡ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಸೊಗಸು. ಈಗಾಗಲೇ ಹನುಮಾನ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. So thank you very much, Prashant, and once again welcome to our respected MLA, Mr. Rajesh Nayak, for this wonderful cricket tournament in the name of JD Boys Trophy 2021. What a wonderful organizing here by JD Boys in this most ಹಲೋ beautiful ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಲಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಜ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪು ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಲಿಪಾಡಿಗುತ್ತು ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So thank you very much. As the match is really going to start here, the first ball as the batsman Ashfaq picked up a single. Ashraf picked up a single, and Team Elegant started their innings with that single. And Shakir, the jersey number 28, is ball operating from the commentary box and right arm over the wicket. Second time in this over, and get ready bowling to Sajid. Sajid, one of the most destructive opening batsmen for the side of Team Elegant, one who scored 42 valuable runs. One of the highest individual score in this tournament came from the bat of this man. Very destructive and very explosive batsman for the side of Team Elegant. Sajid facing next delivery to Shakir. This time again beautifully bowled. That was a very good contest between these two. Very good player. The Shakir is a very intelligent cricketer. He knows exactly the potential of the batsman, and just he knows the weakness of the batsman as well. And as for that plan, is bowling that line as a Shakir. Right arm over the wicket, bowls again. One more dotted delivery. Look at the Shakir. He knows exactly after he's beating the bat. He knows that he beating the very good striker of the ball.
Just Sajid little bit started to feel the pressure after that consecutive two dotted deliveries. Shakir. This time I went for the reverse sweep, but a good line, change of line. Clever piece of bowling there from Shakir. And for him also, Shakir is a local boy. He knows exactly the condition of the ground. He knows the condition of the pitch. And even better than he knows the skill of the batsman. And that's why he bowled that different line. That was a clever piece of bowling there from Shakir. Just 2 runs on the board, the first over in progress. And Shakir knows that one delivery is remaining where he wanted to restrict the batsman. Because if he is not able to restrict the batsman, that was all the efforts definitely going to be wasted. That's why it's so important to set a field. Again, this time a lovely piece of bowling. And again, that was almost coming into the batsman and jagging into the batsman. So batsman picked up a single. ಅಲ್ಲಿ JD ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು JD ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು. ಓವರ್ ಟು ಕಮಿಟಿ. So thank you very much. Something is going on here. Is appealing for run out there, but I think it's a main umpire, Mohan Iyadi, already called that the over is completed, and now a little bit of conversation is going on here with the square leg umpire and the main umpire. What really happened here, if they are completed the first run or not, that's the thing that need to be noticed. If they completed that first run, and there is no question of the run out, I think so. But Shak is still arguing with the umpire, square leg umpire. But both umpires are, of course, Mohan Iyad is so experienced, so that umpires is just denying the appeal from the players of KFC Kodikal. So 3 runs in the first over. I think captain only can talk with the umpire. That's as per the rules and regulation of cricket is concerned. Every players don't please argue with the umpires. So 3 on the board without loss of any wicket after completion of first over. Very good tidy over bowling there bowled by Shakir in that over. Just 3 runs conceded and able to restrict the 2 batsmen. And that was very good to toss win here for captain of KFC Kodikal. After winning the toss, they elected to field first. And the Shakir bowled a very good over in this first over of the power play. 6 overs match, 2 overs going to be a power play. And where is the remaining 1 hour power play, how the team elegant 2 opening batsmen will able to take advantage of the fielding restriction. This is the one pair, they got highest partnership for the first wicket in this tournament. 50 plus run partnership for the first wicket. It's going to be a record in this tournament. And 42 runs, it will individual highest score by any batsman in this tournament is going to be a record. But that all is a history. Whatever happened, that was a past. But what we're going to do, that is a present. And that's what really required from these 2 batsmen. They're playing with a different team, against a different team. Of course, they played against Bandar 11, they scored that much of runs, but they're now playing against one of the top performer of the South Kendra district, KFC Kodikal. They need to bat well. This time, lofted over, but not quite able to beat the fielder. One of the safest fair of hands in the deep long of Ashad, the fieldsman there in the deep long of, quickly moving towards the direction of the ball. Single-handed, stop from the fielder. The batsman got ample time to complete the single. 1 more addition. Scoreboard moves on to 4 on the board without loss of any wicket. Just look at the field set now. Very interesting. Different field set for different kind of batsmen. For Sajid, the one fielder has been added to in the onside division because a powerful striker of the ball in the onside division. So there is a fielder there in the short square, like one at deep mid wicket, that has short mid wicket. Mid off is there. Again, bowler's back drive, just wide off that short mid off. Little bit correction, wide off the bowler to get past, single down to deep long off. So with that single, scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket. The drone cameras are flying around and getting some quality like coverage of this cricket tournament. Again, bowler's back right, but not quite able to get any kind of runs for that because mid-on fielder is very quick in that occasion to stop some runs. So far, it was a quiet cricket is going on in the middle. And we can see that the pin drop silent here in this most beautiful cricket ground, enjoying the spectators each and every ball of this match. 1 more addition to total. Ashraf picked up a single. Both the batsmen are dealing with the singles.
ಒಂದು ಚೂರು ಅಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಅಂತಲೆ ಓವರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಪುನಿ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಂತ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಲಿಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಅವರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Thank you very much, MLA of Pantwal Rajesh Nayak, Ulipadi Guttu, one of the most active MLA in this region, and is definitely going to be good to see that spending time in the middle with the players and spectators for a time. And one more dotted delivery is here. Chetan's brought into attack from the far end. Over number 2 is in progress, right arm over the wicket. Sajid drives that one up easily, but quite safely down to deep extra coverage, and they're coming back for the second. In comes the throw from the deep, and batsman got enough time to complete that couple of runs. Excellent running between the wicket. Both the batsmen quickly realizing when it was hard to combine boundaries and six, they need to look for some rotation of strikes. Singles, couple is always going to be key. In limited over matches, of course, needed some big hits, but even you can't neglect these singles and couple. And the last delivery of the over, and the batsman picked up a couple of runs. Sajid picked up a couple of runs after playing some dotted deliveries in this over. Completion of over number 2, then Team Elegant is looking for some big total, but a little bit struggling as far as the run rate is concerned. They're going exactly 4 runs per over. Run is total score is 8 on the board without loss of any wicket. But last 4 overs remaining. KFC Kodical knows that each and every over will going to be very important. Any big over in the middle of that, then Team Elegant has got a chance to cut some good score against KFC Kodical. KFC Kodical. Even Team Elegant also is in a winning run. They won some prestigious tournament as well last week. Even KFC Kodical also, they are in a winning track after lifting that prestigious Friends Trophy. Janta Colony held at Katipalla Diggers Ground. That was a really very decent performance from KFC Kodical and Team Elegant. And of course, they are a little bit new to this Underarm cricket. Last 1 or 2 years back, they started their journey in this world of Underarm cricket. But slowly and steadily, they are back into the winning track, especially in this season. Right arm over the wicket, Tazuddin. Slower one, but ball is in the air for a while, but out of the reach of the fielder. That was a vacant area. There is no fielder in the cover, so that batsman picked up very easy single. With that single, scoreboard moves on to 9 on the board without loss of any wicket. The good to see that both the batsmen really not throwing their wicket. Even they know that they didn't got enough runs on the board, but they are not taking any kind of unwanted risk shots. They're just playing as per the merit of the delivery. And here is Sajid facing next delivery from Tazuddin with the 2 jerk. His balls. Slower one. Fantastic piece of bowling, I will tell you. This is what Tazuddin is knowing for. Very difficult bowler to tackle for any kind of batsman. Look at that, the way that is just reducing the face of the ball. Always it's going to be very difficult for any very good striker of the ball. When it was a slow delivery, change of phases comes into play that to beat Sajid's bat. He's looking for the reverse sweep, but Tazuddin too clever than the batsman. Right arm over the wicket. One more slow delivery. Appeal for leg before wicket, but certainly that ball going down the leg stump. And Mohan Ayadi knows that because he's a former cricketer. Mohan Ayadi know exactly what will going to happen that delivery, because a lot of turn in this delivery, off cutter. And suddenly that will going down the leg stump. No question of leg before wicket. One more addition to total. Scoreboard moves on to 10 on the board without loss of any wicket. So quiet cricket is going on here. Tazuddin, right arm over the wicket to Ashraf. Slower one once again. Negotiated very well by Ashraf, but is not even more than single for that good looking stroke from Ashraf. One more addition to total. Scoreboard moves on to 11 on the board
without loss of any wicket. The crowd, we can see that just in front of commentary box, there was so many two-wheelers, just like a number of spectators, that number of two-wheelers behind the spectators. Even right side of our commentary box, left of our commentary box, the huge crowd enjoying the game of cricket very silently. Very decent spectator. Again, opportunity of run out there. Wide throw coming from the fielder. And they got opportunity to come back for the second, and this time wicketkeeper behind the stump missed the ball completely. The Karthik, the fieldsman there in the short mid-wicket region, a little bit wide throw from him. If it is a throw just over the bills, the opportunity of run out. Not only they missed the opportunity, but they just conceded extra runs in the form of overthrow as well. And scoreboard moves on to 13 without loss of any wicket. Tazuddin, last and final time in this over. Away from us. Right arm over the wicket balls. Beautifully bowled. Perfect delivery. Perfect off cutter. Sajid just misjudging the line. Well within the reach of the batsman. One more over completed. 3 overs completed. 3 quiet overs from KFC Kodikal and Team Elegant searching for the right track. They are only 13 without loss of any wicket. And wait and see how long they will going to carry their business in the bowling, and wait and see what will going to be the strategy now for the opening batsmen of Team Elegant to accelerate the run rate. Time to call Mr. Gopi to further explanation of the match in our national language Hindi. And Gopi, it looks like very good toss to win. The winning the toss is not important, and after winning the toss, implementing the strategy then performance is going to be very important. And 3 bowlers, I think, has done a good job of KFC Kodikal restricting the opposition for just 13 runs in 3 overs, Gopi. And just seeing the explosive batting of Team Elegant in the previous match, and I think KFC Kodikal did a great job to containing these 2 explosive opening batsmen. बिल्कुल सतीश, हालांकि कोई विकेट पहले 3 ओवर में नहीं खोया है टीम एलिगेंट, लेकिन सिर्फ 13 रन बनाने में सफल रहा है। और खासकर पिछले मैच के हीरो साजिद भी कुछ खास अब तक इस मैच में नहीं कर पाया। तीनों गेंदबाज जो इस्तेमाल किए गए हैं केएफसी कोडिकल की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है। चौथे ओवर की पहली गेंद उछाला है लॉन्ग ऑफ पर, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहां पर गिर चुका है। अशरफ ने गेंद को उछाला था, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर थे लगभग बाउंड्री लाइन से 1 या 2 इंच अंदर उन्होंने एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका, और इसी के साथ यह पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 13 रनों के ऊपर। और बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, हालांकि तीनों गेंदबाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, शाकिर, चेतन और ताजुद्दीन, तीनों ने अपना किरदार पहले 3 ओवर में बखूबी निभाया है। और फलस्वरूप इस वक्त रनों के लिए संघर्ष करते हुए बल्लेबाज टीम एलिगेंट के, लेकिन साजिद अभी भी क्रीज पर मौजूद है। और जिस तरीके की बल्लेबाजी साजिद ने पिछले मैच में बंदर 11 के खिलाफ की थी, उस तरीके की बल्लेबाजी इस बचे हुए लगभग 3 ओवर में अगर वो करते हैं तो निस्संदेह टीम एलिगेंट एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा कर सकता है। लेकिन केएफसी कोडिकल के पास जो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है, उसके खिलाफ अगर आपको बल्लेबाजी करनी है तो कुछ विशेष रणनीति आपको अपनानी होगी यहां पर। और देखना यह है कि साजिद किस तरीके की रणनीति यहां पर अपनाते हैं केएफसी कोडिकल के गेंदबाजों का सामना करने के लिए। और चेतन अपना दूसरा ओवर की दूसरी गेंद इस वक्त लेकर तैयार। दोनों बल्लेबाज क्रॉस कर चुके थे जब कैच को लिया गया था, इस वजह से साजिद इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं। और फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए चेतन, निस्संदेह चंद करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त जरूरत टीम एलिगेंट को चौके या छक्के के रूप में। और चेतन दाहिने हाथ ओवर द विकेट साजिद के लिए यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन पर, थोड़ी सी मिसफील्ड है, लेकिन 1 रन मात्र बल्लेबाज को मिलेगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर रहा। और नए बल्लेबाज रियाज जो कि प्रमुख बल्लेबाज टीम एलिगेंट के इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। रियाज के लिए उसी तरह का क्षेत्र रक्षण सजाया गया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर पॉइंट के दरमियान एक फील्डर तैनात,
ठीक सीमा रेखा के पास 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट थर्ड बैट, शॉट फाइन लेग और शॉट पेट विकेट पे गेंद रियाज के लिए ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, ठीक तरह से बल्ला नहीं अड़ा पाए गेंद पर, और इस बीच गेंद को कुछ हद तक स्ट्रेटर वर्जन में खेल दिया लॉन्ग ऑन पर, और इस बीच 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। 15 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। साजिद बैक ऑन स्ट्राइक, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद साजिद के लिए है, पैरों पर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट, और इसी के साथ साजिद की पारी समाप्त। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, उनके गेंद पैर पर टकराई, उनका पैर बिल्कुल मिडिल स्टंप के सामने रहा, और अंपायर मोहन को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं उन्हें आउट घोषित करने में। तो इसी के साथ ये दूसरा विकेट गिर चुका है। 1 रन के अंतराल में दोनों आरंभिक बल्लेबाज यहां पर वापस लौट चुके हैं, और परेशानियों के बादल धीरे धीरे अब छाते हुए टीम एलिगेंट के ऊपर। तो जिस तरीके की बल्लेबाजी इस मैच में साजिद ने की है, पिछले मैच के बल्लेबाजी के तद्विरुद्ध है। पिछले मैच में उन्होंने बनाए थे 40 रन सिर्फ 19 गेंदों पर, इस मैच में उन्होंने बनाया सिर्फ 7 रन, बल्कि 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया। और ये दर्शाता है कि बंदर 11 और KFC कोडिकल की गेंदबाजी में कितना फर्क है। तो यहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चेतन और अभिलाष नए बल्लेबाज के रूप में, एक और अनुभवी बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए। ये गेंद अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर, लगभग जमीन के सहारे है, ड्राइव करने के प्रयास में चूके अभिलाष, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 15 रनों पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है। चेतन एक बार फिर से तैयार, अभिलाष के लिए ये गेंद ड्राइव किया पॉइंट पर, ओ मिसफील्ड इस बीच ठीक तरह से कलेक्ट कर पाते तो निस्संदेह ये खतरा पैदा हो सकता था बल्लेबाज के लिए, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटी, और इस बीच 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। स्टिल द बैट्समैन ऑफ टीम एलिगेंट आर सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक, और कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल यहां पर बाकी, और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर में टीम एलिगेंट के बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जेडी बॉयज ट्रॉफी 2021-2020, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है जेडी बॉयज बंटवाल ने, और इस श्रृंखला का सीधा प्रसारण बेद्रा मीडिया के जरिए यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट इस वक्त की जा रही है, श्रीमान जनाब इरफान इनके सारथ्य में, और निस्संदेह ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करती हुई। तो हमारे कमेंटेटर बॉक्स में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर श्रीमान गणेश शनाय, जो कि जय हिंद बंटवाल के भूतपूर्व सदस्य रहे, हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम हृदयपूर्वक उन्हें सर्व क्रीड़ा प्रेमी और संगठकों की ओर से और सर्व खिलाड़ियों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत यहाँ पर करते हैं। हार्दिक स्वागत है आपका श्रीमान गणेश शनाय जी। तो जहाँ तक सवाल है, इस वक्त शाकिर गेंदबाजी संभालते हुए, और अभिलाष इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। कुछ करारे स्ट्रोक्स की सख्त जरूरत इस वक्त टीम एलिगेंट को। ये गेंद ड्राइव करना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, और इस बीच स्कोर रुक चुका है 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर शाकिर इस वक्त तैयार। यह गेंद बॉल्ड आउट, बिल्कुल जमीन के सहारे, एक्स्ट्रा क्विकर। अभिलाष गेंद को उछालना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, गेंद उनके बल्ले को चीरती हुई सीधे मिडल स्टंप को बिखेर कर ले गए, और एक बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन गेंद पर ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं शाकिर। इट्स 16 for 3।
इम्तियाज नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और कोडिकल केएफसी कोडिकल के गेंदबाज इस वक्त लगभग छा चुके हैं इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, अगर एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो इन बचे हुए गेंद में कुछ करारे स्ट्रोक्स चौके और छक्के के रूप में जरूर लगा रहे होंगे टीम एलिगेंट के बल्लेबाजों को। और अब तक उन्होंने कोशिश जरूर की है, लेकिन सफलता उनके हाथ में नहीं आई है और उसका कोई मौका भी केएफसी कोडिकल के गेंदबाज अब तक प्रदान नहीं कर चुके हैं। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल। 18-18 कुल मिलाकर 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर। दिन धीरे धीरे शाम की ओर ढलता हुआ, शाम के 4 बजते हुए धूप का कहर जरूर कम हो चुका है मैदान पर, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। और इस बीच बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से शाकिर दाहिना तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए, गेंद रियाज के लिए, गेंद को उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा। लेग बाय 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स नाउ। और रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए बल्लेबाज टीम एलिगेंट के शाकिर अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इस बीच पैरों पर गेंद टकराई थी बल्लेबाज के, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों से खचाखच ये मैदान यहां पर भर चुका है और एक बेहतरीन श्रृंखला, एक शानदार प्रगति यहां पर करती हुई ये गेंद इस बार, दिस इज एन क्लीन हिट, इट्स कुड बी गॉन ऑल द वे। ओह, डिजास्टर फॉर द बैट्समैन। बॉल, गेंद इस वक्त वृक्ष के डाल पर टकराती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर, वरना निस्संदेह ये गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती थे। तो दुर्भाग्यशाली रहे रियाज इस गेंद पर, और वहां पर उन्हें रन्स मिले सिर्फ 1। तो एकमात्र रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। और कुल मिलाकर 5वें ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4.20 प्रेजेंट रन रेट इस वक्त उनके पास है। रियाज इस वक्त कुछ हद तक हताश बैठे हुए, अन्य बल्लेबाज के साथ कुछ बातचीत करते हुए। निस्संदेह स्ट्रोक बेहतर था, पहला आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक टीम एलिगेंट की पारी में रियाज ने लगाया था, लेकिन दुर्भाग्यवशात गेंद सीमा रेखा के अंदर जो वृक्ष है उसके डाल पर टकराकर नीचे गिर पड़ी, और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज उस स्ट्रोक पर प्राप्त कर चुके हैं। अंतिम ओवर उनकी पारी में शुरू होता हुआ हकीम इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और इम्तियाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, रियाज जो कि स्ट्राइक लेते हुए, और इम्तियाज नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद। गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट हकीम, ये गेंद पैरों पर टकराई, शॉर्ट थर्ड पैर पर गेंद पहुंची, थोड़ी सी मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। जस्ट 5 बॉल्स नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स, और हकीम एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद धीमी गेंद को उछालना चाहा, शॉट फाइन लेग पर निशाना लग चुका है, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज रियाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके हैं। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 4 गेंदें बाकी, और रियाज अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। निस्संदेह अब तक केएफसी कोडिकल के गेंदबाजों में एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर दिया है, और 4 गेंदें अब उनकी पारी में शेष, और हकीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज के लिए, दाहिना तो ऊपर द विकेट। ये गेंद फ्लाइटेड ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहा, लॉन्ग स्ट्राइक के बल्लेबाज काफी आगे निकल आए, और इस बीच ये विकेट गिर चुका है। वाइड का भी इशारा हो चुका है, रन बटोरना चाहते थे, लेकिन गेंद पहुंची सीधे शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में, और शॉर्ट फाइन लेग फील्डर ने नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो किया, और गेंदबाज ने अपने दूसरे प्रयत्न में थ्रो को रिसीव करने के बाद विकेटों पर निशाना दागा, और निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ, और इसी के साथ बल्लेबाज इम्तियाज की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है।
24 for the loss of 3 wickets. For the loss of 4 wickets, in fact. और हकीम इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट मौजूद, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, थोड़ा सा स्क्वायर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, रियाज के लिए ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को मोड़ा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है। एकमात्र रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। द 25 इज अप फॉर टीम एलिगेंट इन द ओवर नंबर 6 and लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। नए बल्लेबाज आरिश इस वक्त क्रीज पर मौजूद, हकीम की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार और हकीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने के बल्लेबाज आरिश के लिए ये गेंद, अच्छी गेंद, विकेट कीपर मनोहर के हाथों में और इसी के साथ रियाज की पारी समाप्त। रियाज कुछ कहते हुए आरिश से जब गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी तो आपने रन लेने के हड़बड़ाहट क्यों दिखाए और उनका विकेट यहां पर गिर चुका है और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। विकेट नंबर 5 25 रनों के ऊपर। इट्स 25 for 5। तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, सिर्फ 2 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। $25 for the loss of 5 wickets now. हकीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के नए बल्लेबाज के लिए यह गेंद ड्राइव किया, बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन नहीं मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी, अंतिम गेंद अब बाकी उनकी पारी में। द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। हकीम तैयार, इस बार गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑन पर सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर टीम एलिगेंट। दे फिनिश विद 26 for the loss of 5 wickets in the stipulated 6 overs and now the target for KFC Kodikkal is 27. 27 they have to score in the stipulated 10 overs, stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation for them to qualify for the semi-final of this competition. 27 the target in 6 overs and their innings starts now with the reject shot. Well, till then we are taking a short break और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने यहाँ पर उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब KFC कोडिकल की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
So thank you very much, Gopi. So welcome back. Once again, it was a low total and small target in front of KFC Kodikal. 26 to win the match. 27 to win the match. The previous match it was a 25 to win the match for Young Friends Surwa. Now it's a 27 to win the match here for Team Elegant. That shows, even though the condition looks to be a little bit better for the batsman, but still I think the bowlers are doing a fantastic job in each and every team's bowlers, really putting hard to get some good going for the bowlers rather than the batsmen. So wait and see how well as the Team Elegant will go into restrict KFC Kodikal from the victory. First delivery, right arm, round the wicket, straight away batsman tapping the ball in front of, that was a foot piece of fielding there by the fielder, but I think the batsman Shakir is so quick between the wickets so that he managed to complete that quick single. Once it looks like when ball went straight to the hands of Abhilash, one of the left hand, the batsman, of course, it was a favourite hand that was picked in the left hand itself, but not quite able to make that run out because the Shakir is a very good runner between the wicket, and he just completes the run in a right time. He's dragging his bat and he's just safe in the other end. The first run comes up here for KFC Kodikal, one without loss of any wicket. 27 going to be a target. The 36 possible deliveries, and they have to get 27 runs to win the match. So important for Team Elegant. Not only they need to restrict the batsmen from the runs, but at the same time, if they wanted to put some pressure, they need to take some wickets in the beginning itself. Then only they can win this big match. Of course, Neha Malema, once there looks like that the 25 definitely going to be a good total to depend. But one strokes which came from the bat of Hazar will really change the complexion of the match. Here is next one, right arm round the wicket to Shakir. Shakir once again not quite able to play that one properly, but a very important thing is that in the middle he able to protect the strike. So both the batsmen off the mark with the singles, two without loss of any wicket. Team Elegant chasing 27 to win this match. What a wonderful cricket tournament. JD Boys Bantwal, their successful fourth year Underarm cricket tournament in this most beautiful venue. Again, Tajuddin, sensible batting, absolutely sensible batting there from Tajuddin. Of course, he is a kind of batsman who loves to play some drive cricketing stroke. And but this time he knows exactly the set condition of the game. No need to panic, no need any big shots, but rotation of strike certainly is going to help team, a little bit correction, KFC Kodikal to win this match. And quite nicely played there by Shakir. So good in the situation like this, Shakir. Very much composed, very much focused, and a little bit frustration for him in the previous match. He didn't able to perform from the bat, but the big matches like quarterfinal, semi-final, always he leading from the front. Got ability of getting a perform. Definitely going to miss the off stamp, no doubt at all. But a good shout there from the bowler Zabir. Try to put some pressure on to umpire, but umpire is very experienced seeing the line of the delivery which is going to miss the off stump, and there is no possibility of leg before wicket. But one more addition to total anyhow, and scoreboard moves on to 4 on the board without loss of any wicket. This time 5 on the board, quite deliberately edging it down to short third man region by Shakir. No problem whatsoever in this over for both the opening batsmen. KFC Kodikal, they off to the very good start, steady start. 5 without loss of any wicket, chasing 27 to win the match. That means 22 more runs required to win this match. 6 overs match, let me correction. 6 on the board and 21 required for the victory in the remaining 4 overs. 5 overs, let me correction. 30 ball and 21 more runs required to win this match. The equation is really favoring the chasing team. That's why it's so important to winning the toss each and every matches, the big matches like this. When you're winning the toss, if you bowls well, then when you are chasing the total like just over 25 runs, always going to be that was a clear picture for the batsman, the kind of strategy to be implemented to chase down the runs.
Shriniket and umpire Mohan Iyadi is at square leg. Shriniket is a new face in the umpiring panel, especially maybe there's a debut for in this cricket ground for him. Off the back foot, Shakir is so good in it as he was intelligent cricketer. And of course, cricket is all about the mind game more than the physical game. You need to control your mind, isn't it? If he fails to control your mind, then the mind control your game. I think it's not a good thing. But here is controlling game with his mindset. That's what Shakir is all about. A fantastic cricketer. Right up over the wicket. Drives that one. Oh, that was a misfield there by the fielder. Will batsman go for the second here? No, it doesn't, because Riaz is quickly backing up, quickly going back and fields the ball and denying the second from these two batsmen. One more addition to total scoreboard moves on to 8 on the board without loss of any wicket. So far, KFC Kodikal so good, but Team Elegant have to do something special from the bowling. They have to break this partnership they wanted to back into this game. That's why Riaz trying his level best again. Ball is in the air, but out of the reach of the fielder in the deep backward square leg. Shakir quite deliberately played that one. You know exactly the fielder is in the deep. Ball definitely not will going to carry it to the fielder. And a half-hearted sweep shot, slog sweep shot attempted by Shakir. He picked up a single anyhow. And with that single, scoreboard moves on to 9 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Riaz. Right, around the wicket to Tazuddin, improvising quite nicely down to deep backward square leg boundary. It will go into be a boundary, yes it does. What a intelligent cricketing stroke there from Tazuddin, shuffling across the line of the delivery, moving towards the offside, allows the ball coming into his bat. Then he knows there's a fine leg inside the ring and get the placement right to get the boundary for KFC Kodikal. And with that boundary, scoreboard moves on to 13 without loss of any wicket. Thanks to the band player for playing that music, that festival atmosphere they created in this most beautiful cricket ground. For each and every boundary, there will be a music, and each and every wicket, there will be a music. Outside the line of off time, good comeback by the bowler Riaz, but it's too late because it was lot, I will tell you, in this situation. Boundary for the opposition when you are chasing a total like 27 to win the match. The need to restrict the boundaries, even the single. Riaz. Round the wicket he balls off the toes, plays it down to deep mid-wicket region for a walkable single. So with that single, scoreboard moves on to 14 on the board. So completion of over number 2 then, chasing 27 to win this match. And KFC Kodikal, no problem whatsoever. As far as the run rate required is concerned, they are too higher than the required run rate. And then they didn't lose any wicket as well. And then 7 runs per over, the run rate is progressing. And equation, just 13 required in remaining 4 overs. That means 24 deliveries remaining. They have to get another 13 runs to win this match. Match is almost controlled by KFC Kodikal. Team Elegant, they have to do something magic. The miracle need to be happen in the bowling. But miracle is always not happening in the game. But keeping a hope of winning this match is very important. Confidence is also always going to be very important. You can change the complexion of the match if you pick 1 or 2 wickets in 1 over and 1 quiet over, then all chances for Team Elegant to bounce back. But here, Praneeth brought into attack, a different kind of bowler compared to the last 2 opening bowlers. He is a kind of bowler who gives a lot of flight in the bowling. You can turn the ball around. That's what wicket-taking bowler is so important for each and every teams. And wait and see how will Praneeth will going to produce breakthrough. This time right in the gap, down to deep backward square leg boundary for 4 runs. We are talking about the wicket, but he is in a different frame of mind. The master class again coming from Shakir, improvising. Moving towards offside, gets that one past that short square leg, and a very important boundary to KFC Kodikal, and score jumped into 19. Just 8 little more runs required for the victory. Praneeth bowls. Reverse switch comes into play. It will go into be a 1 more boundary.
And they wanted to finish this match as quick as possible. One more boundary. Just a 4 runs required for the victory. Score jumped into 23. And just a boundary required for the victory for KFC Kodikal. It will going to be a comprehensive victory for KFC Kodikal. Pranit bowls. Try to finish the match in a style. The beats are infield, just a single. The 3 required for the victory. Opportunity for Tazuddin to finish up the match. Just a 3 required for the victory. Ooh, that was a good ball indeed. I think ball might be the past. Something is there. Maybe ball is just kissing the stumps or not. I don't know whether it's a ball passed between the wicket or not. But I am real surprised why that Bales is not off. And against Pranit. Ball him, cleaned him up. Now his Pranit has got a wicket here. Tazuddin little bit showing the urgency that you want to finish the match in a style, hitting the boundary. But it is not so easy in cricket. Still 3 more runs required for the victory. Very melodious saxophone play, but not that much of melodious for the followers of Team Elegant, because they are almost standing in the edge of defeat. But something is melodious for the followers, the fans of KFC Kodikal, hearing that beautiful music. So thank you very much. Again, back to this game. Just 3 more runs required for the victory to win this match. From the far end is a change in bowling. Zabir once again coming his second and last over of his quota, bowling right arm over the wicket to Shakir. Shakir this time turns that one quite nicely down to fine leg region for a easy single. There is an opportunity of couple, but both the batsmen knows that just 2 runs away from the victory, no need to panic, and no chance of getting any risk for getting that couple of runs. This time Hakim went for the big shot. He wanted to send that one between cover and extra cover. There is no fielder in the deep. Looks like it was a test match fielding set here for Hakim. That's it. Match is a finish in a style. He's just sending that one between cover and extra cover towards the deep extra cover boundary for 4 runs. And KFC Kodikal entering into the semi-finals of this most prestigious JD Boys Trophy 2021 comprehensive victory, big victory, 9-wicket victory, and certainly they go spared of 16 deliveries to spare. 9 wickets, big victory here for KFC Kodikal. Hard luck, Team Elegant. Thanks a lot, Team Elegant, to coming here and taking part in this wonderful cricket tournament, JD Boys Trophy 2021. We will take a short break and we are back in a big game. The semi-final between Young Friends Urva versus KFC Kodikal. So man of the match of the previous matches goes to, I think it's an easy decision, the all-round performance from Shakir, leading from the opening batsman and opening bowler. Shakir scored 9 runs out of 10 balls, 15 runs will be correction out of 9 balls, and then he picked up 1 wicket with the average with a very good economy rate. Manohar. ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೀರಾ ಓನರ್ ಮನೋಹರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಶಾಕೀರ್ ಅವರು. ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಧಾರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಗದೀಪ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು 7 ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 7 ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4:20 ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದವರು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ 4:15 ಟಾಸ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮಯದ ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಸುಗಮವಾಗಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ 4:15 ಸರಿಯಾಗಿ ಟಾಸ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸಹಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. 7 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬಿ ಫೂಲ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಫೂಲ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕರ್ವೇಲ್ ಹಾಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕರ್ವೇಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ತಂಡ ಈಗ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯಶಾಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನ ಬಿ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ನ ಬಹಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಜನರ ಕಾತುರದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. Sports is not just about playing a game or competing. Sports is about doing it right. Equipments, jerseys and trophies. Play and celebrate sports like a star. Olympic sports, get your game on. Name a sports and we help your play the best. Cricket, football, athletics, hockey, volleyball, basketball, throwball, swimming, gym, karate, track pant, jersey shorts, indoor items, etc. Wholesale and retail. Delivery within short ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೈನಿಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸೈನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮುಖೇನ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೆಂಡಲ್ ಹತ್ರ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
Second match, that is DFC Derlagatte and ಅಲ್ಪ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅక్కడ ಟೂ ವೀಲರ್ ಗೇಟ್ ಪೊಗ್ಗುನಲ್ಪನೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯದಿ ದಾವಣಿತವರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಆಂಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ರೆ ಅವಳು ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ದಯದಿ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪೊಗ್ಗುನ ಗೇಟ್ದ ಪೊಗ್ಗುನಲ್ಪನೆ ಅವೇನು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯದಿ ಆಯ್ತಾ ಓನರ್ ನಗಲೋಚೂರು ಬರೀಟು ಅಂತ ಅದ್ರ ಅಂಕಲ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯದಿ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಗ್ಗುನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಬರ್ರೆ ದಯದೀದ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಅಲ್ಪ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಬೈಕ್ ಆವಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತದು ಬೋಡ್ನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರೋಡ್ ಉಂತಾಲೆ ದಯದೀದ್ ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ರೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗೇಟ್ ಪೊಗ್ಗುನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ದಯದೀದ್ ಇಜಿನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯದೀದ್ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಿಂದ ఆయన ಬರೀಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕೇರು ಬತ್ತಿಜೇರಿಂದ ದಯದೀದ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಬರೀಕೊನೋದಿಲ್ಲ ಇಜಿನ ಅಕುಲೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ఆయన ಬೇಗ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡಿಂಗ್ಲಿ I think it's formalities of a signature is all over there. So I think it's a captain need to be get ready for the tossing ceremony of young friends Surwa as well as KFC Kodikal. ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ 4:15 ಮೀರಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹು ಜನರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಾತುರದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟಾಸಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಪವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಪವನ್ ಚರಣ್ ಸೈನ್ ಆಗಿದಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಟಾಸಿಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಗಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು. ಈ ಕೂಡಲೇ 4:15 ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದ್ದರೆ ಓವರ್ನ ಕಡಿತದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ವಿರಾಮ ಬೇಡ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಟಾಸ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲದೇ ಇದ್ದೇರು, ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲದೇ ಇದ್ದೇರು, ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಹೋಗುನ ಅಲ್ಪನೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಬತ್ತನ್ನ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ 2-3 ಜನ ಇತ್ತು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದೇರಂದ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದೆಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ನಡ್ಡು ಮೂಸಲ ಪಂದ ನೆಂಗುಲು ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಂಡು ದಯದೀದ್ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬರೋರು ದಯದೀದ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಸಹಕಾರ ಅನ್ಪ್ಲೆ. So big match is coming up. It's the young friends who takes on KFC Kodigal. Of course, 3-4 times they meet each other in few prestigious cricket tournaments. The contest, of course, going to be very interesting. Twice occasion young friends were able to defeat KFC Kodigal, and even KFC Kodigal in the last tournament at Janta Colony, they are able to defeat young friends Surwa. So it's going to be a very good contest between these two most prestigious teams in the South Kenda district. And I think it's going to be good to see that young friends Surwa, I think the owner of young friends Surwa, Tilak, will going to witness this match. I think on behalf of organizers, it's going to be a warm welcome to Mr. Tilak of young friends Surwa for this the big match between young friends Surwa versus KFC Kodigal. KFC Kodigal already requested the two captains please get ready for the toss. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕಂಡಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರರಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಆಟಗಾರಂತ ಈಗ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಡಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶನ ಇವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರ್ ಬಂಗೇರ ಹೊಸಮನೆ ಇವರು ಕೂಡ ನಾವು JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು JD ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. JD ಬಾಯ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಜಗದೀಪ್ ಸುವರ್ಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು
ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ದ್ರೋಣ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾಗ, ಈಗ ದ್ರೋಣ ಹಾಕಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಇರುವಂತ ಜೆಡಿ ಸುವರ್ಣಕ್ಕೂ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕ್ ಡ್ರೋನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಜೆಡಿ ಸುವರ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಪ್ ಸುವರ್ಣ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಈ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಶೇಷ ರಚನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲು ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರಾಫಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿದ ಈ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಸರು ರಾರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಪ್ ಸುವರ್ಣ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಪ್ ಸುವರ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮನಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಶೋಭೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೂಪರ್ 6 ಆಗಲಿ, ಫುಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾದರಿಯ ಅಥವಾ 30 years ಮಾದರಿಯ ಈ 3 ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಟ್ರಾಫಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಸಮಯ, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯ ಈ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಆಗಮನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂತಹ ಆಶಯ. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡಗಳ ಈ ಹಣಾಹಣಿ ಅವರು ಈ ಕಣ್ತುಂಬ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ನಡೆದಿದೆ, ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೈನ್ ಹಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. 5 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. 7 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 2 ಕಪ್ತಾನರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು Umpire Harish Padil and Mohan Ayade, please come in front. ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಪೆಂಡಾಲ್ ಡಯಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇರು. ಅಂಪೈರ್ಸ್
ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರುವ ತಂಡದವರು ಕೂಡ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಟಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾಸ್ ಆತನಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಟಾಸ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡ. So here you go, as the drone camera is having a coverage of the players. Has got some game plan here after winning the toss, selected to field first. I think young friends Surua, the good toss to win. Now here go the young friends Surua, the drone camera flying high and getting some coverage of the players of young friends Surua. And young friends Surua will go into field first after winning the toss, and there it is slowly entering into the ground. Now it's going to be two umpires for this match. Umpire here in the middle, of course, they will going to enter the ground. Those did a fantastic job throughout the tournament, and before they're having some coverage of you can see that two umpires here, and of course shaking their hands, giving both umpires all the best for themselves, because this is a big game. They knows that Arish Padil and Mohan Eyade, one of the most popular umpires in South Kenda district. Arish Padil is experienced. Mohan Eyade is one of the popular umpire as well. Walking towards the middle, done a fantastic job in today's match. Arish Padil, yesterday also he did a good job in this cricket ground of this JD Boys JD Boys Trophy 2021 day number 1, and they are walking towards the middle here. So very good toss to win. After winning the toss, the young friends were elected to field first, and wait and see how well their strategy will going to help to win this match. But KFC Kodikal, even they lost the toss, but they got the opportunity to bat first, and wait and see the game out, the type of the battle between these two teams. And Gopi is straight away coming back to this high voltage game. The KFC Kodikal and Young Friends Surua, both the teams has got a potential of entering into the finals. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಲೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಸರಿದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಸ್ಟಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಫೀಟ್ ಆದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಕೀಪರ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವ ಲೈನ್ ಕೂತಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಆದಷ್ಟು ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಚಾರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು, ಅದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ.
2 ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೇರ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅದು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಾದರೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎದುರುಗಡೆ, ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಪ್ಯಾನಲ್. Thank you very much, Prashant, and absolutely right there, because the spectators, the one who really responsible for the success of any cricket. Now, because of their support, I think is this kind of cricket tournament is organized in this most beautiful cricket ground. So far, it was a very decent and colorful crowds really encouraged the game of cricket, and almost we are standing in the edge of the success. I will tell you, only 2 matches to go to get the result. Will going to be the champion of this most prestigious JD Boys Trophy 2021. Already the owner, the founder of JD Boys, just like Prashant has explained, Jagdeep Suvarna, JD and company, and his name, and because of his support, the JD Boys and their teammates able to organize such a wonderful cricket tournament in the name of JD Boys Trophy 2021. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದು ಹೋದವರು ಅದರ ಮಾಲಕರು ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So all set now for the big match. As Atif will going to start the proceedings from the far end. Tazuddin is ready, spectators ready, umpires ready, and even commentators are ready. Right above the wicket. Oh, looks like ball is in the air for a while, but out of the reach of the fielder. Zubair there in the short backward point region tried to take the catch, but it's just falling short of him. And Tazuddin got a single in that occasion. So he's off the mark. And KFC Kodikal won without loss of any wicket. Definitely it's going to be a great battle. Both the teams has got some good players. Balance in both the teams. They got some good all-rounders in the side. They got some specialist batsmen in the side. So all together, it's a big, huge, I think is a complete package. Both the team has got. But the plus here for bonus here for KFC Kodikal, that Naufal is going to play in that playing 11 of KFC Kodikal. Atif again from the far end. Right arm over the wicket, bounce to Shakir. Shakir tried to drive that one, not quite able to time that one properly. At the same time, the fielder, the captain of the side, tried to hit the stumps in the non-strikers and missed the stumps completely. If it is the direct, it is going to be a very close call for Shakir. So again, Atif from the far end. Right arm over the wicket to Tazuddin. Full toss delivery, juicy full toss. Thank you very much, set by the batsman Tazuddin. Can you believe this? This is what the cricket we are talking about sometime. Even the bowler like Atif will start to feel the pressure when you're having a big game like this. He's bowled that juicy full toss. How can the batsman like Tazuddin will go and miss the opportunity to dispatch that one into the deep backward boundary and over the deep backward boundary line for a maximum. Down the leg stump, frustration and the pressure straight away into the bowlers. Straight away pressure onto the young friends who they know exactly if any score around 45 to 50, very difficult to chase down, because KFC Kodikal, they got fantastic bowling department and fielding department. Atif again, right arm over the wicket, bowls to Tazuddin. Tazuddin looking for the big shot on the onside region, but off the toes, he turns that one down to deep backward square leg region for a easy single, and with that single scoreboard moves on to all together. We can see that the 10 already on the board, double figure straight away in just a 4 deliveries bowled, and KFC Kodikal got double figure 10. Atif, right up over the wicket, ball to Shakir. Shakir, just an opportunity of run out. Oh my goodness, can you believe this? Bills are not off. Of course, Atif able to hit the stump. As the fact that the bills are not off, then I think it's definitely going to be the batsman dealing with some luck. Always great saying, isn't it, Gopi? There will be some ingredients of luck is required for any success, and that luck is going on in favor of Tazuddin. Dealing with some luck, because already I thought that he's the lucky man because he got one juicy full toss. Because rare full toss, Atif never going to bowl that full toss delivery, and he got a full toss delivery. Now he got opportunity, and even he hits the stump. But luck is in the favor of batsman, and hard luck in favor of bowler Atif. So all we can see the drama in the first over itself in this big match.
Atif. Right arm over the wicket. Bounce to Tazuddin. Drives, but oh my goodness! Ashwin, once he thought that ball is just slipping out of his hand. But second attempt is able to hold the catch. But Tazuddin couldn't manage to carry that luck towards the end. Very next ball itself is back into pavilion. Might be a little bit, he was cautious, but a little bit, what do you think, overconfidence after getting that six. He wanted to play a big shot, pays the penalty for that, and he's back into pavilion. KFC Kodigal lost their first wicket at the score of 11. And all incidents Gobi is 11 for the loss of 1 wicket, but all we can see that the sudden changes in the playing 11. Of course, Naufal we can see that who represent Goryang Boys, the captain of Goryang Boys, not able to play for Goryang Boys. Missed it, but now KFC Kodikal, they got one big player, Naufal. At the same time, Young Friends Surwa, they got Ashad, the left hand. He's got place in the playing 11. That means two good changes, big changes in the playing 11. And that shows the importance and the high voltage of this match, because both the teams wanted to become the champion of this most prestigious cricket tournament. We'll see how well it's going to be benefit KFC Kodikal, the arrival of Naufal in this tournament for KFC Kodikal, and wait and see how well it's going to benefit Ashad, left hand. Ashad, of course, is the most dangerous and very, very explosive left-hand batsman in present cricket. Ashad has missed the 2 matches in this tournament, and now he came in the right time for the big match, high voltage match. So all we can see that the first over going in favor of KFC Kodikal in form of run rate. They got 11 in the first over, even though they lost the wicket of the danger man Tazuddin back into pavilion. Naufal is in non-striker, and Shakir is the man who will go into take a strike against the bowling of Sharan. Right arm over the wicket bowls, and that ball down the leg stump going further away. It's going to be a wide. So young friends will need to be very careful when you're conceding that much of runs. Already there was a 6 balls they bowled, and they conceded double of that. Delivered 12 runs on the board for the loss of 1 wicket. Sharan again away from us, aiming in. Right arm over the wicket bowls, going for the drive. Mistiming it. Oh, look at that fantastic effort. Beautifully done there by Azhar. He's the one. Very well electrifying in the field. Very athletic indeed. And almost a gymnastic work there from Azhar. On the fraction after picking the ball, then in action he's just releasing the ball. Even though didn't got that result. Look at that one in replay. Absolutely good coverage from the cameraman. Thank you very much for that fantastic coverage of this good effort from the fielder at Gully region by Azhar. So Sharan again back to his bowling mark with a short run up. Right arm over the wicket to Naufal. Naufal wanted to swap that one. Wicketkeeper missed it. Again Azhar second time. He was just enjoying the field because he knows that there's a grass in the field. So no danger of getting wound, injury. No chance at all. Just like he was fielding in the Eden Garden of Kolkata. And 2 good efforts from Azhar. This time again, try to hit the big shot. Lofty shot he's trying for Shakir, but he didn't got that much of enough room to play the shot. And he picked up a single down to deep long on. Anyway, scoreboard is moving now. 15 already on the board for the loss of 1 wicket. Big score on the board for KFC Kodikal. Need to be, when you're playing against a team like Young Friends Surwa, the kind of target you need to be set. That will going to be a little bit difficult for Young Friends Surwa. The 45 to 50 going to be a good total to defend, because it's a 7 overs match. And that 50 is certainly required. This time again, looking for the reverse sweep again, throw coming from the fielder, but not quite enough. Effort is not quite enough to stop the single, because Shakir is a very quick between the wicket. And he completes that risky single quite easily, even though Azhar the fieldsman there. But Shakir is so quick in between the wicket, completes the single. 16 for the loss of 1 wicket. Sharan again away from us. Right arm of the wicket, trying for the reverse sweep. The strikes are rotated very nicely. Absolutely fantastic game plan from the batsmen of KFC Kodikal. Why not, after getting that big over, the first over, then they knows that rotation of strike takes them into at least 45 to 50. And that's why both the batsmen so focused on that target. Again, ball is in the air. Catch has been taken there in the short fine leg. The Bash is the man there, little bit bending down to take that catch. And Naufal is been out
without doing much. He scored only 2 runs out of 3 balls and not that much of effective from the bat of Naufal. But Sharan has got a very important breakthrough for young friends Surua. So thank you very much for melodious bands. And here is score is 17 on the board. And 2 overs completed, Gopi. 17 is a huge score, isn't it? And especially in the power play, 8.5 runs per over run rate is progressing. Even they lost 2 wickets, but sometime in limited over match is very important to keep that run rate. And the KFC Kodikal, I think their captain must be pleased with the performance with that 2 overs by the batsmen. बिल्कुल सतीश, पहले 2 ओवर में 17 रन जोड़ चुका है केएफसी कोडिकल। हालांकि विकेट जरूर उन्होंने खोया है ताजुद्दीन के रूप में, और पहले ओवर में जब ताजुद्दीन ने छक्का जड़ा था तब उनके इरादे साफ हो चुके थे कि पावर प्ले ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने। हालांकि पहले ओवर के अंतिम गेंद पर ताजुद्दीन का विकेट जरूर गिरा, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में पहले ओवर के मुकाबले एक बेहतर गेंदबाजी शरण ने की। सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किए, लेकिन 2 ओवर के समाप्ति के बाद 2 पावर प्ले ओवर के समाप्ति के बाद एक बेहतर रन रेट कायम रख चुका है केएफसी कोडिकल। Absolutely, and it was the right time for the bowler like Zubair to get some wicket, some ball economic lower for young friends who were to restrict KFC Kodikal not to get that big total. Of course, they're cruising towards a 45 to 50, no doubt at all. Already 18 on the board in just 13 balls that they faced. That means they got a very good start to KFC Kodikal. And Chetan is a new batsman, just came into middle. Didn't got that much of opportunity to bat in the last 3 matches, but he's a very useful cricketer. Fantastic all-rounder for the side of KFC Kodikal. Oh, strike to York, the batsman. Slow over one, chance of run out there. But again, Shakir is so quick in between the wicket. And once it looks like ball is in the air for a while, looks like ball is definitely carried to the fielder, but Ashwin a little bit far. Of course, he's standing in the short mid-wicket region, but ball travels towards a short square-leg region, not able to take the catch. Tries for the run-out, but he fails to do that. So one more single is added to total scoreboard, moves on to now 19 for the loss of 2 wickets in the over number 3rd in progress. Zubair from the far end, seaming in right up over the wicket, bowls and a copybook style. Lovely shot there from Shakir. Look at that technique of his getting the runs. He's so impressive, so cool and calm, and just waiting for the ball. That's so important. He's got a good eye, and he's watching the ball till the last moment. Then he was delivering the stroke what he wanted. This time Chetan beautifully played that one. Glorious extra cover drive. Plays it down to deep extra cover region for a single. Both the batsmen watching very well, seeing that Zubair, of course, so many years both the batsmen played against Zubair, so know exactly what kind of delivery the Zubair will go into ball. And they implement the strategy. Oh, wicket keeper behind the stump, missed out. Looks like it was a chance here. But whenever oh my goodness, there is no chance at all, because by call by umpire, it was a missed chance. I mean, not a missed chance, actually that was a Mansoor. Missed the ball completely. Might be they're thinking about the dot ball, but very difficult for the wicketkeeper behind the stump when it was outside the line of leg stump to gather. Right arm over the wicket, balls. Beautifully bowled again. Mansoor missed a chance of run out there in the strikers end as well. But Imtiaz trying for the run out in a non-strikers end. That batsman completed that single. Then once again there will be run in the 3rd over as well. Not that much of run as compared to the previous 2 overs. This is a little bit quiet over compared to last 2 overs. So 3 overs completed. Then KFC Kodikal, even they lost task, asked by the opposition to bat first. They're batting really very well in the middle, and total score is now 23 on the board for the loss of 2 wickets. Gopi 23, 7.33 runs per over run rate progressing. Still it's a good run rate, isn't it? And if they're able to bat the similar way and the similar run rate, then it will going to be a 49 to 50 runs in end of the innings. That will go into danger. It will going to be the big message for young friends who need to be very careful, isn't it? बिल्कुल इसी रन के रफ्तार के साथ अगर वो बचे हुए 4 ओवर में भी रन से बटोरते हैं तो लगभग 50 के आसपास उनका रन संख्या उनकी पहुंच सकती है। हालांकि 50 को पार भी कर सकती है, और एक बार
50 के आसपास या 50 को अगर पार करता है उनकी टीम की रन संख्या, तो निस्संदेह यंग फ्रेंड्स के ऊपर दबाव उनके बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। फिलहाल पहले 3 ओवर में बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त दिया है केएफसी कोडिकल के बल्लेबाजों में, और देखना यह कि आने वाले 4 ओवर में क्या उसी रफ्तार को वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं। और अश्विन प्रमुख गेंदबाज यंग फ्रेंड्स की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर, और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े मौका, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। शाकिर ने रन न लेना चाहा, हालांकि गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर थी, वाइड का इशारा भी हो चुका था, और इसके बावजूद शाकिर ने रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाई, और चेतन दौड़े जरूर लेकिन उनसे भी पहले नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचा थ्रो, और गेंदबाज ने गेंद को कलेक्ट करने के बाद तेजी के साथ विकेट चटका दिए। तो दुर्भाग्यवशात रन आउट चेतन का हो चुका है, तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है, जबकि इस वक्त स्कोर है 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखना यह है कि नंबर 5 बल्लेबाज के रूप में कौन से बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। धन्यवाद म्यूजिकल बैंड की मधुर धुन हमारे कानों को ठंडक इस वक्त पहुंचा रही है। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो इस मैच में अभी भी संघर्ष जारी है इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। और गेंदबाजी इस वक्त अश्विन के हाथों में, और अश्विन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। नए बल्लेबाज जयराम इस वक्त क्रीज पर मौजूद, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार आतिफ, और आतिफ माफ कीजिए शाकिर, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को स्वीप कर दिया। इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर 25 रनों पर पहुंच चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। और जयराम इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अश्विन दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हैं, इस बार लेग कटर गेंद पर स्ट्रोक खेलना चाहता, हालांकि इसको डिफ्लेक्शन ऑन दैट, लेकिन इस कैच को छोड़ने के बावजूद स्टंपिंग करने में सफल मंसूर, और इस स्टंपिंग के बदौलत पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में जयराम का विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 4 25। अब मैं समझता हूं सतीश, कुछ हद तक यंग फ्रेंड्स उरुआ के गेंदबाज इस मैच में वापस आते हुए, पहले ओवर में 11 रन बने, दूसरे ओवर में 8 रन बना, तीसरे ओवर में 6 रन बना, अब चौथा ओवर जो इस वक्त जारी है इसमें केवल 2 रन बने, लेकिन 11 से 25 के दरमियान 4 बहुमूल्य विकेटों को केएफसी कोडिकल खो चुका है। और मैं समझता हूं एक अच्छा कमबैक इस दौरान यंग फ्रेंड्स उरुआ के गेंदबाजों ने किया है। Exactly, Gopi, and just look at the KFC Kodigal batting department. They didn't got that much of batting practice in the previous 3 matches. Once their top order batsman back into pavilion, then all in sudden there's the new batsman coming into the middle. They didn't got that much of enough chance to bat in the middle. So that I think it's a young friends who even they conceded runs, but they able to pick the wickets. That's so important. So the opportunity is still there for young friends who to put some break on the run rate of KFC Kodigal. बिल्कुल, एक और प्रमुख बल्लेबाज हकीम का आगमन इस वक्त हो चुका है, और वो इस वक्त साथ निभाएंगे शाकिर का। हालांकि शाकिर आरंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे थे, अभी भी क्रीज पर मौजूद, और जो साझेदारी की कमी इस वक्त नजर आ रही है। देखना यह है कि शाकिर और हकीम, ये दोनों अनुभवी बल्लेबाज केएफसी कोडिकल के, ये दोनों मिलकर अपनी टीम को एक सुस्थिति पर पहुंचा पाते हैं या नहीं एक बेहतर साझेदारी के जरिए। और अश्विन इस वक्त तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा, लेग कटर गेंद थी, हालांकि गेंद के ट्रेन को पहले ही भांप लिया था, थोड़े से स्टंप्स को कवर करते हुए ऑन साइड पर गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ दिया। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और अश्विन एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार शाकिर के लिए हवे में टॉपेज, लेकिन फील्डर थोड़ा सा पीछे तैनात, थोड़ा सा स्क्वायर तैनात, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 7 ओवर्स पर साइड टू बी प्ले। और गेंदबाज अश्विन एक बार फिर से तैयार शाकिर के लिए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद कट किया खूबसूरती के साथ, और थर्ड मैन फील्डर को बीट करती हुई गेंद निकल चुकी है। इम्तियाज वहां पर फील्डर है, और अपने दूसरे प्रयत्न में जब तक गेंद को वो फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का।
मैं समझता हूं बल्ले का बाहरी किनारा लगा था। इम्तियाज थोड़ा सा स्ट्रेटर वर्जन पर तैनात थे। गेंद उनकी दाईं ओर से निकली, कोशिश जरूर की थी लेकिन नाकामयाब। और जब तक पीछे की ओर जाकर जब तक दूसरे प्रयत्न में वो गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन चुराने का। तो 2 रनों के साथ 29 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर पर मौजूद एक फील्डर, डीप बैकवर्ड ऑफ पॉइंट और डीप कवर पॉइंट के दरमियान एक फील्डर तैनात ठीक सीमा रेखा के पास। और दर्शकों से खचाखच इस मैदान इस वक्त भर चुका है और भरनी भी चाहिए क्योंकि एक हाई वोल्टेज मैच यहाँ पर प्रगति पर। और अश्विन की गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, अपील कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई। आई थिंक ही इज गॉट अ बैड ऑन दैट, ही इज गॉट अ बैड ऑन दैट। और आखिरी मौके पर 1 रन बल्लेबाज को मिला और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। तो इस ओवर में रन्स बने, कितने रन्स बने इस ओवर में? 7 रन इस ओवर में बने। और कुल मिलाकर बेहतर ओवर भी नहीं कहा जा सकता है लेकिन इतना खराब ओवर भी नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर 4 ओवर के बाद 30 रन बन चुके हैं 7.50 रन की औसत से। और जहां तक सतीश, मैंने और आपने चंद ओवर पहले जिक्र किया था कि 50 के आसपास इस वक्त KFC कोडिकल को पहुंचना होगा निर्धारित 7 ओवर में। अगर उन्हें यंग फ्रेंड्स उर्वा के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर दबाव बनाए रखना है तो अब 3 ओवर का खेल बाकी है और देखना यह है कि इन बचे हुए 3 ओवर में क्या KFC कोडिकल के बल्लेबाज अपने टीम के आंकड़े को 50 के पार कर पाते हैं नहीं। फिलहाल गेंदबाजी इस वक्त संभालते हुए आतिफ, जो कि काफी महंगे रहे थे, 11 रन अपने पहले ओवर में प्रदान किए थे। पारी के पहले ओवर में एक छक्का भी उन्होंने प्रदान किया था। फुल टॉस गेंद, उनकी फुल टॉस गेंद पर ताजुद्दीन ने छक्का झड़ा था डीप मिड विकेट पर। और इसके बावजूद उन पर विश्वास रखते हुए उन्हें दूसरा ओवर इस वक्त सौंपा गया है। और देखना यह है कि आतिफ अपने कप्तान के भरोसे को किस हद तक निभाते हैं इस ओवर में। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। शाम का वक्त 5:10 यहाँ पर बच चुके हैं। धूप का अस्तित्व मैदान पर अभी भी कायम। घने वृक्षों के परछाइयाँ जो सीमा रेखा के तट पर हैं, उन घने वृक्षों के डाल के परछाइयाँ धीरे धीरे मैदान की ओर बढ़ती हुई और धीरे धीरे यहाँ पर रोशनी ढलते हुए वक्त के साथ साथ कम होती हुई। अच्छी गेंद अलॉन्ग द कार्पेट, बिल्कुल सीधी लाइन के साथ गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा, स्क्वायर ऑफ द विकेट। चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 30 रनों पर। और आतिफ इस वक्त तैयार था तो ओवर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर मोड़ना चाहा। 30 तरीके की विकेट कीपिंग मंसूर द्वारा और इस बीच कोई क्षति नहीं और स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है 30 रनों पर। 5वां ओवर यहां पर शुरू हो चुका है। हल्की सी हवा मैदान पर इस वक्त चलती हुई और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जेडी बॉयज ट्रॉफी 2020-2021 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है जेडी बॉयज बंडवाल ने। और इस श्रृंखला का दूसरे दिन का दूसरा सेमीफाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ इस ढलते हुए शाम में। आतिफ की गेंद, ये गेंद हकीम के लिए, गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर काफी पीछे, गेंद तक पहुंचते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 32 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। आतिफ, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हकीम इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए। ड्रोन कैमरा हमारे ठीक कमेंटेटर बॉक्स के सामने लहराता हुआ और शानदार लाइव कवरेज इस श्रृंखला का इस वक्त देते हुए बेद्रा मीडिया कमेटी, जो कि श्रीमान इरफान इनके सारथ्य में इस गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया था खूबसूरती के साथ, स्टंप्स को कवर करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 33 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। आतिफ एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर इस वक्त सामना करते हुए एक हाथ से गेंद को स्वीप किया आखिरी मौके पर। हालांकि शाकिर ऐसे स्ट्रोक्स खेलने में माहिर है और यहां पर बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी। इस गेंद पर बल्ला उड़ाते हुए हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया खूबसूरती के साथ। स्क्वायर लेग पर 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। तो स्कोर पहुंच चुका है 34 रनों पर और आतिफ इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद लेग से बाहर, फाइन गेंद को डिफ्लेक्ट किया लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, डीप फाइन लेग पर शरण फील्डर मौजूद हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 35 नाउ।
सो 5 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर और पिछले ओवर के मुकाबले एक बेहतर ओवर आतिफ ने इस वक्त फेंका और 5 ओवर की समाप्ति के बाद अब बन चुके हैं 35 रन। 7 का रन रेट अभी भी कायम सतीश और 2 ओवर का खेल बाकी और ये 2 ओवर में देखना यह है कि उनके बल्लेबाज और कितने रन न बटोर पाते हैं, लेकिन एक बेहतर वापसी अंतिम चंद ओवर में यंग फ्रेंड्स उर्वा के गेंदबाजों ने किया है। क्यों सतीश? Exactly, Gopi, but 35 I think is a big score and 5 overs, 2 hours to spare. They got 6 wickets in hand and having that 6 wickets in hand, having 2 quality batsmen are in the middle, Shakir and Hakim. They got ability of accelerating the run rate as well. And any score 15 in 2 overs, I think it's a huge one, Gopi. Because if you had 15 for 35, it's going to be a 50. And that's what KFC Kodigal wanted to get. 50 definitely going to be a winning score. Especially in the evening, almost we are the time is 5 past 15. And after 5:30, 5:40, it's not that much of easy to chase down, especially when lights are not that much of good. There is no wind at all in the ground. So I think young friends are a little bit under pressure if it is a 50 plus runs on the ball. That's why it's so important for young friends to restrict the batsman not to get that 15 runs in 2 overs. बिल्कुल सही बात सतीश आपने फरमाया और यहाँ पर 50 रनों के अंदर रोक कर रखना है इस वक्त यंग फ्रेंड्स के गेंदबाजों को, केएफसी कोडिकल के बल्लेबाजों को। यह गेंद इस वक्त स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ स्वीप कर दिया था डीप फाइन लेग पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 36 रन। और जहां तक केएफसी कोडिकल का सवाल है, 50 के आंकड़े को पार करना उन्हें जरूरी है अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है यंग फ्रेंड्स ओरवा के सामने। शाकिर और हकीम अपने रणतंत्र को किस तरह से कार्य रूप में बचे हुए गेंदों में लाते हैं ये देखना पड़ेगा। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में आती फील्डर थ्रो पहुंचता हुआ दूसरा रन नहीं मिलेगा। फ्लैट वर्जन पर थ्रो सीधे विकेट कीपर मंसूर के हाथों में और इस बीच सिर्फ 1 रन दोनों बल्लेबाजों को मिला। 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 विकेट गिर जाने के बाद 12 रनों की साझेदारी अब तक बन चुकी है। हकीम और शाकिर अपने संपूर्ण प्रतिभा का अनावरण यहां पर करते हुए इस मैच में और एक बार फिर से गेंद को उछालना चाहा, ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर जहां पर गेंद को फील्ड कर दिया गया और इस बीच बल्लेबाज को 1 रन मिला। कुल मिलाकर स्कोर पहुंच चुका है 38 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज शरण एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, क्लीन कलेक्शन अजमल द्वारा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर। ओवरऑल एक्शन में इस वक्त थ्रो किया अजमल ने गेंद को फील्ड करने के बाद और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 39 रनों पर। ड्रोन कैमरा हमसे दूर वाले छोर पर लहराता हुआ इस वक्त पूरी तरह लाइव कवरेज इस पूरे मैदान का यहां पर करता हुआ यह गेंद स्वीप किया, पैडल स्वीप इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप फाइन लेग और डीप स्क्वायर लेग के दरमियान 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 40 4 विकेट के नुकसान पर 15 रनों की साझेदारी पार्टनरशिप यहां पर हो चुकी है और धीरे धीरे यह साझेदारी बेहतर साबित होती हुई केएफसी कोडिकल के लिए। और गेंदबाज शरण ने एक बार फिर से तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट और इसी के साथ शाकिर की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है। लाइन पर गेंद टिप्पा खाई और गेंद को इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहता, गेंद उनके पैर पर टकराया, उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा और अंपायर हरीश पटेल को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। 40 रनों पर 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है और 6 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। तो एक और बेहतर ओवर सतीश जिसमें केवल 5 रन इस ओवर में प्रदान किए गेंदबाज ने और 6 ओवर के बाद 40 रन बन चुके हैं और मैं समझता हूं शाकिर ने बेहतर बल्लेबाजी की है। जैसा कि आपने फरमाया शाम का वक्त रन्स बनाने के लिए बल्लेबाजों के लिए दिक्कत ही यहां पर महसूस होती है क्योंकि हवा का रुख कम हो जाता है, बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक से नहीं खेल पाते हैं और इसे मद्देनजर रखते हुए सेंसिबल बल्लेबाजी शाकिर और हकीम ने अपनाई। अब अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज कितने रन बटोर पाते हैं। और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, चंद करारे स्ट्रोक जरूर लगाने होंगे केएफसी कोडिकल के बल्लेबाजों को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो। Exactly, OP, and one more the great move there by the captain of young friend Surwa, seeing that of course the first over is ball by Ashwin from this end and now he's coming from that end and Hakim is a settled batsman in the middle and wait and see, it's going to be a good battle between the batsman and the bowler. Wait and see how Ashwin will going to control the batsman Hakim here. Certainly it's going to be a gamble
the spin bowler against one of the very good striker of the ball. But Shakir is out of the crease. So that's a good thing to see that Ashwin little bit relaxed, that Shakir is not there. But Hakim is still there in the middle. And wait and see how Hakim will going to contribute from the bat. And wait and see how Ashwin will going to bowl that last over. He is a magical bowler, no doubt at all. And but he need to perform in this last over. If they are able to restrict the batsman just to 4 to 5 runs, I think it's going to be a very good match in front of huge spectators. एग्जैक्टली सतीश। और जहां तक सवाल है अंतिम ओवर शुरू होता हुआ अश्विन तैयार, पहली गेंद उछालना चाहा हकीम ने और चूके, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप्स ऊपर नहीं टकराए और इस गेंद पर बल्लेबाज बाल बाल बचते हुए। 5 गेंदें बाकी, जस्ट 5 बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स और गेंदबाज अश्विन एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हकीम इस वक्त एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। स्ट्राइट इन फ्रंट ऑफ आवर कमेंटेड बॉक्स स्टैंड, ड्रोन कैमरा इस वक्त हमारी ओर फोकस करता हुआ एक बार फिर से दूर उड़ता हुआ दिखाई देता हुआ, हवा में लहराता हुआ ये गेंद बैटर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 2 लगातार डॉट गेंदें और निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देते हैं। और जिस तरीके से जो रणनीति इस वक्त यंग फ्रेंड्स के कप्तान ने अपनाई है अश्विन को उस छोर से मोर्चे पर लगाने की, वो रणनीति इस वक्त रंग लाती हुई पहले 2 गेंदों में। और इस बार गेंद को खेल दिया शॉर्ट फाइनल की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच। और थोड़ी सी मिसफील्ड और इस बीच बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। थोड़ी सी मिसफील्ड इम्तियाज द्वारा और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। मैं समझता हूं गेंद से अपनी नजरें उन्होंने हटा ली थी, फलस्वरूप गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई और आखिरकार दोबारा जब तक वो दूसरे प्रयत्न में गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज तेजी के साथ दूसरा रन चुरा चुके थे। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका इस वक्त 42 रनों पर और 3 गेंदें अब उनकी पारी में और फेंके जाने बाकी। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, हकीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, माफ कीजिए अश्विन, और इस बार गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, बेहतर गेंदबाजी थोड़ी कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और आखिरी मौके पर बल्लेबाज ने गेंद को उछालना चाहा था, हकीम ने चूके और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 42 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 5 विकेट के नुकसान पर और कुल मिलाकर अब गेंदें बाकी हैं सिर्फ 2 और अंपायर विकेटों को सही करते हुए। शाम का वक्त, हवे की रफ्तार यहां पर कम हो चुकी है। जिस तरह से झंडे इस वक्त गड़े हुए हैं, जब दोपहर को जिस तरह से झंडे लहरा रहे थे तब ऐसा अंदाजा लगाया जाता था कि हवे का रुख काफी तेज है। अब झंडे लगभग खामोश हो चुके हैं, कुछ हद तक लहरा रहे, तो इस वजह से यह अंदाजा इस वक्त लगाया जा सकता है कि हवे का रुख काफी हद तक कम हो चुका है दोपहर के मुकाबले। 2K व्यूअर्स इस वक्त वॉच करते हुए इस श्रृंखला को और निस्संदेह बेहतरीन श्रृंखला यहां पर शानदार प्रगति करती हुई। अश्विन की गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहा और इस बार रनआउट का खतरा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। परिवर्तन के तौर पर तेज गेंद जमीन के सहारे और इस गेंद को उछालना चाहता हकीम ने, नहीं उछाल पाए, बल्ले का निचला हिस्सा टकराया था, बैक टू द बॉलर की दिशा में गई और अश्विन ने गेंद को फॉलो थ्रू में फील्ड करने के बाद निशाना दागा और उनका निशाना सीधे स्टंप्सों पर टकराता हुआ और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। पांच गेंदें फेंक चुके अश्विन और सिर्फ 2 रन इस ओवर में प्रदान कर चुके हैं और उन 2 रनों में से 1 रन तोहफे के रूप में प्रदान किए थे शॉर्ट फाइनल के फील्डर इम्तियाज ने मिसफील्ड के जरिए। तो निस्संदेह अपने काबिलियत, अपने क्षमता, अपनी एबिलिटी के अनुसार यहां पर वो गेंदबाजी करते हुए और अंतिम गेंद इस वक्त लेकर तैयार और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए नए दाहिने हाथ के बल्लेबाज। सो द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप और अश्विन इस वक्त तैयार। 42 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। और ये गेंद इस बार सफल होते हुए गेंद को उछालना चाहा इम्तियाज का थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर और इसी के साथ ही आउट। इंटेलिजेंट थिंकिंग इम्तियाज द्वारा जैसे ही गेंद को उन्होंने फील्ड किया, थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर और जैसे ही थ्रो को रिसीव किया अश्विन ने तेजी के साथ बैकहैंड के जरिए विकेटों पर निशाना दागा और उनका निशाना लगता हुआ और एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति जिसमें केवल 2 रन अश्विन ने प्रदान किए हैं और निर्धारित 7 ओवर समाप्त होने के बाद 42 रन KFC कोडिकल जोड़ पाए थे। स्कोर 42 runs in their stipulated 7 overs and they set a victory target of 43 for यंग फ्रेंड्स। तो निस्संदेह बेहतरीन कमबैक यहां पर कर चुका है यंग फ्रेंड्स और अब पारी है उनके
बल्लेबाजों की और देखना ही है कि वो अपनी पारी में क्या करते हैं. 43 द टारगेट इन 7 overs and their innings starts now. Their innings are going to start with a short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यंग फ्रेंड्स शुरू की पारी की शुरुआत होगी. धन्यवाद. थैंक यू. ಹಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಅವರಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೆರೆದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಗೌರವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಗೌರವಂತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಇದರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಫಲಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ JD ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್. So thank you very much, Prashant. So, so many dignitaries out in the main stage watching this wonderful contest between young friends who versus KFC Kodikal. May I request all spectators, ದಯಮಾಡಿ spectators ಸ್ವಲ್ಪ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಆದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ and organizers. So first ball outside the line of off-time batsman looking for the slashing dive. Oh my goodness, this is a big break here for KFC Kodikal. The danger man Mansoor back into the pavilion. Can you believe this? What a dream start here for KFC Kodikal. Can you believe this, Gopi? All that we can see, that pin drop silent in the dugout of Egg Friend Surwad after losing Mansoor without facing a single delivery, and it is definitely going to be a disaster start for Young Friends Surwad. Dream start for KFC Kodikal. Exactly सतीश. मंसूर जिन्होंने पिछले मैचेस में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था और यहाँ पर बिना किसी गेंद का सामना किए हुए वो पेविलियन वापस लौट चुके हैं दुर्भाग्यवशात रनआउट के रूप में, और निस्संदेह ये एक बड़ा ड्रॉबैक यंग फ्रेंड्स के लिए साबित हो चुका है और शून्य पर एक विकेट गिर चुका है और एक बड़ी सफलता कहना पड़ेगा KFC कोडिकल इस वक्त प्राप्त कर चुका है.
इम्तियाज का आगमन इस वक्त हो चुका है और मंसूर का विकेट गिर जाने के बाद, मंसूर का बेशकीमती विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव इस वक्त यंग फ्रेंड्स उर्वा के ऊपर बना हुआ है, देखना यह है कि उस बने हुए दबाव को क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज इम्तियाज और अरशद मिलकर किस तरह से हटा पाते हैं। Exactly, Gopi. That's all happening whenever the new batsman, of course, Arshad is playing his first match. He doesn't know about the ground. Of course, there is a grass in the ground. Ball is definitely stopping there. That's why he thought that it might be a single ball passing that infield. But ball is in the hands of Chetan. He completes the job of making the run out. The first run comes up here for young Prince. It was straight away. They started their journey, and wait and see how difficult this journey is going to be for young Mansoor. Of course, they lost one big wicket in the first delivery itself, the wicket of Mansoor, but still they got some good players in the side, so that there is no chance of relaxation for the captain of KFC Kodikal. Right arm over the wicket, balls and misjudgment. That's what we're talking about. Whenever the batsman new to this condition, is not an easy to come and perform. But Ashar is kind of batsman, is never think about the condition. So never think about who is bowling, and is never think about the kind of ground distance as he was if he able to hit the ball, started to hit the ball, and again the next delivery which is outside the run of off stump and going further away, and that was really a gifted run here for young friends. It was scoreboard moves on to 2 now for the loss of 1 wicket. Shakir, all right, around the wicket bowls. This time Ashad drives that one powerfully off the toes in that occasion, very strong off his legs. Pick that one quite right from the middle of the bat towards the deep long on for a easy single. Ashad is off the mark with a single. Now all that responsibility in the shoulder of Ashad after the dismissal of Mansoor. He knows that from his mistake the Mansoor is back into pavilion, so that he got a little bit responsible innings. He has to play. Again Imtiaz just flicking that one off his legs down to deep mid wicket region for a single, and one more single added to total scoreboard moving now. And scoreboard moves on to 4 on the board for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Shakir in his first over, the power play, of course, always going to be very important for both the teams. That power play, the fielding team wanted to restrict and batting team wanted to get some runs in the power play. Right arm over the wicket, one more appeal for stump out. Everything is going up more than the confident. I think just he wanted to get some result, but umpires are so good in that occasion. Mohan Iyadi is seeing that the back leg is certainly it was inside the line, so no danger at all for the stump out. But it's good over, isn't it, Gopi? The 4 runs and a big wicket of Mansoor. Good start for KFC Kodikal. बिल्कुल सतीश, निस्संदेह गेंदबाजी के जरिए एक बेहतर शुरुआत यहां पर दे चुके हैं शाकिर, और खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि मंसूर का विकेट पहले ओवर में गिरा, और निस्संदेह मंसूर का विकेट का पतन केएफसी कोडिकल के आत्मविश्वास को और ज़्यादा यहां पर बढ़ा चुका है। और जहां तक यंग फ्रेंड्स उर्वा का सवाल है, मंसूर का विकेट गिर जाने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर जो जिम्मेदारी इस वक्त आन पड़ी है, उस जिम्मेदारी को ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से निभा पाते हैं ये देखना पड़ेगा। फिलहाल इक्वेशन कुल मिलाकर 39 रन और बनाने हैं 36 गेंदों पर, 6.5 रनों पर रिकॉर्ड रन रेट इस वक्त पहुंच चुका है। और मैं समझता हूँ इम्तियाज और अरशद जो दोनों बल्लेबाज मौजूद है, इनमें क्षमता है, काबिलियत है कि वो एक बेहतर साझेदारी निभा सके, और अगर वो बेहतर साझेदारी निभाते हैं तो निस्संदेह यंग फ्रेंड्स उर्वा की गाड़ी बैक ऑन ट्रैक, सही पटरी पर आ सकती है। Exactly, Gopi. The partnership is always the key for the success, isn't it? Without partnership, you can't chase the total like 43 runs. The partnership much required, and not only the partnership, at the same time, need to keep in mind that the run rate required is also very important. Rotation of strike is so important, and 39 to get from remaining 36 deliveries. The match is evenly poised from the far end. Chetan from the far end, right above wicket, bowls, and Imtiaz just tapping the ball, not quite intended. He wanted to tap the ball into cover point region, and because of Chetan's ball, that and slower one, the batsman did early into that push, and he made the single down to short mid wicket. Naufal, fieldsman there in the short mid wicket. Very interesting to see that whether Naufal been introduced or not, because KFC Kodikal has already got their 4 regular bowlers, done a good job. It's going to be a big question, headache here for the captain of KFC Kodikal, how and when to introduce Naufal, whether it was necessary to introduce Naufal, because after he's been selected as a playing 11, he's not really batted well, not able to contribute from the bat, but Naufal is a kind of the player who can contribute from the ball as well. Wait and see the captain when he will going to bring this man. But here
The second over is in progress as a Chetan so far bowled one delivery and batsman picked up a single for that as scoreboard is 5 on the board for the loss of Mansoor's wicket. Short third man, short fine leg, short square leg. Of course, one fielder between short square leg and mid-on. And one fielder deep out in the deep wideish long on almost in the mid-wicket region. One at mid-on, long off, short cover, short backward point, wide ball, extra run, gift. Oh my goodness, chance of run out. Imtiaz is gone. The second run out is taken place here. Certainly by thinking about this run out, I think there is no doubt at all because Arshad knows that there was a little bit misfield by the short third man. They wanted to take an extra run there, Gopi. But Imtiaz already made his mind that he got an extra delivery and no need to panic at all. But that was a cricket, isn't it? Sometimes happening. The luck is not really favoring you. But 2 run-outs definitely going to be a big drawback here for young friends Surwa. बिल्कुल ये रन जो लक्ष्य से बाहर की ओर गेंद निकल रही थी यहाँ पर सर्टेन वाइड हुआ था और इसके बावजूद अरशद ने रन लेना चाहा जो कि इम्तियाज नहीं चाहते थे कि रन इस गेंद पर ले क्योंकि एक रन उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है और यहाँ पर जैसे ही अरशद दौड़े इम्तियाज कुछ हद तक एक 2 सेकंड देरी से उन्होंने दौड़ लगाई और आखिरकार जब तक वो स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ शाकिर का विकेट कीपर के हाथ में और विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया 2 रन आउट 2 वाइटल विकेटों का पतन इस वक्त निस्संदेह यंग फ्रेंड्स के ऊपर दबाव को काफी हद तक और बढ़ा चुका है. Exactly, Gopi, it is under pressure now. The captain came into middle in the under pressure situation. Look at that one. How far it was. Ball missed the black stump. I will tell you, just an inches that ball missed the leg stump because it's so far across the line of the delivery as Ajmal tried to sweep that one, but quite dangerously played. I will tell you. Chetan, look at that frustration in the face of Chetan. He knows that if he able to get that wicket, certainly Cape Security strongly they get back into this game again. The Chetan back to his bowling mark. The second and last over of the power play is going on. Young friends didn't got that much of runs in this power play, but all that we are seeing there's some damages for young friends in this power play over Chetan. Right arm over the wicket to Ajmal. Ajmal always is so good in sweeping the ball. And he's a master of playing that shot. And he picked up a single down to a short fine leg division. With the addition of that single, scoreboard moves on to 6-7 for the loss of 2 big wickets. The wicket of Mansoor and Imtiaz is back into pavilion. All that we can see that the jam-packed stadium out here in this most beautiful SVS school cricket ground here in Bantwal. They're watching the most prestigious cricket tournament in the name of JD Boys Trophy 2021. Here is again Chetan. Balls. The appeal for bowled out. Bails are off, but wait for the umpire signal. Harish Patil is there in the square leg. The main umpire, Mohan Yayad, is in the main umpire, but wait for the umpire signal. Is sportsman spirit always going to be key, isn't it, Gopi? Because we can see that because the ball is not hit the stump. Might be ball after hitting the leg of the wicket keeper, then fell into the stumps. But their duty is to appeal, but umpire's duty is to give the good decision. That was the quality of 2 umpires, isn't it? No pressure at all. And that's scored, and this time he's got a big wicket. Ashar is back into pavilion. Chetan celebrating. Young Prince are in a deep trouble. Looks like the big ship is going to sink here. The 3 major wickets back into pavilion of young friend Surwa. Look at that delivery. Absolutely nowhere near to the pitch of the delivery. Ashad, frustration and pressure straight away. He tried to break the shackle, but didn't able to do that so. But Chetan is in a very, very good form in bowling. Accuracy in his line and length. Got the reward. ಈಗಾಗಲೇ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಜಿಲಮಗರು ಇವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 7 for the loss of 3 wickets. All in sudden we can see Gopi. The 3 big wickets are back into Bill and Cape Securical. They looks like they are strongly back into this game. And I've already mentioned the 40 plus runs are always going to be difficult runs to chase when you're batting in the second session. Chetan from the far end. Right arm over the wicket to Atif. Just the new batsman came into middle. Quality player. Again, try to swap that one, but line is not that much of easy to sweep the ball. Outside the line of off time, he tried to drag that one from the outside the line of off time.
No chance at all. Each and every dot ball, then it's going to be a pressure for the batsman. 7 for the loss of 3 wickets. Chetan again from the far end. Right arm over the wicket. Balls went for the reverse sweep. Another dot ball. What a great over that going to be for Chetan here. Outstanding performance there from Chetan. Can you believe this, Gopi? The 3 overs, chasing 42 to run, 42 to win the match. Now all in sudden wickets, pressure is on because of 4 overs remaining. 2 overs completed. Now 5 overs remaining, 30 balls remaining. And remaining 30 balls, they have to get another 36 runs to win this match, and the difference between run and ball, exactly the 6. Definitely in this condition it's going to be a big difference, unless any one batsman have to take a little bit initiative hitting some big shots. एग्जैक्टली सतीश, 6 का फासला इस वक्त बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन्स के बीच में है, और खासकर 6 का फासला कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 3 विकेटें गिर चुके हैं, 3 बहुमूल्य विकेटें, और 3 वो विकेटें गिरने के बाद जो दबाव इस वक्त यंग फ्रेंड्स के ऊपर बना हुआ है, उस दबाव को किस सूझबूझ के साथ इस वक्त उतारना है, कम करना है, ये देखने वाली बात है। और यहाँ पर अजमल क्रीज पर मौजूद, आतिफ क्रीज पर मौजूद, और इन दोनों बल्लेबाजों में वो एबिलिटी है कि वो अंडर प्रेशर में किस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं। और इससे पहले की कई मैचेस में हमने देखा है कि दबाव तले ये दोनों बल्लेबाज ने बेहतर प्रदर्शन दिया, और यहाँ पर देखना यह है कि इस दबाव तले परिस्थितियों में वो अपनी टीम को किस तरह बाहर निकाल पाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं एक बेहतर साझेदारी यंग फ्रेंड्स उरुआ को अपनी मंजिल की ओर अग्रसर कर सकता है। Exactly, Gopi, as Tazuddin is being introduced from the commentary box, and right arm over the wicket to the right-handed batsman Ajmal, the captain of the side. Oh, lovely shot, copybook style. That was a fantastic placement after hitting the ball. They look for the second. In comes the throw, and it's gone. The third run out comes into play in the middle of the pitch. Can you believe this? KFC Conical enjoying the each and every wickets of young friends Urua. Total misunderstanding between the wicket. Nothing wrong with the Atif's decision, but something wrong with the decision of Ajmal there, because after pushing the ball, he just wanted to pick the couple of runs, but Ajmal quickly realizing that the ball is in the hands of the fielder, very difficult to complete the second. Then he was too late to calling his partner to go back, because Atif already started his run. The third run out of young friends came into that dismissal of 4 wickets, and that means it's a poor understanding between the wickets. So 8 for the loss of 4 wickets. It was quite unusual scoreboard here for young friends Surua. 8 for the loss of 4 wickets. What a game we're having here. KFC Cortical now looks like they're definitely dominating the first hour of this second session. Definitely going to be a fantastic performance here by the fieldsmen of KFC Cortical, able to pick 4 wickets, and out of 4, 3 run-outs. That's so important. The Ashwin came into middle here in a difficult condition. Tazuddin away from us, right arm over the wicket, bounce, change of face, negotiated very well there by Ashwin. He was seeing that it was a slower one, just waiting for the ball to coming into his bat, and then one delivers that nice looking off right towards the long off for a single. He's off the mark, and scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 4 wicket. Now this was a responsibility on the shoulder of a captain of young friends Surua, Ajmal, there in the middle, one of the stylish quality batsmen for the side. This time change of face, and equally well played there by Captain Cool, seeing that was a change of face. Then he was a soft and comes into play, pushing the ball down at cow point to pick the single, and scoreboard moves on to double figure 10 for the loss of 4 wickets. The condition is looked to be very difficult now for young fans Surua, but in cricket anything is possible. Cricket is such a funny game. You can't say anything in cricket. And Tazuddin from the commentary box, and right arm over the wicket, bowls to Ashwin. Ashwin off the back foot, cuts that one quite beautifully down to deep cover region for a easy single. And the partnership, what my partner is talking about, is always very important. Even you're chasing the total like 40 plus in 7 overs, the partnership of 15 to 20 is badly required for young friends if they wanted to win this match. The scoreboard is 12. 11, little correction for the loss of 4 wicket. Tazuddin away from us. Right arm over the wicket, balls.
This time clever, absolutely clever. Now both the batsmen realizing the situation, condition of the game. Of course, they need not only they need to catch that required run rate, at the same time they need to keep the wickets in hand. That's so important for young friends to win this match, because they lost 4 quality batsmen, top order batsmen back into pavilion, and out of 4, 3 run outs. That is really disaster for young friends. Tazuddin. The ball's a slower one as Ashwin drives that one. A little bit urgency shown there by Shakir, and they're taking the advantage of that urgency. No need to panic at all there from Shakir, showing the urgency, face the penalty for that. Each and every run going to be very crucial in this match. That's why the frustration here for the bowler. What could be a certain single, they got a couple. Anyhow, good comeback in this over by the batsman, 2 batsmen. So 4 overs completed. It's 3 overs completed. It's 14 for the loss of 4 wickets. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಹತ್ರ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಶಿಫ್ಟ್ KA19-2021 ಈ ಗಾಡಿ ಬಾಕಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಾಲಕರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಶಿಫ್ಟ್ KA19-2021 ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಶಿಫ್ಟ್ KA19-NT-2021 ಈ ಕೂಡಲೇ ಇತರ ಗಾಡಿಗಳಿಗೂ ಇನ್ನು ಬರುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಡ್ಡದಿಡ್ಡವಾಗಿದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಓನರ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಓಮಿನಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಓನರ್ ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ. KA19-NT-2021 ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಶಿಫ್ಟ್. Thank you very much. It's a very good car number, 2021 running year. And K19-2021, please note that, please remove a car. And so Gopi, that's 3 overs completed. It was, looks like a little bit comeback over in the last over. They got some runs on the board, as scoreboard is now 14 on the board. That means in the remaining 4 overs, 24 delivers. 29 runs. They have to get 29 runs. That means the difference between run and ball exactly the 5. The Akim is the bowler, is brought into attack. Right above the wicket, ball to Ajmal. Ajmal also paddling that one down to square leg region. He's a master of doing that one. And of course, his cool customer need to be very cool, isn't it? When the situation like this, the captain has to leading from the fanties, but definitely going to be inspiration for other players. And situation like this, the captain has to perform, and that knows that Ajmal knows that his appearance is very important till the end of the innings. Here is Akim, right arm over the wicket, bowls to Ashwin. Ashwin was almost flicking that one off his legs down to square leg region for a single. Both the batsmen are dealing with the singles, rightly so, because in this situation that kind that intelligent cricket is required for young fans. But Akim, who is also very intelligent bowler for the side of KFC Kodikal, bowling right arm over the wicket, third time in this over, but no one can stop the singles from these 2 batsmen. Again, misfield by the fielder. Again, Disam Shakir, I think everything is going against him. Again, one more single, one more extra run added in form of fumble from Shakir, and one more to the 2 more to the total, and scoreboard moves on to 18 on the board. More than the batsman is under pressure. Looks like Shakir is a little bit feeling the pressure there, because both the batsmen are very good runner between the wicket, so that any misfield by the bowler fielders, they will going to grab the opportunity to convert single into 2. Akim again opening the face of the bat. That was a good thinking there by the captain. One more single is added to total. Slowly and steadily these 2 batsmen really get going. The partnership is really building up. It's going to be a little bit strong message for KFC Kodikal from these 2 batsmen. Need to be careful. As again Akim, right arm over the wicket, sensible, absolutely sensible. This is what you're talking about. Experience always comes into play, and it counts in the situation like this, under pressure situation. How to play, how to play in the condition where it was some wicket need to be kept, and even need to catch the run rate required. As Akim, right arm over the wicket, bowls. Again they're going for the sweep shot, but they're able to pick the single. Wait for the umpire signal. It's going to be luck by. No bother at all how the runs are coming, but runs, each and every run's going to be very crucial for young friends. Who was 7 runs came from that over, Gopi, and after completion of 4 overs, young friends who are chasing 42 to win this match. They are 21 on the board. That means half of the job is done. Now half of the jobs need to be completed in remaining 3 overs. That means 18 balls, they have to get 22 runs to win this match. Not a big difference, the 4 runs having 5 wickets in hand. What do you think, whether this match is evenly poised, whether it was a 50-50 or 60-40 for both the teams?
आई थिंक सतीश इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन, क्योंकि ये साझेदारी इस वक्त बन रही है ज़रूर यंग फ्रेंड्स उरुआ के लिए। और जहाँ तक ये साझेदारी बनने से पहले 60-40 की समन्वयता KFC कोडिकल के पक्ष में थी, लेकिन ये साझेदारी जो अब धीरे धीरे जम रही है विकेट पर अश्विन और अजमल के बीच, तो ये साझेदारी उनके संभावनीयता को 10% ज़्यादा कर चुकी है। अब मैच बराबरी पर रुक चुका है, 18 गेंदें बाकी है, 22 रन चाहिए, 22 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 18 बॉल्स। और जहां तक का KFC कोडिकल का सवाल है, उनके सामने इस वक्त सबसे पहले यह मुद्दा ठहरता है कि उन्हें इस साझेदारी को तोड़नी चाहिए। और जहां तक यंग फ्रेंड्स उरुआ का सवाल है, उनके सामने इस वक्त ये मुद्दा ठहरता है कि वो इस साझेदारी को बरकरार रखें। और अब जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, शाकिर जो कि इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के जगह को फ्लिक कर दिया इस वक्त गेंद पहुंचते हुए शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन्स इस वक्त मिलेंगे एक। ಅಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು। ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋ ಕಾರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर वाइड। अश्विन ने, हालांकि उनके पैरों पर चोट जरूर आई, लेकिन अपने विकेट क्रीज पर वो बने रहे और यहाँ पर कुछ हद तक बाधा महसूस करते हुए अपने पैरों पर। तो एक रन तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में उनके खाते में यहाँ पर जुड़ चुका है और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। अब इस ओवर में कितने सही गेंद फेंके गए हैं? सिर्फ एक गेंद मेरे ख्याल से फेंकी गई है और 17 गेंदें अब बाकी है और रन चाहिए 20। तो धीरे धीरे यंग फ्रेंड्स उरुआ इस मैच में वापस आता हुआ। और जहां तक बैटिंग ऑर्डर, रिमेनिंग बैटिंग ऑर्डर के बारे में अगर कहा जाए तो अजहर एक प्रमुख विकेट इस वक्त मौजूद है, अजहर को आना बाकी है, उसके बाद बासित को आना बाकी है, उसके बाद जुबैर भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं और उसके बाद शरण का नंबर आएगा, तो संतोष मौजूद हैं। तो ये 5 बल्लेबाज इस वक्त मौजूद है, इस वक्त इंतजार करते हुए अपने बल्लेबाजी की। ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर एंड ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क बिहाइंड द स्टंप्स मेड बाय विकेट कीपर हकीम, लेकिन बल्लेबाज अश्विन क्रीज पर मौजूद। डॉट गेंद, रन से नहीं मिलेगा। पिछले गेंद के मुकाबले काफी तेज रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंकी थी शाकिर ने और बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग हकीम ने विकेटों के पीछे दिखाई। एक डॉट गेंद इस वक्त उनके खाते में जुड़ चुका है और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 23 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा विकेट जब गिरा था तब स्कोर था 8 रन, तो उसके बाद 15 रनों की साझेदारी ये दोनों बल्लेबाजों के बीच अब तक हो चुकी है। रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, धूप लगभग गायब हो चुकी है मैदान से, लगभग नहीं बिल्कुल गायब हो चुकी है इस मैदान से और धीरे धीरे अंधेरा सा मैदान पर छाता हुआ। शाम के 6 बजने को 10 मिनट बाकी है, यानी 5:50 यहाँ पर बच चुके हैं और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी भी इस मैदान पर ढलती नजर आती हुई। और इस मैच के बाद इस श्रृंखला का मेगा फाइनल मैच खेला जाना बाकी है। दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, ड्राइव बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल और इस बीच नहीं और सही निर्धार इस वक्त दे चुके हैं अंपायर। तो यहां पर काफी नजदीकी मामला था और अंपायर हरीश जो कि अपने सही पोजीशन पर ठहर कर यह निर्धार उन्होंने दिया और इस बीच रन से बल्लेबाज को मिले 1 और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस मैदान पर छा चुका, सन्नाटे भरा माहौल, दर्शक खामोशी के साथ मैच का आनंद लेते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार, स्टीयर किया सीधे पॉइंट पर और इसी के साथ अजमल डिपार्ट्स नाउ। So this is an absolutely a big blow for young friends Urua in the critical circumstances of the match. और सतीश साझेदारी जम रही थी और यहाँ पर एक गलत शॉट अजमल का और उनका विकेट गिर जाने से जो दबाव इस वक्त यंग फ्रेंड्स उरुआ के ऊपर कम हो चुका था वो दबाव अब कुछ हद तक बढ़ चुका है। Exactly, Gopi. That the wicket of Ajmal definitely going to be the big breakthrough here for KFC Kodigal. They wanted that wicket because he's a kind of batsman who can take a match away from the opposition. Looks to be it was a simple stroke making, but he's got ability of hitting some big shots as well. And he's such a danger batsman. He's a game finisher.
and losing him in this condition, I think young friends might be there in the back foot, and then KFC Kodigal definite there in the front foot because he's a subtle batsman in the middle. But just like we were talking about the young friends who are remaining batsmen, they got the ability of contributing from the bat. And this man, Azhar, we are never miss that opportunity to commence that one match when it looks like young friends were they're going to lose this match. Just he came in and hit one reverse sweep and hits a six and takes the match away from the opposition. He's also very dangerous batsman as far as KFC Kodikal is concerned. So there is no relaxation at all. Whenever you're playing against young friends, they got some potential of player. They got the potential of bouncing back because they got some quality players. So that young friends Surva, even though they're in the back foot, but KFC Kodi captain need to be very careful whenever the batsman like Azhar in the middle. बिल्कुल सतीश, यंग फ्रेंड शुरुआ हालांकि 5 विकेटों को जरूर खो चुका है, लेकिन जैसा कि आपने फरमाया बिल्कुल सतर्क रहना जरूरी है केएफसी कोडिकल के कप्तान के लिए, क्योंकि यंग फ्रेंड शुरुआ के टेल एंडर बल्लेबाज भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं और खासकर अजहर जो कि रिवर्स शॉट स्पेशलिस्ट हैं यहां पर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को ऑफ द टोज इस वक्त ग्लांस कर दिया, गेंद पहुंची डीप स्क्वायर लेग पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर। 18 रन चाहिए 13 गेंदों पर, 18 टू गेट फ्रॉम 13 बॉल्स। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ निस्संदेह इस जेडी ट्रॉफी 2021 इस मेगा श्रृंखला का दूसरा सेमीफाइनल मैच, हाई वोल्टेज मैच, एक धमाकेदार फिनिश की ओर यहां पर बढ़ता हुआ। यह गेंद इस बार खूबसूरत, एब्सोल्युटली परफेक्ट, इनटू द गैप एंड गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। अश्विन आता है। So this is an exquisite extra cover drive और निस्संदेह कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक। अब चाहिए 14 रन 12 गेंदों पर, 14 टू गेट फ्रॉम 12 बॉल्स और निस्संदेह सतीश ये स्ट्रोक जो था, अगर आप हम लोग सब लोगों ने ये स्ट्रोक देखा, देखिए गेंद अपने शरीर को पूरी तरह गेंद के पीछे लाते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ स्कूप कर दिया था स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर पर और गेंद को गैप में भेजने में सफल, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और कवर पॉइंट के दरमियान। और इस बेहतरीन खूबसूरत स्ट्रोक जो अश्विन ने खेला, इस स्ट्रोक की बदौलत मैं समझता हूं यंग फ्रेंड्स हुआ अब इस मैच में वापस आ चुका है। Absolutely, Gopi. That was a really imperious extra cover drive, isn't it? Traditional cricketing stroke. No unorthodox cricketing. This is absolutely orthodox cricketing stroke. Under pressure situation, nothing wrong with the line of the delivery. Just putting his front foot to the line of the delivery, and he gets a placement. That was a really magnificent to watch, isn't it? Under this situation, no one thought that the batsman like Ashwin can play such kind of cricketing stroke. But he's already showed his ability in the batting. I already mentioned his record. This guy is a kind of batsman who can deliver even limited over matches as well. What a great shot under pressure. Absolutely terrific. But match is not yet over, Gopi. 14 to get from 12 balls. Match is evenly poised. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ KA 511723 ಇದರ ಮಾಲಕರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ KA 511723 ಇದರ ಮಾಲಕರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. थैंक यू प्रशांत। और यहाँ पर मैच में कशिश अभी भी बरकरार, 14 टू गेट फ्रॉम 12 बॉल्स। दर्शकों की दिल की धड़कनें इस वक्त तेज होती हुई और निस्संदेह मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है और हकीम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अजहर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। रोशनी मैदान पर कम जरूर हो रही है, लेकिन संघर्ष की तीव्रता इस ढलते हुए शाम में भी बढ़ती नजर आती हुई दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच। और हकीम फील्डिंग में जमावट करने के बाद पहली गेंद लेकर तैयार, अजहर इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए ये गेंद, पहली गेंद और चूके डॉट गेंद इस वक्त निस्संदेह रिवर्स शॉट, जिस शॉट के लिए अजहर जाने जाते हैं वो स्ट्रोक उन्होंने खेलना चाहा, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई। बेहतरीन गेंदबाजी हकीम की, 11 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए विजय के लिए और निस्संदेह दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता नजर आता हुआ। हाई वोल्टेज मैच इस वक्त शानदार प्रगति करता हुआ। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार चूके शॉट फाइल लेग पर शाकिर, दिस इज एन एब्सोल्युटली फनी। विकेट कीपर सोचते रहे कि शाकिर विकेटों पर थ्रो करेंगे, लेकिन शाकिर ने थ्रो किया विकेट कीपर के हाथों में और आखिरकार जब तक वो जानकर गेंद को कलेक्ट करे बल्लेबाज रन पूरा कर चुके थे। अगर पहले प्रयत्न में वो गेंद को कलेक्ट कर लेते ये जानते हुए कि गेंद को शाकिर ने उनकी ओर थ्रो किया है, तो निस्संदेह वहां पर रन आउट हो सकता था। तो इस गेंद पर अश्विन बाल बाल बचे और 1 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ। अब चाहिए विजय के लिए 13 रन, जबकि गेंदें बाकी हैं
10। तो 2500 व्यूवर्स इस मैच का मुआयना करते हैं और ये बात ये दर्शाता है कि अंडरआर्म क्रिकेट यहां पर कितनी जनप्रियता रखता है, कितनी पॉपुलैरिटी रखता है। और निस्संदेह यहां पर एक ऐसा मैच जारी है जिसमें इस मोड़ पर यह कहना मुश्किल है कि इस मैच का विजेता कौन होगा। 10 गेंदे 13 रन। हकीम तैयार अश्विन के लिए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद चूके और इस बार विकेट कीपर चूके, रन के लिए दौड़ पड़े, रन का खतरा और इसी के साथ ही आउट। अश्विन की पारी समाप्त। अश्विन ने गेंद को ठीक तरह से देखा नहीं था और जब तक वो देखा कि नॉर्थ सेकंड के बल्लेबाज अजहर दौड़ कर आ रहे, उन्होंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन तेजी के साथ गेंद को दूसरे प्रयत्न में विकेट कीपर ने फील्ड करते हुए थ्रो किया नॉर्थ सेकंड गेंदबाज हकीम के हाथ में और अश्विन इससे पहले कि विकेटों पर अपना बल्ला रखे हकीम ने तेजी के साथ थ्रो को रिसीव करते हुए विकेट उड़ा दिए और अश्विन का विकेट यहां पर गिर चुका है। तो सतीश क्या देखने को मिल रहा है? जो हाई वोल्टेज मैच में जिस तरीके का क्रिकेट हमें देखने को मिलना चाहिए उसी तरह का क्रिकेट हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। 9 गेंदें बाकी है, 13 रन चाहिए और निस्संदेह ये क्रिकेट का हर पहलू जो कि हमें इस मैच में यहां पर देखने को मिल रहा है। Exactly, Gopi. Weak-hearted spectators sickly prohibited to watch this match. Of course, our heartbeats also going higher and higher because each and every dismissal, each and every run going to be very interesting, and dismissal of Ashwin is definitely going to be the big blow for young friends. He is a subtle batsman in the middle. After hitting that boundary, looks like he will going to take his team into the target, but losing him in this situation, I think might be the KFC Kodikkal little bit upper hand, but having this man in the middle still, Azhar is going to be a very dangerous man as far as KFC Kodikkal is concerned. Wait to see how Azhar will going to contribute. The runs required 13 and deliveries remaining 9. It's going to be very interesting here. And wait to see how well Azhar will going to contribute and wait to see how well Bashit will going to contribute. Of course, Bashit is usually is coming to middle as an opener batsman in the previous 2 matches, but he was coming in down in the order in the batting number 8 and wait and see how we will going to contribute along with the Azhar. बिल्कुल सतीश और यहाँ पर 13 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी है और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो हकीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और अगली गेंद के लिए तैयार। अजहर इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ, ये गेंद दिस इज एन गोल, दिस इज एन गोल ऑल द वे। और सतीश पिछले मैच में अजहर ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी नाजुक मोड़ पर, यहां पर भी उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी दिखाई है और इस ये छक्का निस्संदेह यंग फ्रेंड्स रुआ को पूरी तरह इस मैच में वापस ला चुका है। निस्संदेह बेहतरीन बल्लेबाजी। अजहर अपने डगआउट की ओर इशारा कर रहे हैं कि आप थोड़ा दिल को थामिए, काम मेरा है और मैं उसे पूरा करूंगा और देखना यह है कि उस काम को वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। 7 रन 8 गेंदे और एक बार फिर से उन्होंने डगआउट की ओर इशारा किया कि भैया आप थोड़ा सा चुप रहिए, वहां पर मुझे बल्लेबाजी करने दीजिए। और यहां पर तैयार और हकीम कुछ हद तक दबाव में इस वक्त नजर आते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 7 रन चाहिए 8 गेंदों पर। और इस बीच हकीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 7 from 8। हियर वी गो, ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, ओ विकेट कीपर गेंद को टटोलते रह गए और इस बीच 1 रन का इजाफा। 6 रन 7 गेंदे और अजहर नाउ ऑफ द स्ट्राइक। बासित के हाथों में स्ट्राइक है और देखना यह है कि वो इस ओवर की अंतिम गेंद पर क्या करते हैं। क्या मैच, 6 विकेटें गिर चुके हैं यंग फ्रेंड्स उरुवा के, 4 विकेटें सुरक्षित और हर गेंद के साथ दर्शकों का जोश उत्साह यहां पर बढ़ता नजर आता हुआ। मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और निस्संदेह चंद डॉट गेंदे KFC कोडिकल को इस मैच में वापस ला सकते हैं। 6 to get from 7 balls। हियर वी गो, हकीम टू बासित, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद हकीम की स्वीप किया खूबसूरती के साथ, फील्डर काफी पीछे, 1 रन मिलेगा। बासित के पास स्ट्राइक है, ओवर की समाप्ति। अब 5 रन चाहिए अंतिम ओवर में और निस्संदेह मैं समझता हूं सतीश इस ओवर में एक बेहतरीन कमबैक यंग फ्रेंड्स कर चुका है, खासकर अजहर की बदौलत।
Absolutely, Gopi. That's why I mentioned, even that they lost Ashwin, I told that having Azhar, of course, they got so many A's in the pack after losing 2-3 A's. But this A is definitely going to be a big A for young friends Surwa as far as chasing is concerned. As in finishing the match is concerned, he's always going to be a danger man. Any situation, he's got ability of changing the complexion of the match. Of course, they lost 6 wickets. Young friends Surwa, they lost 7 wickets. KFC Kodikal. And I think if the match is tight, definitely going to be a wicket. The fall of wickets comes into play. That's why they are very cautious about that. They knows that if losing 1 wicket, definitely going to be, they need to get all the runs. If the match is tight, even 4 runs, I think Gopi is quite enough for young friends Surua to reach to the finals. What a great match we are having, and what entertain 5 runs required. I am talking about if the match is tied without losing a wicket, I think even 4 runs is quite enough for young friends Surua to reach to the semi-final. What a game we are having. Look at the spectator. Definitely it was a jam-packed stadium out here in this, and definitely they will going to get some entertainment from these top teams of South Kent district, and it is a really better cricket we are watching, Gopi. एग्जैक्टली सतीश 5 रन बनाने विकेटों का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो 7 विकेट केएफसी कोडिकल ने खोए थे, जबकि यंग फ्रेंड्स उरुआ ने 6 विकेट खोए। अगर अंतिम ओवर में बिना किसी विकेट खोए यंग फ्रेंड्स उरुआ के बल्लेबाज 4 रन भी बना लेते हैं तो वो विजय यहां पर कहलाएंगे। और मेरा दरख्वास्त है कि दोनों टीमों के सदस्यों की कृपया मैच को आगे बढ़ाएं। 6:05 बज चुके हैं। इस मैच के बाद फाइनल मैच और खेला जाना बाकी है, और यहाँ पर फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए चेतन, और देखना यह कि चेतन इस मैच में क्या करते हैं। ये गेंद एक्साइटमेंट तरीके का खेल रन के लिए, इस बार गेंदबाज के हाथों से गेंद चूक चुकी है। 3 रन, माफ कीजिए 4 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी। अजहर अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं, और अब अजहर के हाथों में यंग फ्रेंड्स उरुआ का भविष्य टिक चुका है, जबकि चेतन के हाथों में केएफसी कोडिकल का भविष्य। और यहां पर बनाने हैं 4, गेंदें बाकी है 5। ड्रोन इस वक्त लहराता हुआ मैदान पर, और निस्संदेह एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट हम यहां पर देख रहे हैं, जो कि बेद्रा मीडिया जो कर रहे हैं यूट्यूब पर श्रीमान इरफान इनके सारथ्य में। और यहां पर दबाव, द प्रेशर इज नॉट बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। सराउंडिंग फील्डिंग करीबन 5 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। 4 रन चाहिए 5 गेंदों पर, 4 टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स। और दर्शकों की दिल की धड़कनें यहां पर तेज होती हुई। अजहर इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। 4 टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स। हियर वी गो, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त। शॉर्ट फाइन लेग पर, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, लेकिन 1 रन उन्होंने जरूर प्राप्त किया, और इस 1 रन के साथ अब बनाने हैं 3 रन, जबकि गेंदें बाकी हैं 4। तो यहां पर संघर्ष अभी भी जारी है। डॉट गेंदों की सख्त दरकार केएफसी कोडिकल को, और निस्संदेह एक बेहतरीन सेमीफाइनल मैच, द्वितीय सेमीफाइनल मैच जेडी बॉयज ट्रॉफी 2020 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता है, जिसका शानदार तरीके से आयोजन कर चुके जेडी बॉयज बंटवाल। ये गेंद इस वक्त चाहिए 3 रन, 4 गेंदें बाकी, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद विकेट की बात चुके हैं, रनों का खतरा इस वक्त नॉट स्ट्राइक पर, और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। 7वां विकेट गिर चुका है, 7th विकेट डाउन, एंड नाउ 3 टू गेट फ्रॉम 3 बॉल्स, 7 विकेट्स डाउन। और अब सतीश यंग फ्रेंड्स उरुआ को 3 गेंदों पर 3 रन बनाने ही होंगे, क्योंकि विकेट दोनों के बराबर हो चुके हैं, 7-7। Absolutely, Gopi. If without losing a without losing wicket and 7 wickets, they lost. The opposition also lost the 7 wickets. The 3 runs badly required, and if it is a 2 runs, I think it's going to be a toss, and the luck will going to decide who will going to be the finalist of this most prestigious cricket. What a game we're having, Gopi. This is one of the best match I ever seen in this first season, 2021 season. I think is one of the best match ever seen in this season 2021. The excellent game is going on here. Santosh came into middle. Now Azhar back on strike, Gopi. That might be the little bit of good news here for the followers of young friends, because Azhar is back on strike. 3 balls to spare and 3 runs to get to win this match. Wait and see. Well
Azhar will go for the big shot. Will he going to pick the single? Can you believe the strength of Santosh? He can pick the single. That's so very important. It's a mind. The mindset is always going to be important in cricket, Gopi. It's a strong mindset required for the batsman situation like this, because of that the choice is the batsman whether go for the big shot, whether pick the single or not. And Santosh can able to play remaining deliveries, he can play the singles or not. All things are coming up. Even for the bowler Chetan, he knows that if you one single for Azhar, then you got a chance to bowl 2 deliveries to Santosh. So all is counted here in this last delivery. That was a great game of cricket is going on here. Exactly सतीश, और यहाँ पर मनोबल की जरूरत है. जो सुदृढ़ मनोबल जिसका होगा वही इस मैच में अपनी टीम को मंजिल तक पहुंचा पाएगा. 3 गेंदें, 3 रन चाहिए. 3 to get from 3 balls. Here we go. गेंदबाज तैयार. चेतन, Azhar is on strike. दाहिना तो over the wicket. और इस बार dot गेंद, and now 2 ball and 3 runs. What a fantastic piece of bowling performance in this delivery from Santosh Chetan. और निस्संदेह एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी. गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और अजहर ने ये जानते हुए छोड़ दिया कि वाइड हो सकता है, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. बेहतरीन गेंदबाजी. 3000 दर्शक इस मैच का मुआयना करते हुए. 3K audience are watching this live telecast from Bedra Media through YouTube. और निस्संदेह ड्रोन मैदान की चारों ओर ड्रोन कैमरा जो कि लहराता हुआ, देखिए इस वक्त एक्स्ट्रा कवर दिशा में पहुंच चुका है. दर्शक उसकी ओर इशारा करते हुए, और यहाँ पर संघर्ष का पराकाष्ठ पर यह मैच यहां पर पहुंच चुका है. संघर्ष की तीव्रता बढ़ चुकी है. 2 गेंदें 3 रन, 6 गेंदें 5 रन थे, 5 गेंदें 4 रन थे, 4 गेंदें 3 रन थे, 3 गेंदें 3 रन बने. अब 2 गेंदें 3 रन बन चुके हैं, तो अब 2-3 रन जरूर बनाना होगा यंग फ्रेंड सुरुआ को. बचे हुए 2 गेंदों पर, हर गेंद पर दबाव. द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स. और गेंदबाज चेतन इस वक्त तैयार. क्या इस गेंद को चेतन डॉट करवाते हैं? क्या इस गेंद पर अजहर रन ले पाते हैं? देखना पड़ेगा, और क्या होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा. और वक्त के साथ साथ हम यहाँ पर इस मैच की अगली गेंद की ओर बढ़ते हैं. फील्डिंग में कुछ जमावट है, अभी भी कुछ बातचीत यहाँ पर चलती हुई. और निस्संदेह सतीश, इस वक्त मैच जैसा कि आपने कहा वीक हार्ट, जिनका हृदय, जिनका दिल दुर्बल है, वो जरूर इस मैच को देखना नहीं चाहिए, क्योंकि लगभग हार्ट अटैक होने की भी संभावनीयता हो सकती है इतनी हाई वोल्टेज मैच में. तो और यहाँ पर 2 गेंदें बाकी है, 3 रन चाहिए. फील्डिंग सजावट, और शाकिर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर इस वक्त लॉन्ग ऑफ के फील्डर को थोड़ा सा वाइडर जाने के लिए कह रहे हैं. और कुल मिलाकर 4 फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. 3 to get from 2 deliveries. चेतन to Azhar, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. दर्शकों की ताली इस वक्त बजती हुई. Here we go, राइट आर्म ओवर द विकेट. अजहर के लिए गेंद को मोड़ा इस वक्त बैकवर्ड थर्ड बॉल पर. 1 रन भी लगा, थ्रो पहुंच चुका है. एंड नाउ 2 to get from last ball. 1 for tie, 2 for win. If the match ended in a tie, winners will be decided by toss. So what a match, absolutely fantastic match. निस्संदेह सतीश, ऐसा कहना पड़ेगा मैच ऑफ द टूर्नामेंट. यहां पर प्रगति पर दर्शकों की दिल की धड़कनें तेज होती हुई. निर्धारित गेंद बाकी, क्या होगा और क्या कहना चाहेंगे आप सतीश? Absolutely, there is a possibility if we see that in the last delivery, if batsman able to pick the single, it match will going to be tie, and even wickets are level, then toss will going to decide. If the batsman picks a 1 run and then trying for the second and run out will taken place, then young friends will going to lose the match. That's also very good. And that's also very important, isn't it? And picking up the wickets in the last ball all over for young friends. So 3 possibilities there in the last delivery, and wait and see what will going to be happen in the last delivery. Look at the crowd here. I request captain of KFC Kodikal, please complete this match, because we are having 1 more matches to go, the final to be played here. So 1 delivery is to pass to finish this. Please don't take many times here. So last delivery remaining. Here you go, Gopi. 1 ball, 2 run required. What Santosh will going to do, what Chetan will going to do here. Exactly, Satish. The match deciding ball comes. Right arm over the wicket. Again, sweep कर लेता है.
चुके, रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट and is gone. Young friends Urwa lost the match by Single run. a single run. One run thrilling victory for KFC Kodikal. Absolutely fantastic match came to an end. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡಾರ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಲ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಇಕಬಾಯ್ ಬಾಲ್ ಇಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಾರ್ ತಂಡ ಕಪ್ತಾನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು. ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಕಪ್ತಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಕಪ್ತಾನ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲ್ಲ. ಹಕೀಂ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಕೀಂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಕಪ್ತಾನ, ಅಡ್ಡಾರ್ ತಂಡ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ 3 ಓವರ್, ಸತೀಶ್ ಅಲಿಯನ್ 3 ಓವರ್, 3 overs match. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಂಗ ಆಪಣಿ 4 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಾಪುಂಡು. ಇತ್ತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ರಪ್ಪ ಕತ್ತಲಾಪುಂಡು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯದಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿದೆ ಬಲೆ ದಯದಿದ್ದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಾರ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಓಪನ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಜಿರಮಗರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಡಯಾಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಚೇತನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಡಾರ್ ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಅಂಪೈರ್ಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಧಾವಿಸಬೇಕು. KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು 3 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ, 3 ಎಸೆತಗಾರಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸರಿಯಾಗಿ 1 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದೆ, 40 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು JD ಬಾಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು. Here is an announcement. The Girlfriends Manchi, they're organizing a cricket tournament in Manji Nuzimail School Ground. Is coming 6th and 7th March of 2021. The interested team can enroll their name and can participate in this prestigious cricket tournament. The entry fees will be the 5,000 and the cash prize will be the 50,000. The winners Chetan. trophy and second it's going to be a 30,000 and runners off trophy. So please enroll the name for this prestigious cricket tournament. Girlfriends Manji. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಜಿಲಮಗೂರ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So thank you very much. It's all set now for the big final. KFC Kodikal at last that managed to win that nail batting finish. One of the best match ever played in this season. ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತೀಶ್ ಅಜಯ್ ಭಟ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಟು ಫೈನಲ್. Thank you very much. What a great finish for that semi-final. Just a single run victory for KFC Kodikal and they qualify for the final. What a great performance from Chetan in the final over. He's just restricting the batsmen of Young Friends Surwa. Here is the final match, the first delivery of the final. Right arm over the wicket and Tazuddin straight away off the mark with a single by handsome looking off drive down to deep long off region. He's off the mark and challenge Adyar. They came into the finals yesterday. They won quarter-final, then they came into the semi-final. Early morning they played the semi-final. They won the match and they came into the finals. And wait and see how well they managed to win this match. Again, chip that one. Shakir straight to the hands of Whitish long on. Challenge Adyar got a big wicket here. The wicket of Shakir is back into pavilion. Quite unfortunately, we are watching a 3 overs final because of high voltage match. The previous match taken a lot of time. 1 hour 50 minutes for the one match, the 7 overs match. So that we are a little bit disappointed to watch the 3 overs match in the final. Again, lovely execution there from Tazuddin playing that reverse straight quite nicely down to short third man. That shot back point region for a single. And total score of KFC Kodikal moves on to 2 now for the loss of Shakir's wicket. Now fall is a new batsman came into middle. Arif. We would like to give the thanks to Mr. Amant who is as a scorer. Of course, done a great job along with Iqbal in commentary box. Outside line of off time. Bad miss by wicketkeeper behind the stump. Opportunity of run out if it's a good throw from a wicketkeeper. By call by umpire. And Shriniket and one more addition to total scoreboard moves on to 3 on the board for the loss of Shakir's wicket in the over number first in progress. Arif again now. Alright, arm over the wicket. Very impressive Arif so far in this tournament as an opening bowler. Right arm over the wicket. Oh my goodness, Imran. Fantastic effort there from Imran.
It's definitely going to be one of the best catch of the tournament if able to hold that one. But look at the attempt from that fielder. This has been outstanding. And definitely going to be, it was a spectacular catch if he is able to hold that catch. Look at that one in the replay. Right arm over the wicket, slashing that one. Look at that effort from Imran. Jumping towards his left and just extending his left hand to take the catch. But unfortunately, the ball is just slipping out of his hand. Otherwise, it's going to be a great catch of the tournament. But anyhow, single is taken. Run out chance also missed out. And total score is 4 on the board. For the loss of 1 wicket. Arif right above the wicket. Bowls now fall went for the reverse sweep. Missed it completely. Great bowling performance there from Arif. So far, it's a good over. The first over is going to be a quiet over. Challenge. Adyar giving some kind of challenge in the first over itself for KFC Kodikal. They're really sending a strong message. You cannot underestimate the challenge, Adyar. They got the potential of winning the big matches as well because this is a 3 overs format of the games and very difficult. You can't underestimate any team when it was a small format of a games. Even KFC Kodikal defeated young friend Surua, but still challenge Adyar has got a potential of stopping the winning run of KFC Kodikal. They got only 4 in the first over. Now 2 overs remaining. The wait and see how many runs they will going to score in the remaining 2 overs. What a great tournament it's going to be. That match, the semi-final, will going to remain in the heart of cricket lovers for so many years. That was guaranteed. I will going to give you one of the best match ever seen in Underarm cricket. That the great finish in the last over. Each and every ball of the last over, the crowds really standing in their knees to watch who will going to be the winners. And that was a challenge, the last over ball by Chetan. What an outstanding great over. This time tipped that one down to short mid wicket. They wanted a single there. They got the single there. One more addition to total scoreboard moves on to now 5 for the loss of 1 wicket to over number 2 in progress. There is a deep cover, this deep long off. There is a fieldsman there in the deep long on, deep mid wicket and deep backward square leg. Short fine leg and short mid wicket, short third man and mid off. This time ball is in there. Great catch. Very good catch and taken there by the jersey number 8. Diving to his front. Takes a wonderful catch low down to him. The wicket number 2 of KFC Kodikal back into pavilion. Lovely band, very melodious. Thank you very much. So 2 wickets fell of KFC Kodikal at a score of 5. So far challenge Adyar. They are putting a lot of challenge for KFC Kodikal. The new batsman, the hero of the previous match, Chetan, came into middle. Facing next delivery from the left-hand bowler, Mukhtar. Left arm over the wicket bowls. Chetan looking for the improvisation. Misfield there by the fielder. The batsman got opportunity to come back for the second. And they made it quite easily. What could be a certain single because of some misjudgment by the jersey number 10 at short third man. Ball is a little bit deviating, so batsman fielder couldn't manage to see the turn and just missing it completely. Then the batsman got an opportunity to come back for the second as well. 7 for the loss of 1 wicket. Left arm over the wicket to Chetan. Chetan this time lofted slog sweep shot. They coming back for the second again. Chetan once again. The day is definitely belong to Chetan. And he will going to remember this day for a long time. The 24th of January 2021. And certainly it was one of the golden day for Chetan. He will going to remember for a long time the way he's bowled that last over. And now he's batting very well as well in this final. Appeal for leg before wicket. Definitely that ball going to miss the leg stump. No chance at all for the leg before wicket. But opportunity for umpire to lift his leg. There's going to be leg by 1 more addition to total scoreboard. Moves on to 10 on the board in the over number 2 in progress. Second over certainly it's going to be a
the best over for KFC Kodikal. They got some runs already from the far end. Tazuddin drives it and quite handsomely down to deep long on. But good piece of fielding there by the fielder, but they can't stop a couple of runs from these two batsmen. So 12 in the end of over number 2, and KFC Kodikal back into this game strongly. They got 6 runs per over now. Last over remaining of their innings. Wait and see how many runs they will going to score in the last over. And challenge Adyar, they conceded 8 runs in this last over, and certainly it was a productive over for KFC Kodikal. Wait and see how many runs they will going to score in this last over. Imran, excellent all-rounder for the side, who got experience representing KCCR Kadri, the Mangalore team. One of the fine fielder as well. Fantastic performer. Now bowling the last very crucial over of the innings of KFC Kodikal. Chetan is a man in front of Imran. Right arm over the wicket. Bowls, delivers. That was a ball pitching outside the line of off time, further away, going further away. And rightly so, umpire signals a wide. One more addition. Scoreboard moves on to 13 now for the loss of 2 wickets. Imran. Right arm over the wicket, bowls. Look at Chetan, wicket keeper, what he's doing there. Every time when the fielder, the bowler succeeded to beat the bat, but wicketkeeper not really giving that kind of support behind the stumps. That could be a dotted delivery. But I think the batsman almost shuffling across the line of the delivery. It's not that much of easy for the wicketkeeper to judge the line, because his batsman coming right in front of wicketkeeper. And I think it's a little bit difficult job, especially under this light. It was a bad light. Will going to give some kind of testing time for the wicketkeeper behind the stump. Sensible batting there from Tazuddin, quickly realizing that they got some extra runs in this over as well. 18 to 20 runs, certainly is going to be a winning total in this condition. And scoreboard moves on to 15 on the board. And the over number last in progress. Imran, right arm over the wicket, bowls. This time, good catch once again, excellent. Challenge Adyar, they are excellent in the field. Again, diving to his left, takes a spectacular catch to send Chetan back into pavilion. Look at that catch in the replay. Terrific. When you are having a ground like this, when you are having a grass, the greenery ground like this, then a fielder like this will definitely going to enjoying the fielding here. Diving to his right, left, and takes a very good catch. Diving to his left and kept the eye on the ball till the last moment, and taking the very good position to take the catch. One more wicket is back into pavilion of KFC Kodikal. It's a Imran bowling to now Akim. It's a new batsman came into middle. Score remains on 15. That's the Akim. Quite nicely sweeping the ball down to deep up. Fine leg division for a easy single. With the addition to that single, scoreboard moves on to 16. Last 2 deliveries left in the innings of KFC. 16 on the board. Tazuddin is on strike. Imran knows that 2 deliveries it need to restrict the runs. Again, edging it down to short admin division. Just a single for the batsman. One more addition to total 17. Last ball. So far Imran bowled really very well. Of course, he starts with the wide delivery. Then he bowled 2-3 good deliveries in this over. Altogether, we can see that 5 runs came from that last 5 deliveries. Good bowling there from Imran. Last ball of the over innings. This time, Akim just flicking that one off his legs. Down to deep square leg. Wide throw coming from the fielder. Good backup by the fielder. Just 2 runs to finish the innings here. 19 runs scored by KFC Kodikal, and they set a target of 20 to win the match for Challenge Adyar to become the champion. Wait and see if it will going to be quite enough for KFC Kodikal to depend. Wait and see how Challenge Adyar will going to take the challenge of getting 20 runs in 18 balls. It's going to be very interesting when it is going to be the start of the innings of Challenge Adyar. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಯವರ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರವರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೀ ಒಂದು ಕಲ್ಲೋಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ದಕ್ಲೆ ಹಾಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಕೀ
ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಬಂದು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಹಾಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರಾಕ್ಷರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. Thank you very much for that very popular Bolo Tararara music, and wait and see who will going to enjoy that music, because you have to wait for another 3 hours, Gopi, to become to see that we will going to enjoy that Bolo Tararara. They will going to definitely dance for that music if they were able to win the match, because 20 to win the match in 18 balls and challenge Adyar, I think they managed very well to restrict opposition for 19 runs, isn't it? बिल्कुल कोडिकल के बल्लेबाजों को 19 रनों पर रोक कर रखकर एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर दिया चैलेंज अड्यार के गेंदबाजों ने सतीश। और जहाँ तक सवाल है बोलो तारा रारा, 3 ओवर के खेल के बाद पता लगेगा कि कौन जश्न मनाएगा बोलो तारा रारा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध दलेर मेहंदी का एल्बम है जो चंद साल पहले रिलीज हुआ था। यह गेंद इस बार गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहा था लेकिन ठीक तरह से स्वीप नहीं कर पाए। और बिल्कुल सही बात आपने जिक्र किया सतीश। और इस वक्त जेडी बॉयज ट्रॉफी 2021 2021 का चैंपियन कौन होगा ये तो चंद मिनटों बाद अब पता लग जाएगा। तो यहाँ पर संघर्ष जारी है और अंतिम सत्र इस श्रृंखला का यहाँ पर प्रगति पर मैदान पर काफी हद तक ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ इलेक्ट्रिशियन अर्जेंट। और शकीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाईनाथ ओवर द विकेट, दाईनाथ के बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव करना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। बल्लेबाज का खाता यहाँ पर खुल चुका है और कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है 2 रनों पर। आरंभिक बल्लेबाज उनके लिए आरिफ और रियाज दोनों ने अपना खाता खोल लिया इस वक्त और आरिफ इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। शाकिर की गेंदों का दाईनाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया और गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन के लिए 3 रन बिना किसी नुकसान के। निर्धारित 18 गेंदों में 20 रन पूर्ण बनाने हैं और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है ठीक 6.66 रन प्रति ओवर के औसत से उन्हें रन बनाने हैं 20 रन। ये गेंद शाकिर की अंदर की ओर आती हुई गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर टकराई, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 4 रनों पर। पहले ओवर के प्रगति पर अंधेरा मैदान पर छाता हुआ और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला और एक बेहतरीन क्रिकेट मैच यहाँ पर फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता है। वाइड का इशारा, 5 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है और इस बीच शाकिर कुछ कहते हुए अंपायर से। और जहां तक सवाल है गेंद, शाकिर ने शायद कहा कि बल्लेबाज स्विच हिट खेलना चाहते थे तो वाइड किस तरह से आपने घोषित किया, तो अंपायर ने कहा कि गेंद लेग स्टंप से लाइन के बाहर निकल चुकी है और इस वजह से इसे वाइड घोषित किया गया। बिल्कुल सही तरीके से दाईनाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दर्शक मैदान पर खचाखच भर चुके हैं। मेगा फाइनल मैच जेडी बॉयज ट्रॉफी 2020-21 का यहाँ पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया जेडी बॉयज बंटवाल ने। और ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा इस बीच और एक और रन उनके खाते में यहाँ पर रन जुड़ चुका है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रही थी और इस बीच नाखुश दिखाई देते हुए KFC खोड़ीकल के खिलाड़ी वो इस वक्त कह रहे हैं कि गेंद ज्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही है, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर ज्यादा हद तक निकल चुकी थी। और इस बीच 7 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है और जीत के लिए चाहिए सिर्फ 13 रन विजय के लिए। फील्डिंग में इस वक्त कुछ जमावट करते हुए और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाईनाथ ओवर द विकेट, शाकिर की गेंद, ये गेंद उछालना चाहा, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है।
पहले ओवर की समाप्ति, 7 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। अब 13 रन चाहिए विजय के लिए बचे हुए 12 गेंदों पर। तो जहां तक सवाल है 13 रनों का बचे हुए 12 गेंदों पर, मैच अभी भी बराबर पर रुक चुका है। और सतीश, इन हालातों में, इन दिस कंडीशंस, अंडर दिस कंडीशंस 13 रन बनाना कुछ हद तक कठिन साबित हो सकता है। अगर बल्लेबाज गेंद को ठीक तरह से साइड करके अगर खेलते हैं, अगर सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हैं, तो निस्संदेह चैलेंजर डीआर के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। Exactly, Gopi. It was a benefit for both the teams because even the fielders finding difficult to where the ball is going. So the chances here for batsmen to convert single into twos, and the opportunity is always be there for both the teams. The match is evenly poised. 13 to get from 12 balls, having 9 wickets, and of course, wicket is not a big factor. But when you're losing a wicket, you're losing one delivery. That's very important. And 12 runs, 12 balls, 13 runs, possibility still there. The match is evenly poised. Both the teams has got opportunity to become the champion. That's why this over definitely going to be very important for both the teams. बिल्कुल, ये ओवर दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जैसा कि आपने कहा 13 रन चाहिए 12 गेंदों पर। न सिर्फ बल्लेबाजों को देखकर गेंद को खेलना होगा, बल्कि फील्डरों को भी देखकर ठीक तरह से गेंद को फील्ड करना होगा। और यहाँ पर लगभग अंधेरा सा छा चुका है और इस श्रृंखला में सिर्फ 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। हकीम की गेंद, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, बेहतरीन स्टॉप इस वक्त शाकिर द्वारा शॉर्ट फाइन लेग पर। और इस बीच एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। जेडी बॉयज ट्रॉफी 2021 का क्लाइमैक्स इस वक्त प्रगति पर। और जहां तक सवाल है विजय का, तो 12 रन चाहिए 11 गेंदों पर। दर्शक काफी उत्साह के साथ इस मैच का आनंद यहां पर लेते हुए लगभग मैदान पर भर चुके हैं इस ढलते हुए शाम में भी। और अंधेरा जरूर छा रहा है, लेकिन दर्शक और खिलाड़ियों के बीच इस वक्त उत्साह, जोश और उत्साह इस ढलते हुए शाम में भी बढ़ता नजर आता हुआ। और हकीम इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, शॉर्ट मैन पर शाकिर के हाथों में गेंद। एकमात्र रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। 8 गेंदें अब तक उनकी पारी में फेंकी जा चुकी है और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर गेंद तक पहुंचते हुए अपील जारी है और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। टॉप एज पर गेंद टकराई और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर इस कैच को लपका। 9 गेंदें फेंके जा चुके हैं, 9 रन बन चुके हैं, 11 रन चाहिए बचे हुए 9 गेंदों पर। 11 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 9 बॉल्स टू क्लिंच द प्रेस्टिजियस जेडी बॉयज ट्रॉफी 2021। एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा यूट्यूब पर किया जा रहा है। श्रीमान जनाब इरफान इनके सारथ्य में, और निस्संदेह ये श्रृंखला का क्लाइमैक्स यहां पर प्रगति पर। 11 टू गेट फ्रॉम 9 डिलीवरीज। नए बल्लेबाज इमरान का आगमन इस वक्त हो चुका है। हकीम की गेंद का सामना करने के लिए वो तैयार। और हकीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिना तो ओवर द विकेट इमरान के लिए रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश किया, बैक टू द बॉलर की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन बल्लेबाज को इस बीच मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर। 10 रन बन चुके हैं, 10 रन और बनाने हैं। गेंदें बाकी है 8, गेंदें फेंके गए हैं 10, तो कुल मिलाकर 8 गेंदों में रन्स बनाने हैं और 10। तो यहां पर हकीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ गोइंग टू फेस हकीम। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए गेंद को ड्राइव किया, बैक टू द बॉलर की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े। कोई रिस्पांस नहीं नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को अगर छोड़ते तो शायद वाइड के लिए करीबी मामला हो सकता था, लेकिन गेंद को उन्होंने ड्राइव किया इस वक्त और रन के लिए दौड़ पड़े और आखिरकार कोई रिस्पांस नहीं नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा। अब 7 गेंदें बाकी है और 10 रन चाहिए। मधुर धुन इस वक्त बज चुकी है मेलोडियस बैंड ट्रूप के द्वारा और हमारे कानों को आज सुबह से ठंडक पहुंचा रही है। और हम शुक्रगुजार एक बार फिर से उस बैंड ट्रूप का यहां पर अभिवादन करते हैं।
और अब चाहिए 7 गेंदों पर 10 रन। हकीम तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, गेंद को ड्राइव करना चाहा लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। एक बेहतर ओवर यहाँ पर हकीम का समाप्त हो चुका है और अब 6 गेंदें बाकी और रन चाहिए 9। और आइए सतीश, अंतिम बार आपको बुलाते हैं। 9 रन चाहिए 6 गेंदों पर और जहां तक सवाल है मैच के विजय का, तख्ता जरूर भारी लग रहा है केएफसी कोडिकल का, लेकिन अंतिम ओवर में मौका जरूर है चैलेंज अड्यार के बल्लेबाजों को बाउंस बैक करने का। अगर एक गेंद पर कोई चौका या फिर छक्का लगता है तो निस्संदेह चैलेंज अड्यार इस मैच में वापस आ सकता है। इस श्रृंखला में माइक्रोफोन पर अंतिम बार आइए सतीश। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much. Just like the previous match, this match also looks like it's going to be a male batting finish, but 9 to get from 6 balls in this condition. The same bowler who did a fantastic job to restrict young friend Surva. When it was a 4 required from the final overs for young friend Surva, 5 required from the last over. Now it's a 9 required from the last over of Chetan. Wait and see how we'll going to contribute in this the final match. 9 to get from last over. Chetan, right above the wicket, bowls beautifully bowled. That was a quicker one in the negation there by Chetan. The wicketkeeper behind the stump missed the ball. By call by umpire Shriniket, and with the addition of one single, scoreboard moves on to 12 on the board. 8 runs required. The 5 balls remaining. The match is definitely going to be interesting if one big hits coming here, and challenge Adyar has got opportunity and went for the reverse sweep, not quite able to make a contact with the bat. We wait for the umpire signal. There's no signal, that means it's a contact with the bat. One more addition to total. The scoreboard moves on to 12 on the board. 8 required. 4 balls. Each and every ball required 2 runs here onwards. Chetan bowls. Batsman looking for the drive. Wicketkeeper missed it. But the ball him, cleaned him up. Even umpire doesn't know what really happened. But wicketkeeper knows that ball hits the stumps. The wicket number 4 is back into pavilion of challenge Adyar. 13 on the board. 7 victory. 7 for the victory and 6 for the tie in remaining 3 balls. So now the new batsman just coming into the middle here. Spectators slowly started to leave the ground here. So knows that the 7 very difficult, but to you, this is a cricket. Don't please leave the ground. One big shot can change the complexion of the match. Appeal for leg before wicket. Umpire says not out, but there is a run out in the striker's end. One more wicket is back into pavilion. 2 balls, 7 required for the victory. Loud appeal for leg before wicket, but they're going for the run. They need to be no other option at all for the batsmen of challenge Adyar. They have to look for some runs. Now it's the last 2 balls. 2 balls remaining. They have to get 7 runs to win this match. What a great bowler Chetan. What a tournament he's having. Really, the guy had a great tournament, Chetan, from the bat, from the ball, especially in the bowling department. Every time he's bowling a crucial over for KFC Kodikal. Now 7 to get from 2 balls. Batsman looking for the mighty stroke. Bowler looking for one good delivery. Again, excellent delivery with the pace. Batsman no answer at all that particular delivery. By call, by umpire. Electrician, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆಗೆ. Electrician ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. 6 required from the last ball. Spectators still wanted to see whether it's going to be some magical turn in this match. One big hit can change the complexion. Adyar has got a last opportunity. They have to deliver out of the park if they wanted to win this match. 6 required from the last ball. The batsman looking for the big shot. Chetan looking for one good delivery. Dancing down the track. That's it.
KFC Cortical won this match by 5 runs and they become the champions of JD Boys Trophy 2021. The celebration is on, and just like we are mentioning about who will going to enjoy that song of Diler Mehendi Bolo Tararara, here you go, KFC Cortical. They are going to enjoy and they becomes the champions of JD Boys Trophy 2021. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಡೆ ಬರೋಣ ಹೆಂಗೆ ಬುಕ್ ಬರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಡಯಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. Thank you very much on behalf of commentators, myself Satish, Salyan Hanuman cricketers and Mr. Gopi would like to give a full thanks to the organizers for giving such an opportunity being the part of this wonderful cricket tournament. Thanks a lot. Thanks for inviting for this wonderful cricket tournament. ಎಸ್ ಸಮಾರಂಭದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಂಡರು.
ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಿರಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಹನೀಯರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ವೇದಿಕೆ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾರೀಸ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಾಹಿಮ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಂತರನ್ನು ನಾವು ಫಲಕ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರು ನೆನಪಿನ ಫಲಕ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದಷ್ಟೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಯಲಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನೀಡಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿಕೇತ ಇವರಿಗೆ ಗಣೇಶನೇ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶನೇ ಯುವ ತೀರ್ಪುಗಾರ, ಬರಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮೆರಗು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸೋಣ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು 1998ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಜೈನ್ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಠ ಸಿರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತ ನಾನು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರೇ ಗೋಪಿ ಮಂಗಳೂರ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ದೀಕ್ಷರ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರರಲ್ಲಿ ಬರುವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಗೆಳೆಯ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೆಳೆಯ ಜೋಡಿ, ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಶಾಜಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಹಾರೀಸ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ಇಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಫಲಕವನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ. ಎರಡು ಫಲಕವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಂದ. ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನರು ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಗೂ ಹಾರಿಸಾರಿಗೆ ಮಗದ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಮಿಟೇಟರ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಛಾಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಠಸಿರಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ನಾಗೇಶ್ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಈ ಫಲಕವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಟು ಕಮೆಂಟೇಟರ್.
ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋರರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಅದೊಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಮಿಟಿಕಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಆಧಾರ ನೀಡಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ವಿಶು ಶಂತಿಮಾರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶು ಶಂತಿಮಾರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಫಲಕ ಕೂಡ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶು ಶಂತಿಮಾರ್. ಇದರ ಸ್ಕೋರರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಹೇಮಂತ, ಇವರು ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಎಆಡಿ ಅವರಿಂದ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬೆಡ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಪಂಚಕೋಟದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬೆಡ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸೊಗಸಾಗಿ ಇಂಚಾಗಿ ಹೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೆಡ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಇವರು ನೀಡಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಕೂಟ 80,000 ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಾಖಲೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಉತ್ತಮವಾದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ BCN ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. BCN ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಶೈಲೇಶ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಂಚಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ನೀಡಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. BCN ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಾಕೂಟದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನುಡಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದಂತ AS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಗ್ಗ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. AS ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಗ್ಗ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಆಲೆತ್ತವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಅವರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಜಿತ್ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಮ್ಯಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಈ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 3 ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಘನಶ್ರೇಯಸ್ ದಾನದ ಬಂಧು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಘನಶ್ರೇಯಸ್ ದಾನದ ಬಂಧು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಪಂಚಾಕೂಟದ ಫಲಕವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ
ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಆಲತ್ತೂರ್ ಇವರಿಗೆ ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಧ್ವನಿ ವರ್ಗದ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀಡಿದಿರಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಧ್ವನಿ ವರ್ಗದ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಲಂಟಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಗ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಬರುವುದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅವರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಹಿಂದಿ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಾರರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ. ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆಗೆ ಬರೋಣ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಈಗ ನಡೆದಂತಹ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಶಾಕೀರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಆಲತ್ತೂರು ಅವರು ನೀಡಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಕೀರ್. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಈ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಾಪ್ ಹೊಡಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಕೀರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 1000 ರೂಪಾಯಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ. ಎಸ್ ರಂಜಿತ್. ನೇರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬರೋಣ. ಅದೆಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ 3 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿವೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋಣ. ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ತಂಡದವರು ಕೂಡ ಜಿತ್ತಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ಆರೀಫ್. ಗಣೇಶನ ಅವರು ನೀಡಬೇಕು. ಆರೀಫ್ ನಿನ್ನೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸದಸ್ಯ ನಮಗೆ ಕಂಡುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಆರೀಫ್. ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳ ನಾವು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಸರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡದ ರಿಯಾಜ್. ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೀಡಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಬಹಳ ಅಮೋಘವಾದ ಸಿಕ್ಸರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಮಗೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಯಾಜ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಭಾಗ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಚೇತನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬದಾವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನೀಡಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಆ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಬೃಹತ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಂತಹ ಜಗಜಗಿಸುವಂತಹ ಬೃಹತ್ ಟ್ರೋಫಿ ಈಗ ತಾನೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿ ಅದರ ನಿರ್ಣಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅದೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಮಹತ್ವ ಅದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಿಸ್ತು ಈಗ ಕತ್ತಲಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಓವರಿಗೆ ನಾವು ಆಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಎದ್ದು ಅದರೊಂದಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು 7ವರೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಾದರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ 7ವರೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಲಭ್ಯ. ಸರಿಯಾಗಿ 7ವರೆಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡದವರು ನಮಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ತಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕರ್ವೇಲನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾದಂತಹ ತಂಡ. ಅದರ ಆಟಗಾರರಾದ ಇಮ್ರಾನ್, ಆಸಿಫ್, ಮುಕ್ತಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಯಾಜ್, ಎಲ್ಲರ ಸಭ್ಯ ತೌಸೀಫ್, ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಲರೂಪವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಕಾತುರದಿಂದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಎದೆಯನ್ನು ಡವ ಡವ ಮಿಡಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಆ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಶೋದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ 10,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟ ತನಕ ಆ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಡ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಡ್ಯಾರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಈ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ.
ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 50,000 ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಪವನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಬೃಹತ್ ನಗದು 50,000ಗಳನ್ನು ಗಮನಾಗಿಸಿ ಅದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜನೆಗೊಳಿಸಿದಂತ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೋಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನಾನು ಹೇಳಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಪ್ ಸಿ ಸುವರ್ಣ, ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬೆ, ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಷ್ಕರಾಜ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಗಣೇಶನೇ ಇವೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ